Today's lecture is language of abnormality. In other words, we can say what are the signs and symptoms in psychiatry. What is abnormal will be the signs and symptoms in mental illnesses. So what is psychopathology? You must have heard about pathology, but there is a term psychopathology. The abnormalities in mental illnesses are called as psychopathology because it pertains to mind, psyche of the person. The aim of psychopathology is to identify the symptoms, create a method for diagnosing the issues, understanding the cause, find ways to treat and prevent mental health problems. So we used to define signs and symptoms of psychopathology. So what is psychopathology? All the persons, normal persons have emotions, they have behavior, and all these behavior can be converted into psychopathology. But all the traits may be found in a normal person also. So how we define a psychopathology, how we identify it? The emotion, thinking or behavior will be deviant from normal qualitatively or quantitatively. There should be an excessive high or low of the behavior, thinking or emotion. It should be enduring, long lasting, disabling to the person, distressing to the person or family, and harmful to the person, others, and environment, like in the case of excitement. We will discuss the descriptions of signs and symptoms. This is the classification of disorders in ICD-10. There are 10 classification, major classification. We will try to know the symptomatology according to the major classification of the ICD-10. So these are organic mental disorders, disorders due to psychoactive substance use or alcohol, schizophrenia and delusional disorders, mood disorders, and disorders due to physiological disturbances and physical factors, adult personality, and there are further three classifications which usually pertains to childhood disorders like mental retardation, disorders of psychological development, and behavioral and emotional disorder, which usually onset in childhood and adolescence. Okay, we will discuss the symptoms of adult psychiatry majorly. To start with organic brain disorders, there are three disorders, major disorders in organic brain disorders. One is dementia, second is organic amnesic syndrome, and delirium. Starting with dementia, dementia have cognitive and sensory changes. The symptoms are memory loss, and it may be noticed by other ones also, the near and dear ones. Difficulty in communication, the problem in finding the right word, and there will be a reduced ability to organize, plan, reason, and solve problem. This sequence is called as executive function. So there will be impaired executive function. Confusion and disorientation, difficulty with coordination and motor functions of the body, loss of or reduced visual perception. Agnosia means unable to identify object or person, and on top of it, psychological changes may be seen like changes in personality and behavior, depression, anxiety, hallucinations, mood swings, agitation, apathy, which is known as lack of interest and emotions. The second one is organic amnesic syndrome. In this syndrome, there is an impairment in recent memory, anterograde memory and retrograde amnesia may be found, and there will be a history of an insult to the brain or disease of the brain. There must be like
anoxia, hypoxia like situation, or road traffic accident. Such kind of history will be there to develop this disorder. There will be absence of defect in immediate recall. Immediate memory is not much impaired. There will be absence of disturbance of attention and consciousness, absence of global intellectual impairment. All the cognitive faculties are not impaired in this amnesic syndrome. Rather, this is restricted to impairment in recent memory. Delirium. The onset of delirium is usually rapid, the course diurnally fluctuating. The total duration of condition is less than 6 months. There will be impairment of consciousness and attention, global disturbance of cognition. Global means most of the brain functions are uh, disturbed. Psychomotor disturbances like agitation or hypoactiveness, disturbance of sleep-wake cycle, and additionally emotional disturbances may also be present. So you may have found all the three may be confusing. No, these all are looks similar, but the major difference is the dementia. Dementia is a chronic condition which occurs in the elderlies, and it is characterized by progressive cognitive decline due to brain cell damage. This will be the picture. In amnesia, as we have said, there will be a immediate insult to the brain. There will be a history of uh, anoxia or hypoxia, and only the memory part is impaired in this case. Delirium is a condition which is secondary to any kind of infection, medications, or environmental changes, or changes in the body like electrolyte imbalance, infections of the brain. So delirium is a short lasting condition which may last less than 6 months and usually resolves within few weeks. Now coming to the psychoactive substance use, including alcohol. In these disorders, there is a term dependence syndrome, alcohol dependence, opioid dependence, cannabis dependence. So what is the criteria for dependence syndrome is, the first one is craving, the strong desire or sense of compulsion to take the substance. There will be a craving to take the substance. Difficulty in controlling substance taking behavior in terms of onset and termination of use. The person cannot stop himself if he is using the substance. Like if we have thought that I will take 2 packs, and after 2 packs he will not be able to control himself in terms of termination. There will be a physiological withdrawal state when the substance is cut down or seized. There will be a withdrawal state, which is the physiological state. There is evidence of tolerance. Tolerance means similar amount of substance is not creating that effect uh, in a long run. If someone is taking a certain constant amount of substance, then after few months or few weeks, the person will not get that much of effect from the same dose of the substance. So in this case, the person has to increase the dose, like from going to 1 pack to 2 to 4, 4 to 6, and one can consume up to 1 bottle also. So this is a kind of tolerance which is there with the person. Progressive neglect of alternative pleasure and interest because of the uh, substance seeking behavior, because of the influence of intoxication, intoxicated state, or recovering from the intoxicated state, the person is progressively neglect the alternative pleasure which he used to enjoy before. Persisting with substance use despite clear evidence of overtly harmful consequence. The person knows that this substance is harmful to me, this is causing liver damage, this is causing financial loss, this is causing uh, uh, loss of a good image in the society, is having conflict because of the substance in the family. No. Despite that, the person used to use the substance. This is dependence syndrome criteria.
Now coming to the withdrawal syndrome. So withdrawal syndrome is common when the substance is cut down, and commonly used substance in this area is alcohol and opioid, and cannabis also, but we will discuss about the alcohol and opioid. The withdrawal syndrome of alcohol are headache, insomnia, anxiety, sweating, palpitations, decreased appetite, upset stomach, nausea, vomiting, shaky hands or tremors, shaky body. Wernicke's encephalopathy and Korsakoff syndrome are the complicated conditions of alcohol withdrawal. A person can also have withdrawal seizure also, seizure-like activity. So I have underlined in somewhat you can remember the symptoms like headache and insomnia is related to upper part of the body, heart palpitation, anxiety, sweating is related to cardiovascular system, and the third one is related to abdomen and tremors, and then complicated alcohol withdrawal. Similarly, for opioid withdrawal, the person may have sweating, diarrhea, runny nose, watery eyes. So one can say that all the channels are open, and sweating, diarrhea, runny nose, watery eyes. Muscle aches, stomach pain, increased uh, uh, pain, belly cramps may be present, muscle cramps, aches, joint pain, anxiety, agitation, restlessness, and irritability may be present. Goosebumps may also be found. What are goosebumps? रोंगटे खड़े होना ना, chills, yawning without having a tendency to sleep, nausea and vomiting. These are the symptoms of opioid withdrawal. Now coming to the schizophrenia and delusional disorder. These are the psychotic illnesses and may have delusions as a symptom. So first we will learn about the definition of delusion, what the delusion is. It's a belief, it's a thought process. This is not pertaining to perception. This is a belief which is clearly false. What the person is saying is not true. The false belief not accounted for by person's cultural or religious background or his her level of intelligence, and that belief is not matching with the uh, themes and the thinking of society as a whole. Those thoughts are not prevailing in the society, so not related to cultural or religious background, and not of the level of intelligence of that person. है ना? A person may be talking about the NASA is tracking me by means of a chip, but he is a merely a peon in an institute. है ना? So how, why the NASA will track that person? He is not so important person. So intelligence level is not matching with the thought. Okay, and regardless of evidence to contrary, if you confront with the person will not uh, be corrected or not get satisfied with the evidence you give. So this makes a delusional belief, which is false, which is not in context of cultural and religious background and not in the level of intelligence, and the person is convinced that the belief is true and cannot be corrected by reasoning. So there are two types of disorder which are common disorder in this group. One is schizophrenia and another is delusional disorder. The symptom of schizophrenia are as follows. First is thought insertion or withdrawal. A person's thoughts are under control of an outside agency and can be removed, inserted or interrupted by others. He will express this idea as, okay, my thoughts are being extracted, removed, or it can be stopped by some external agencies. For example, my thoughts are fine except when Shivam extracts them. In thought broadcasting, the person believes that other can hear their thoughts. The person has not expressed their thought, and someone can hear their thoughts by means of broadcasting like, television, radio, or the internet. है ना? So, how, why the NASA will track that person? He is not so important person. So intelligence level is not matching with the thought. So there are two types of disorder which are common disorder in this group. One is schizophrenia and another is delusional disorder. The symptom of schizophrenia are as follows. First is thought insertion or withdrawal. A person's thoughts are under control of an outside agency and can be removed, inserted or interrupted by others. He will express this idea as, okay, my thoughts are being extracted, removed, or it can be stopped by some external agencies. For example, my thoughts are fine except when Shivam extracts them.
This broadcasting idea may be present or not. Delusional control, influence or passivity. A feeling is caused not by themselves but by some others or other force. Person has a feeling or some kind of movement, and he may say that these are not in my control and these are being controlled by some other agency or person. Delusional perception. This involves assigning a new significance, often related to self-reference, to a normally perceived object. Something is normally happening around him and he perceives that signal as pertaining to him, and he make out of a delusional belief out of that. For example, the traffic lights turning red may be interpreted by the patient as meaning that aliens are about to land. So signal turned red is a normal process, and how this is perceived by the patient. Persistent delusions of other kind that are culturally inappropriate, completely implausible, like bizarre delusion. Bizarre delusions are the delusions in which the content what the person is expressing is not possible actually. That cannot happen scientifically. For example, believing that one's organ have been replaced with someone's else, but not said by a patient whose kidney has been transplanted. There is no evidence this, no surgery has been done, but the person thinks that organs have been replaced. The another thing is hallucinations, and hallucinations are perception without any external stimuli. There is an external stimuli like there is a projection of these slides on the board. This is there and you are perceiving it. Okay. But in case of hallucinations, there is nothing but perceived by the person. The one is thought echo, hearing thoughts spoken aloud. He used to hear his own thought as if the thoughts are existing externally in the environment. The voices giving a running commentary, the commentary type hallucination, and discussing the patient among themselves. The voices are more than two, more than one, and discussing the patient's behavior among themselves. This is discussing type. Or other type of hallucinatory voices coming from the some part of the body. And these voices are actual for the patient. This is false for the others, but these are perceived as a real by the patient. Disorder of thought, formal thought disorder may be found. Means the what the patient is saying is not grammatically or grammatically correct or meaningful. So this is defined as incoherence, loosening or derailment. Sudden shift from one topic to another abruptly, and severe form of this thing is incoherence. The example is, oh, I am going to the beach because the sun and the sand, it's like when the cat jumps over the moon. So you can see that there is sudden shifting from in between the sentences to the other topic. So this is derailment. Neologism, creation of new words, often nonsensical words that are not understood by other. And for example, in this example, the frizzling and sunflick is a word which is not actually present in the dictionary and created by the person, and the person has his own meaning for that word. This is neologism. Answers may be irrelevant. If you ask what is your name, and the person replies, I had gone to Delhi on that day. So it is totally irrelevant. The question is not answered. So speech will be irrelevant and incoherent. There is catatonic behavior may be found in schizophrenia, and that sub-classification known as catatonic schizophrenia. The person may have stupor, catalepsy, vagus flexibility. Stupor is a state of close to unconsciousness. The person is not actually unconscious by means of any uh, medical illness, and seems to be stuporous. Catalepsy, the body will be rigid. Vagus flexibility,
the limbs stays in the position another person puts them in. If you puts the person's arm in an awkward position, he will hold that arm for a long time. Mute is lack of verbal response. Negative is lack of response stimuli or instructions. Negative is this, what will you ask the person to do? He will do opposite of that, verbally or physically. If you try to pull the person, he will resist that and goes into the opposite direction. Similarly, posturing, holding a posture that fights gravity. Fights gravity means the awkward posture maintained for a prolonged time. That cannot be held by a normal person. Mannerism, repeated movements that appear to have some functional significance. For example, saluting. You know, the person will do repeated movement of saluting, but in a indifferent context. Stereotypy, repeated movements that are regular and without obvious significance. There is no significance in stereotypy, and there will be a significance in mannerism, like saluting or handshaking or some other kind of movement which have some functional significance. Agitation, not influenced by external stimuli. Agitation means anger and aggression. Grimacing, contorted facial movement. Facial movements are distorted. Echolalia, meaningless repetition of another person's word. Echopraxia is meaningless repetition of another person's movement. And a repetition of word is echolalia, and the repetition of movements is echopraxia. The person can have negative symptoms. These are the negative symptoms of schizophrenia. Positive symptoms means something which has occurred in the psychopathology and something which has gone. The person was a jovial person, he was very helpful, he used to mingle with the person. That behavior has gone is known as negative symptoms. And in negative symptoms, one may find avolition, lack of motivation, anhedonia means inability to feel pleasure in the all previous pleasurable activities. Asociality, lack of interest in social interactions. Social interactions are gone, negative symptoms. Blunted affect, diminished expressions of emotion. So expression of emotions are also gone, negative symptoms. Alogia, reduction in speech. He used to be good orator, but now he is not. The second disorder is delusional disorder, and in delusional disorder, uh, the set of symptoms you have found in schizophrenia will not be there. Single or set of delusions are there. There will be no major functional disability in this disorder. Functionally, the person will be doing good. Yeah. So certain types of delusions are described here, and on the basis of content, delusion can be different types, like a delusional mood, in which the person found that the surrounding affects them, yet they are unable to identify the specific issues. Specific issues are not there, but surroundings are affect them, and the mood uh, is not pertaining to himself. Delusional memories, and I will only describe the terminology as per the content, not going into the detail of these delusions. You know, delusion of persecution. Uh, Persecution means someone is plotting against him, someone is behind him and want to do harm to the person is delusion of persecution. Delusion of infidelity. In this, the person believes that a partner or spouse is being unfaithful and cheating to him or her. Jealousy delusions are frequently associated with alcohol abuse, and a jealous type of delusional disorder is convicted that their spouse or sexual partner is unfaithful. This is particular to the alcohol abuse. Erotomania, delusion of love, commonly found in females who believe that some higher authority are uh, is in the love with her, and this is also known as D. Clarenbold syndrome. No. Nihilistic delusions are commonly found in depression and
In this, the individual denies that the existence of their body, mind, or loved ones and the surrounding world. So nihilistic kind of delusion are found in depression. And hypochondriacal delusion, also known as somatic delusions. In these delusions, there is a involvement of thought that the person is suffering from serious illness or some kind of symptom he or she will describe as a somatic delusion pertaining to bodily functions. Delusional misidentification are two types. One is Capgras syndrome, is hypofamiliarity syndrome characterized by belief that a close acquaintance has been replaced by the identical imposter. Infragoli syndrome, known as hyperfamiliarity, involves the erroneous identification of an unfamiliar individual as someone familiar, despite of lack of physical resemblance. In Cotard delusion, manifest as belief that one is dead or that certain body part have disintegrated or ceased to exist. This is also found in depressive disorder. Syndrome of subjective doubles, known as doppelganger. Delusion of infestation, known as egg bomb syndrome, and characterized by belief that one is infested with small visible organisms, and they may express that something is crawling under their skin. Delusion of reference involves the conviction that certain stimuli like a poster, song, or advertisement hold a specific significance or concealed message directed at the individual. And the person will refer to the something which is there in the environment and related to himself. The syndrome of intermetamorphosis is a delusion conviction that other have undergone significant transformation in both physical and psychological identity. Shared delusion. Delusion is shared by the family member of a person who is actually having delusion. Religious delusion is related to religious values. Somatic delusion, again the hypochondriacal delusion. Delusion of being poisoned. The person may say that something is being mixed in the food, which is maybe a poison or not good for his health. Delusion of poverty, that one is currently impoverished, is on verge of becoming destitute, or is fated to experience financial ruin. All these will be false belief under the paradigm of delusions. Now coming to the mood or affective disorders will contain alternating episodes of mania or depression. We will discuss about the mania and depression only, not of hypomania and other conditions. No. In symptoms of mania include elevated mood. The mood disorders are episodic disorders. These disorders have episodes of mania and depression and usually lasts for few months. If untreated, 3 to 9 months or 12 months, and if treated, the symptoms are controlled easily. So episodic illness are there. If the episode of mania is there, you will find that the mood of the person is elevated. He is excited, having extreme happiness out of the context, increased energy, abnormal high level of activity and energy, inflated self-esteem, increased confidence. The thought will be racing. Yeah. The thoughts will be coming in his mind uh, very fast, and that will be reflected by the thoughts are expressed by the speech, and speech will be pressured, or there will be a speech push of speech, and the person found to be very talkative. There will be decreased need for sleep, engaging in risky behavior like speeding the vehicle, excessive and unnecessary spending money on spree items, social disinhibitions like abusive, irritable behavior, and hypersexuality may be there. Hyper religiosity may also be found. So you can see that the mental faculties are going up. You know? There is elevation of mood, elevation of energy, inflated self-esteem. You know, all the things are gone gone on a higher side. On the contrary to mania, depressive episode can have depressed mood, anhedonia, loss of interest of pleasurable activities, easy fatigability. There was increased energy. There is increased fatigability, tiredness, lack of energy, and
and there will be no evidence of physical conditions like anemia, hypothyroid, and others which confound the picture. Easy fatigability, sleep disturbances may include insomnia or hypersomnia, reduced appetite and weight loss, anxiety, psychomotor retardation, and seen as a slowed thinking, speaking, or body movements are slow. Feelings of worthlessness or guilt, emptiness or hopelessness, and helplessness. Concentration is impaired. There may be suicidal tendencies, suicidal thoughts or act may be there, and somatic symptoms like back pain, headaches, and unexplained physical symptoms may be present in case of depression. Now coming to the neurotic and stress-related somatoform disorder contains phobic anxiety, other anxiety disorder, OCD, reaction to severe stress, dissociative symptoms, and somatic disorder. In anxiety, phobic anxiety, one can have agoraphobia, social phobia, or specific phobia. In agoraphobia, what happens is the person is afraid of being in the place from where easy escape is not possible, like crowded places and buses. In panic attack is sudden episode of intense anxiety when there is no real danger or apparent cause. And during a panic attack, sweating, there is a autonomic hyperactivity, sweating, difficulty in breathing, racing heart, and the belief associated with these panic attacks are the person may think that they are going mad, losing control, or having a heart attack, but it is not related to heart. Social phobias, phobias to social situations, specific phobias, phobias to specific situations like fear of height or fear of a certain animal or creature. Panic disorder is called as disorder when there are lots of panic attacks in a month, like more than 3 or 4. Generalized anxiety disorder is disorder when anxiety and worry is about the everyday problems, everyday things, and which you used to do every day. For example, you coming to the college every day, but you become afraid before night of going to the college, catching the bus and all. Obsessive compulsive disorder. Obsessions are the thoughts that are ideas, image, or impulses that enters the individual minds repeatedly, and the person tries to resist those thoughts and cannot be resist, and he may used to do a compulsion in lieu of that, uh, which are known as compulsions. We will learn later. The common types of obsessions may be, obsessions means a repeated image or thought, है ना, repetition of perfectionism. The thing is not kept rightly, है ना. So maybe obsessed with the symmetry of the placement. Relational हो सकता है, contamination, fear of contamination, causing harm uh, uh, to self or others, unwanted intrusive thoughts of sex and violent themes, extreme order, symmetry, and precision. No, intrusive sexual thoughts and distressing images of near ones or deities or goddess. Apprehension about inadvertently uttering offensive words or insults. Fear of misplacing or discarding valuable items. So these can be content of an obsession. Common type of compulsions are behavior which is in the lieu of obsession. If the person is having obsession of contamination, may be found frequently cleaning and organizing the household items, arranging and ordering of objects in a specific manner in case of obsession of symmetry, repeatedly checking in case of pathological doubt, seeking constant approval or reassurance from the others is also a feature, counting to a particular number repeatedly to divert his mind or to resist those thoughts. So these are the rituals and compulsions. There are mental compulsions also, like saying words, number, and phrases, counting words, letter, number, or objects, repeating, making list of individual items and categories in the mind, replacing an obsession with a different image or word, try to distract the mind to other things, saying prayers, chanting like chanting Om, scanning thoughts, sensation, feelings, and reaction or emotions,
reviewing and replaying past situations in the mind to distract himself from that obsession. Now, reaction to severe stress and adjustment disorder have three findings. One is acute stress reaction, post-traumatic stress disorder, and adjustment disorder. In acute stress reaction is uh, the reaction acutely occurring because of some kind of stress, like maybe natural catastrophe like flooding or earthquakes, accident, battle, criminal assault, and in case maybe rape, will impart a sudden behavioral changes in the person, which will be an acute stress reaction, and this is not long lasting. In post-traumatic stress disorder, there will also be a kind of stressor, and like natural catastrophe, accident, battle, or all this can happen in PTSD also. But the post-traumatic stress disorder develops later after weeks and months, in which person reliving the trauma and having anxiety because of that. In adjustment disorder, person is having adjustment to new place or new environment, like change of boss, change of place, transfer from one place to another, and not being able to adjust there. In dissociative disorder, you may find dissociative amnesia, fugue, stupor, possession disorder, motor disorder, convulsions, anesthesia, and sensory loss. So we have to understand what is dissociation before describing these things. Dissociation is a disconnection between a person's sensory experience, thoughts, sense of self, and personal history. In terms of psychology, dissociation is a defense mechanism in which conflicting impulses kept apart or threatening ideas and feelings are separated from the rest of the psyche. Someone with dissociation might feel a sense of unreality, loss of their connection to the time, place, and identity, and potential cause may be trauma, drug use, other mental condition. The basic concept behind dissociation is there is a stressor because of which the person loses his control on his own body. You know? And you must be heard about the hysteria. Hysteria is a condition. Hysteria actually dissociative disorder. You know? A female is having a stress of doing lots of heavy work in the household, then she become exhausted and get dissociated from herself and land up into the stuporous condition, not because of any medical condition, because of the mental condition. And in this dissociation, one can have amnesia like picture. Actually, there is no insult to the brain, there is no physical problem, there is no medical condition, but the person presented with these symptoms looks like that is having some kind of medical problem. Amnesia, you know, few is a condition characterized by reversible amnesia for one's identity in conjunction with unexpected wandering on travel. The person dissociated from his own identity and found away from the home, wandering or traveling. Stupor already been explained. Trance and possession. Trance is a characterized by a state of temporary marked alteration in state of consciousness, and possession is defined as an episode of alteration in the state of consciousness with the replacement of customary sense of personal identity by a new identity. You know, basically this is a kind of condition in which another person seems to be entered in the body of the sufferer, है ना, जैसे माता आ जाना, पुराने मरे हुए लोग एंटर हो जाना, फिर देन वो प्रोसेस स्टार्ट होता है डिसोसिएशन का, है ना, तो उसको कहते हैं ट्रांसेंट पोजेशन डिसऑर्डर. ठीक है. मोटर डिसऑर्डर में वन कैन फाइंड द मोटर प्रॉब्लम्स in dissociation, convulsions in dissociations, anesthesia and sensory loss in dissociation. The person with presented with these complaints. Now, somatoform disorder contains somatization disorder, hypochondriacal, and all these we will discuss in short.
Somatization disorder, the main feature of this disorder is repeated presentation of physical symptoms together with persistent request for medical investigation in spite of repeated negative finding and reassurances. There will be such kind of history, and often a degree of attention seeking behavior is also present. Persistent refusal to accept the advice and reassurance of several doctors. So one will find there is a kind of behavior known as doctor shopping. Going to various doctors, getting reassurance, then cannot be reassured and demand for a new investigations or repeated. Hypochondriacal disorder is a persistent belief in the presence of at least one serious physical illness. The person with present with a named disorder, disease or syndrome. I am having this disorder. Actually, he is not. In autonomic dysfunctions, one can have symptoms related to cardiovascular system, GI tract, upper GI tract, lower GI tract, respiratory system, genitourinary system, and other organ or systems which have no basis, medical basis of presentation. Similarly, persistent somatoform pain disorder, the patient present with the pain and aches, and one cannot found fit that person in a kind of medical or neurological disorder. The disorders related to physiological disturbances and physical factors have eating disorder, non-organic sleep disorder, and associated with disorders associated with puerperium, sexual dysfunctions, not caused by any organic disorder or disease. In anorexia nervosa, there is a body image distortion in the mind of person, and a dread of fatness persists as an intrusive and overvalued ideas, and because of this, the person acquires a life-threatening eating pattern, in which the person limits the calories, cut out the certain kind of foods and food groups to an extent that causes harm to the person's body, and usually found in females. Similarly, bulimia nervosa, in this also a negative self-image is there, but there is a craving for food, and because of the guilt, the person used to vomit out after eating or binging. This is known as bulimia. In sleep disorders, one can have dysomnias, parasomnias. In sexual dysfunctions, one can have lack or loss of sexual desire, sexual aversions, failure of genital responses, premature ejaculations, orgasmic dysfunctions, non-organic vaginismus, non-organic dyspareunia, excessive sexual desire, not because of any disorder of the brain or body part. This is because of the certain psychological conditions. And these conditions may be partner related. This may be stress, guilt, situation anxiety, self-image problem, low self-esteem, history of sexual abuse, highly restricted sexual upbringing, like in puritanical backgrounds of the families, generalized anxiety disorder, depression, or maybe psychosis. So this is the sexual dysfunction cycle. We won't discuss it in detail. Okay. Mental and behavioral disorder associated with the puerperium. Na? This is F53. Na? Puerperium means related to pregnancy. After during the pregnancy or after the pregnancy, one can have postpartum psychosis or depression. If you are not able to identify this, how will you help your spouse or partner if she will have postpartum psychosis and depression? You will think that this is a normal reaction, but it is not. Depression is treatable. One should get the treatment. One can have abuse of non-dependence producing substance like antidepressant, laxative, analgesic, antacid. These does not have effect like tolerance and withdrawal effect.
there is no such effect is there, but still the person used to take regularly. Specific personality disorders are there: paranoid personality, schizoid, dissocial, emotionally unstable, histrionic, anancastic, anxious avoidant, dependent, and habit and impulse disorder like pathological gambling, fire setting, stealing, trichotillomania, and nowadays internet addiction also. You know? Now coming to the paranoid personality disorder, and you can relate the paranoid word with the paranoid schizophrenia, but this is not a psychotic illness, but resembles that of paranoid schizophrenia, and features are feeling that they are being lied to, deceived, and exploited by others. So they remain suspicious for most of the time, may believe that friends, family, and romantic partners are untrustworthy and unfaithful. Outbursts of anger in response to perceived deception, often described as cold, jealous, secretive, and serious. They remain hidden and hypervigilant and suspicious kind of personality they have. Overly controlling in relationship in order to avoid being exploited and manipulated. Look for hidden meanings in gestures and conversations. Find it difficult to relax. Often hold negative views of the people. Overly sensitive in criticism and overreacts in response to perceived criticism. So these are the features of paranoid schizophrenia. Now come to the schizoid personality disorder, and the features are those resembling with the disorder of schizophrenia. Features are a preoccupation with introspection and fantasy, a sense of indifference to praise and affirmation, so the emotional coldness is there, as well as to criticism and rejection. Detachment from other people, they remain alone and aloof most of the time. Little or no desire to form close relationship with others. Indifference to social norms and expectation. Infrequent participation in activities for fun and pleasure, so they do not involve in the pleasurable activities. uh, Not enjoying social and family relationships, often described as cold, uninterested, withdrawn, and aloof. Now coming to the dissocial personality disorder. Uh, in this disorder, they may begin displaying symptoms during childhood. Such behavior may include fire setting, cruelty to animals, and difficulty with authorities. So dissocial is known as antisocial in DSM diagnosis. Uh, the person who do not follow the norms of the society often have legal problems resulting from failures to conform to social norms. So they do not follow social norms, and lack of concern for the right of others. They do not bother about the right of others also. Often act out impulsively and fail to consider the consequences of their action. Display aggressiveness and irritability that often lead to physical assaults among them. Often difficulty feeling empathy for others. Display a lack of remorse remorse for damaging behavior, so they do not feel guilty of their behavior if someone is hurt or the social norm is not being followed. They do not get the guilt feeling or they lack of remorse. Often have poor or abusive relationship with others and are more likely to abuse or neglect their children. Frequently lie and deceive others for personal gain. Now, emotionally unstable personality disorder, also known as borderline personality disorder in DSM diagnosis. It has five domains under which the behavior, uh, in the behavior, a tendency to engage in risky and impulsive behaviors are there, such as excessive drug or alcohol use, engaging in promiscuous or risky sexual behavior, or binge eating. They are also more prone to engage in self-harming behavior such as cutting or burning and attempting suicide, although not intended to die. So they are most of the time present with hesitation cuts.
Emotions, they have emotional instability, which is a key feature of borderline personality disorder or emotionally unstable disorder. Quick mood shifts are there, going from feeling okay to feeling extremely down or blue within a few minutes. Anger, anxiety, and overwhelming emptiness are common as well. In relationship, people with the emotionally unstable personality disorder tend to have an unstable relationship associated with an intense fear of being abandoned by loved ones. So they are very keen that one should not leave them, and they also show kind of attention seeking behavior to sustain that relationship. This leads to difficulty trusting others and attempts to avoid real or imagined abandonment, putting a strain on relationships. So difficult relationship is because of there this unstable demand. It also common for someone with the borderline personality disorder to have a favorite person or someone they feel they cannot live without. So they have a favorite person, and in the absence of them they think that they cannot live. But another point of time that favorite person may become a very bad person also because of the mood shifts of the patient. Self-image, individual with the borderline personality disorder have difficulties related to the stability of their sense of self. They report many ups and downs and how they feel about themselves. One moment they may feel good about themselves, but the next they may think they are bad or even evil. So this can happen with themselves also, and or with the relationships also with the others. Stress related change in thinking. Under the condition of stress, people with borderline personality disorder may experience a change in thinking, including paranoid thoughts or dissociative feeling, like feeling spaced out, numb, or like they are not really in their body. Histrionic personality disorder. In histrionic personality disorder, they used to seek approval in dramatic and theatrical way. So you will find a kind of drama in their behavior, and theatrical means how the person act in the theater. So their act is called theatrical act. This will be found in these people. Seductive or sexual dressing may be found, or using sexual behavior to seek attention. So they are basically attention seeker, and to seek this attention, they acquire or express so many kind of behaviors to fulfill this attention. Emotional extremes they have, going from 0 to 100 quickly when it comes to emotions. So emotions are very labile. Hypersensitivity and an inability to listen to critic is also there. Trouble making decisions, including making rash and impulsive decision making, is may be found in the histrionic personality disorder. Now, anoncastic personality disorder, which is also known as obsessive compulsive type personality disorder in DSM. In this disorder, acting restrained or restricted with their emotions may be found. Adherence to rule in an inflexible and rigid way. So they are inflexible and rigid in adherence to their rule. This can be correlated with the uh, obsession of symmetry or orderliness of obsessive compulsive disorder. Creating order and list of tasks, they are very keen to do this. Desire to control their relationship with others. Difficulty empathizing with others and maintaining intimate relationship. Extreme dedication to work uh, will be there. Having trouble giving things to others. So they are kind of attached to their belongings and they don't want to give to others. Need for perfection even in the smallest details. So they need a kind of very keen perfection in their uh, work or their belongings, or how they keep their things and how they behave in the
social situation. This will be found in the various dimensions of life of the person. Problems with self-identity or self-direction may be found. Trouble giving up control and delegating tasks. So they, if they are boss, then they are not tend to delegate tasks to others because of their mm, perfectionist behavior, the behavior of orderliness, and their inflexibility and rigid way of adherence to rules. So they are not keen to give their tasks to their subordinates. Anxious avoidant personality disorder. So there is a need to be well liked by others in this avoidant and anxious personality. Anhedonia, lack of pleasure, lack of pleasurable pleasure in activities. Yeah. Anxiety about saying or doing the wrong thing. Anxiety in social situation, avoiding conflict with others. So they tends to avoid the social situations, avoiding interaction in work settings or turning down promotions. So they have avoided kind of behavior, avoiding intimate relationship or sharing intimate feeling, avoiding making decisions also. So this avoiding will be found in various dimensions of life of these persons. They tends to avoid the things with the others, so called as avoidant personality disorder. Avoiding situations due to fear of rejection is there. Avoiding social situations or event, they are not tend to attend the gatherings and parties. Easily hurt by criticism or disapproval. So this is a kind of anxious behavior. Extreme self-consciousness, they are conscious about self, what they are speaking, how they are looking. Failure to initiate social contact, they are fearful and tense demeanor. Feeling of inadequacy, they feel inadequate in themselves. Hypersensitivity to negative evaluation of them by others. Lack of assertiveness, lack of trust in others. Low self-esteem is there. Misinterpreting neutral situation as a negative, they tends to see the negative in the neutral situations. No close friends, lacking of a social network. Self-isolation, social inhibition, unwilling to take risk and try new things is there because of their anxiety and avoidance. Viewing oneself as a social inept or inferior, they tend to see themselves inferior from others while the actual situation is not like. Vigilant for signs of disapproval and rejection. So these are found in the anxious and avoidant personality disorder. Now, dependent personality disorder, they are uncomfortable when alone, so they need someone to near them. No, they cannot live alone. Having a major fear of being abandoned. If someone is there, they will fear that the person will go and abandon him. Feeling incapable of handling responsibility they cannot handle. Need a lot of advice, assurance, and emotional support. Having trouble making even ordinary decision independently, such as what to eat or what to wear. So they depends on their parents or their seniors, superiors for their doing. Being more comfortable when someone else in charge and making decisions. You know, if they for example, if the 4 or 5 people are going for a long drive, then on that drive that person will not you will find that person will not taking any kind of responsibilities for uh, even a small decision they have to make. You know, if someone else is in the uh, holding condition, then they are more comfortable. Being overly sensitive to others criticism or disapproval, they are sensitive. Being unable to disagree with anyone for fear of losing their approval.
So they are always a yes man, they cannot say no, feeling helpless and despaired when the relationship come to an end, being reluctant to try anything new or challenging, lacking self-confidence and having a pessimistic outlook for themselves. So basically their behavior looks like that they are dependent on other, they cannot take their own decisions, they cannot choose what to wear, what to eat. You know? So for the smaller things of their life, the other person have to take the charge. Now habit and impulse disorders, for example pathological gambling, they take bigger risks as you see greater wins and bigger thrills despite potential losses. There are chance of loss, but they seek thrill in the gambling behavior. The chasing loses, similar to chasing a high. You continue to gamble to win back money you previously lost. So they cannot get out of the gambling, and they do not realizes that they have lost the money, and they cannot uh, feel the dynamics of a gambling, that no one will win, and at some point of time everyone has to lose in the gambling. Continue the gambling despite negative consequences such as loss of financial loss is obvious, and maybe loss of relationship and job disruptions because of this behavior. Difficulty controlling gambling behavior and repeated unsuccessful efforts to stop. They cannot stop themselves that I won't, for in future I am not going to continue this. Financial problems due to gambling, possibly borrowing or stealing money to fund gambling. They may take loans, they may borrow money from friends, even they may steal the money from their house. Hiding your gambling and lying to family and friends about extent of your involvement with gambling. This is just like substance dependence. The dynamics is similar that of the substance dependence. Preoccupation with gambling, thinking about past wins and loss, planning your next move and coming up with ways to continue the gambling. So okay, they cannot come out. They cannot come out from this vicious cycle of gambling. Fire setting. Pyromania is pathological fire setting. A fascination with fire, which may include interest, curiosity, and attraction to fire, and fire setting paraphernalia. Watching fires in neighborhood, setting of false alarm, or gaining pleasure from institution, equipment, and personnel with fire. Spending time at a local fire department, setting fires to be affiliated with that fire department, or becoming a firefighter. Experiencing pleasure, gratification, relief when starting a fire, witnessing the effect, and participating in the aftermath. So this is pathological fire setting behavior, and this will be most of the time of the part of their personality, so become a pathological scene. Pathological stealing is also known as kleptomania, a repeated failure to resist the impulse to steal, stealing items of no value or that one does not need, feeling of relief or pleasure during the theft. So kleptomania is pathological stealing. Someone have found in their neighborhood that the things are going vanished, and frequent loss of things and objects are there in their neighborhood, in the hostel or in the society. So this is pathological stealing. So there is a irresistible urge to have that thing. Despite of having that thing already, the person cannot resist their impulse to have the object. So this is habit and impulse disorder. Trichotillomania. This is also a habit and impulse disorder.
In this, recurrent pulling out of one's hair resulting in noticeable hair loss. They used to pluck their hair repeatedly. An increased sense of tension immediately prior to pulling out the hair and when attempting to resist the behavior. They cannot resist it, and kind of anxiety they have. Pleasure, gratification, or relief when pulling out the hair. They feel pleasure, gratification, relief. The disturbance is not better accounted for by another mental disorder or is not due to general medical conditions such as alopecia areata, tinea capitis, traction alopecia, or telogen effluvium. So these are biological conditions, and in trichotillomania, the person himself used to pluck their hair. The disturbance causes clinically significant distress or impairment in social, occupational, or other important areas of functioning. Now, in the last, thank you. So, the lecture is covered for sign and symptom in psychiatry, and the sign and symptoms were covered according to the classificatory system of International Classification of Diseases version 10. So, thank you. Good afternoon, everyone. So, let's learn a little bit about etiology of psychiatric illness, that is the biopsychosocial factors. So, I'm Dr. Swaleha Mujawar. I'm the assistant professor at Subharti Medical College, and whenever we are going to discuss any lecture, first let us look at the outline कि वो हम क्या क्या पढ़ना चाहते हैं. तो एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, वेरियस बायोसाइकोसोशल फैक्टर्स देखेंगे विच कैन प्रीडिस्पोज, प्रेसिपिटेट और परपेचुएट द मेंटल इलनेस. ठीक है, एंड लाइक द नेम सजेस्ट बायोसाइकोसोशल, तो बायो में बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स. ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट लुक एट द इंट्रोडक्शन. So psychiatry is a branch of medicine that deals with the diagnosis, treatment and prevention of mental illness. So this is the definition. Many factors are responsible for causation of mental illness. These factors may predispose an individual to mental illness, precipitate or perpetuate. ये 3 P's होते हैं जब भी हम कोई पेशेंट से बात करते हैं या पेशेंट की इटियोलॉजी समझना चाहते हैं, तो यूजुअली एक कोई फैक्टर नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. तो मल्टी फैक्टोरियल इटियोलॉजी होती है. एंड प्रीडिस्पोज का क्या मतलब है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रीडिस्पोज? that it is not directly causing the illness. ठीक है, जैसे आपको फीवर अगर हो रहा है, तो फीवर क्यों हो रहा है? इन्फेक्शन की वजह से. लेकिन आपकी अगर इम्यूनिटी कम है, आप खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक से सो नहीं रहे, इम्यूनिटी कम है, तो फीवर के लिए या इन्फेक्शन के लिए यू आर प्री डिस्पोज्ड. तो डायरेक्टली वो कॉज नहीं करना है, लेकिन डेफिनेटली कॉजेशन में कहीं ना कहीं उसका पार्ट तो है. तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, especially if you want to treat it properly, then you need to also look at the predisposing, क्योंकि हम पेशेंट को पूरी तरह से ठीक करना चाहते हैं. सिर्फ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स अगर हम देखेंगे तो सिर्फ आधा आधा ठीक होगा, उसको बार बार मेंटल इलनेसेस होने लगेगी. तो इसीलिए प्री डिस्पोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्री डिस्पोजिंग यानी वो इलनेस स्टार्ट होने से पहले क्या क्या हुआ. जैसे उसको अप्रैल में इलनेस स्टार्ट हुई, तो जनवरी से लेके अभी तक क्या क्या स्ट्रेस है, क्या हुआ. Just a second, huh? How do I copy? तो प्रीडिस्पोजिंग में क्या क्या आ सकता है आपके अकॉर्डिंग? आपको क्या लगता है? साइकेट्रिक इलनेसेस का, नॉट फीवर का. पर अगर किसी को साइकेट्रिक इलनेस है तो क्या क्या हो सकता है जो उसको प्रीडिस्पोज करेगा? सोचो.
स्ट्रेस की वजह से हो सकता है ना? तो स्ट्रेस तो है कि ऑन गोइंग उसको जनवरी से कुछ स्ट्रेस चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, एंड उसके बाद उसको हेडेक स्टार्ट हुआ, डिप्रेशन स्टार्ट हुआ, तो दैट इज अ स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है। तो दैट इज वन प्री डिस्पोजिंग, आगे और देखेंगे। प्रेसिपिटेट का तो पता है ना क्या होता है, कि अप्रैल में उसको इलनेस स्टार्ट हुआ, तो इलनेस के जस्ट स्टार्टिंग में क्या था, जैसे अगर वो बोल रहे हैं कि 16 अप्रैल से हो रहा है, तो जस्ट इलनेस के 2-3 दिन पहले कुछ हुआ, एक हफ्ता पहले कुछ हुआ। अगेन अगर हम स्ट्रेस का एग्जाम्पल लेंगे, तो हो सकता है एक हफ्ता पहले मदर के साथ झगड़ा हो गया होगा पेशेंट का, स्ट्रेस उसको चल ही रहा है फैमिली का काफी टाइम से, पर मम्मी ने डांट दिया या पापा ने डांट दिया, तो वो जो डांटना है वो प्रेसिपिटेटिंग है, क्योंकि इलनेस स्टार्ट होने के जस्ट पहले है, ठीक है। तो आप टाइमलाइन भी अगर देखेंगे तो बहुत पहले से अगर चल रहा है तो प्री डिस्पोजिंग है, जस्ट बिफोर द इलनेस जो हो रहा है वो प्रेसिपिटेटिंग है। परपेचुएटिंग फैक्टर क्या हो सकता है, ठीक है, इसी का एग्जाम्पल लेते हैं कि पेशेंट को अगर अप्रैल में डिप्रेशन हो रहा है, तो उसके फैमिली प्रॉब्लम्स जनवरी से चल रहे थे, डिप्रेशन हुआ, हमने ट्रीटमेंट भी दे दिया, पर फैमिली प्रॉब्लम्स चल ही रहे हैं, मदर के साथ भी उसके झगड़े चल रहे हैं, फादर के साथ, या जो भी फैमिली इश्यूज है वो चल ही रहे हैं। तो इवन दो हम एंटी डिप्रेसेंट्स दे रहे हैं, फिर भी उसका डिप्रेशन पूरी तरह से जा नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रिगरिंग या जो भी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है वो ठीक से हो नहीं चल पा रहा है, एंड परपेचुएटिंग यानी जो परपेचुएट कर रहा है, इन्हें आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। तो फैमिली प्रॉब्लम तो चलो प्री डिस्पोजिंग में भी आ गया, अगर उसके साथ साथ अप्रैल में ही उसको पता चले कि वो फेल भी हो गए, अब उसको एक और परपेचुएटिंग फैक्टर है कि पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर से अटेंडेंस लेना पड़ेगा या जो भी है, तो देन अब ये परपेचुएटिंग भी हो जाएगा। तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम प्री डिस्पोजिंग, क्योंकि पहले से नहीं चल रहा था, या फिर उसको लगता है कि अरे फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहा है, अब मैं दारू पीना स्टार्ट कर दूंगा, तो दारू पीने से कुछ सॉल्व तो होने नहीं वाला है, डिप्रेशन और बढ़ जाएगा, और फैमिली वाले और झगड़ा करने लगेंगे कि अरे तुम तो पहले से ही यूजलेस थे, अब तुम दारू भी पीने लग गए, तो वो भी परपेचुएटिंग फैक्टर हो गया, ठीक है। तो ऐसे होते हैं, हर पेशेंट का अलग होता है, ठीक है। सो प्री डिस्पोजिंग, प्रेसिपिटेटिंग, परपेचुएटिंग, दीज आर द 3 P's. Predisposing factors, these factors determine an individual's susceptibility to the mental illness. जैसे फीवर की ससेप्टेबिलिटी बढ़ती है, इम्यूनिटी कम होता है, तो वैसे ही इंडिविजुअल की भी ससेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी अगर कोई प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, दे इंटरैक्ट विद द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स रिजल्टिंग इन मेंटल इलनेस। तो एग्जैक्टली उनसे मेंटल इलनेस प्रेसिपिटेट नहीं होगा, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स के साथ मिलके होगा। तो इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोगों को पता भी नहीं होता है, दैट इज द जेनेटिक मेकअप, ठीक है। तो जीन से आपको पता चलता है कि हाँ आपके आंखों का रंग क्या है, बालों का रंग क्या है, लेकिन जीन से आपकी पर्सनालिटी भी पता चलती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो बचपन से ही शाय होते हैं, बचपन से उनकी पर्सनालिटी काफी शाय होती है, और उनके मम्मी बोलेगी कि हाँ मैं भी शाय थी, मैं भी जब स्कूल में जाती थी मैं भी ऐसी थी, शाय थी। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स पर्सनालिटी इज जेनेटिक, लोगों को लगता नहीं है कि ये जेनेटिक भी हो सकता है, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जीन्स हमारे मदर से और फादर से पास डाउन होते हैं, और वो जेनेटिक मेकअप भी पर्सनालिटी में ये करता है। जैसे आप लोगों ने ये भी देखा होगा, हाँ इसके पापा भी हॉट टेम्पर्ड थे, ये भी हॉट टेम्पर्ड है, तो जेनेटिक है, डेफिनेटली जेनेटिक है, स्टडी से प्रूव हो गया। देन फिजिकल डैमेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिजिकल डैमेज में आता है अगेन बचपन में कोई इन्फेक्शन हो गया, तो ऑलरेडी आपका ब्रेन थोड़ा सा वीक हो गया है, तो ब्रेन ज्यादा स्ट्रेस नहीं सहन कर पाएगा, या पेशेंट को एपिलेप्सी है, एपिलेप्सी ना मिर्गी के जो दौरे होते हैं, तो एपिलेप्सी है, नर्व्स ऑलरेडी पहले से बहुत वीक है,
और फिर उस पे कोई स्ट्रेस आ जाता है तो फिर डिप्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, देन एडवर्स साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, इसमें भी वही है। एक तो घर पे जो मैंने एग्जांपल दिया कि घर पे झगड़े चल रहे हैं, सब एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, दिस इज वन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। बाकी भी हो सकते हैं कि कॉलेज जाके अच्छे से फ्रेंड्स नहीं बना पाए, या वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, वर्क प्लेस पे बहुत पॉलिटिक्स चल रही है, बॉस अच्छा नहीं है, तो दीज आर ऑल साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस, इन्हें बाहर से आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रीडिस्पोजिंग में जेनेटिक, फिजिकल डैमेज, एडवर्स साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस। कोई डाउट है? कोई यहाँ तक समझा? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा सा आप ध्यान लगा के ये करोगे और ऑब्वियसली एग्जाम्पल से समझोगे तो इट इज इजियर। ठीक है, प्रीडिस्पोजिंग के साथ क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट। अब आता है प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। These are the events that occur shortly before the onset. ऐसा कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, पर एक हफ्ता या कुछ दिन पहले होता है, डिप्रेशन स्टार्ट होने से पहले या मेंटल डिसऑर्डर स्टार्ट होने से पहले। इसमें दो में हमने डिवाइड किया है, फिजिकल स्ट्रेस एंड साइकोसोशल स्ट्रेस। तो फिजिकल स्ट्रेस ये हो सकता है किसी का पैर टूट गया, तो अब मैं डांस क्लास नहीं जा पाऊंगी, या मैं लोगों के साथ घूमने नहीं, आपका नहीं एग्जांपल दे रही हूँ पर ऐसे ही बता रही हूँ कि मे बी मैं बाहर घूमने जाने का मेरा प्लान था फ्रेंड्स के साथ, या कोई पिकनिक प्लान्ड थी और मैं जा नहीं पा रही हूँ, या मेरा कोई डांस का इवेंट था जो मैं नहीं कर पाऊंगी, तो दिस इज फिजिकल स्ट्रेस। ठीक है, ये तो एक हो गया, बट बहुत सारे लोगों को बाकी फिजिकल स्ट्रेसेस भी होते हैं, जैसे किसी को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कैंसर डिटेक्ट हो गया, तो एनी फिजिकल इलनेस, या बस बेड रिडन हो गए वो, तो लाइंग ऑन द बेड कुछ करने को नहीं है, तो वो भी काफी स्ट्रेसफुल ही होता है पेशेंट के लिए। साइकोसोशल स्ट्रेसेस में लाइक आई टोल्ड यू, या तो झगड़ा हो गया, मम्मी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, जो हम बहुत कॉमन ओपीडी में देखते हैं, ब्रेकअप हो गया। ठीक है, तो लड़की ने मना कर दिया, उसने प्रपोज कर दिया, मना कर दिया, या पहले से चल रहा था, ब्रेकअप हो गया, और ब्रेकअप के बाद देन वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो दिस इज साइकोसोशल स्ट्रेस। एक और साइकोसोशल स्ट्रेस हो सकता है, वही एग्जाम में फेल हो गए, या जॉब लूज कर दिया, या फैमिली में किसी की डेथ हो गई, तो बहुत सारे स्ट्रेसेस है अगेन, बट इन जनरल अगर आपको दो में डिवाइड करना है तो फिजिकल, साइकोसोशल। तुम सोच के अपने एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो, तुमको बैठ के रटने की भी जरूरत नहीं है। इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, यू कैन राइट इट ऑन योर ओन ऑल्सो। जस्ट अंडरस्टैंड, इमेजिन की व्हाट कैन बी द फिजिकल स्ट्रेसेस, साइकोसोशल स्ट्रेसेस, अपने खुद की लाइफ से ही सोच के भी लिख सकते हो। ठीक है, perpetuating factors. So these are the factors responsible for aggravating or prolonging the disease that already exists. तो डिसीज स्टार्ट हो चुकी है, पेशेंट को डिप्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन डिप्रेशन के बाद जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं डिसीज को, उसको हम परपेचुएटिंग बोलते हैं। ठीक है, प्री डिस्पोजिंग जो पहले हो रहे हैं पर बहुत टाइम पहले, प्रेसिपिटेटिंग जो जस्ट पहले हो रहे हैं, परपेचुएटिंग जो बाद में हो रहे हैं। ठीक है, दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रीवेटिंग या प्रोलॉन्गिंग, यानी वही है, पेशेंट को डिप्रेशन है, ऑलरेडी झगड़े चल रहे हैं, और कोई फैमिली मेंबर ने नया झगड़ा डाल दिया, कुछ और हो गया। ठीक है, तो इनको भी हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल। ठीक है, बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल में वही हुआ अगेन, कोई मेडिकल इलनेस हो गया। फिजियोलॉजिकल में अगर उसको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हार्मोन्स में जो सबसे कॉमन है दैट इज थायराइड। हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स और डिप्रेशन के सिम्टम्स ओवरलैप भी होते हैं, और हाइपोथायराइडिज्म में डिप्रेशन भी बहुत कॉमन है। एंड इन इंडिया थायराइड तो बहुत कॉमन है, स्पेशली फीमेल्स में, डिप्रेशन भी सबसे ज्यादा फीमेल्स में कॉमन है। तो अगर फिजियोलॉजिकल या हार्मोनल चेंजेस देखें, नंबर वन तो थायराइड है, बाकी भी है एडिसन्स डिसीज जिसमें कोर्टिसोल कम हो जाता है, बाकी भी आपके अगर बॉडी में हार्मोनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, स्पेशली फीमेल हार्मोन्स, आप लोगों ने देखा होगा कि
पीरियड्स के टाइम पे भी थोड़े से क्रैंकी मूडी हो जाते हैं फीमेल्स, बिकॉज हॉर्मोन्स फ्लक्चुएट हो रही है। प्रेगनेंसी के टाइम पे, मेनोपॉज के टाइम पे, ये टाइम पे भी डिप्रेशन और मूड चेंजेस बहुत कॉमन है। तो हॉर्मोन्स ऑल्सो प्ले अ रोल मेंटल इलनेसेस में, उनका भी काफी रोल है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सेम, कि वही या तो घर पे प्रॉब्लम है, वर्क पे प्रॉब्लम है, दे आर द सेम एज प्रीवियस। ठीक है, तो अब अगर हम ईटियोलॉजी में जाए, प्रीडिस्पोजिंग, प्रेसिपिटेटिंग और ये छोड़ के, अब प्रॉपर व्हेन वी गो टू द ईटियोलॉजी, तो हमने देखा था बायो साइको सोशल। ठीक है, एक हमने फिजियोलॉजिकल अलग रखा है बिकॉज दैट इज टोटली डिफरेंट। तो बायोलॉजिकल में सबसे पहले हेरिडेटरी। हेरिडेटरी यानी वही जेनेटिक ट्रेट्स जो आपने फैमिली मेंबर्स से लिए हैं। डिस्टर्बेंसेस इन न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, अब इसका हमें कॉज नहीं पता होता है, पर कुछ पेशेंट्स में सेरोटोनिन बढ़ता नहीं है। सेरोटोनिन का नाम सुना है ना? सेरोटोनिन इज योर हैप्पी हार्मोन। अगर ये हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होता है तो डिप्रेशन होने का चांस होता है। अब कुछ पेशेंट्स में हमें नहीं पता होता है, बट फॉर सम अननोन रीजन उनका ब्रेन सेरोटोनिन नहीं बना पा रहा है, उसको एंडोजेनस डिप्रेशन बोल रहे हैं। इन पेशेंट में कोई स्ट्रेस नहीं होता है, कुछ नहीं है, फाइनेंशियली वो खुश है, वर्क में खुश है, फैमिली में खुश है, फिर भी वो डिप्रेस्ड है। ऐसा हो सकता है। तो ये होता है डिस्टर्बेंस इन न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से। फिर आता है ब्रेन डैमेज। तो लाइक मैंने बोला, ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो गया, हेड इंजरी हो गई, एपिलेप्सी हो गया, तो उसकी वजह से ब्रेन का लड़ने का कैपेसिटी कम हो जाता है, तो ससेप्टेबिलिटी फिर से बढ़ जाती है। फिजिकल इलनेसेस अगेन लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, सो ऑल दीज। साइकोलॉजिकल में स्ट्रेन्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल है ना, दो लोगों के बीच का रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं कि रोमांटिक रिलेशनशिप ही है। इंटरपर्सनल मीन्स मदर डॉटर का हो गया, या कजिन्स के साथ भी हो गया, अगर कजिन से मिल रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, बॉस के साथ। सो एनी रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल जिनके साथ वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, इफ इट इज ट्रेन्ड देन इट प्रीडिस्पोजेज, अगेन बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन, ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली, एंड आप लोग जब भी सोचते होंगे साइकेट्रिक इलनेसेस के बारे में, सबसे पहले तो स्ट्रेस आता ही होगा कि इसको स्ट्रेस होगा। पैथोलॉजिकल पर्सनालिटीज, तो ये अगेन देखो, पर्सनालिटी बहुत बड़ा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट इन वेरी शॉर्ट अगर मुझे बताना हो, तो कुछ कुछ बच्चे होते हैं बचपन से ही बुरी आदतें सीखते हैं, और वो बुरी आदतों को एक रीइंफोर्समेंट भी मिलता है कि हाँ, मैं झूठ बोलूंगा तो काम से बच जाऊंगा, और झूठ बोलूंगा तो फिर मुझे ये नहीं करना पड़ेगा। तो वो पर्सनालिटीज ही फिर उनकी एबनॉर्मल डेवलप होती है, और फिर जब वो बड़े होते हैं तो अडल्ट पर्सनालिटीज जो नॉर्मल होनी चाहिए वो उनकी नहीं होती है। तो दैट इज पैथोलॉजिकल। चाइल्डहुड इनसिक्योरिटी, ये भी आपने बहुत सुना होगा कि अगर इसको कोई साइकेट्रिक इलनेस है ना, बचपन में कुछ ट्रॉमा होगा, कुछ चाइल्डहुड में ट्रॉमा होगा जिसकी वजह से है। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, बट इट इज वन ऑफ द कॉजेज। तो ऐसा नहीं है कि किसी को डिप्रेशन है तो उसको चाइल्डहुड ट्रॉमा जरूरी है, बट अगर बचपन में कुछ ट्रॉमा हुआ, जैसे मदर की अर्ली डेथ हो गई, तो उसको मदर से जो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिली, या बचपन से ही फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो चाइल्डहुड इनसिक्योरिटी अगेन अडल्टहुड में जाके साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स कर सकती है, जरूरी नहीं है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस, प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, परपेरियम, ये सब में फीमेल हार्मोन्स जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। तो इसमें मूड चेंजेस हो सकते हैं, विच अगर छोटे मोटे मूड चेंजेस है तो इट्स ओके, बट अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो देन वी नीड टू ट्रीट इट। एंडोक्राइन चेंजेस, लाइक आई टोल्ड यू, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी हो गई। अब आते हैं सोशल पे। सोशल इज समथिंग जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो है ये यूजुअली एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एट द लेवल ऑफ सोशल वर्कर्स, तो ये थोड़ा सा एनवायरनमेंट के लेवल पे या थोड़े ऊंचे लेवल पे होता है। तो सोशल में आता है पॉवर्टी।
अब ऑब्वियसली इफ अ पर्सन इज पुअर तो उसमें डिप्रेशन एक्सपेक्ट हो गई कि वो दिन भर उसको खाना नहीं मिल पा रहा है, उसको रहने की जगह नहीं है, तो पॉवर्टी लीडिंग टू डिप्रेशन इज again expected, but this is something for which as doctors we can't do a lot except for social change. Alcoholism, definitely alcohol की वजह से बहुत problems बढ़ती है. Urbanization, again आपने सुना होगा कि जो villages में रहते हैं वो थोड़ा ज़्यादा खुश रहते हैं. सिटी की लाइफ बहुत अलग होती है, इसमें सोशल सपोर्ट कम होता है, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, टाइम नहीं होता है लोगों के पास. सो अर्बनाइजेशन अगेन, फैमिली इंस्टेबिलिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके लिए हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते. अब एम्प्लॉयमेंट मिल ही नहीं रही है लोगों को, तो दैट इज समथिंग विच द गवर्नमेंट और द सोशल वर्कर्स आर सपोज टू डू. तो ये दिस इज अ वेरी गुड डायग्राम. ये आप अगर थ्योरी के पेपर में बनाओगे तो एग्जामिनर काफी खुश हो जाएगा, क्योंकि डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स होता है तो थोड़ा और अच्छा लगता है. जस्ट राइटिंग राइटिंग हमें भी पढ़ने में बोर होता है. इफ देर इज अ वेरी नाइस डायग्राम तो वी ऑल्सो फील नाइस. तो दिस इज जस्ट अ रिविजन अगेन प्रीवियस स्लाइड का. तो बायोलॉजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये तीनों फैक्टर्स मिलके मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम करते हैं. तो या तो साइकोलॉजिकल और सोशल प्रॉब्लम्स अगर हैं तो भी चांसेस होते हैं मेंटल इलनेस का, स्पेशली ड्यू टू फैमिली रिलेशनशिप्स एंड ट्रॉमा. जेनेटिक में अगर देखा जाए तो बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल मिलके पर्सनालिटी आईक्यू करते हैं, सोशल और बायोलॉजिकल ड्रग इफेक्ट्स. ठीक है, तो ये इन कॉम्बिनेशन ऑफ टू टू है, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का टेम्परामेंट एंड आईक्यू है, सोशल एंड बायोलॉजिकल का ड्रग इफेक्ट है. ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए तो फिजिकल हेल्थ, डिसेबिलिटी, जेनेटिक वल्नरेबिलिटीज, peer pressure, family circumstances, school, social skills, coping skills, self esteem. ठीक है, सो अगर एक पूरे लेक्चर को समराइज करना है तो दिस इज द समरी. इस पे से आप एक ही डायग्राम से बहुत सारी चीजें बता सकते हैं. 3-4 पेजेस जो आप लिख रहे हो वो एक ही इसमें आ जाता है. ठीक है, सो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हमने देखा हेरिडिटरी है, बायोकेमिकल एंड ब्रेन डैमेज. हेरिडिटरी में it is mostly a predisposing factor which is determined by the genes that we inherit directly. Studies have shown that 3/4 of mental defects and 1/3 of psychotic individuals might have the problems ड्यू टू हेरिडिटरी. तो बहुत सारी हमने स्टडीज की है, ट्विन स्टडीज, अडॉप्शन स्टडीज, क्रोमोसोमल एनालिसिस किया है. ये सबसे पता चल रहा है कि जीन्स और जेनेटिक्स जो है डेफिनेटली रोल प्ले करते हैं. साइकोटिक में 1/3 में, और बाकी सब देखा जाए तो 3/4, तो काफी बड़ा पार्ट प्ले करते हैं जीन्स. सो वी कांट इग्नोर दैट. Biochemical factors, that is the neurotransmitters in the brain, they can cause psychological disorders. एंड कुछ कुछ साइकेट्रिक, ऑल तो नहीं, पर जैसे डिप्रेशन और सेरोटोनिन हो गया, साइकोसिस और डोपामीन हो गया, वो हम जो वो लेक्चर्स करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया का, डिप्रेशन का, तब फिर से बताएंगे. बट जस्ट कीप इट इन माइंड कि न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स में. फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में कि mental disorders are more likely to occur at certain critical periods of time. Puberty, menstruation, pregnancy, puerperium, फिर climatic change अगर हो रहा है तो especially depression जो है वो कब ज्यादा होगा सोचो, विंटर्स में. ठीक है, डिप्रेशन जो है विंटर्स में ज्यादा होता है बिकॉज सनलाइट नहीं होती है, बहुत डल डल एनवायरनमेंट होता है, ऐसा लगता है बस सोते ही रहो, कुछ करने का मन नहीं करता है. तो ड्यूरिंग समर्स मेनिया बढ़ता है और ड्यूरिंग विंटर्स डिप्रेशन बढ़ता है. तो क्लाइमेट ऑल्सो डज प्ले अ रोल, सीजन्स इन क्लाइमेट्स, and thus the individual becomes more susceptible to the mental illness during these periods. तो आपको अगर पता है कि पेशेंट को पहले डिप्रेशन हुआ है और पेशेंट आके बोल रही है कि आई एम प्लानिंग अ प्रेगनेंसी,
तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप पेशेंट को समझाएं कि देखो प्रेगनेंसी में हॉर्मोन्स कम ज़्यादा होंगे, तो हो सकता है कि आपका डिप्रेशन फिर से बढ़ जाए। डिप्रेशन का रिस्क है, पर ऐसा नहीं है कि वो प्रेगनेंसी ही ना प्लान करे, बस ये कि वो एक्सपेक्ट करे कि प्रेगनेंसी में डिप्रेशन हो सकता है। एंड प्रेगनेंसी में होता भी है तो हमारे पास बहुत सारे एंटी डिप्रेसेंट्स है जो प्रेगनेंसी सेफ है। वी हैव अ लॉट ऑफ योगा थेरेपीज ऑल्सो, बहुत सारे एक्सरसाइजेज है जो वो कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं प्रेग्नेंट होना है, बट वो टाइम पे डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट करेंगे, और प्रिवेंट करने के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो भी हमने करना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स वही है, स्पेसिफिक पर्सनालिटी पर्सन डेवलप्स अ सर्टेन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। जैसे जो रिजर्व्ड पर्सनालिटी होते हैं, जो बहुत शाय लोग होते हैं, दे आर मोर प्रोन टू डेवलप स्किजोफ्रेनिया। ठीक है, ये वन ऑफ द फैक्टर्स हैं। स्किजोफ्रेनिया के बहुत सारे अलग फैक्टर्स भी हैं, जेनेटिक हो गया, बाकी स्ट्रेसेस हो गए, बट हमने देखा है स्किजोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स हैं, अगर उनसे पूछा जाए, उनके फैमिली मेंबर्स से पूछा जाए कि ये बचपन में कैसा था, बचपन में पर्सनालिटी कैसी थी, तो दे विल ऑलवेज से कि ये थोड़ा सा शाय था, रिजर्व था, लोगों से बात नहीं करता है। टेक्निकल टर्म्स में बोला जाए तो क्लस्टर ए पर्सनालिटी आता है, यू नीड नॉट नो इट इन वेरी डिटेल। और ये भी टेंशन मत लो कि अगर तुम लोग शाय हो तो स्किजोफ्रेनिया हो सकता है। ठीक है, दिस इज अगेन जस्ट अ थ्योरी कि चांसेस बढ़ते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो होगा ही होगा 100%। ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। देन अगेन स्ट्रेन्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, लॉस ऑफ जॉब, ये सब से हो सकता है। चाइल्डहुड इनसिक्योरिटीज, या तो पेरेंट्स का एटीट्यूड ठीक नहीं था, पेरेंटिंग ठीक नहीं थी। सोशल एंड रिक्रिएशनल डेप्रिवेशंस, कि बाहर कुछ जा नहीं सक रहे, कर नहीं सक रहे, आइसोलेटेड है, सिर्फ काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये भी प्री डिस्पोजिंग है। मैरिज प्रॉब्लम्स डेफिनेटली, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, समटाइम्स सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो भी वो चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसकी वजह से वो स्ट्रेस में चले जाए, डिप्रेशन में चले जाए। देन अगेन स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन इन जनरल, इनसे तो होता ही होता है। ठीक है, सोशल हमने फैक्टर्स देखे थे, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनजस्टिस कि उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है, अर्बनाइजेशन, अल्कोहलिज्म, ब्रोकन होम्स, डिवोर्सेस। और बहुत बड़ी फैमिली होती है तो भी प्रॉब्लम होता है, बहुत छोटी फैमिली होती है तो भी प्रॉब्लम होता है। तो ये सब है सोशल फैक्टर्स, तो अब इनका तो ज्यादा कुछ हम कर नहीं सकते हैं, बट दीज आर वन ऑफ द कॉजेज। ओके, क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, तो विद दिस वी एंड द लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थोड़ा बहुत हम रिवाइज करते हैं एंड उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। ठीक है, Okay, very good afternoon. Okay, let me speak. Okay, so today's class is on a very important topic. Schizophrenia is one of them. Other than schizophrenia, we'll also see two other topics which are schizotypal and persistent delusional disorder. My name is Dr. Ritika Singh. I am senior resident in the Department of Psychiatry. So we'll be moving ahead under the following headings. We'll see the introductory part, overall what are we going to cover. Schizophrenia, schizotypal, PDD, and then evaluation and management part is something which we will be seeing in common. Okay, alag alag kisi ka I won't be telling, I'll telling in common ki how do we manage these patients. So let us move forward. So when we talk about psychotic spectrum disorder, there is no one particular illness. The illness is divided into many other subcategories. So the sign and symptoms of these illness may be similar, but there might be difference in the severity of the sign and symptom or the time period of sign and symptoms. तो जो ये illnesses अलग अलग defined हैं, उनकी severity क्या है और किस duration तक वो expand करती हैं और वो कैसे present करती हैं, इनमें थोड़ा बहुत difference होता है. So spectrum of psychotic disorder encompasses a range of mental health conditions which are characterized by thought process disturbances, perceptual disturbances and reality testing. Okay, how the patient is thinking, it is going to get disturbed, what the patient perceive.
Perception is something when you're seeing, you are hearing something which is altered, or if it is not, the stimulus is not there, but still you're seeing or hearing something, that is something which comes under perceptual abnormality. And touch with reality of such patients are also lost. These disorders are organized in a continuum. So at one hand we have schizophrenia, in which the signs and symptoms are quite severe, like hallucination, delusions and cognitive impairment. On the other hand, we have schizotypal and PDD, that is persistent delusional disorder. In here, the sign and symptom may not be as severe as schizophrenia, but certain deficit can be seen in every aspect of life, in interpersonal deficits or social or occupational deficits can be seen in such diseases. Let us move on to schizophrenia. So all of you are aware of the term schizophrenia. Do you know what schizophrenia is? Yes or no? Some of you know, some of you don't know. Okay. So there is no particular defined definition of schizophrenia. Okay. So when you talk about how do we define schizophrenia, it is a chronic illness, severe mental illness which affects your thought, your emotion and your behavior. Overall, how the life functionality is going to be disturbed, what are the clinical symptoms, we'll see in the corresponding slides. Schizophrenia is quite important because it is very much prevalent in the society, very much masked by some stigmas and differentiation. So to identify it in earliest, जितना जल्दी आप इसको पहचानोगे उतना जल्दी इसका treatment शुरू होगा. So better will be the prognosis or outcome for the patient. Okay, we'll see from historical time. In past time, psychiatric illnesses were not considered illnesses itself. They were considered maybe due to some spiritual or higher power are being at play. They might be considered possession by spirit or some divine punishment. So slowly, the time passed on. Emil Kraepelin was the scientist who started thinking that this is a form of disease. He coined the term dementia precox, okay, which when we'll loosely translate it, it means early onset dementia. Dementia is an illness which is mostly seen in elderly people. बूढ़े बुजुर्गों में जिनकी याददाश्त चले जाती है, उनको समझ थोड़ा कम आता है, उनका कॉग्निटिव जो इम्पेयरमेंट है वो आ जाता है, तो दैट इज व्हाट डिमेंशिया इज. बट इफ दीज सिम्टम्स सिमिलर टू द सिम्टम्स लाइक दैट इन डिमेंशिया अगर अर्ली स्टेजेस में आ जाए तो उसने बोला दैट इज डिमेंशिया प्रेकॉक्स विच इज अ साइकाइट्रिक इलनेस. Kraepelin emphasized the chronic and deteriorating course of illness, that how the illness is going to deteriorate the life of the person and how the course is chronic in nature. Then again the term schizophrenia was coined by another scientist whose name is Eugene Bleuler. Okay, if you cannot remember the name of the scientist, it's okay. Okay, it's not well in that कि आपको रट्टा मारना है उसका. So the term schizophrenia in Greek means split mind. Okay, so here he also suggested certain signs and symptoms which are present in schizophrenia patient. More commonly, he inspected the presentation of the patients of schizophrenia. So he gave 4 A's. These A's are affective disturbances, association disturbances, ambivalence and autism. So these are characteristic features which can be seen in patients of schizophrenia. Like affective disturbances means affect of the patient can be inappropriate or it could be very reciprocal. Like अच्छी खुशी की बात है patient रो रहा है, कोई गलत sad news है patient हंस रहा है. Disturbance in association of thoughts, what we are thinking is not interlinked, that they are trailing here and there. Then ambivalence is not able to decide what to do. Suppose you'll ask patient to shake hand, he'll keep his hand forward, then he'll take it back. He doesn't know whether he wants to shake hand or not. This is one such example, not able to decide what to do. Autism is something in which social withdrawal and everything is going to come into play. Okay, then after moving on to after we have seen the historical background, let us see the epidemiology, that what is the prevalence. Approximately 1% of the global population have schizophrenia, whereas in India it is 1.41%, which was, there was a survey which was conducted in National Mental Health Survey. Age of onset, when you will say, it is seen quite early in males. Come and sit.
Late teens or early 20s is the age defined age group for male, whereas in female it is seen in later stages of age, like late 20s or 30s, maybe late 30s. So illness can present. It is also ranked among top 15 leading causes of disability globally by the global burden of diseases. So the disability which is caused in every aspect of patient's life, okay? High unemployment rate because of the illness, social stigma and isolation, it leads to not contact the treating authority, okay? Reduced access to care. Reduced life expectancy by 10 to 20% due to comorbidities or suicidal risk in patient, okay? Now, etiology, see, this is something quite important because all the psychiatric illness which you are going to see, psychiatry का इसके बाद का भी जो lecture होगा या इसमें भी जो और topics हैं, this biopsychosocial model, biological, psychological and social model. This is something which will explain the etiology or causes of all the psychiatric illnesses, okay? So it explains schizophrenia as a result of interaction between biological, psychological and social factors. Okay, there are three factors. So to understand how the disease is developed and how you will treat the patient, you will treat patient biologically also, psychologically also and socially also. So this is very important. Just a diagram to represent that what are biological causes, psychological causes and social causes. We will see in later slides what are they, okay? Okay, biological factors, what do they say? See, you don't have to remember the names of genes if you cannot remember, okay? It says that schizophrenia have genetic predisposition. So, if your family members, immediate family members have schizophrenia, the chances of having schizophrenia in that individual increases in comparison to general population because certain genes are carried on in familial traits which are responsible for causing schizophrenia. Second, it says there are neurochemical dysregulation. There are certain hormones or neurochemicals like dopamine, serotonin, norepinephrine, glutamate and GABA. So amongst them, dopamine, glutamate and GABA dysregulation is mainly responsible for causing schizophrenia sign and symptoms. So this is just a representation if there are monozygotic or identical twin. The percentage of having schizophrenia is 48%. Similarly, if both the parents have schizophrenia, the chances of having schizophrenia in the children is approximately 46%. Similarly, dizygotic or non-identical twins, the chances decreases in comparison, okay? Similarly, one parent is affected, it is less in comparison to when both parents are affected. So you can see strong genetic correlation is seen in this diagram. Again, I told you that dopamine, glutamate and GABA, these are the three hormones whose dysregulation can also cause sign and symptoms of schizophrenia. Again, brain structural and functional abnormality, enlarged ventricle, reduced gray matter, neurodevelopmental factor like in utero exposure to certain infection, hypoxia or malnutrition during pregnancy can also act as a risk factor for developing schizophrenia. In psychological factor, we'll see what is psychological vulnerability of the patient, how the patient handles the stress, that is coping mechanism. If there are any cognitive impairment, if there is any intellectual deficit in the patient, if any associated family conflict or trauma is there or not. If childhood trauma, social factor again quite similar, childhood trauma or abuse, social economic status is very low, poverty, unemployment or any other stressor, substance abuse, especially cannabis is very much related to initiate the sign and symptom of schizophrenia, and stigma and discrimination which we have already read. Now, yahan tak it is clear? Okay. Now, how do you identify the patient have schizophrenia or not? There are 4 types of symptom: positive symptom, negative symptom, cognitive and affective. As the name suggests, positive symptoms are such which are very much visible to you, which are quite exaggerated, like patient might get very angry, abusive, patient might be actively hallucinating. आप देखोगे patient अपने से खूब जोर जोर से बात कर रहा है, लोगों पे शक वहम कर रहा है कि मेरे बारे में ये लोग बात तो नहीं कर रहे, मेरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. नेगेटिव सिम्टम इज समथिंग, नाम सजेस्ट करता है वेरी नेगेटिव, दैट पेशेंट इज सोशली विड्रॉल, वो किसी से बातचीत नहीं करने जा रहा है, ही इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ, ओके, ही इज वेरी पुअर इन कम्युनिकेशन. कॉग्निटिव, कॉग्निशन से रिलेटेड है, पुअर अटेंशन, पुअर मेमोरी, decision making is not good in cognitive symptom. Affective symptom are something related to
You can correlate with negative symptom as well कि effectively patient can be either very irritable or he could be non-responsive, he could be blunt also, all right. So positive symptom hallucinations, delusions or disorganized behavior. Negative symptoms social withdrawal, emotional bending, lack of motivation and drive, apathy, okay. Then cognitive we have, please sit properly, attention deficit, memory deficit, difficulty in concentration, poor problem solving skill. Now affective symptoms, mainly three kind of symptoms you should keep in mind. Diminished emotional expression, incongruent emotion like I told you ki, such as laughing in a sad situation or appearing indifferent in a emotionally challenged situation, and certain mood related, maybe anxiety, irritability, anhedonia. Okay. Other than that, there was a scientist called Kurt Schneider. He gave certain symptoms. These are known as Schneider's first rank symptom. Okay. He divided certain symptoms, and these symptoms are very important to know because when we see the diagnostic criteria of the disease, these symptoms have an important role in them. So he decided into four categories. तीन उसमें से तीन auditory symptoms है. Thought echo, third person voices and running commentary. Thought echo is something hearing one's own thought. अब कानों में आवाजें आ रही है लेकिन वो मेरी सोच जो है वो आवाजों में बदल रही है. Third person voices, hearing two or more voices discussing the patient. दो लोग की आवाजें आ रही है वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं. रनिंग कमेंट्री, जैसे कमेंट्री होती है ना किसी भी मैच में कि मेरे एक्शंस जो भी मैं कर रहा हूँ उसके पीछे कमेंट्री आ रही है किसी की आवाजों में, ठीक है. So this is auditory hallucination. Then there are three thought phenomena: thought insertion, thought withdrawal and thought broadcasting. नाम में ही छुपा हुआ है. Thought insertion, when thoughts are being inserted, मेरे सोच किसी और ने मेरे दिमाग में सोच डाल दी है, मेरी सोच नहीं है. Thought withdrawal, my soch has been taken out from my brain and it has been removed from the patient's mind. Thought broadcasting, that other people can see or hear whatever I am thinking. मेरी सोच सबको पता चल जा रही है. Okay. Next is three made phenomena. Made मतलब करवाया जा रहा है, ठीक है. Made affect, made impulse and made volition. Made affect refers to the experiences of emotions that feel imposed or controlled by an external force. That whatever I am feeling or whatever emotions are there in me, these are not mine. ये कोई बाहर से control कर रहा है. मेरे emotions बाहर से control किए जा रहे हैं. Then is made impulse. If I am getting a sudden urge to harm someone, that is because someone else, some external force is making those impulses in me. Okay. Urges or impulses that feel imposed or controlled by external force. Again made volition. Here volition में आपका action part आ जाता है. That जो भी मैं काम कर रहा हूँ, suppose मैंने हाथ मारा कहीं पे, तो वो मैंने नहीं किया, वो किसी external force ने मुझसे वो action कराया है. ठीक है. They are not acting of their own free will, but rather being compelled to act in a certain way. Then we have seen rest three phenomena in सब चीजों का. Then we have one is delusional perception, giving an abnormal meaning to a normal perception. ठीक है. Suppose normally आपके मैंने एक पेन दिया, आप पेन से लिखने के लिए होता है, अभी वो नॉर्मल पेन रखा हुआ है, बट आपको क्या लगा, नहीं ये पेन नहीं है, ये रिकॉर्डर है, मेरे को रिकॉर्ड किया जा रहा है, मेरी आवाज रिकॉर्ड की जा रही है इसमें. ठीक है. नॉर्मल वो है, एक्सेप्ट करते हो नॉर्मल, लेकिन इसको एक delusional मीनिंग दे दिया है. Somatic passivity is something that external, जो भी bodily sensation है, that is controlled by the external force. Okay. These are clear. Sign and symptom ये patient में आएंगे. Okay. Now these are the diagnostic guidelines of schizophrenia. You need not to remember it. Just for your understanding, you can see. So ICD ने दो ग्रुप में symptoms को divide कर दिया है, group 1 और group 2. So one it says कि one symptom from group 1 or two symptoms of group 2 should be present for at least 1 month अगर हमें schizophrenia को diagnose करना है. All the symptoms are same which we have learned in the past. Thought echo, insertion, withdrawal and broadcasting, delusion of control, influence, passivity, hallucinatory voices, persistent delusion which are culturally inappropriate or impossible. Then persistent hallucination, disorganized thought which can lead to irrelevant speech or neologism, catatonic behavior, negative symptoms and significant change in behavior like loss of interest, aimlessness or social withdrawal. Okay. तो और इन्हीं टाइप पे स्किज़ोफ्रेनिया के सब टाइप भी डिफाइन किए गए हैं ICD-10 में. DSM जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो ऐसा सब टाइप पे इतना नहीं एम्फेसाइज करता जितना ICD-10 करता है.
और इसके बाद का जो ICD आएगा वो भी सब टाइप्स पे इतना एम्फेसाइज नहीं करने वाला. Just for your understanding, paranoid schizophrenia is someone जहाँ पे which is dominated by delusion and hallucination. Hebephrenic में disorganized behavior, poor self care और ये सब चीजें ज्यादा मिलेंगी. Catatonic में आपका psychomotor disturbance है. Catatonia is something जिसमें आपका पेशेंट को फिजिकल सिम्टम्स आपको देखने मिले. इधर द पेशेंट इज वेरी क्वाइट, ही विल नॉट टेक टॉक, ही विल बी नेगेटिव एकदम, ही माइट अटेन सर्टेन बॉडी पोजीशन व्हिच आर अनकंफर्टेबल एंड बट ही विल कीप ऑन मेंटेनिंग दिस. फॉर एग्जांपल पेशेंट ने ऐसे हाथ उठाया है, वो 10 मिनट तक ऐसे ही खड़ा रहेगा किसी उससे, ठीक है, स्टेयर कर रहा है वो ऐसे ही करता रहेगा, ठीक है. एंड कॉन्ट्रेरी टू दिस, इसमें एक्साइटमेंट भी हो सकता है. कभी कभी पेशेंट बहुत एक्साइटेड भी हो जाता है, लोगों को मारने लग गया, कुछ अबनॉर्मल हरकतें करने लग गया. गेटिंग इट? नेक्स्ट इज अनडिफरेंशिएटेड, जिसको किसी पे फिट ही नहीं किया सकता. पोस्ट स्किजोफ्रेनिया डिप्रेशन, सर्टेन डिप्रेसिव सिम्टम्स एसोसिएटेड विद स्किजोफ्रेनिया. रेजिडुअल स्किजोफ्रेनिया इज देयर, इसमें सम नेगेटिव सिम्टम्स आर persistent after the first psychotic event has happened. एंड सिंपल स्किजोफ्रेनिया में ज्यादातर नेगेटिव सिम्टम्स, एमलेसनेस और ये सब जो हमने देखा वही देखने को मिलते हैं, पॉजिटिव सिम्टम ना के बराबर. सिमिलरली DSM-5 ने भी यही गाइडलाइंस दे रखी हैं. ओके, देयर आर सर्टेन प्रोग्नोस्टिक फैक्टर कि कुछ सिम्टम्स, कुछ फैक्टर्स अगर स्किजोफ्रेनिया के पेशेंट में है तो प्रोग्नोसिस अच्छी हो सकती है, आउटकम अच्छा हो सकता है अगर ट्रीटमेंट दे. अगर कुछ सिम्टम्स प्रेजेंट है तो उसकी वजह से आउटकम बुरा भी हो सकता है. जैसे कि पेशेंट का अगर बहुत अर्ली ऑनसेट है, बच्चों में अगर आप बहुत अर्ली ऑनसेट में स्किजोफ्रेनिया अगर 15-16 साल में दिख रहा है तो इसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होता है. नेगेटिव सिम्टम्स हैं, मेल जेंडर है, कोई एसोसिएटेड फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्किजोफ्रेनिया है, पुअर सोशल सपोर्ट है, प्रीमॉर्बिड पर्सनालिटी में पुअर कोपिंग और ये सब है तो नेगेटिव आउटकम होगा. सिमिलरली पॉजिटिव में अक्यूट ऑनसेट है, थोड़ा लेट ऑनसेट है, प्रोमिडेंट मूड सिम्टम्स आर प्रेजेंट, फैमिली हिस्ट्री में बाइपोलर का इलनेस है, पेशेंट का सोशल सपोर्ट अच्छा है और प्रीमॉर्बिड पर्सनालिटी अगर अच्छी है तो दीज आर गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर फॉर द डिजीज. When we're talking about differential diagnosis is something you should be able to differentiate schizophrenia from other diseases which might have similar symptom. जैसे कि बहुत बार मूड डिसऑर्डर, बाइपोलर का नाम आपने सुना होगा, उसमें भी साइकोटिक सिम्टम होते हैं. तो यू शुड अंडरस्टैंड कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मूड डिसऑर्डर एंड स्किजोफ्रेनिया. इन मूड डिसऑर्डर मूड सिम्टम्स ज्यादा होंगे, पेशेंट बहुत ज्यादा मूड एक्साल्टेड होगा या फिर बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होगा. सब्सटेंस इंड्यूस साइकोसिस एसोसिएटेड कोई सब्सटेंस यूज होगा, ठीक है, कोई स्टिमुलेंट ले लिया या कैनबिस ले लिया. सर्टेन पर्सनालिटी डिसऑर्डर आर देयर, सर्टेन ऑब्सेसिव डिसऑर्डर विद पुअर इनसाइट, brief psychotic disorder or organic psychosis. There are certain medical conditions which can also precipitate like psychiatric illness. So you should be able to differentiate schizophrenia from it. Next, we'll move on to schizotypal. Schizophrenia is clear? Okay? ठीक है. So, next is schizotypal disorder. What is schizotypal? It is basically called a personality disorder in which pervasive pattern of social and interpersonal deficit and cognitive distortions are present and along with eccentric behavior. Full-fledged psychosis like schizophrenia won't be there, but certain behavior will be quite odd. You might say कि patient is behaving थोड़ा सा oddly. He might have some, restriction when he goes out in society. He might not have very close friends. उसको बात करने में थोड़ा हिचकिचाहट होगी, वो लोगों से ज़्यादा दोस्ती करना पसंद नहीं करेगा, थोड़ा अलग रहना कोशिश करेगा, ठीक है. It is considered as a part of schizophrenia spectrum disorder but lack full blown psychosis. Again 3 to 5% आपका prevalence है, more common in male. It can also co-occur with mood disorder and substance use. And patient please don't talk. High prevalence among first degree relatives of individual with schizophrenia. If someone has schizophrenia, there are high chances कि schizoid personality disorder उसके first degree relative को हो सकते हैं. Then we are talking about what are the clinical features. Social and interpersonal deficit, discomfort in close relationship, odd belief, magical thinking, okay, which is inconsistent with cultural norm. Unusual perceptual experience including bodily illusions, suspiciousness or paranoid ideation. First row, please don't talk. Odd thinking and speech pattern, inappropriate affect, eccentric behavior or appearance, lack of close friends and confidence, excessive social anxiety that does not diminish with familiarity. Okay, so
what happens कि sometime कुछ लोगों को phobia होता है कि they cannot talk or speak in public, they cannot go in public places, especially when it is not known to them. But gradually when they start to approach these places, the phobia decreases. But in schizoid personality अब बार-बार patient जाएगा वहाँ पे तब भी उसको comfort नहीं आएगा. They won't be comfortable among the classmates itself. They won't be comfortable with their family members also. ठीक है? Just few of the symptoms: bizarre behavior, checking out, this is lack of close friend, excessive social anxiety. Diagnostic criteria, again the clinical features which we have learned, that is the diagnostic criteria. Okay, pervasive pattern of eccentric behavior and anomalies. Which are these? These can be inappropriate or constricted affect, odd eccentric behavior and appearance, poor rapport with others, odd belief, magical thinking, suspiciousness and paranoid ideation, unusual perceptual experience including somatosensory disturbances. Speech may be somehow very elaborated or vague, may not talk but make sense. Okay, these symptoms must be present for at least 2 years to make a diagnosis of schizoid personality, and they should not be attributed to any medical use condition or substance use. Again, in differential diagnosis, you should be able to differentiate schizophrenia to schizotypal from schizophrenia and schizoid personality, and avoidant personality and autism spectrum disorder. ऑटिज्म का पेशेंट भी सोशल जगह पे नहीं कंफर्टेबल होता है, उसको भी सोशल एंजाइटी होती है, बट देयर द कम्युनिकेशन एंड रिपीटेटिव बिहेवियर इज अ प्रॉब्लम. ही वोंट बी एबल टू कम्युनिकेट एनीवेयर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का पेशेंट. एंड देयर इज अनदर थिंग व्हिच इज कॉल्ड रिपीटेटिव बिहेवियर. एक चीज को बार बार अगर टच कर रहा है ऐसे ऐसे करने की आदत होगी उसको, स्पेशली सेंसरी स्टिमुलेशन के लिए पेशेंट इज रिपीटेडली मूविंग हिज हैंड और फिंगर, फ्लैप करता रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट यहां तक क्लियर हो गया. स्किजोटिपल, क्या डिफरेंस है स्किजोफ्रेनिया और स्किजोटिपल में? हु कैन टेल मी? बोलो बोलो, कुछ डिफरेंस है या नहीं है? क्या है? तो फुल ब्लोन साइकोसिस इज सीन इन स्किजोफ्रेनिया, जो ज्यादा सिवियर साइकोसिस है. ठीक है, जो थोड़ा सा ऑड एक्सेंट्रिक बिहेवियर मिलेगा, दैट इज फॉर स्किजोटिपल, जैसे आपने बोला. ठीक है, कुछ ऑड होगा बट नॉट टू द लेवल ऑफ स्किजोफ्रेनिया. ठीक है, पीडीडी दैट इज पर्सिस्टेंट डिल्यूजनल डिसऑर्डर, नाम में ही छुपा हुआ अगेन डिल्यूजन है जो कि पर्सिस्टेंट है. ठीक है, दैट डिल्यूजन इज कॉन्स्टेंटली गोइंग ऑन. So it is also known as paranoid psychosis. It is a chronic psychiatric condition characterized by presence of persistent non-bizarre delusions without other significant psychotic symptom. Delusion के अलावा जो और psychotic symptoms हमने इससे पहले clinical features देखे हैं वो इतने prevalent नहीं होते हैं या फिर होंगे ही नहीं. किसी किसी केसेस में सिर्फ डिल्यूजन होगा, कुछ और एल्यूसिनेशन, कुछ बिहेवियर एबनॉर्मलिटी, कुछ फंक्शनल एबनॉर्मलिटी होगी ही नहीं. Okay, so non-bizarre delusion, and non-bizarre means कि this delusion can be correlated with his cultural or his occupational or social significance can be given to the delusion, कि उसके होने के chances हैं. आप एक plausible meaning दे सकते हो delusion को. Delusions are typically of a single theme or a set of theme. Now because of these delusion functioning impair हो सकती है. For example, a person has just a delusion कि उसके workplace में so and so, suppose his boss is planning something against that person. अभी वो जॉब पे जा तो रहा है बट उसका delusion fixed है कि बॉस कुछ गलत करने वाला है, तो वो काम ही नहीं कर पाएगा, अपने जो 100% पोटेंशियल है वो दे ही नहीं पाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट वो घर आ रहा है बिल्कुल नॉर्मल है, वो अपने दोस्तों से मिल रहा है बिल्कुल नॉर्मल है, किसी और के लिए वो delusion ही नहीं है, बस अपनी वर्क प्लेस पे है, तो his occupational life is going to get disturbed. ठीक है, समझ में आया? Epidemiology अगर देखें तो again prevalence is quite low, more common in individual over 40 years and old, slightly more common in women, and it is chronic case and insidious onset. Again biopsychosocial factors you should remember, genetic history होगी, patient family history of psychiatric illness हो सकता है, possible abnormalities in dopamine and serotonin system, psychological factor like social isolation, trauma, cognitive distortion. Stressful life events, especially in adulthood, can trigger disorder. Clinical feature: non-bizarre persistent delusion. They are fixed and impervious to reasoning. Otherwise, normal functioning in other areas of life is there.
नो मेजर कॉग्निटिव और मूड डिस्टर्बेंसेस. मूड डिस्टर्बेंस अगर होगा भी तो इट शुड बी एसोसिएटेड विद डिल्यूजन. डिल्यूजन की वजह से पेशेंट may get irritated, may get depressed. Okay, social withdrawal and irritability because of delusion. टाइप्स ऑफ डिल्यूजन क्या क्या हो सकते हैं persistent delusional disorder में? Persecutory delusion, belief of being targeted by other. Grandiose delusion, having the sense of self-importance or abilities. Erotomanic delusion, belief that someone of higher authority is in love with that individual. Somatic delusion, false belief regarding the body, like my body is being infested by some parasite, or some olfactory foul smell is there, so olfactory delusions can be there. Delusion of jealousy, especially pathological or morbid jealousy we call it, believe that partner is unfaithful. इन मिक्स टाइप इज समथिंग जिसमें दोनों के जो ऊपर के जो सब टाइप है उसमें एक से ज्यादा डिल्यूजन भी हो सकते हैं, ठीक है. एंड अनस्पेसिफाइड इज समथिंग व्हिच कैन नॉट बी सब टाइप्ड इनटू अदर. दिस इन डिल्यूजंस के अलावा कुछ और है तो दैट इज अनस्पेसिफाइड. अगेन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, दिस डिल्यूजन मस्ट persist for 3 months, ठीक है. एंड hallucinations are either absent or not prominent. एंड इट शुड नॉट बी स्किज़ोफ्रेनिया से नहीं मिलना चाहिए इसके जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, ठीक है. एंड दे शुड नॉट बी ड्यू टू एनी अदर मेडिकल कंडीशंस. ओके, again in differential diagnosis you should be able to differentiate persistent delusional disorder especially from paranoid personality disorder. some person की personality ही paranoid के paranoia के level पे होती है, ठीक है. उसमें paranoia हर एक डायरेक्शन में होगा, सिर्फ एक जगह पे paranoia नहीं होगा. mood disorder, affective disorder, dementia with neurocognitive disorder, cultural or religious belief. Certain cultural and religious belief are prevalent everywhere, ठीक है. उसको delusion से confuse नहीं करना है, ठीक है. Now this is what we have learned, the clinical features and how the patient present of schizophrenia, schizotypal and PDD. ठीक है. Evaluation we are seeing, हर एक patient का psychiatric evaluation कैसा होता है. हिस्ट्री से शुरू करेंगे. आप लोग भी जब पेशेंट कब अगर फिजियोथेरेपी की बात करें, पेशेंट आता है तो आप पूछते हो ना कब से हो रहा है, क्या हो रहा है, वैसे ही चलना है. डिटेल अबाउट द नेचर, ऑनसेट, ड्यूरेशन, सिवियरिटी ऑफ सिम्टम. तो तीनों की अलग अलग थोड़ा कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आप मिलेंगे अगर आप इनके चीफ कंप्लेंट्स में जाएंगे, उसको ढंग से इलेबोरेट करेंगे कि कब शुरू हुआ था, कितने समय से है, क्या क्या एरियाज ऑफ लाइफ अफेक्टेड है. देन एसोसिएटेड बिहेवियरल चेंजेस तो नहीं है, कोई एसोसिएटेड मूड सिम्टम तो नहीं है, सब्सटेंस यूज तो नहीं है, कोई पास हिस्ट्री ऑफ सिमिलर इलनेस तो नहीं है, या पास हिस्ट्री ऑफ कोई और साइकाइट्रिक इलनेस तो नहीं है, कोई मेडिकल या सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है दैट कैन कंट्रीब्यूट टू द सिम्टम. कोई हेड इंजरी हो गई उसकी वजह से सिम्टम आ गया. सो यू शुड ऑल बी अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स. फैमिली हिस्ट्री ऑफ साइकाइट्रिक इलनेस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वी सॉ इन बायोलॉजिकल फैक्टर्स की जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन होता है. पर्सनल हिस्ट्री कैसी है, प्रीमॉर्बिड पर्सनालिटी कैसी थी, कोपिंग मैकेनिज्म कैसा था पेशेंट का, सोशियो ऑक्यूपेशनल रिलेवेंस कितना है पेशेंट का, बेटर वेदर ही सेफ सिक्योर्ड और नॉट. एंड अगेन केयर गिवर बर्डन एंड सपोर्ट सिस्टम. Then again in mental status examination, MSE is the diagnostic tool for psychiatric problems. Okay, how आप पेशेंट से बात करके उसके थॉट में क्या abnormality है, उसके परसेप्शन में क्या abnormality है, आपको मूड कैसा बता रहा है पेशेंट, आपको इफेक्ट कैसा लग रहा है, वो बोल कैसा रहा है स्पीच में, तो ये सब abnormality आपको MSE में मिलेंगी. Okay, so key areas to access: appearance and behavior, disheveled appearance, inappropriate dress, catatonia or agitation. Eye to eye contact, patient might not look into your eye or talk, patient might always have fleeting eye contact. Psychomotor activity might be very much, patient is agitated so he might not sit in one place, he might keep pacing around. Okay, speech can be disorganized. Like I said, if thought is not clear, what we think we speak, right? So if our thoughts are not clear, then our speech will also be not clear. We may want to speak something but will convey something else. Okay, it might be incoherent. Affect, as we said, ki affective symptoms are also there in schizophrenia. Affect can be irritable, it could be blunt. Patient, you cannot figure out whether the patient is happy or sad, or it could be inappropriate. Again, thought process mein there can be derailment, there can be delusions. Okay, like we see ki delusion is one of the key characteristic feature of schizophrenia also and PDD also. Hallucination in perception part, hallucination, whether their patient को आवाजें सुनाई दे रही है कि नहीं सुनाई दे रही है. Sometimes visual hallucination can also be there. Then higher mental function में cognitive distortion, we have seen cognitive functions are also distorted in psychotic spectrum disorder.
then insight and judgment, which is most of the time impaired in patient. All right. I think your history taking class has been taken, no? Psychology history taking and examination class has been taken. So you might have read these all thing in detailed over there. Okay, how do we evaluate the patient? All right. Certain diagnostic assessment tools we have. These are the scales like positive and negative syndrome scale. We apply this scale to see what are these positive symptoms, what are the negative symptoms, and there are certain rating given to these scales. If we rate these scales, उसके according we can find out the severity of the illness. Suppose 20 marks का total scale है, 18 या उससे ऊपर आ रहा तो we'll say very severe, 15 to 17 आ रहा तो we'll say severe, mild, moderate, ऐसे करके we'll move on. Okay, so these are the scales. Lab investigation, of course, routine blood work, okay, to find out if any other organic cause is there or not there. Toxicology screen to find substance use. CT scan, MRI to rule out any neurological deficit is there. EEG to rule out any seizure activity is there or not. Okay. This is how we evaluate the patient. Now, when we come about treatment proper, so antipsychotic medications, everybody might have heard haloperidol or olanzapine. These are kind of medicine. They are also divided into second generation and first generation. So we commonly use second generation antipsychotic like olanzapine, risperidone, aripiprazole, quetiapine or clozapine when patient is not responding to the above drugs, or first generation like haloperidol or chlorpromazine. What you should remember is that there are certain side effects. बहुत बार patient won't take medication, they will say we have side effects because of the medicines. So certain side effects of the medication, like for first generation medication, so side effects would be extrapyramidal side effect, like patient might have rigidity, tremors, face में affective blunting can be seen. Whereas in second generation, more or less you will see metabolic side effect like weight gain, dyslipidemia. But when you will give it in a prescribed dose and you will also suggest patient to follow a healthy lifestyle, or there are certain drugs which can curb down extrapyramidal side effects also, which can be added. So these symptoms can be taken control of. But see, you'll always have to manage the risk benefit ratio. Not taking medication is going to be bringing far more complication than taking medications. Okay. Then there are certain adjunct medicines like benzodiazepine, mood stabilizer and antidepressant. When we talk about psychosocial intervention, we have cognitive behavior therapy, family therapy to make family member understand the illness, because at the end of the day, they are the caretaker. They have to stay with the patient. Insight oriented therapy, most of the people don't have any insight regarding the illness. So they may be helpful in patient develops partial insight. And very important, I told you about social model, social skill training, vocational training. Rehabilitation centers can play a role in making patient face the society in a step-by-step process. Okay, supporting employment and vocational training, assertive community training, treatment and rehabilitation program. Now, yahan tak to we have seen the main management, but what is the role of physiotherapy in schizophrenia or other psychiatric illness? So, as I told you that second generation antipsychotic might have certain weight gain ka side effect. So, crucial role in managing the overall physical activity of the patient. Okay, with addressing motor deficit, there are cognitive deficit as well as motor deficit in patient. So, to making the patient mobile again, making the patient be physically little more active can also help patient lead a very fruitful life. Okay, addressing motor deficit, poor posture, reduced fitness by inactivity or medication side effect. So these all are going to reduce the risk of metabolic syndrome. Again, patient might come in grouped in physiotherapy. कि suppose हमने अपने ward से 4-5 patient को group में भेज दिया. So this is also can act as a group activity for them. In group में you can teach them these are the exercises you can do. Even at home you can tell कि when you go home these are the exercises which you can do at your home. Relaxation technique, breathing exercises are also important in treating the patient of schizophrenia. Group physical activity session fosters social interaction, reducing social isolation and enhancing overall quality of life. So with this I'll conclude. Certain thing you should keep in mind. These all are covered under the psychotic spectrum diseases, schizophrenia, schizotypal and PDD. The only difference is how they present. Some are quite severe,
some are less severe, some are severe in only one symptom criteria. Timeline is different for every disease, and disorder may severely affect emotion, behavior, thought, perception. How you lead your life is, treatment is going to help you understand how you lead your life. Okay, early diagnosis and comprehensive treatment including pharmacological, psychosocial and supportive intervention can bring about a good change in the life of patients of schizophrenia and other psychotic spectrum disorder. All right, thank you. Very good afternoon. I'm Dr. Ritika Singh, Senior Resident in the Department of Psychiatry. So the topic for today's discussion is other psychotic disorders. As you all know, last time we had covered schizophrenia, schizotypal and persistent delusional disorder. So moving forward in the same categories, under the same certain symptoms are going to be the similar, we'll have other psychotic disorder, which will include ATPD, which means acute and transient psychotic disorder, induced delusional disorder, schizoaffective and postpartum psychosis. So we have 4 topics today under the one subheading. So we'll be covering these topics under the following headings. Moving on to the introduction part. So as you all know, last time also I have told you that psychosis is a term in which there are certain characteristic features, like there would be loss of contact with reality, patient would have delusions, will have hallucination, his behavior will be disorganized, he will be agitated. So a mental state characterized by loss of contact with reality, which leads to delusion, hallucination, disorganized thinking and impaired functioning. Overall functioning because of all these problems is going to be deteriorated. So psychosis is something which covers, it is a broad term which covers all of this. So apart from schizophrenia, there are other psychotic disorder which are characterized by sometime temporary or sometime persistent loss of contact with reality. So certain examples of other psychotic disorders include acute and transient psychotic disorder, induced delusional disorder, schizoaffective and postpartum psychosis. These are the topics which we will be covering one by one today. So they differ from schizophrenia. Last time also we have seen that schizotypal and persistent delusional disorder differ in terms of duration, severity and underlying causes. So are these diagnoses. Early identification and interventions are crucial to prevent complications and to ensure a better outcome. So the prognosis of the disease is not worsen if we'll diagnose it early and we'll treat it early. Starting with ATPD, acute and transient. So it is going to be acute, very short, and transient for a brief period of time. नाम से समझ में आ रहा है acute and transient psychotic disorder. So it is a psychotic disorder which is characterized by an acute onset of psychotic symptoms. Psychotic symptom includes delusion, hallucination, disorganized behavior, which resolve within weeks or few months. And more often than not, it is associated with certain acute stressor. Maybe certain life-changing event, maybe certain financial stressor, some emotional stressor can be associated with the same. So sudden onset, brief duration, less than 1 month, and most of the cases recovery occur almost all. So when we talk about epidemiology, the global prevalence vary by region to region. Okay, it is seen that ATPD is comparatively higher in developing countries in comparison to developed country. More common in women than men, but the data is not very clear regarding this. Typically seen in young adults 20 to 40 years and higher reported in Asia, Africa as compared to Western countries, which we have already seen. So the factors or the causes, like last time we discussed biopsychosocial model of disease. This time also we'll see there are certain biological factors like certain genetic predisposition, neurochemical dysregulation, especially dopamine is one chemical, and then psychological acute stressor. In this case, acute stressor is very important. Socio-cultural pressure and substance use and sleep deprivation can be also associated with the initiation of this disease. So clinical features, the symptom appears acutely. यहाँ पे acute को define किया है within 2 weeks of time.
So again, we have seen the certain clinical features like delusions, which can often be persecutory or grandiose in nature. Persecutory last time also I told you, and अभी आप लोगों ने भी बताया था कि शक वहम करने लगता है, ठीक है, कि जो लोग नहीं, जो सच नहीं है उसको भी बोलता है कि मेरे खिलाफ लोग ऐसी चीजें बोल रहे हैं, ठीक है. हेलुसिनेशन, यू टोल्ड में कि आवाजें सुनाई देती हैं जो आसपास नहीं होती है, उनकी आवाजें सुनाई दे रही है, या कोई दिखाई दे रहा है जो और लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है. Disorganized speech and behavior, emotional instability, can be very agitated, can be very quiet, and can be very aggressive as well, physically aggressive as well. Okay, there could be a stage of confusion and disorientation in this condition. No, we'll discuss about it afterwards. Okay, I'll tell you. Duration, symptom typically last a few days to week but resolves within 1 month. So ICD-10 ने कुछ diagnostic criteria दिए हुए हैं. Whatever we have seen in clinical features up till now, these are going to be the diagnostic criteria as ICD-10 के भी, but language थोड़ी सी बनाई हुई है. So development of psychotic symptom within 2 weeks या less. तो 14 days या उससे कम में अगर आ रहे psychotic symptom की history है, तो ATPD के अंदर we'll classify it. Then typical syndrome of psychotic features, which we have already discussed, कि आपका delusion, hallucination, disorganized behavior. Come sit. ठीक है. Then presence of acute stressor, resolves within 1 to 3 months with complete remission expected. Okay, and it should be, अगर define कर रहे हो तो you should keep in mind कि no evidence of schizophrenia और other कोई affective disorder है, उसके symptoms तो नहीं है. कोई deliberate substance induced या organic कोई head injury या इसकी वजह से तो नहीं आया, then we will classify it into another form of disease. Okay, तो मोटा मोटा ATPD में ये याद रखना है, जल्दी शुरू होता है, थोड़े समय के लिए रहता है, एक स्ट्रेसर साथ में है, सिम्टम्स मोर और लेस जैसे आपको स्किज़ोफ्रेनिया में साइकोटिक सिम्टम्स मिलते हैं वो मिलेंगे, और बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाता है ट्रीटमेंट अगर सही टाइम पे मिलेगा तो. ठीक है. उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में स्किज़ोफ्रेनिया, उसमें डिफरेंस क्या होगा कि लॉन्गर ड्यूरेशन. ठीक है, ये एक्यूट और ट्रांजिएंट है, स्किज़ोफ्रेनिया इज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एंड क्रॉनिक कोर्स. बाइपोलर डिसऑर्डर में यू विल हैव एसोसिएटेड मूड सिम्टम्स. सब्सटेंस इंड्यूस में क्लियर लिंक टू सब्सटेंस, नो अदर कोई और सिम्टम नहीं होगा, लेकिन सब्सटेंस लेना इज द की फीचर ओवर हियर. एंड डेलीरियम इज मोर और लेस एसोसिएटेड विद सम मेडिकल कंडीशन एंड देयर विल बी फ्लक्चुएटिंग कॉन्शियसनेस. ठीक है. So how are you going to assess? So last time आपको assessment, history taking और evaluation part बताया था. तो here I'll tell you in brief कि इसमें positive points क्या देखने कि onset short duration में हुआ है, duration and progression of symptoms sudden versus gradual तो नहीं है, associated precipitating factors such as stress, trauma or substance use. Okay. Then you have to see कोई personal या family history of psychiatric illness तो नहीं है. You have to identify any stressor, their coping abilities and social support. And in MSc, especially you will see the thought process, delusion अगर तो नहीं है, perception, mood and insight. Okay. Rule out organic cause. कोई head injury का history तो नहीं है, आपको history portion में आएगा. You will have to rule out cognitive functions कैसे चल रहे हैं. All right. डायग्नोस्टिक के लिए आपको लैब इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ अगर एसोसिएटेड ईईजी कराने की जरूरत है, सीटी एमआरआई कराने की जरूरत है, तो यू कैन डू इट. बिकॉज अगर एक्यूटली कोई साइकोटिक सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर रहा है तो बहुत बार वो कोई ऑर्गेनिक या मेडिकल कॉज रिलेटेड भी हो सकता है, जिसमें साइकोटिक सिम्टम तो होंगे बट वो डायग्नोसिस मेडिसिन के अंडर आएगी रेदर देन साइकाइट्री के. तो ऐसे में अगर हम गलत मैनेज करेंगे ना तो पेशेंट की लाइफ थ्रेटन हो सकती है. ऑलराइट. Then scales, I have last time also told you कि BPRS है, आपके PAN scale है, तो ये सब आप देख लगाएंगे. मैनेजमेंट पार्ट में एंटीसाइकोटिक्स आप सेकेंड जनरेशन लाइक ओलैंजापीन, रिस्पेरिडोन और फर्स्ट जनरेशन हेलोपेरिडोल दे सकते हैं. बेंजोडाइजेपिन स्पेशली क्लोनाजपाम या लोराज़ेपाम, बोथ इंजेक्टेबल और ओरल इन इनिशियल फेज टू रिड्यूस द एजिटेशन ऑफ द पेशेंट एंड टू हेल्प पेशेंट स्लीप. If a patient is presenting harm to himself or his surroundings, then hospitalization should be considered. Certain cases, acute cases of psychosis requires hospitalization. So in that case, patient के attendant लेके आते हैं patient को, and at that time, a quick and thoughtful management of patient is necessary.
monitoring follow-up, regular assessment of symptom resolution, medication adherence and potential relapse prevention. So if you once know कि certain triggering factor हैं जिसकी वजह से इस बार ये disease आई है, तो you can address them and you can tell them how to cope up with them and how to maintain distance from certain stressing factor. Strong family and peer support is also helpful. Psychoeducating the patient regarding the illness, need of medications, need to continue medication for how long period of time, repeated follow-up, and staying away from substances is something you'll have to tell patient when you're psychoeducating the patient. Relapse prevention, identify and manage triggers, encourage stress management strategies, and provide psychotherapy if needed. So prognostic factors, if we'll see, it is seen in comparison to male, female gender have better chances of resolving the disease in a better way. Acute onset and presence of an identifiable stressor. अगर आपको पता है कि stressor की वजह से ही disease आई है, rather than बिना किसी stressor के, so there are chances कि there will be a good outcome of the disease. Okay. There are chances that this disease in future may be converted into a chronic course. It can convert into schizophrenia or chronic psychotic disease. All right. So this is about ATPD. Next, we'll move on to induced delusional disorder. So you, as a name suggests, it is induced. ये डाला गया है, ठीक है? Delusion है नहीं, डाला गया है. So in the picture also you can see there are two individuals. So induced delusional disorder is also known as Fourier DX. Okay? क्या बोलते हैं? Fourier DX. It is a rare psychiatric condition in which a delusion is transmitted from one person to another. ठीक है? So what happened? There is one primary person and another secondary person. So primary person is the one who has the psychiatric illness. He might have delusional disorder, he might have schizophrenia, but due to the close relationship with the secondary person, that person transfers his delusion and his thoughts to another person. ठीक है? So the secondary person might not have any disease, but because of how closely he is attached to the first primary person, that delusion might get transferred or induced into that secondary person. समझ में आया क्या बोलना चाह रही हूँ? ठीक है? So it is under पहले के जमाने में इसको shared psychotic disorder या communicated insanity भी बोलते थे. Communicated एक से दूसरे को communicate हो रहा है और shared because share कर रहे हैं दो लोग अपना delusion. All right. Shared delusional belief occurs in close emotional relationships, example family and partners. Secondary individual adopts the delusions of primary one. It is very rare. Shared psychotic delusion, shared delusional disorder is quite rare. Okay. Some cult might have some religious practices or some other form of practices which may or may not include this kind of delusion. Okay. Certain risk factors are associated with induced delusional disorder, like social isolation. So both primary and secondary person are in a close relationship and they are socially isolated from outside world. They have very strong codependent on each other and pre-existing psychiatric illness is present in the primary person. So psychosocial factors include dependence on the dominant person, emotional closeness and suggestibility. Suppose there are two sisters living in the same house. Elder sister has psychiatric illness. Okay, the younger sister doesn't have psychiatric illness, but they do not go outside. They just talk to each other. They have no idea what is going on in the outside world. Maybe their family relationship or dynamic is not good. उनके parents की आपस में नहीं बनती, घर में लड़ाइयाँ चलती है. Father might be substance use करते हों. आसपास का माहौल पता ही नहीं है. घर के बाहर भी अगर जाएंगी तो साथ में ही जाएंगी. तो ऐसे में क्या होता है that secondary person has no idea of outside world. उसका कोई contact ही नहीं है. उसके लिए contact person सच्चाई सब primary person है. So if primary person is saying कि वो इंसान गलत है तो she believes it. कोई आप उसके पास proof नहीं है कि वो गलत है. अगर आप proof present भी करोगे तो वो मानेगा नहीं secondary person भी उसको. All right. So emotional closeness and suggestibility. So biological factors like genetic predisposition to psychiatric illness. Social factors, isolation from outside world, environmental stressor, family conflict, cultural beliefs. Certain cultural beliefs भी होती है जो share की जाती है, but कभी-कभी वो cultural belief delusional level पे भी पहुंच जाती है. So that could be one of the causative factor. So when we talk about clinical features, we have primary versus secondary. Okay. So primary is inducer
who has a genuine psychotic disorder, example schizophrenia. Secondary, adopts a delusional belief but may not have an underlying disorder. Development of shared delusion occurs gradually over time. ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, often unnoticed by the family members. Other member of family को starting में पता नहीं चलेगा, starting में लगेगा चलो उसकी जैसी बात कर रही है, उसके जैसे बोल रही है, but eventually वो उसके जैसा the secondary person will adopt all the characteristics and traits of primary person. All right. So as you can see, it is shared among the two individuals. So what you will see the behavioral changes, the affected individuals, both primary and secondary, they will start living in isolation. They will reinforce their shared delusions on each other. So अगर बड़ी बहन ने बोला जो पड़ोस वाले हैं ना वो लोग बहुत खराब है, वो हमारे घर में कुछ जादू टोना कर रहे हैं, तो सेकेंडरी वाला भी बोलेगा हाँ आप सही बोल रहे हो, वो अपने फैमिली को भी यही कम्युनिकेट करेगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है. या अगर वो किसी दिन आपने पूछा क्या हो रहा है तो दैट सेकेंडरी पर्सन उसी कन्विक्शन से बोलेगा कि हम जो हमारे पड़ोस वाले हैं हम पे जादू टोना कर रहे हैं. Reinforcing shared delusional belief without external reality testing. It doesn't matter बाहर क्या हो रहा है, ठीक है. Anxiety, suspiciousness and social withdrawal. Secondary individual may exhibit behavior consistent with delusion such as avoiding perceived threat. तो वो अगर प्राइमरी वाला बाहर नहीं निकल रहा है घर से बाहर क्योंकि उसको पड़ोसियों से डर है, तो सेकेंडरी वाला भी निकलना बंद कर देगा, नहीं जाएंगे बिकॉज पड़ोसी मुझे नुकसान कर देंगे. So the same behavior pattern is followed by the secondary person also. Then if you will present, it will adopt all the characteristics of disorder. She in general, अगर हम biologically बोले तो first person has the disorder, secondary doesn't. All right. So both individuals strongly adhere to their shared belief and dismiss opposing viewpoint. अगर आप लोग उनको confront भी करोगे ना, they'll say against you. नहीं आप गलत हो, हम सही हैं. ठीक है, they'll bring certain reasoning of their own to stand with their point. They lack awareness of the irrationality of their beliefs and may be resistant to seek help. The secondary person often shows improvement or resolution of symptom when separated from primary individual. Though it will take time, but it is also seen कि अगर secondary person को primary से दूर किया जाए, तो धीरे धीरे secondary person का जो delusion है वो resolve होने लगता है. Diagnostic criteria same जो हमने भी clinical features पढ़े हैं. 2 or more people share the same delusion or delusional system and support one another in this belief. They have unusually close relationship. There is a temporal or contextual evidence that the delusion was induced in the passive member of the pair of group by the contact with active member. सब टाइप भी होते हैं, ठीक है. कभी कभी दो, जैसे 2 लोगों में हुआ तो फोले डीएक्स कॉमनली जिसको हम बोलते हैं, 3 लोगों में हुआ तो फोले ट्रायोस, फोले फैमिली, फोले प्लशियोर, दैट इज ग्रुप में. अगर आपको याद होगा एक बुराड़ी केस हुआ था, उसमें एक फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स दे वर फाउंड डेड, ठीक है. तो ये सस्पेक्ट किया जा रहा था कि वो भी एक केस हो सकता है मास डिल्यूजनल या फिर आपका ये फोलिए फैमिली का. कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हुआ, बट एक सस्पिशन था कि ये शेयर डिल्यूजन डिसऑर्डर जैसा कुछ हो सकता है. डिफरेंशियल डायग्नोसिस में स्किज़ोफ्रेनिया आपको पता है कि परसिस्टेंट डिल्यूजन जो होंगे इन्फ्लुएंस नहीं होगा दूसरा इंसान, ठीक है. पीडीडी में भी यही है. कुछ कल्चरल बिलीफ्स होते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस में, याद रखना कि किसी किसी कल्चर में माना जाता है कि सपोजिटली कि काला कपड़ा पहनना खराब है, ठीक है ना. वो कल्चरल बिलीफ हो सकता है, वो ये नहीं कि एक पर्सन ने माना है दूसरे पर्सन भी मानेगा इसलिए मान रहा तो डिल्यूजन हो गया, बट वो कल्चर में सब जगह माना है, वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है. कुछ फैक्टिशियस डिसऑर्डर और मलिंगरिंग की लोग जानबूझ के दिखाने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है. इसमें कन्विक्शन और चैलेंजेस के साथ डिल्यूजन कम हो जाता है. अगर आप कन्विक्ट करोगे, कुछ रीजनिंग दोगे, तो वो उस कन्विक्शंस के साथ नहीं बोलेगा पेशेंट, ठीक है. देन सब्सटेंस इंड्यूस में सब्सटेंस यूज है. मूड डिसऑर्डर में आपको मूड अफेक्टिव मूड सिम्टम्स मिलेंगे. So well, you'll take the history in this case. You will assess how close the relationship between the two individuals is and how socially isolated they are from outside world. So these are the 2 important factors you will find in history. Okay. And then फिर gradually family से पूछोगे कि पहला इसका nature कैसा था secondary person का, उसके बाद धीरे धीरे over what time nature started to change. Gather input from family or caregiver to understand the influence of dominant individual and social dynamics. MSc में you will see evaluate thought content for shared delusion, level of insight, emotional dependence between individual.
Then again diagnostic investigation में you have to rule out कोई medical या neurological cause तो नहीं है. Separation assessment is something. Observe changes in delusional belief when the affected individual is separated from the primary delusional person. So once you separate these two people from for quite a time, this is also a part of management. ठीक है? So psychological symptoms जो secondary individual में है with time हम उसमें कम हो जाते हैं. उसको थेरेपी से हो सकता है दवाई की सेकेंडरी इंडिविजुअल में जिसमें डिसऑर्डर नहीं है दवाई की जरूरत ही ना पड़े. With therapy, with separation from the primary individual, he or she might resolve to his premorbid state. Then primary individual might require antipsychotic and mood stabilizer, and secondary individual may at some time, because अगर affective symptoms बहुत आ गए हैं, उसका behavior बहुत ज़्यादा खराब होने लग गया, तो short term antipsychotic short term के लिए दे सकते हैं, या फिर कोई anxiolytic की उसकी anxiety part कम हो जाए, उसके लिए दे सकते हैं. Psychotherapy to challenge delusional belief and enhance insight. And most importantly, family and social intervention. You have to educate the family that इसका दूसरा सेकेंडरी पर्सन का प्राइमरी पर्सन के साथ इतना क्लोज रिलेशनशिप कैसे सेकेंडरी पर्सन को हार्म कर सकता है, हार्म कर रहा है. हो सकता है प्राइमरी पर्सन की डिजीज बहुत सिवियर उसकी हो, उसके ट्रीटमेंट में बहुत टाइम लग जाए, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है कभी वो फुल रिकवरी ना कर पाए, अगर करे भी तो माइट बी आफ्टर एजेस. ठीक है. और तो लेकिन सेकेंडरी पर्सन इज समवन जो कि फुल्ली फंक्शनल हो सकता है जस्ट बिकॉज जस्ट आपको सेपरेट करना है. ठीक है. So early intervention and separation and strong social support are something favorable factors. Poor prognostic factor क्या है, अगर long term से साथ में long lasting delusion है और जैसे ही वापस लेके आ रहे हैं separate करने के बाद वापस delusion form हो जा रहा है, तो this is poor prognostic factor. Done. Induced delusional disorder समझ में आया. थर्ड आपका है schizoaffective. Schizophrenia भी है, affective symptoms भी है, यानी कि mood symptoms भी है. तो दो चीजें हैं इसमें. Schizoaffective disorder is a complex mental health condition which is characterized by presence of both schizophrenia like symptoms जैसे कि delusion, hallucinations and mood disorder, mania, depression दोनों हो सकता है. First introduced by Kassanen in 1933 as a disorder combining both schizophrenia and mood disturbances. So presence of key features है psychotic symptom independent of mood symptom, and mood symptoms are prominent for a substantial duration of illness. देखो क्या होता है ना, बहुत कुछ टाइम के लिए जो साइकोटिक सिम्टम आ जाएंगे उसमें, उसके बाद मूड सिम्टम आएंगे. ठीक है. और फिर वो मूड सिम्टम काफी प्रोमिनेंट रहेंगे. सो लाइफ टाइम प्रिवेलेंस इज 0.5 to 8%. ऑलमोस्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग मेल एंड फीमेल अगर बाइपोलर टाइप का स्किज़ोअफेक्टिव है. डिप्रेसिव टाइप ऑफ स्किज़ोअफेक्टिव इज सीन मोर कॉमनली इन फीमेल्स. Depressive type is more common in older, whereas bipolar type is more common in younger adult. Age of onset, like in schizophrenia, we have seen कि age of onset in female is little later in comparison to male. Similarly, in schizoaffective also, it is quite later in comparison to male. So again, you have strong neurobiological factor in etiology. Strong genetic component with evidence suggesting familiar aggregation of both schizophrenia and mood disorder. Abnormal structure and function in the brain, then neurochemical imbalance. Psychological factors, substance abuse, major life events and childhood trauma. Now we'll see with clinical feature. Clinical feature में we can have schizophrenia like symptoms, again delusion, hallucination, disorganized behavior, negative symptoms, and then you have mood disorder. Mood disorder का you can have depressive symptom, you can have manic symptom like sadness, hopelessness, anhedonia, apathy, lack of interest वगैरह ये मिलेगा. Whereas manic symptom में काफी elevated या irritable mood मिल सकता है, बहुत increase energy है, बहुत बड़ी बड़ी बातें grandiosity हो रही है, बहुत ज्यादा ओवर स्पेंडिंग हो रही है, एक्सेसिव फेमिलियरिटी है, ये सब भी मिल सकता है. ठीक है. I'll tell you after the class. Okay. Cognitive impairment, poor executive functioning and impaired memory and attention. All right. Then we have diagnostic criteria. So F25 बोलता है schizoaffective disorder. So what are the diagnostic criteria? Presence of both definitive mood disorder, depressive or manic, and definitive schizophrenic symptoms are prominent simultaneously or within a few days of each other within the same episode of illness. Okay.
यानी कि आपका जो स्किज़ोफ्रेनिया है और ये मूड सिम्टम है एक ही एपिसोड में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका मूड डिसऑर्डर पहले हुआ और पूरा रिजॉल्व हो गया उसके बाद आपका स्किज़ोफ्रेनिया हो रहा है, नो। ये एक ही सिंगल एपिसोड में दोनों चीजें होनी चाहिए। As a consequence of which episode does not match the criteria of either schizophrenia or mood disorder. It should be applied for patient who exhibit symptom of schizophrenia or affective symptom. It should not be applied in patient जिनमें अलग-अलग एपिसोड में schizophrenia और mood disorder आ रहा है। So DSM-5 ने भी यही क्राइटेरिया दिया है। उन्होंने बस एक चीज ये बोली कि जो डेल्यूजन और हेलुसिनेशन है वो 2 वीक्स पहले होने चाहिए मूड डिसऑर्डर से, ठीक है। एटलीस्ट 2 वीक्स का आपका सिम्टम होना चाहिए स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स का, फिर मूड डिसऑर्डर आना चाहिए। बाकी मोरलेस सिमिलर टू आईसीडी। सो देयर कुड बी मेनिक टाइप जिसमें मेनिया के सिम्टम्स ज्यादा हैं, दे कुड बी डिप्रेसिव टाइप जिसमें डिप्रेशन के सिम्टम ज्यादा हैं, दे कुड बी मिक्स टाइप जिसमें दोनों सिम्टम्स होते हैं। Differential diagnosis, similarly, you have to differentiate it with bipolar disorder with affective symptom. आपका पोस्ट स्किज़ोफ्रेनिया डिप्रेशन भी एक चीज होती है कि स्किज़ोफ्रेनिया के बाद भी आपका डिप्रेशन आ जाता है, उससे डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया से डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, और बाकी कोई ऑर्गेनिक कॉज तो नहीं है, ठीक है। अगेन इन हिस्ट्री रिमेंबर कि एक ही एपिसोड में आपके स्किज़ोफ्रेनिया और डिप्रेशन के सिम्टम है। Assess the duration and pattern of mood and psychotic symptom, including periods of overlap and independent psychotic episodes. If psychotic symptom persists for at least 2 weeks in the absence of mood disorder. MSc में अफेक्ट पार्ट में देखोगे कोई डिप्रेसिव तो नहीं है या मेन इलेटेड अफेक्ट तो नहीं है, मूड देखोगे पेशेंट का, थॉट में देखोगे कि आपका डिल्यूजन तो नहीं आ रहा है, परसेप्शन में देखोगे हेलुसिनेशन तो नहीं आ रहा है, कॉग्निटिव फंक्शन और इंसाइट डेवलप करोगे। मैनेजमेंट पार्ट में रिमेंबर आपका ये अफेक्टिव भी है तो इसमें दोनों चीजें आती हैं, आपका एंटीसाइकोटिक भी आएगा और आपका एक मूड स्टेबलाइजर भी आएगा अलोंग विद, अगर डिप्रेसिव टाइप है तो एंटी डिप्रेसेंट आएगा, ठीक है। एंटीसाइकोटिक में ओलैंजापीन, हैलोपेरिडोन, रिस्पेरिडोन, लिथियम एंड वैल्प्रेट आर गुड मूड स्टेबलाइजर, एंड एनी मोड ऑफ एंटी डिप्रेसेंट एसएसआरआई जैसे कि एसिटाइलोप्राम या सर्ट्रोलिन है ये दे सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन इफ नीडेड, अगर सुसाइडल रिस्क है, पेशेंट बहुत ज्यादा साइकोटिक हो रहा है या फिर पेशेंट रिफ्यूजल टू ट्रीटमेंट है तो हॉस्पिटलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, एंड उस टाइम पे फिर आपको एक क्विक मैनेजमेंट करना पड़ता है। To psychoeducate the patient in order to teach patient the coping mechanism, how to evaluate for further risk, इसके लिए psychotherapies की help ली जा सकती है। Social skill training to improve interfunctional functioning, interpersonal functioning, vocational rehabilitation, community support, regular psychiatric evaluation to prevent relapse. So good prognosis, अगर premorbid functioning, disease होने से पहले अगर patient काफी अच्छे से फंक्शन कर रहा था, एक अच्छा एजुकेटेड इंसान है, उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ठीक चल रहा है, वो उसकी कोपिंग मैकेनिज्म अच्छी है, ठीक है, अच्छा सोशल सपोर्ट है, ठीक है, वो अपने काम को लेके पॉजिटिव है, अगर ये सब चीजें डिजीज होने से पहले की जो उसकी पर्सनालिटी है वो अच्छी रही है तो ये गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर था कि रिजोल्यूशन सही होगा, आउटकम अगर डिजीज हो गया ट्रीटमेंट देंगे तो आउटकम अच्छा आएगा। अगर ट्रीटमेंट से बार बार छोड़ दे रहा है, फॉलो अप के लिए सही से नहीं आ रहा तो दिस इज बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर कि इसमें क्रॉनिक केस में चला जाएगा। डिप्रेसिव टाइप ऑफ स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर जनरली हैज अ बेटर आउटकम, ओके डन। स्किज़ोअफेक्टिव में मोटा मोटा ये समझना है कि स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स भी हैं और अफेक्टिव सिम्टम भी हैं, लेकिन दोनों एक ही एपिसोड के अंदर है, अलग अलग नहीं है। आईसीडी सॉरी DSM-5 के अकॉर्डिंग कि 2 वीक्स पहले आ जाना चाहिए जो आपके साइकोटिक सिम्टम है मूड डिसऑर्डर से, ठीक है। फिर हमारा है आज का लास्ट पार्ट, पोस्टपार्टम साइकोसिस। टर्म पोस्टपार्टम का क्या मतलब होता है? आफ्टर बर्थ या आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। सो साइकोसिस अगर पोस्टपार्टम आ रही है तो हम इसको पोस्टपार्टम साइकोसिस बोलते हैं, ऑलराइट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे रिस्क ऑफ हार्म टू बेबी हो सकता है, ठीक है। Under the psychotic state, mother cannot take care of a baby, or she can have certain feelings of harming the baby. So यहाँ पे इसको it is quite necessary to manage it very quickly and in a very effective way.
Postpartum psychosis is a severe mental health condition that occurs in the postpartum period, characterized by sudden onset of psychotic symptoms such as delusions, hallucinations, mood disturbances, and disorganized behavior, typically within 2 weeks after childbirth. Rapid progression and require urgent intervention due to risk of harm to self and baby. Not that common, 1 in 2 per thousand postpartum women. Recurrence rate is 30 to 50% in subsequent pregnancy if not treated. Suppose first pregnancy में patient को postpartum psychosis हुई है तो there are chances कि 30 to 50% recurrence rate है कि second उसमें भी होगी अगर आपने इसको treat नहीं किया है तो ठीक है treatment के बाद भी chances रहते हैं but if the patient is managed properly उसको पता है illness के बारे में तो थोड़े chances कम हो जाते हैं. More common in first time mother, more common in developing country, higher stigma and under reporting in some region. होता है कि बहुत जगह और जगह भी होता हो जितना हमको ये रेट मिल रहा है इससे ज्यादा मिलता हो because of stigma और under reporting और not no much awareness regarding the postpartum psychosis, so उसकी reporting कम होती है. So biological factors की बात करें यहाँ पे तो थोड़ा ये समझना है कि other than जो हम neurochemical imbalance और diseases में पढ़ते हैं, remember कि इसका correlation देखा गया है estrogen and progesterone की dysfunction से, ठीक है? Sudden hormonal shifts after delivery, particularly in estrogen and progesterone levels, are believed to influence the mood regulation and increase susceptibility to psychosis. Hypothalamic pituitary adrenal axis का dysregulation has also been seen connected to mood instability. Then dopamine and serotonin and norepinephrine glutamate जो disbalance है वो you know already. Okay. जो postpartum time period होता है वहाँ पे lack of sleep, exhaustion female को बहुत होता है. तो it also leads to cognitive and emotional disturbances. Especially अगर past history of कोई psychiatric illness रही है या फिर positive family history रही है, अगर आपकी family में women किसी और को भी postpartum psychosis की history रही है तो there are chances कि आपको भी हो सकता है, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि होगा ही होगा but probability थोड़ी बढ़ जाती है general population के comparison. Women with the family history of bipolar, schizophrenia or postpartum psychosis have a higher risk. Certain autoimmune and inflammatory cytokines have also been said to be responsible for that, but the correct role is not been identified. Psychosocial factor, personal history of mental illness, inadequate coping mechanism and lack of emotional resilience. It can also exacerbate the psychological strain. Stressful childbirth experience और unplanned pregnancy, especially primary अगर gravida है, primary pregnancy है, तो उसमें पता नहीं होता है कि how to take care of a child. The sleep pattern, the activities of the children is unknown. It is a state of आपको physical resilient भी होना चाहिए, physically भी और mentally भी resilient होना चाहिए. Emotional, financial हर तरीके की need आपको after a birth of baby होती है, ठीक है? So if it is not planned or if the partner or the family members are not supportive, so the stress and coping mechanism of the female is disturbed. It can also lead to certain psychological downfall of a patient. Lack of social support, cultural expectation and pressure. Societal expectations surrounding motherhood, especially in cultures with high pressure for maternal perfection, can contribute to feeling of inadequacy and distress. Financial stress, lack of access to health care and inadequate living condition can increase psychological burden. Any history of domestic violence है, childhood trauma है, कोई recent stressful event है, that can also lead pregnancy के time पे अगर कुछ ज़्यादा stress आ गया can lead to postpartum psychosis. So very important जो इसके psychotic symptom है, often they are related or surrounded towards baby, often related to baby. Delusions are often related to baby. Example, they might have certain urges to harm the baby or neglect the baby. Hallucination commanding harm to self or baby. Disorganized thought and speech, not taking care of baby, not breastfeeding the baby. Behavioral symptoms में neglect और overprotectiveness towards the baby, या तो बिल्कुल neglect होगी या फिर overprotective हो जाएगी कि other people are going to harm my baby. This can also come. Severe mood swing, very depressive, very euphoric, very agitated, irritability, emotional lability, infanticidal thoughts and social withdrawal.
poor concentration and decision making in mother might be exhausted but still she cannot sleep, confusion and memory disturbances. So it comes under the ICD classification F53.1, severe mental and behavioral disorders associated with purpura. So thus क्या diagnostic criteria है? They occur within 6 weeks postpartum, severe disturbance in behavior and perception, not attributable to medical conditions. डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आप 2-3 टर्म्स याद रखिए, पोस्टपार्टम साइकोसिस के अलावा 2 टर्म और होते हैं, पोस्टपार्टम ब्लूज और पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज बेसिकली डिप्रेसिव सिम्टम्स होंगे, साइकोटिक सिम्टम नहीं होंगे, डिप्रेसिव सिम्टम ज्यादा होंगे। एंड पोस्टपार्टम ब्लू लेस सीवियर देन पोस्टपार्टम डिप्रेशन होंगे, उसमें भी थोड़े से आपके डिप्रेसिव सिम्टम बट नॉट टू द सिवियरिटी ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ठीक है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन में आपका predominantly mood related symptoms such as persistent sadness, guilt, anhedonia and fatigue. Bipolar disorder, history of bipolar disorder और episodes of mania before pregnancy है। schizophrenia अगर before pregnancy है वो आपका pregnancy के टाइम पे भी अब रेगुलेट हो सकता है। सपोज पेशेंट एक मूड डिसऑर्डर की पेशेंट है, मेंटेन वेल कर रही है जो भी दवाई चल रही है उसकी, लेकिन डिलीवरी के टाइम पे हो सकता है साइन एंड सिम्टम फ्लक्चुएट कर जाए, पोस्टपार्टम टाइम पे साइन एंड सिम्टम फ्लक्चुएट कर जाए, तो वहां पे जो पहले से जो दवाइयां चल रही हैं वो आपको एडजस्ट करनी पड़ती है। बहुत सारी दवाइयां प्रेगनेंसी के टाइम पे या ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे सेफ नहीं होती हैं, तो उसमें चेंजेस लाते हैं अगर पेशेंट किसी नोन केस ऑफ साइकियाट्रिक इलनेस है, उन दवाइयों को चेंज करने की वजह से भी मूड सिम्टम्स या साइकोटिक सिम्टम बढ़ सकते हैं। तो दिस थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये दूसरी बीमारी से अलग कैसे है। सो जस्ट क्या बोलते हैं डिफरेंसेस, फ्यू डिफरेंसेस कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन में आपका लो मूड है और साइकोसिस में आपका रैपिड चेंज होगा मूड का। ठीक है, साइकोटिक सिम्टम्स आर यूजुअली एब्सेंट इन पोस्टपार्टम डिप्रेशन, वे आर प्रेजेंट इन पोस्टपार्टम साइकोसिस। ओके, कभी कभी साइकोथेरेपी एंड लो डोज ऑफ मेडिकेशन से पोस्टपार्टम डिप्रेशन ट्रीट हो जाता है, बट साइकोसिस अगर है तो आपका नाइस एंड मतलब काफी हद तक आपको रैपिड इंटरवेंशन, हॉस्पिटलाइजेशन, सेपरेशन ऑफ बेबी फ्रॉम द मदर की नीड हो सकती है। ठीक है, मोर कॉमन है पोस्टपार्टम डिप्रेशन इन कंपैरिजन टू पोस्टपार्टम साइकोसिस। अगर हाइपोग्लाइसीमिया है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, इससे भी आपको इनको सेपरेट करना आना चाहिए। पोस्टपार्टम सेप्सिस, इन्फेक्शन की वजह से भी पेशेंट डिलीरियम में हो सकती है, तो डिलीरियम में भी फ्लक्चुएशन ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, याद नहीं होगा कहाँ पे हूँ, कैसे हूँ, कभी पहचान रही है कभी नहीं पहचान रही है, तो यहाँ पे आपको इन्फेक्शन रूल आउट करना है। फीवर अगर तो नहीं है, कोई यूटीआई तो नहीं है, तो ये सब चीजों को ट्रीट करोगे तो साइकोटिक सिम्टम कम हो जाएंगे। सिमिलरली पोस्टपार्टम ब्लूज, डिप्रेशन है, साइकोसिस का डिफरेंस दिया हुआ है। ओके, डिटेल हिस्ट्री टेकिंग, इसमें आपका साइकेट्रिक हिस्ट्री के साथ साथ आपको ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री भी देनी है। ठीक है, कोई डिलीवरी के टाइम पे कोई स्ट्रेसर तो नहीं था, विद इन डिलीवरी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, पोस्टपार्टम फेज में बेबी कैसा है, पेशेंट की हेल्थ कैसी है, तो ये सब चीजें भी आपको ढंग से ध्यान रखना होगा। कोई पास साइकेट्रिक हिस्ट्री तो नहीं है इस पेशेंट में साइकेट्रिक इलनेस की, कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है पोस्टपार्टम साइकोसिस या डिप्रेशन या कोई साइकेट्रिक इलनेस की। साइकोसोशल असेसमेंट, फाइनेंशियल, सोशल सपोर्ट, स्पाउस का सपोर्ट कैसा है पेशेंट का। ठीक है, इवैल्यूएट सपोर्ट सिस्टम, स्ट्रेसर एंड कोपिंग मैकेनिज्म, स्क्रीन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस, सब्सटेंस यूज, लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट। अगेन इन फिजिकल एग्जामिनेशन डू नॉट टेक इट लाइटली, आपका पेशेंट ऑब्स्टेट्रिक और गायनिक का पेशेंट भी है और साइकेट्रिक का पेशेंट भी है, और प्लस अभी उसने डिलीवरी करी है, तो शी हैज बीन थ्रू अ वास्ट अमाउंट ऑफ चेंजेस इन हर बॉडी। Check for signs of infection, endocrine dysfunction, neurological abnormality, general postpartum health, nutrition कैसा है, hydration कैसा है। MSc में be very sharp regarding कोई thoughts बेबी को harm करने को लेके तो नहीं है। Okay, evaluate insight, judgment, risk of harm to self or baby. इन्वेस्टिगेशन में रूल आउट ऑर्गेनिक कॉजेस, ऑलवेज रूल आउट ऑर्गेनिक कॉजेस, कोई इन्फेक्शन में इन्फेक्शन तो नहीं है, MRI CT स्कैन से कोई ऑर्गेनिक कॉज तो नहीं है। Hospitalization and safety measures, immediate hospitalization if the risk of harm to self or baby. Antipsychotics, atypical antipsychotics, basically they are comparatively जो safe है, olanzapine is safe, first generation में haloperidol आपका breast feeding में भी comparatively safe है। ठीक है, मूड स्टेबलाइजर लिथियम, वैल्प्रेट बहुत कम। ठीक है, फीमेल प्रेगनेंसी स्टेज में वैल्प्रेट कम, लिथियम ज्यादा फेवरेबल है। ओलैंजापिन एज अ मूड स्टेबलाइजर भी काम कर देता है।
बेंजोडाइजेपिन वैसे तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है आपकी, बट इफ एट ऑल नीडेड दे सकते हो लो डोज। ECT इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी इज वेरी सेफ। अगर पेशेंट, अगर प्रेगनेंसी में मतलब साइकोटिक सिम्टम आ रहे हैं या पोस्टपार्टम भी आ रहे हैं, अगर सुसाइडल रिस्क है, कैटाटोनिया है, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस है। You have to also evaluate medication safety during lactation. Breastfeeding mother है, अगर सपोज पेशेंट रिजॉल्व कर गई है इनिशियली कुछ देर में, तो आपको ऐसी दवाई देनी है जो कि ब्रेस्ट मिल्क में कम डिस्चार्ज हो या फिर नहीं के बराबर डिस्चार्ज हो। Provide emotional support and psychoeducation to patient and family. Regular follow-up counseling on sleep hygiene, stress management, and gradually patient will return back to the normal activity. Early diagnosis, so strong social support, spousal support, family support, and adequate adherence to treatment. Poor prognostic में अगर आप डिले करोगे ट्रीटमेंट में, कोई पास्ट हिस्ट्री है साइकोटिक इलनेस की या रिकरेंट साइकोसिस की, बाइपोलर डिसऑर्डर की, या पास्ट हिस्ट्री ऑफ ये आपका पोस्टपार्टम साइकोसिस है, तो ये आपका पोर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर में आता है, एंड देयर आर हाई चांसेस ऑफ रिकरेंस इन सेकंड इफ अनट्रीटेड. So to conclude, we have seen 4 kind of diseases today: ATPD, schizoaffective, induced delusional disorder, and postpartum psychosis. They have certain different characteristics from each other. However, the management part में दवाइयाँ might be same, but to evaluate them and how to approach for management is different for all the patients. You have to be approaching the patient pharmacologically, psychotherapy and social support. Education and awareness is very important. You should be aware about कि ये सब बीमारियां होती है, तभी आप अपने पेशेंट्स को समझा पाओगे या अपने फैमिली मेंबर में किसी में देखते हो तो बता पाओगे कि ओके पोस्टपार्टम अगर पेशेंट थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रही है तो दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज समथिंग विच मे रिक्वायर ट्रीटमेंट. ओके, so these are the references, and with this we'll conclude. So very good afternoon. We'll start today's topic. Topic is itself divided into 3 parts: manic depressive psychosis, involutional melancholia, and neurasthenia. Okay, so I'm Dr. Ritika Singh. I'm senior resident in the Department of Psychiatry. We'll see this topic under the following headings. So without further ado, we'll move forward. So when we talk about mental health disorders, the terminologies which are currently used in psychiatric illness, they had different names back then. तो उसमें से कुछ बीमारियां ऐसी जिनका नाम अब थोड़ा चेंज हो गया है, जिनका कैटेगराइजेशन थोड़ा बदल गया है. तो जैसे मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस है, मेलेंकोलिया है, न्यूरस्थीनिया है. पहले इनको बहुत कॉमनली यूज किया जाता था डायग्नोसिस में, अब इनको रीडिफाइन करके इनको नया नाम दे दिया गया है. ठीक है, सो अगर हम मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस की बात करें तो बहुत पहले जीन पियर फार्लेट करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फोली सर्कुलर ही बताया था, यानी कि सर्कुलर इंसैनिटी. इसका मतलब एक साइकिल में हो रहा है, ठीक है, कभी ठीक हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है. फिर लेटर और एमिल क्रैपलिन जो है, उन्होंने मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस टर्म दिया था और उन्होंने उसको स्किजोफ्रेनिया से डिफरेंशिएट किया था कि कैसे मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस है वो स्किजोफ्रेनिया से अलग. ठीक है, अब विद टाइम जैसे जैसे बढ़ता रहा तो इसको जो मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस है वो बाइपोलर डिसऑर्डर के टर्म पे कन्वर्ट हो गई. ठीक है, समझ में आया? तो सिमिलरली इन्वोल्यूशनल मेलेंकोलिया की बात करें तो ये एक डिप्रेसिव डिसऑर्डर का ही एक टाइप था जो कि ज्यादातर मिडिल या लेट मिडिल एज या ओल्ड एज में देखने को मिलता था. तो इसको भी अब ये टर्म हट गया है, अब ये भी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंडर ही आने लग गया है. कुछ कुछ उसमें साइकोटिक सिम्टम मिलते हैं. वैसे ही न्यूरस्थीनिया जो है ये भी एक टर्म था कि जो जॉर्ज बर्ड ने दिया था. इसको आपका जो एक्सेसिव काम करने से लोग थक जाते थे, इस वजह से ये जो कैटेगरी आई थी तब टर्मिनोलॉजी यूज हुई थी. तो धीरे धीरे ये जो टर्म है ये अभी भी ये आईसीडी में इसका कुछ डेफिनेटिव क्राइटेरिया दिए हुए. सो ये क्या है, हम धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे. ओके, तो हमको ये नाम जानना क्यों जरूरी है? इससे क्या पता चलता है कि कैसे हिस्ट्री में, साइकोलॉजी में, साइकाइट्री में अपना इवोल्यूशन हुआ. ठीक है ना, प्रोग्रेशन ऑफ साइकाइट्रिक डायग्नोसिस कैसे इनटू टर्म आई है, कहाँ हम जो नाम हम पहले यूज करते थे अब उनको बदल दिया गया है बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट इन डायग्नोसिस. ओके, ऑफर इंसाइट इनटू हिस्टोरिकल ट्रीटमेंट अप्रोच एंड द इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न साइकाइट्री. सिमिलरली इट ऑल्सो, जैसे कि इन्वोल्यूशनल मेलेंकोलिया वो आपको एज रिलेटेड कुछ सिम्टम्स बताएगा, कुछ सोसाइटल प्रेशर रिलेटेड चीजें बताएगा. वैसे ही न्यूरस्थीनिया आपका सोशो कल्चरल फैक्टर कैसे इंपैक्ट करता है किसी चीज की डायग्नोसिस में, इन चीजों को बताएगा. ठीक है,
and most importantly, early recognition and intervention can prevent seriousness in diseases. It can prevent suicide, disability, and chronic psychiatric morbidity. शुरू करते हैं मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस से। नाम से क्लियर है, मैनिक होगा एक एपिसोड, कुछ डिप्रेसिव टर्म सिम्टम्स होंगे और कुछ साइकोटिक सिम्टम होंगे, ठीक है ना। अब इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय एमिल क्रैपलिन एंड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय alternative episodes of mania, hypomania and depression often interspersed with euthymic period. euthymic मतलब नॉर्मल, जहां पे एक नॉर्मलसी आ जाएगी, अपने बेसलाइन पे पेशेंट आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आपको, कोई भी आप अफेक्टिव डिसऑर्डर या बाइपोलर डिसऑर्डर की जब बात करते हैं तो एक पीरियड ऐसा आता है जब पेशेंट नॉर्मल सी की तरफ आ जाते हैं, ठीक है ना। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन चाहे हम ICD-10 की या DSM-5 की बात करें तो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है। तो कॉमन टर्मिनोलॉजी कुछ समझ लीजिए आप। एक टर्म होता है हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया क्या होता है, ये मेनिया का ही एक छोटा टर्बो है, रूप है, ठीक है। एलिवेटेड एक्सपेंसिव एंड इरिटेबल मूड लास्टिंग एटलीस्ट 4 कॉन्जिक्यूटिव डेज। कहीं पे क्वेश्चन पूछे कि क्या होता है, तो यहाँ पे डेफिनेटिव ये 4 दिन का जो टर्म है ना, ये आपको याद होना चाहिए। हाइपोमेनिया 4 दिन के अंदर डिसाइड होता है। मेनिया की अगर हम बात करें, पर्सिस्टेंट एलिवेटेड मूड, एक्सपेंसिव और इरिटेबल मूड विच लास्ट फॉर एटलीस्ट 1 वीक, ठीक है। फिर एक टर्म है डिस्थाइमिया। डिस्थाइमिया क्या होता है कि आपका एक लो ग्रेड डिप्रेशन जैसा, एकदम फुल फ्लैश डिप्रेसिव डायग्नोसिस नहीं बनेगी, MDD की डायग्नोसिस नहीं बनेगी, लेकिन कुछ लो ग्रेड सिम्टम्स ऑफ मूड डिसऑर्डर आपको देखेंगे जो कि एटलीस्ट 2 इयर्स, ठीक है। डिस्थाइमिया में 2 इयर्स याद रखना है, और बच्चों में अगर एडोलेसेंस में बात करें तो 1 ईयर, ठीक है। फिर एक टर्म है साइक्लोथाइमिया, ठीक है। साइक्लोथाइमिया में क्या होता है, क्रॉनिक मूड इंस्टेबिलिटी होती है। इसमें आपका ऑल्टरनेटिव होता है हाइपोमेनिया और डिस्थाइमिया के बीच में, ठीक है ना। साइक्लोथाइमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉनिक मूड इंस्टेबिलिटी विच ऑल्टरनेटिंग हाइपोमेनिक एंड डिप्रेसिव एपिसोड दैट डू नॉट मीट द फुल क्राइटेरिया ऑफ MDD, ठीक है। या मेनिया के जितना हाइपर भी नहीं होगा, डिप्रेशन के जितना लो भी नहीं होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में कहीं कहीं मूड डिसऑर्डर चलेगा। ये हो गया साइक्लोथाइमिया। फिर एक टर्म आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन आपको पता है, पर्सिस्टेंट लो मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑफ रिड्यूस्ड क्या बोलते हैं एनर्जी, लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, और ये 2 वीक्स। यहाँ पे आपको टर्म याद रखना है 2 वीक्स, ठीक है। समझ में आ गया। हाइपोमेनिया में 4 दिन, फिर आपका क्या बोलते हैं डिप्रेशन में 2 वीक्स, मेनिया में 1 वीक, और डिस्थाइमिया में 2 इयर्स, ठीक है। और एक और लास्ट टर्म है रैपिड साइक्लिक में क्या होता है, 4 या उससे ज्यादा मूड एपिसोड विद इन 1 ईयर, ठीक है। तो किसी किसी पेशेंट में आप देखोगे कि एक साल में 3-4 बार वो आपका इतना सिवियर हो गया कि उसको एडमिशन की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो 4 बार उसको मेनिया के एपिसोड पड़ गए, या डिप्रेशन और मेनिया के बीच में एपिसोड्स आ गए, ठीक है। तो अकरेंस ऑफ 4 और मोर मूड एपिसोड्स, चाहे वो मेनिया, हाइपोमेनिया और डिप्रेशन विद इन अ ईयर, ठीक है। अब हम बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी के, ठीक है, यानी कि कितना फैला हुआ है। ओवरऑल कहते हैं लाइफ टाइम प्रिवेलेंस ऑफ मेनिक डिप्रेसिव साइकोसिस 1 to 2% इन जनरल पॉपुलेशन, ठीक है। और ऑलमोस्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन मेल एंड फीमेल्स, लेकिन डिप्रेसिव सिम्टम्स जो है फीमेल्स में जो थोड़ा कॉमनली देखे जाते हैं, और मेनिक सिम्टम्स मेल में कॉमनली देखे जाते हैं, ठीक है। टिपिकली ऑनसेट आपका लेट एडोलेसेंस या अर्ली एडल्टहुड में होता है, लेकिन देयर आर केसेस जब एज लो एज 7 साल के बच्चे को भी मेनिक एपिसोड्स मिले हैं। एल्डरलीज में लेट ऑनसेट बाइपोलर डिप्रेशन डिसऑर्डर में आपको 70-80 ईयर्स में भी पहला एपिसोड देखने को मिला है बाइपोलर में, मेनिया या डिप्रेशन का, ठीक है। नाउ इटियोलॉजी अगर हम देखेंगे तो कॉजेज इसके आपके न्यूरोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल सारे कॉजेज होंगे। जेनेटिक्स की बात करते हैं सबसे पहले, तो आपका स्ट्रॉन्ग हेरिडिटरी कंपोनेंट है, यानी कि फैमिली में अगर किसी रिलेटिव को हुआ है तो हाई चांसेस हैं कि किसी और फैमिली मेंबर को जनरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन वो डिजीज आए, ठीक है। ट्विन स्टडीज या पेरेंटल स्टडीज जो हुई हैं उसमें देखा गया है कि जो आपका मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस जिनको बोलते हैं, तो उसमें 60 to 80% चांसेस होते हैं कि वो डिजीज आए, एक ट्विन को अगर है तो दूसरे को भी आए, ठीक है। सिमिलरली न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। मेनिया में आपका डोपामीन ज्यादा मिलेगा, नॉरएपिनेफ्रिन ज्यादा मिलेगा, डिप्रेशन में सेरोटोनिन, डोपामीन कम मिलेगा। अभी आपका इंक्रीज हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सेस, HPA एक्सेस होती है, इसके डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है कि
आपका कॉर्टिसोल एक सब होता है, हार्मोन होता है, कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, तो वो भी स्ट्रेस एंजाइटी के साथ कोरिलेटेड है, ठीक है। तो चौथा अगर हम देखें तो थायराइड डिस्फंक्शन का भी मूड इंस्टेबिलिटी के साथ रिलेशन देखा गया है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं कि आपका कोई स्ट्रेसर है, कोई अनरिजॉल्व आपका बचपन का कोई स्ट्रेसर रह गया, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ डिस्फंक्शनल थॉट पैटर्न है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं, आपका चीजों को कोप करने का तरीका पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म है, ज्यादा इंडल्ज होने वाले का वो है, तो ये सब आपके कॉग्निटिव फैक्टर्स को कंट्रीब्यूट करते हैं। देन वी हैव इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, उसमें क्या, कोई स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स है, सब्सटेंस अब्यूज है, आपका आसपास का आपका सब्सटेंस अब्यूज की वजह से ओवरऑल आपका नींद कितना डिस्टर्बेंस हो रहा है, सीजनल चेंजेस आर आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स, ठीक है। ये भी देखा गया है कि विंटर्स के टाइम पे डिप्रेसिव सिम्टम्स ज्यादा एग्जैजरेट हो जाते हैं और समर्स के टाइम पे मेनिक सिम्टम्स ज्यादा एग्जैजरेट हो जाते हैं। नॉट ऑलवेज ट्रू बट इट हैज बीन सीन, ओके। So these are few of the क्या बोलते हैं पॉजिटिव फैक्टर्स फॉर द डिजीज, ऑलराइट। अब हम क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। तो मेनिक एपिसोड अगर होगा आपका मेनिक डिप्रेसिव साइकोसिस में, तो मेनिया के सिम्टम्स होंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एलिवेटेड मूड, ठीक है, मूड बहुत ज्यादा, या तो बहुत खुश हो गए, बहुत जल्दी जल्दी चिड़चिड़ा हो जाएगा, ठीक है। ग्रैंडियोसिटी एंड इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, अपने आप को बहुत बड़ा समझना, ठीक है। इन डिक्रीज नीड फॉर स्लीप, ठीक है। डिक्रीज नीड फॉर स्लीप का मतलब है कम कम सोएगा, उसको लगेगा उसको सोना ही कम है, और कम सोने के बाद भी उसे एनर्जेटिक फील करेगा। अगर आप लोग देखो, अगर आपको 2 घंटे 3 घंटे सोने को मिले, तो अगले दिन आप उठेंगे तो यू विल फील टायर्ड, आप लोग को लगेगा मैं और सो जाऊं, मुझे कुछ एनर्जी नहीं आ रही। बट सच पेशेंट अगर मेनिक एपिसोड हुआ है, तो वो 2 घंटे सोने के बाद अगले दिन उठेगा तो ही विल बी फीलिंग वेरी फ्रेश, उसको तब भी वो पूरी दुनिया को कहेगा कि मैं ही चलाती हूँ, ऑलराइट। इंक्रीज टॉकेटिवनेस, ठीक है, बहुत ज्यादा, जो नॉर्मल से ज्यादा, ठीक है। इंक्रीज टॉकेटिवनेस का मतलब है जो कि नॉर्मली वो कम बात करता था या मॉडरेट अमाउंट में बात करता था, लेकिन मेनिक एपिसोड आया है तो जो नॉर्मल पैटर्न था उससे ज्यादा बात करने लग गया है, किसी से भी बात करने लग जा रहा है, रुक नहीं रहा है, एक टॉपिक को नहीं पकड़े हुए है। अभी वो बात कर रहा था कि मुझे काम करना है, दूसरी टाइम पे उसने टॉपिक चेंज कर लिया, चलो हम घूमने चलते हैं, तीसरी बात में उसने बदल दिया, चलो पिक्चर देखते हैं। तो एक टॉपिक को नहीं पकड़े हुए, इधर से उधर भागता रहेगा, ठीक है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज और रेसिंग थॉट्स, जो मैंने बताया आपको स्पीच में, आपको ये दिखेगा कि एक चीज को नहीं पकड़े हुए, इधर से उधर भाग रहा है, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। कि काम करते करते अभी छोड़ जाता हूँ, अभी दूसरा काम करने लगता हूँ, तो दिस इज व्हाट इजी डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। इंक्रीज गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी और साइकोमोटर एजिटेशन, ठीक है, कि काम करने का काम पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन काम करने को तत्पर हमेशा रहेगा कि मुझे ये भी खत्म करना है, वो भी खत्म करना है, बट एक एंड कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे। इंगेजिंग इन हाई रिस्क एक्टिविटीज, बहुत बार एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से या जो मेनिक सिम्टम्स आते हैं उसकी वजह से हाई रिस्क बिहेवियर, अल्कोहल सीकिंग बिहेवियर ज्यादा हो जाता है, रैश ड्राइविंग ज्यादा हो जाएगी, एक्सेसिव स्पेंडिंग होती है, सेक्सुअल एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका हाई रिस्क एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट होता है। ये मेनिक की बात, आपके साइकोटिक सिम्टम्स में क्या आएगा, आपका पेशेंट का डिल्यूजन हो सकता है, ठीक है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी हो सकता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, या मेरे अंदर किसी की बहुत ताकत आ गई है, ठीक है, मुझे एक स्पेशल मिशन में भेजा गया है कि मुझे दुनिया का उद्धार करना है, तो ऐसी बातें बोलेंगे, ठीक है। हेलुसिनेशन भी हो सकता है, नॉट दैट कॉमन बट हो सकता है, ठीक है। डिसऑर्गनाइज बिहेवियर एंड एग्रेसिव बिहेवियर आपको देखने को मिलता है। फिर आपका डिप्रेसिव एपिसोड में डिप्रेशन के सिम्टम्स जैसे कि परसिस्टेंट लो मूड होगा, ठीक है, सैडनेस, डिप्रेस मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, रिड्यूस्ड एनर्जी, रिड्यूस कंसंट्रेशन, रिड्यूस सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ब्लीकिंग पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ फ्यूचर, मतलब आगे भविष्य को लेकर बहुत नकारात्मक ख्याल कि आगे मेरा कुछ है ही नहीं, होपलेस होगा, हेल्पलेस होगा, वर्थलेस फील करेगा पेशेंट, ठीक है। आइडियाज ऑफ सेल्फ हार्म और सुसाइडल टेंडेंसीज भी आ सकती है। सिमिलरली मेनिया में भी इंक्रीज एक्टिविटी की वजह से भी खुद को हार्म कर सकता है, मैं उड़ सकता हूँ कह के अंदर बहुत ग्रैंडियोसिटी आ गई कि मैं तो उड़ सकता हूँ, मैं भगवान का रूप, छत से कूद गए, टूट गए हाथ पैर, ठीक है, तो ये मेनिया में देखने को मिलता है। रिड्यूस डिस्टर्ब स्लीप, डिस्टर्ब एपेटाइट डिप्रेशन में। कभी कभी आपको मिक्स सिम्टम भी मिल सकते हैं, ठीक है। फीचर्स ऑफ बोथ मेनिया एंड डिप्रेशन कैन अकर साइमल्टेनियसली इन अ पेशेंट, ऑलराइट। So these are the symptoms of mania: elevated irritable mood, increased energy, activity, reduced need for sleep, racing thought, impulsivity and risky behavior. And depressive में आपका persistent sadness और emptiness, fatigue, loss of energy, sleep disturbance,
रिकरेंट थॉट ऑफ डेथ, फीलिंग ऑफ होपलेस एंड वर्थलेसनेस। ठीक है, तो जो हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, वो चार्ट के रूप में देखिए। यूथाइमिया अगर आपको देख रहे होगे, एक ब्लू लाइन है, ये आपका बेस लाइन जैसा इंसान होता है। ठीक है, उसके बाद एक लाइन आपकी हाइपोमेनिया की दिख रही है, एक लाइन आपकी उसके ऊपर मेनिया की दिख रही है। ठीक है, तो मेनिया से थोड़ा सा कम आपका हाइपोमेनिया हो गया, और डिप्रेशन से थोड़ा कम आपका क्या हो गया, डिस्थाइमिया हो गया। ठीक है, और साइक्लोथाइमिया हमने क्या बोला था, ना तो डिप्रेशन को टच कर रहा है ना मेनिया को टच कर रहा है, लेकिन यूथाइमिक भी नहीं रह रहा है, तो एक साइकिल की तरफ में बने जाए। तो ये एक फीचर है, जो ग्राफ है, जो अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है कि आपका मेनिया कौन सा है, हाइपोमेनिया कौन सा है, यूथाइमिया कौन सा है, डिप्रेशन कौन सा। ठीक है, समझ गए। अभी पेशेंट को इवेल्युएट कैसे करोगे, आपने क्लिनिकल सिम्टम्स देख लिए, आपने देख लिया कि क्या होता है, डिजीज के बारे में पढ़ लिया। तो पहले सब जब भी पेशेंट आता है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का, आप हिस्ट्री लेते हैं, तो हम हिस्ट्री टेकिंग से ही शुरू करेंगे यहाँ पे भी। तो आपको पहले तो अच्छे से पूछना है कि ऑनसेट प्रोग्रेशन, जैसे हर उसमें पूछना है कि कब शुरू हुआ था, किस एज पे शुरू हुआ था, कि लगातार चलता है कि एपिसोडिक चलता है, कभी आता है फिर ठीक हो जाता है। तो ये याद रखो, जो ये मेनिक डिप्रेसिव साइकोसिस है, वो एपिसोडिक होती है नेचर में। ठीक है, कि एक एपिसोड आएगा फिर थोड़ा ठीक होगा, फिर दूसरा एपिसोड आएगा फिर ठीक होगा। ठीक है, आप कितनी जल्दी आ रहा है, एक महीने में कितनी बार आ रहा है, साल में कितनी बार आ रहा है। ठीक है, सिम्टम्स क्या है, मेनिया के सिम्टम्स हैं, डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, जो बीच में सही हो जाता है तो तब कैसे बेसलाइन मेंटेन करता है, और ज्यादा सिम्टम्स मेनिया के आते हैं कि डिप्रेशन के आते हैं, ये अभी आपको पूछना है। फिर कोई साइकोटिक फीचर्स तो नहीं है। फिर फैमिली हिस्ट्री, हमने देखा था जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन होता है, तो कोई पेशेंट के फैमिली में किसी को मूड डिसऑर्डर या स्किजोफ्रेनिया तो नहीं है, ये आपको देखना है। ठीक है ना, सब्सटेंस यूज के लिए देखना है कि अल्कोहल या फिर कोई और सब्सटेंस तो नहीं है। ये याद रखिए कि सब्सटेंस यूज दोनों तरह से काम करता है। सब्सटेंस यूज की वजह से बीमारी बढ़ती है, और बीमारी की वजह से भी सब्सटेंस यूज बढ़ता है। ठीक है ना, पेशेंट मेनिया में इतना खुश है कि उसको बार बार अल्कोहल या कुछ और सब्सटेंस लेने का मन करता है, या फिर सब्सटेंस लेना शुरू किया तो उसकी वजह से मेनिक एपिसोड जो है वो ट्रिगर हो सकता है। ठीक है, ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है, कोई स्ट्रेसर हुआ है, कोई ट्रॉमा है, किसी काम की वजह से नींद कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हुई है, अगेन सब्सटेंस यूज इज ऑल्सो अ ट्रिगरिंग फैक्टर। और फंक्शनिंग कैसी है, ओवरऑल सोशल लाइफ, ऑक्यूपेशनल लाइफ पेशेंट की कैसी है, उसके वर्क में, उसके एकेडमिक में, इन बीमारियों इसकी वजह से कितना इफेक्ट पड़ रहा है, क्या काम पे जाना बंद हो गया, इस हद तक बीमारी बढ़ गई, स्कूल नहीं जा रहा है बच्चा, अगर कॉलेज या स्कूल नहीं जा रहा है, अगर कॉलेज या स्कूल में है तो। फिर ये हिस्ट्री क्लैरिफाई करने के बाद आपने मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन पे आना है। तो ओवरऑल अगर आप अपीयरेंस एंड बिहेवियर की बात करें, तो मेनिया में ओवर ग्रूमिंग देखने को मिलेगी आपको, पेशेंट बहुत ज्यादा सज धज के आ सकते हैं। ठीक है, फीमेल्स में आपको देखेंगे दे वुड बी वेरी मच स्पार्कली या फिर अट्रैक्टिव चीजें पहनेंगे। ठीक है, मेल भी अच्छे से ग्रूम होके रहेंगे। उसका ऑपोजिट डिप्रेशन में पेशेंट उतना ग्रूमिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है ना, मेनिया में दूसरा आपका ओवरटली फ्रेंडली होता है वो आपसे, आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, पेशेंट अपने आप सब कुछ बता देगा। ठीक है, वो ज्यादा बात करेगा आपसे, और जबकि डिप्रेशन का पेशेंट कोशिश करता है कि वो कम बात करे, उसका मन ही नहीं करेगा आपसे बात करने का। आई टू आई कांटेक्ट मेनिया में भी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन में हमेशा ज्यादा देखोगे कि पेशेंट नीचे देखे हुए, आपको उसको मन नहीं करेगा आपसे आई कांटेक्ट करके बात करने का। ठीक है, साइकोमोटर एक्टिविटी मेनिया में बड़ी होगी, रेस्टलेस होगा पेशेंट। ठीक है ना, इंक्रीज होगी, इधर उधर भागेगा या बैठ के भी अजीबोगरीब हरकत करेगा। वेर इज इन डिप्रेशन थोड़ा रिटार्डेड होती है पेशेंट, साइकोमोटर एक्टिविटी थोड़ा सा कम लगता है। स्पीच मेनिया में प्रेशर्ड होगी, तेज बोलेगा, फटाफट बोलेगा, हो सकता है इतना तेज बोले कि आपको सेंस ही ना समझ में आए। ठीक है ना, और जबकि डिप्रेशन का पेशेंट या तो नॉर्मल होगा स्पीच, या फिर थोड़ा मोनोटोनस हो सकता है, या फिर रिटार्डेड हो सकता है। रिएक्शन टाइम मेनिया के पेशेंट में थोड़ा कम होता है, जबकि डिप्रेशन के पेशेंट में जैसे ही आपने पूछा उसका टाइम लगेगा आंसर देने में। ठीक है, मूड और इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस में ये पार्ट है। ठीक है ना, आपका डिप्रेशन में सैडनेस होगी, डिप्रेसिव इफेक्ट होगा, आपको पता चलेगा पेशेंट को देख के। ठीक है, बात नहीं करना चाह रहा होगा। मेनिया में ये चारों जो आपके एलिवेटेड मूड है ना, उसके 4 स्टेजेस होते हैं। तो इरिटेबल भी हो सकता है और एलिवेटेड भी हो सकता है। एलिवेटेड में पहला हो गया स्टेज आपका यूफोरिया। यूफोरिया में क्या होता है कि उसको बहुत अच्छा लगेगा, इंक्रीज सेंस ऑफ वेलबींग एंड हैप्पीनेस विच इज नॉट इन कीपिंग विद ऑनगोइंग इवेंट। हॉस्पिटल आया लेकिन खुश है, चोट लग गई लेकिन खुश है। ठीक है, इलेशन में क्या होता है, जो सेंस ऑफ हैप्पीनेस के साथ साइकोमोटर एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, मॉडरेट इलेशन ऑफ मूड विद इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी।
फिर उससे एक और ऊपर आता है एक्सल्टेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। इसमें इंटेंस इलेशन, बहुत ही ज्यादा खुश है, और उसके साथ डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी भी आ गई, ठीक है, कि मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है। और पांचवा जो चौथा जो होता है जिसको हम एक्टेसी बोलते हैं, बस मैं अपरंपार हो गया, ठीक है ना। सिवियर एलिवेशन ऑफ मूड विद सेंस ऑफ ब्लिसफुलनेस, ठीक है, सीन इन डेलीरियस और स्टूपिस मेनिया, ठीक है। धीरे 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 करके एक स्टेज से चौथे स्टेज में पहुंच। तो आपको जब भी मेनिक डिप्रेसिव साइकोसिस में मूड वाला पार्ट अच्छे से याद रखना, ठीक है। थॉट प्रोसेस आपको बोला था कि एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं करेगा, तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज बोलते हैं, एक सोच से दूसरी ओर पे उड़ान मचा रहा है, यहाँ पहुंचा वहां पहुंचा वहां पहुंचा, ठीक है। ग्रैंडियोसिटी आपको देखने को मिलेगी, हमने बोला था, ठीक है। ये मेनिया के हो गए। होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस, सुसाइडल आइडिएशन, ये आपको डिप्रेशन में देखने को मिलेगी, ठीक है। परसेप्शन में आपको ऑडिटरी या विजुअल हेलुसिनेशन दोनों केसेस में देखने को मिल सकता है। सिवियर डिप्रेशन में भी आपको हेलुसिनेशन हो सकता है और मेनिया के केसेस में भी हो सकता है। कॉग्निटिव फंक्शनिंग, मेनिया के पेशेंट में आपका जो भी अटेंशन कंसंट्रेशन वाला पार्ट है, मेमोरी वाला पार्ट है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज एक्टिविटी और ये सब चीज की वजह से डिस्टर्ब रह सकती है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम डिप्रेशन के पेशेंट में बात करें, अटेंशन कंसंट्रेशन मेमोरी इंपेयरमेंट डिप्रेशन के पेशेंट में भी देखने को मिलता है, ठीक है। जजमेंट एंड इंसाइट आपकी ज्यादातर मेनिया के पेशेंट में इम्पेयर्ड होगी। अभी ये सब तो आपने कर लिया, तो कुछ रेटिंग स्केल होता है। रेटिंग स्केल क्या होता है? एक क्वेश्चनर फॉर्मेट होता है, या तो आप पेशेंट से खुद पूछोगे या पेशेंट को खुद भरने को दोगे, तो उसके पैटर्न में जो आंसर पेशेंट करता है आपको ये सिवियरिटी बताता है कि डिप्रेशन की सिवियरिटी कितनी है, मेनिया की सिवियरिटी कितनी है, और ये आप चेक कर सकते हो। आपने ट्रीटमेंट शुरू किया, सपोज आज का स्कोर बहुत ज्यादा था, आपने ट्रीटमेंट शुरू किया, 10 दिन बाद आपने फिर वही स्केल लगाया, तो वो आपको स्केल में नंबर कम आ जाएंगे। पहले दिन सपोज 15 आ रहा था, शायद 10 दिन बाद 7 आ जाएगी, तो आप देख सकते हो कि ट्रीटमेंट काम कर रहा है। समझ में आया? ठीक है, बस नाम याद रख लीजिए इन रेटिंग स्केल का। यंग मेनिया रेटिंग स्केल मोस्ट कॉमनली यूज्ड आपका बाइपोलर में मेनिया के केसेस में यही होता है। कुछ आपका ये डिप्रेशन में हैमिल्टन डिप्रेशन रेटिंग स्केल, और मूड एंड डिसऑर्डर क्वेश्चनर्स फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करोगे? अभी पेशेंट आया है, उसको ब्लड टेस्ट भी करना पड़ेगा टू रूल आउट कोई और डिजीज तो नहीं है। नॉर्मल ब्लड इन्वेस्टिगेशन, सीबीसी, इलेक्ट्रोलाइट, एलएफटी, पेशेंट का कुछ इन्फेक्शन पे तो नहीं है, कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट डिसइम्बैलेंस तो नहीं है, लिवर फंक्शंस डिरेंज नहीं है। उसके साथ साथ आपको थायराइड फंक्शन टेस्ट करना है, क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों आपके एसोसिएटेड है मूड डिसऑर्डर के साथ। हाइपोथायरॉयडिज्म में डिप्रेशन के सिम्टम्स मिमिक होते हैं और हाइपर में मेनिया के सिम्टम्स मिमिक होते हैं, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीन कर सकते हो, कोई सब्सटेंस इंड्यूस मेनिया तो नहीं है। आपने यूरिन फॉर सब्सटेंस में देखा कि बहुत बार जो कैनबिस या जिसको आप चरस गांजा के नाम से जानते हैं, उसकी वजह से भी आपके मेनिक सिम्टम्स आ सकते हैं, ठीक है। न्यूरो इमेजिंग, कोई हेड इंजरी या उस चीज का कोई तो नहीं है जिसकी वजह से बिहेवियरल सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई एपिलेप्सी या सीजर डिसऑर्डर तो नहीं है, उसमें भी आपको मूड के सिम्टम्स मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया? हम आते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की उसकी जैसी कोई और बीमारियां क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कि स्किजोफ्रेनिया एक बीमारी है, तो इसमें आपको ये याद रखना है साइकोटिक सिम्टम ज्यादा प्रोमिनेंट होंगे मूड डिसऑर्डर में, ठीक है। और ये एपिसोडिक नहीं होता, ये कंटिन्यूस चलता है स्किजोफ्रेनिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम एपिसोड की तरह एक बार एकदम फ्लेयर हुआ बिल्कुल ठीक हो गया फिर फ्लेवर, नहीं, ये कंटिन्यूस डिजीज है। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में भी मूड स्विंग्स इंपल्सिविटी होती है, तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा कि ये भी एपिसोडिक नहीं होगा, ये सिर्फ ट्रिगरिंग फैक्टर्स, जब भी कोई अपने मन की बात नहीं हो रही, कोई स्ट्रेसर है, तभी वो ट्रिगर होता है, ठीक है ना, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी में। फिर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में आपको मेनिया या हाइपोमेनिया नहीं दिखेगा। सब्सटेंस इंड्यूस या स्टेरॉइड इंड्यूस में आपका एसोसिएशन होगा किसी और ड्रग्स के साथ या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ। देन आपको थायराइड डिसलेक्टोलीमिया को लॉजिकल डिसऑर्डर है, वो आपको डिफरेंशिएट करने पड़ेंगे इन्वेस्टिगेशंस के बाद, ठीक है। मैनेजमेंट में आते हैं अभी हम। आपका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट होगा और नॉन फार्माकोलॉजिकल। मूड डिसऑर्डर्स में ये याद रखिएगा, आपको मूड स्टेबलाइजर का एक प्रोटेक्टिव वो तो देना ही है। मोस्ट कॉमनली यूज लिथियम, वैल्प्रोएट और कार्बामेज़ापिन है, ठीक है, जो हम मूड स्टेबलाइजर्स यूज करते हैं। उसके साथ साथ आपका एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स का भी रोल देखा गया है। टिपिकल एंटीसाइकोटिक भी देखे दिए जाते हैं, बट मोस्ट फेवर किया जाता है एटिपिकल को, जैसे ओलैंजापिन, क्विटियापिन या रिस्पेरिडोल। ये आपका फॉर अक्यूट एपिसोड में जहाँ पे साइकोटिक सिम्टम भी मिल रहे हैं।
मोस्ट ऑफ द टाइम ये टिपिकल एंटीसाइकोटिक विद टाइम हम कम करके बंद कर देते हैं, बट जो मूड स्टेबलाइजर ड्रग है वो कंटिन्यूस रहती है। डिप्रेशन का पेशेंट आ रहा है, डिप्रेसिव सिम्टम के साथ आ रहा है, तो उसको आपने एंटी डिप्रेशन यूज देना है, चाहे आप SSRIs दें, TCs दें, SNRIs दें, ठीक है। लेकिन इनके साथ ये याद रखना है, बहुत बार चांसेस होते हैं आपने एंटी डिप्रेशन दिया तो मेनिया में शिफ्ट हो गया, डिप्रेशन क्योर करते करते आप पेशेंट को मेनिया में ले गए। तो अगर आपका बाइपोलर का या मेनिक अफेक्ट डिप्रेसिव साइकोसिस का पेशेंट है, तो मूड स्टेबलाइजर का प्रोटेक्टिव फैक्टर तो देना ही देना है, चाहे आप एंटी डिप्रेशन भी शुरू कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर सिवियर केस है, सिवियर मेनिया है, सुसाइडल आइडिएशन या डिप्रेशन में, तो हॉस्पिटलाइज करना है पेशेंट, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट इस लेक्चर से ये समझ में आना चाहिए कि क्या क्या सिम्टम होते हैं। आप अपने जब आप अपने बाहर सोसाइटी में जा रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसको कब ट्रीटमेंट की जरूरत है, कहाँ इसको भेजना, ठीक है। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ECT का रोल देखा गया फॉर ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट मेनिया एंड डिप्रेशन बोथ, स्पेशली अगर बहुत सिवियर मेनिया है, आपका बहुत एग्रेशन है, हार्म टू अदर्स है, और डिप्रेशन में सेल्फ हार्म है, सुसाइडल अटेम्प्ट है, तो ECT ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। फिर आपका थेरेपीज, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, साइको एजुकेशन ऑफ द फैमिली, ठीक है ना, ये सब चीजें हैं। देन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपका एक तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और स्लीप हाइजीन। मेनिया के पेशेंट में स्लीप डिस्टर्बेंस की वजह से मेनिया बहुत जल्दी प्रोग्रेस करता है। इनफैक्ट बहुत बार पेशेंट के जो रिलेटिव्स होंगे वो यही कंप्लेन करेंगे, इनकी ना नींद कम होने लग गई है, पिछले बार भी यही हुआ था, यही से शुरू होता है इनके लक्षण। तो स्लीप हाइजीन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, मेंटेन करके रखना, और रेगुलर फॉलोअप के लिए, ठीक है। यहाँ पे हो गया, आप ये हो गया मेनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है इन्वोल्यूशनल मेलनकोलिया, ठीक है। ये अगर हम बात करें तो ये एक सिवियर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन है, जिसमें आपको जब एंशिएंट टाइम में, ये ज्यादातर इसको हम मिडिल एज या फिर थोड़े एल्डरली पेशेंट्स के साथ देखने को मिलते थे, और फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। अभी ये MDD यानी कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के साथ ही कोरिलेट किया गया है, ठीक है। तो इन्वोल्यूशनल पीरियड जो होता है ना 40 to 60 इयर्स का, जब आपका थोड़ा चेंजेस आते हैं लाइफ में, तो इसको इन्वोल्यूशनल पीरियड बोलते हैं, तभी यहाँ से नाम आया इन्वोल्यूशनल मेलनकोली, ठीक है। ये भी 1 to 2% ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन में देखा गया है, मोर प्रिवेलेंट इन फीमेल देन मेल, टिपिकली 40 to 60 इयर्स। और इसको बहुत बार डिमेंशिया के साथ या फिर स्किजोफ्रेनिया लेट ऑनसेट के साथ कंफ्यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसमें मेमोरी सिम्टम भी मिलते हैं, इसमें साइकोटिक सिम्टम भी मिलते हैं, तो इंस्टेड ऑफ डिप्रेशन इसको बहुत बार साइकोसिस जैसा भी ट्रीट किया जाता था। रिस्क फैक्टर्स इसमें क्या है कि अगर फैमिली हिस्ट्री है मूड डिसऑर्डर की, ठीक है, अगर आपको, और या फिर पास हिस्ट्री कभी रही है बाइपोलर डिसऑर्डर की, ठीक है। पेरीमेनोपॉजल या पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में देखने को मिलता था। क्रॉनिक मेडिकल इलनेस की वजह से इनबिल्ट हो गए डिप्रेसिव सिम्टम्स। सोशल आइसोलेशन एंड बेरीवमेंट, ये एज ऐसी होती है 40 to 60, जब एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट, अब 40 तो नहीं 60 की तरफ अगर जाए, तो या तो रिटायरमेंट ले रहा होता है, या फिर उसके किसी क्लोज फ्रेंड का या फैमिली मेंबर का, स्पाउस का डेथ हो गया होता है, तो ये एक सोशल आइसोलेशन और लॉस का पीरियड होता है, तो उस टाइम पे भी ये सब चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। एक जो आइडेंटिटी थी पेशेंट की, वो टोटली चेंज हो रही होती है। इटियोलॉजी की बात करते हैं, कैसे होता है। न्यूरोट्रांसमीटर डिस्फंक्शन में आपको वही याद करना है कि सेरोटोनिन कम होता है, डोपामिन कम होता है, नॉन एपिनेफ्रिन और HPA एक्सिस का। कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस देखे गए हैं लिम्बिक सिस्टम में, ठीक है। हार्मोनल में देखा गया कि मेनोपॉज के साथ कोरिलेट किया गया था, तभी बहुत बार कहते थे कि ये आपका मेनोपॉज की वजह से ही होता है, बट दिस इज नाउ रिडंडेंट। लेकिन लो एस्ट्रोजन का सेरोटोनिन लेवल के साथ वो देखा गया। एंड्रोपॉज की टेस्टोस्टेरोन कम हो गया, इसकी वजह से भी डिप्रेसिव सिम्पटम मेल में देखे गए, ये भी एक प्रपोज्ड हाइपोथेसिस है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, अगर किसी का पर्सनालिटी ट्रेट बहुत ज्यादा चीजों को एकदम अपने तरीके से करने का ऑब्सेसिव ट्रेट्स है, एंशियस अवॉइडेंट पर्सनालिटी है, या रिजिड थॉट पैटर्न है कि मुझे तो ये चीज ऐसे ही करनी है, तो एक एज के बाद आपको अडेप्ट करना आना चाहिए, बोलते हैं ना, तो वो अडेप्टेबिलिटी अगर नहीं है, तो इन पेशेंट्स में भी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं डिप्रेशन के। नेगेटिव सेल्फ कॉग्निटिव बायसेस में आपका होपलेसनेस है, नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन है, फीलिंग ऑफ गिल्ट है, तो ये सब चीजें भी आपका कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है। Again, life stressor, loss of spouse, retirement, financial instability, and lack of social support. All right. इसके क्लिनिकल फीचर्स अच्छे से देख लीजिए कि ये डिप्रेशन से थोड़ा अलग कैसे, ठीक है।
एक तो कि सिवियर एंड परसिस्टेंट डिप्रेस्ड मूड, ठीक है, विच स्पेशली वर्सनिंग इन द मॉर्निंग। सुबह उठते ही मुझे मन करता है कि सब खत्म हो गया, पेशेंट बोलेगा सुबह के टाइम पे सबसे खराब लगता है, आगे क्या करूं, दिन कैसा जाएगा कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। लैक ऑफ मूड रिएक्टिविटी, कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर आपका मन खराब है तो आपको किसी अच्छी जगह पे ले दिया जाए, आपका कुछ पसंद का काम कर दिया जाए तो आपको खुश होने लगते हैं, लेकिन ये चीज इस वाले में नहीं होती, ठीक है। डज नॉट फील बेटर इवन विद गुड न्यूज, ठीक है। साइकोमोटर रिटार्डेशन एंड एजिटेशन, सिवियर एजिटेशन, ठीक है, तो इसलिए इसको एजिटेटेड डिप्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें साइकोटिक सिम्टम्स ही बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं, ठीक है, स्पेशली डिल्यूजन यानी निलिस्टिक इन नेचर की दुनिया खत्म है, सब कुछ खत्म है, कुछ नहीं है, तो निलिस्टिक डिल्यूजन होंगे। और सोमैटिक डिल्यूजन भी अपने शरीर को लेके कि यहाँ पे कुछ चीज खराब हो गई, ये चीज खराब हो गई है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट सब सही रहेगा लेकिन फिर भी पेशेंट यही बिलीव करेगा। तो ये कुछ चीजें आपको पेशेंट में याद रखनी है इसके क्लिनिकल फीचर्स में। सुसाइडल आइडिएशंस बहुत सिवियर होते हैं अगर आते हैं तो पेशेंट में, और अटेम्प्ट की हिस्ट्री भी होती है। हेडेक, फटीग, जीआई सिम्टम्स बहुत होंगे। हाइपर एक्सैजरेटेड हेल्थ कंसर्न्स विद हेल्थ होगा, ठीक है। इंसोम्निया, अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग होगी। वेट लॉस एंड एपेटाइट डिस्टर्बेंसेस, तो इसके ये क्राइटेरिया हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मल डिप्रेशन से थोड़े कुछ चीजें आपको अलग दिखेंगे इन्वोल्यूशनल मेलांकोलिया में। इसमें भी आपको वैसे ही बढ़ना है इवैल्यूएशन में। ऑनसेट ड्यूरेशन की कब शुरू हुआ, ज्यादातर आपको एज लेट एज में दिखाई देगा, अर्ली में नहीं दिखाई देगा। सिम्टम्स बहुत सिवियर होंगे, सुसाइडल आइडिएशंस होंगे, साइकोटिक सिम्टम्स साथ में होंगे, निलिस्टिक डिल्यूजन होगा, आपको हाइपोकॉन्ड्रिकल सिचुएशंस हो सकती हैं, एपेटाइट डिस्टर्बेंस, वेट लॉस का हिस्ट्री, मॉर्निंग आवर्स में सबसे ज्यादा बुरा लगने की हिस्ट्री। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स में आपको कोई रीसेंट लॉस हुआ है, रिटायरमेंट है, या फीमेल मीनोपॉज अटेंड कर रही है, तो ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हो सकता है। पास्ट साइकाइट्रिक हिस्ट्री तो नहीं है, पास्ट हिस्ट्री या फैमिली हिस्ट्री ऑफ साइकाइट्रिक इलनेस तो नहीं है, स्पेशली मूड डिसऑर्डर की, ठीक है। कोई न्यूरोलॉजिकल या क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, कोई पेशेंट लगातार 10 साल से 20 साल से डायबिटीज है, तो बहुत बार ऐसे पेशेंट्स को भी इनबिल्ट डिप्रेशन आ जाता है, ठीक है। पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री, प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी कैसी थी और लाइफ में कैसा, डेली एक्टिविटीज ऑफ लाइफ को ये कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। फिजिकल एग्जामिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको मेडिकल कॉजेज रूल आउट करने हैं, कोई स्पेशली कार्डियोवैस्कुलर या रेस्पिरेटरी कॉजेज पे तो कुछ ऐसा चीज नहीं है। चेस्ट पेन की पेशेंट कंप्लेन कर रहा है तो इसको ये मत सोचना कि सोमैटिक कंप्लेन होगी, हो सकता है सच में कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो, तो ये सब चीजें आपको रूल आउट करनी है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में अगेन जर्नल अपीयरेंस, बहुत बार पेशेंट डजंट वांट टू कीप हिम और हरसेल्फ कैम्प, तो अनकैम्प्ड हो सकता है, आई कांटेक्ट कम होगा, साइकोमोटर रिटार्डेशन होगा, आउटपुट रिड्यूस होगी, एकदम मोनोटोनस बोलेगा, डिप्रेस्ड या ब्लड अफेक्ट हो सकता है, थॉट प्रीऑक्यूपाइड विद होपलेसनेस, आपके शरीर को लेके जो आपके इलनेस को लेके जो कंसर्न्स है, या फिर डिल्यूजन्स हो सकते हैं, ठीक है, गिल्ट होगा, निलिस्टिक डिल्यूजन्स होंगे, मे हैव हेलुसिनेशन और मे नॉट हैव, ठीक है। ओरिएंटेशन में भी आपकी इंटेक्ट होगी, पता होगा मैं कहाँ पे हूँ, क्या कर रहा हूँ, कौन लोगों से बात कर रहा हूँ, टाइम क्या हो रहा है, लेकिन अटेंशन कंसंट्रेशन बिकॉज ऑफ डिप्रेसिव सिम्टम कम होंगे। इंसाइट एंड जजमेंट इज यूजुअली पुअर। अगेन आपको यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि एज को ध्यान में रखते हुए आपको सारे के सारे बेसिक इन्वेस्टिगेशन, स्पेशली एल्डरलीज में B12 B3 को भी देखना है, क्योंकि उसकी वजह से भी आपको न्यूरोपैथिक पेन हो सकता है, बोन में पेन हो सकता है ना, ठीक है। ECG, चेस्ट एक्सरे भी एक मस्ट हो जाता है, न्यूरो इमेजिंग, EEG, ठीक है। अब कुछ टेस्टिंग है, जेरियाट्रिक डिप्रेशन रेटिंग स्केल है, अगेन हैमडी है। इसमें ना आपको MMSE याद रखें, मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, ये आपका ज्यादातर आपका कॉग्निटिव जो फंक्शन है, जो मेमोरी, टेंशन, बिहेवियर वाला है, उस पे उसके लिए आप यूज करते हैं एल्डरलीज में, ठीक है। तो रोल आउट की कोई डिमेंशिया तो नहीं है, ठीक है। मैनेजमेंट अगेन एंटी डिप्रेसेंट्स आपको देनी पड़ती हैं, SSRIs, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर, जैसे कि सर्ट्रेलिन, एसिटिलब्रम, कंपैरेटिवली सेफर मानी जाती हैं एल्डरलीज में, कि इसके कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस कम है, GI और यूरिनरी कॉम्प्लिकेशंस कम है, ठीक है। फिर आपका ट्राईसाइक्लिक या SNRI भी दे सकते हैं। एंटीसाइकोटिक सेकंड जनरेशन में लो डोज में दिया जाता है, ठीक है। एल्डरलीज में क्यूटियापिन, रिस्पेरेडोल अच्छा काम करते हैं। मूड स्टेबलाइजर्स, अगर मूड स्विंग है तो लिथियम आपका प्रिफर्ड है। एंजियोलिटिक बहुत कम ड्यूरेशन के लिए, बेंजोडाइजेपिन अगर दे रहे हैं जैसे लोराज़ेपाम, एल्प्राज़ोल, आपने सुना होगा ना, तो इनको बहुत कम ड्यूरेशन में, क्योंकि इनका डिपेंडेंस पोटेंशियल होता है, और प्लस एज, ये ऐसी एज है कि इसमें जितना हो सके अवॉइड किया जाए, ठीक है। एंड सप्लीमेंट्स, विटामिन D3, विटामिन B12, B1 था, ये सब चीजें आपको विटामिन सप्लीमेंट, अच्छी हेल्दी ईटिंग होनी चाहिए, ठीक है। ECT आपका और CBT का रोल भी देखा गया, ठीक है। जो CBT है, बिहेवियरल थेरेपी का रोल इसलिए है बिकॉज आपको आगे चीजों को अपने जो
कॉग्निटिव बायसेस हैं, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं, उनको कैसे अच्छे से एक्ट अपॉन करना है, ठीक है। जो मालएडेप्टिव कोपिंग आपने सीखी है उस पे कैसे एक्ट करना है, ये आपका सीबीटी का रोल होता है। देन आपको इमोशनल सपोर्ट देना है, पेशेंट को एक वोकेशनल ट्रेनिंग देके एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेल्प्स इन अडेप्टिंग एजिंग रिलेटेड साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर एंड फैमिली और जो केयर गिवर है उनको भी साइको एजुकेट करना है, ठीक है। स्लीप हाइजीन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, एक इंडिपेंडेंट लाइफ होना इंपॉर्टेंट है एल्डरलीज के लिए। वी आर डन विद क्या बोलते हैं इन्वोल्यूशनल मेलैंकोलिया। लास्ट टॉपिक है, विल डू इट क्विकली, छोटा टॉपिक है। न्यूरेस्थीनिया की बात करते हैं तो ये आपका ओरिजिनेट हुआ था 19th सेंचुरी में, जो अमेरिकन न्यूरोलॉजिस्ट जॉर्ज मिलर बर्ड ने दिया था, ठीक है। तो इट वाज कंसेप्शुलाइज्ड एज अ कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम डिप्लीशन ऑफ नर्वस एनर्जी ड्यू टू मॉडर्न लाइफ स्ट्रेसर। और इसमें क्या क्या होता था, बहुत ही फटीग, बहुत ही थकान महसूस होती थी, वीकनेस होती थी और बहुत सारे सोमैटिक कंप्लेन होते थे, ठीक है। DSM-5 इसको इसीलिए क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को न्यूरेस्थीनिया को ही DSM-5 क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसमें फटीग, जॉइंट पेन, बॉडी पेन, इन सब की कंप्लेंट्स होती है। इसमें अगर प्रिवेलेंस की बात करें तो अगर साथ साथ कोई कोमॉर्बिड डिसऑर्डर यानी कि एंजाइटी और डिप्रेशन है तो इसका प्रिवेलेंस कंपैरेटिवली 3 to 5% है। प्योर न्यूरेस्थीनिया 1 to 2% है, ठीक है। अगेन इट इज कॉमनली सीन इन विमेन इन कंपैरिजन टू मेन एंड मिडिल एज्ड एडल्ट्स में ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। इटियोलॉजी अगर देखें तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है इसमें, क्रॉनिक स्ट्रेस एंड ऑटोनॉमिक डिस्फंक्शन लीडिंग टू नर्वस सिस्टम एग्जॉशन, ठीक है। कोई बार बार आपका कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेस है, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस है या मेंटल स्ट्रेस है, तो ऑटोनॉमिक आपका डिस्फंक्शन हो जाता है। आपका एंजाइटी के सिम्टम्स, आपके बीपी वाले जो फ्लक्चुएशन के सिम्टम्स है, ये देखने को मिलेंगे। कुछ थ्योरीज इसको न्यूरो एंडोक्राइन डिस्फंक्शन या ऑटो इम्यून डिजीज के साथ भी देखने को मिलते हैं कि सेल्फ इंड्यूस्ड इम्यूनोपैथी हो जाती है, तो इस वजह से भी ये सिम्टम्स आपके ऊपर आते हैं, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस में अगेन सेरोटोनिन और डोपामिन आपको याद रखना है। पॉसिबल जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन टू फैटिग रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ठीक है, कि फैमिली हिस्ट्री ऐसी है कि बहुत जल्दी आपको फटीग आ जाता है। साइकोसोशल फैक्टर्स अगेन सप्रेस्ड इमोशन, अनरिजॉल्व्ड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, और आपका हाई न्यूरोटिसिज्म है, लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस है, तो ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स में ये सिम्टम्स हैं, तो ये आपका कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इस डिसीज की तरफ। सोशल फैक्टर्स आपका हाई ऑक्यूपेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रेस, आपके अगर काम में जॉब में बहुत ज्यादा प्रेशर है आपको कि ये सब चीजें करनी है, एक टाइम लिमिट के अंदर करनी है, वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा है, घर में आपको आके रेस्ट नहीं करने को मिल रहा है, ठीक है। अर्बन एंड लाइफस्टाइल एंड इंफॉर्मेशन ओवरलोड, पुअर वर्क लाइफ एंड लैक ऑफ सोशल सपोर्ट। क्लिनिकल फीचर्स इसके भी अच्छे से देख लीजिए। पर्सिस्टेंट फटीग, थकान जो रेस्ट करने के बाद भी नहीं जाती। अगर आप थकते हो तो आप थोड़ी देर रेस्ट करो, मे बी आप एक दिन के लिए थोड़ा रेस्ट कर लो, सो जाओ, तो आप ठीक हो जाते हो। इसमें इवन आफ्टर रेस्ट के बाद भी फटीग नहीं कम होती। फिजिकल वीकनेस एंड लेथार्जी, फ्रीक्वेंट हेडेक्स एंड डिजीनेस, स्लीप डिस्टर्बेंस में अगेन सोने के बाद भी फ्रेश फील नहीं कर रहे, अनरिफ्रेशिंग स्लीप है। पुअर कंसेंट्रेशन एंड मेमोरी इम्पेयरमेंट, सोमैटिक कंप्लेन में आपका GI डिस्टर्बेंसेस, जॉइंट पेन, मसल पेन, पैल्पिटेशन एंड इमोशनल इनस्टेबिलिटी, बहुत जल्दी चिड़चिड़ा हो जाएगा, इरिटेबिलिटी या सैडनेस, ठीक है। सो दिस इज ऑल few of the examples of what are the chief complaints we can see in neurasthenia, ठीक है। ICD-10 आपको बोलता है न्यूरेस्थीनिया की क्या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देता है। ये बोलता है persistent and distressing complaints of increased fatigue after mental effort, or persistent and distressing complaint of bodily weakness and exhaustion after minimal effort. At least one of the following symptoms होने चाहिए। क्या है? Feeling of muscular aches, dizziness, tension headache, sleep disturbances, inability to relax, irritability and dyspepsia, ठीक है। Chronic fatigue के साथ इनमें से भी कोई एक symptom होना चाहिए। और उसके बाद any autonomic or depressive symptoms present and not sufficiently persistent and severe enough to fulfill the criteria for any other specific disorder. ये जो सिम्टम्स हैं ये बोलना चाह रहा है किसी और साइकेट्रिक इलनेस की वजह से नहीं होने चाहिए। मेनिया, आपका बाइपोलर डिसऑर्डर या फिर जो हमने इन्वोल्यूशनल मेलैंकोलिया देखा, वो डायग्नोसिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली क्रॉनिक फटीग सिम्टम DSM-5 भी आपको ऐसे के कुछ सिम्टम्स ये देख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस में MDD में भी मूड डिस्टर्बेंसेस होंगे, लेकिन क्रॉनिक फटीग जैसी वो कंप्लेन आपको कम देखने को मिलेगी। जनरलाइज एंजाइटी में आपका एंजाइटी वुड बी मोर परसिस्टेंट देन फटीग।
सोमेटोफॉर्म और सोमेटाइजेशन में क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर इलनेस को लेके बार बार उसको इन्वेस्टिगेशंस कराना और उसके बारे में सोचना। सिमिलरली हाइपोथायरॉयडिज्म में भी आपका थायराइड डिसफंक्शन जो डायग्नोसिस है वो आई। अनीमिया, वाइटामिन डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स को भी इससे डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। ठीक है, अगेन आपको हिस्ट्री में वही सब चीजें याद रखने की, कैसे ऑनसेट हुआ है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, कि जो सिम्टम्स है कम फटीग के, वीकनेस के, वो ज्यादा प्रोमिनेंट है कि कोई और सिम्टम्स ज्यादा प्रोमिनेंट है, और ऑक्यूपेशनल एंड सोशल लाइफ कितनी डिस्टर्बेंस हुई है। ठीक है, कोई पास्ट हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक इलनेस तो नहीं है, कोई मेडिकल या सर्जिकल इलनेस तो नहीं। देन यू विल लुक आउट फॉर सिस्टमिक इलनेस और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन आप फिजिकल एग्जामिनेशन में। एमएससी में अगेन आपका जहां तक है साइकोमोटर एजिटेशन या रिटार्डेशन देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मूड इफेक्ट डिप्रेस्ड मिल सकता है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस फटीग। फॉर थॉट और परसेप्शन ज्यादातर आपका नॉर्मल रहता है। ठीक है, जजमेंट एंड इंसाइट कैन बी वेरी। ठीक है, कॉग्निटिव फंक्शन भी मोस्ट ऑफ टाइम इट इज प्रिजर्व, बट अटेंशन, कंसंट्रेशन एंड मेमोरी बिकॉज ऑफ प्री ऑक्यूपाइड ऑक्यूपेशन विद आपका फटीग की वजह से कम हो सकती है। इनसाइड आपका पेशेंट, कुछ पेशेंट रियलाइज कर सकते हैं कि ये हो सकता है कि फिजिकल इलनेस ना होकर स्ट्रेस की वजह से कंट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है, देन आपके कुछ स्केल्स हैं, जैसे डिप्रेशन एंजाइटी के साथ साथ इसमें फटीग सिवियरिटी स्केल, एक नाम याद रख लेना। अगेन इसमें भी आपको फिजिकल कॉजेज रूल आउट करने हैं कि अनीमिया तो नहीं है, सीबीसी कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, सीबीसी कराएंगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट, लिवर एंड किडनी फंक्शन टेस्ट। ठीक है, B12 D3 का लेवल एंड पासिंग ब्लड ग्लूकोज। मैनेजमेंट, इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और इन सब चीजों को समझना जरूरी है। आप पेशेंट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, अरे ये तो स्ट्रेस की वजह से। आपको अंडरस्टैंड करने की वो प्रॉब्लम जो कंप्लेन कर रही है वो सच में है। ठीक है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कंडीशन टू रिड्यूस एंजाइटी, ट्रीट आइडेंटिफाइबल एंड अदर कोमॉर्बिड साइकाइट्रिक इलनेस कोई है, और नॉर्मल एक्टिविटीज में वापस आना। रेगुलर एक्सरसाइज, स्लीप हाइजीन और अच्छा खाना। ठीक है, एंड वर्क लाइफ बैलेंस इज इंपॉर्टेंट इन दिस। सो फार्माकोथेरेपी में अगेन SSRIs का रोल देखा गया है। मोडाफिनिल आपका टू रिड्यूस एक्सेसिव फटीग और सप्लीमेंटेशन। ठीक है, CBT बिहेवियरल थेरेपी का रोल है टू आपको जो भी माल अडेप्टिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर है उस पर एक्ट करने के लिए। सो विद दिस विल कंक्लूड। हमने 3 अलग अलग मूड डिसऑर्डर की चीजें देखी, सब में आपको कुछ कुछ चीजें सिमिलर लगी होंगी, मूड की या फिर फिजिकल सिम्टम्स की, लेकिन आपको ये याद रखना है कि उनको डिफरेंशिएट कैसे करना है और ट्रीटमेंट कब टाइम पे शुरू करना। ठीक है, विल कंक्लूड, थैंक यू। Morning to all. So today we are going to learn about alcohol use disorder, which is defined in your syllabus as alcohol mental disorder. Actually, it is a substance use disorder. We will be covering introduction part, epidemiology, etiology, clinical features of alcohol use, evaluation of the person, management of alcohol use disorder, conclusion with references. So let's start with introduction. Substance related disorder is an umbrella term under which all kind of substance fall, and it is because of repeated and excessive use of that substance that lead to impairing life or distress in the life or other occupational or social or scholastic underperformances. The substance can fundamentally change the brain chemistry or function. If one use the substance, it goes into the body and then into the brain, and it causes certain type of changes because of which someone feels some kind of effect of it. The effect of different substances are different, and it can lead to wide range of physical and mental health issues if it is excessive and continuous for prolonged period of time. The various substances can be categorized as inhalants, cocaine, opioids, hallucinogens, marijuana, also known as cannabis, alcohol, and prescription medications also, like benzodiazepines and the drugs of opioid group. Basically, alcohol is a CNS depressant.
although one get to know that it cause excitement in behavior of the person, but in the brain it causes suppression of neuronal functions which can affect cognition of the person, behavior of the person, and motor functions. So alcohol contains ethanol, which is a psychoactive substance, and it's a dependence producing agent. In low doses, it induces euphoria, means certain kind of happiness, sociability, and relaxation. So what happens is, because it's a depressant, so it suppresses the function of neurons, and inhibition which the person have is breached or break. So the person becomes more sociable because a barrier of his defense ecosystem is breached, and he becomes more euphoric, sociable, or you can say extrovert. And higher doses leads to cognitive impairment, loss of coordination, and eventually unconsciousness. When the abundance of substances rapidly increase in the brain, it causes more dysfunctions. Now the disorder, why it is called as disorder is, it has a pattern of alcohol use leading to clinically significant impairment or distress. Alcohol related disorder fall under the substance related and addictive disorder in DSM-5, and mental and behavioral disorder due to use of alcohol in ICD-10. So ICD-10 is International Classification of Diseases, which is followed by WHO countries, and in America the classificatory system DSM-5 is there. You know about the DSM-5 and ICD-10? You must have learned in the previous classes. Now the common terminology which is used in the context of substance use, we will discuss about it. One is abuse. Abuse is use of any drug, usually by self-administration, in a manner that deviates from approved social or medical pattern. The drugs can be used for medical purpose also, and therapeutic purpose also. For example, benzodiazepines are given for anxiety disorder, and barbiturates are used for curbing the seizure or epileptic activity. So it has a medicinal purpose also. If it is deviated from approval, then it is called as abuse. Harmful use, defined as a pattern of psychoactive substance use that is causing damage to health. Now the level of use is such that it is causing harm, and this damage may be physical or mental or social. It may be social and personal also. The diagnosis requires that actual damage should have been caused to the mental or physical health of the user. The term addiction. So addiction is a treatable chronic medical disease involving complex interaction among the brain circuits, genetics, environment, and individuals' life experiences. People with addiction use substance in a way that become compulsive and often continue despite harmful consequences. So it becomes compulsive for that person, and it leads to harmful consequences, maybe physical or mental. There is a condition called intoxication. Intoxication is reversible and transient state of altered consciousness, behavior, and cognition due to recent substance use. The person has taken substance rapidly in a greater amount, and he will be relieved by few hours or by few days. So this is called as intoxication. There is a term called withdrawal. What is withdrawal? Is a syndrome that occurs after stopping or reducing the prolonged substance use. The person is using the substance for many
months or many years, and he tries to cut down the substance or reduce the quantity, then it leads to withdrawal state, which may be physiological or psychological with the physiological and psychological symptoms. There is a term called as tolerance. Tolerance is the need for increasing the dose of substance. You must have known that in the pattern of substance use, the person starts with low dose, and by the time they increase the dose to get the same effect from the higher doses of that substance, maybe alcohol also. Cross tolerance, when tolerance to one substance leads to tolerance to other. For example, you have heard about the substance abuser do not get anesthesia as with the same dose with the other person gets during the pre-anesthetic checkup during the anesthesia phase, because of the cross tolerance. Certain drugs like midazolam are used for anesthesia, which is a benzodiazepine drug, and if a person is abusing benzodiazepine, other drug may found be cross tolerant to midazolam. This is called as cross tolerance. Dependence. Dependence is a state in which an individual continues substance use despite negative consequences. What happens in dependence? We say the person is dependent on the substance when he used the substance while having the negative consequences, maybe physically or mentally. Physically, like alcoholic liver disease. The person knows that liver is weakened or damaged. Despite of that, he used to use the substance. Dependence also has the feature of tolerance, feature of withdrawal when he tries to cut the substance, and compulsive drug seeking behavior. The drug seeking is compulsive. He himself voluntarily forcibly seek the substance. And dependence can be physiological or psychological. There are certain criteria for diagnosing dependence, and it has both the criteria, the physical criteria and psychological criteria. Now the epidemiology. The alcohol accounts for 5.3% of global death and 5.1% of the global disease burden. 14.6% of Indian population uses alcohol, and it accounts for 20% of all injuries due to RTA or other kind of violent or homicidal behavior. It is more common in men, but it is rising in females. High prevalence of alcohol use was found in states in India such as Chhattisgarh, Tripura, Punjab, Arunachal Pradesh and Goa. Onset is often in late adolescence or early childhood. It is quite common in adolescent period and early adulthood period. Though there are 16 crore users in India, 5.7 has problem with the substance, alcohol use, and 2.9 crore dependent on the substance, the alcohol use. The prevalence by the population group are as follows. Total population is 14.6%. All males are among the substance users are 27%. All females are 1.6%. Children from 10 to 12 years are 1.3%, and adults, including both the genders, less than 18 years are 17.1%. So they are the users of alcohol, may be dependent or not. These are out of complete. Etiology, why it happens, what are the causes of alcohol use disorder, divided into three: biological factors, psychological factors and social factors. So by and large, biological factors can be gender,
maybe physical illness, painful conditions, mental illnesses. In other psychiatric illnesses, the pattern of use is more prevalent. Genetic of the person, the neurochemistry of the brain, and reaction to stress. In psychological factors, learning, the personality of the person, the behaviors, emotions, the coping skills, resilience, and traumatic experience in past or in the childhood period may play a role. In social context, social support to use the substance. If it is commoner to use that substance in that society, the chances of abusing that substance are high. Socioeconomic status also play a role. Childhood experiences, housing, food security, education, employment, and discrimination, all these play factors in causing the alcohol use disorder. In biological factors, first is genetic factor. So heritability of alcohol use disorder is around 50 to 60% if genetic loading is high in the family. If first degree relative of alcohol, if the first degree relative of a person is abusing alcohol, so there are 3 to 4 times higher risk of developing alcohol use disorder. Genetic variations in genes like alcohol dehydrogenase and aldehyde dehydrogenase, which influence alcohol metabolism, may also play a role. The person who is having lesser number of these receptors or the enzymes, so this also cause the and are the potential for developing alcohol use disorders. A neurobiological mechanism which happens in the brain, the dopaminergic reward system, you must know about the reward system in the brain. The alcohol increases dopamine release and reinforcing addictive behavior. Any kind of pleasure we get by any kind of activity like playing some game, having certain kind of food, having certain kind of activity, conversation with certain kind of your good friend, releases dopamine to get that pleasurable effect. What happens in substance use disorder? The substance causes the release of dopamine very fast and in the excessive amount. So the pleasure because of that substance is more intense and more high. So chances of repeating the substance use is more with it by virtue of this reward system. The another one is GABAergic and glutamatergic imbalance. Alcohol enhances GABA activity. The GABA activity is inhibitory activity. Inhibitory activity means it suppresses the CNS function and inhibits glutamate activity, which is excitatory and causing CNS depression. So alcohol is actually a CNS depressant, not the excitatory substance. In endorphin and opiate system, alcohol increases beta endorphins, so enhancing pleasure. So beta endorphins are also implicated in feeling pleasure. This system is also activated because of the alcohol use. In psychological factors, personality traits like impulsivity and sensation-seeking behavior linked to early onset of alcohol use. Neuroticism and anxiety sensitivity. Individuals use alcohol for self-medication. So you must have seen that the person who abuses the substance at the time of intoxication, they are less of anxious. They do the inhibitory system uh, does not work. For example, in driving vehicle, when the person is in non-intoxicated state, they may judiciously use the vehicle, in the controlled speed. And you must have heard about the road traffic accidents in the influence of alcohol. This is because of this uh, anxiety relieving character of the substance.
Stress and coping mechanism, self-medication hypothesis, already discussed. Alcohol is used to cope with anxiety, depression, and trauma. So, for a certain period of time, it relieves the anxiety and depression and the traumatic experiences or traumatic memories. Maladaptive coping, lack of adaptive stress management, increase alcohol dependence risk. If the coping strategies of that person is weak, so they may try to relieve it because of the by virtue of the substance. Environmental cues, for example, bars, parties, which may also trigger the craving for the substance. In environmental cues for dependent person, maybe the factors for which the person is conditioned, the street, the table, the room in which he used to have the substance, or the environment uh, in which he had used the substance with his friends. If he goes in that environment without alcohol, he may feel like craving for the substance. So environmental cues also plays a factor in causing the alcohol use disorder. Social factor, cultural and societal influences, and countries with high social acceptability of alcohol have higher consumption rate. In the communities where acceptability of substance is normalized, for example, in our setup, tobacco and smoking is a normalized substance abusing activity. A person is smoking in the public places also, although it is uh, banned by the Honorable Supreme Court of India. Then also the people are abusing that tobacco in the social situations also. Family and peer influence. Adolescents and young adults are influenced by social drinking norms. If they are influenced by the person in the family who is abusing substance, or in the friend circle most of them are abusing the substance, they may also found themselves fond of that. Socioeconomic status and stress. Financial stress and lack of access to mental health care may also play a role. Risk is also linked to high stress jobs and social drinking culture, already discussed. And if the job is highly stressing, the person may go for substance for temporarily relieving the stress because of that job. Now coming to the clinical features of substance alcohol use, there are different stages of this disorder. For example, one is acute intoxication, and a person can have a withdrawal state, person can have an intoxicated state, a person can have a dependent stage. So on the basis of stage, the clinical features are different. For acute intoxication, for mild intoxication, the person may have euphoric experiences, over talkativeness, and feel relaxed. The judgment is impaired, and motor coordination is also impaired, because of which a person can have accidents, falls, road traffic accidents, and reduce attention and reaction time also lead to these accidents. In moderate intoxication, one may find slurred speech, impaired motor coordination leads to ataxia, disinhibition, and inappropriate behavior and mood changes. The person can become disinhibited or may act violently, otherwise he is not. In severe intoxication, marked ataxia and confusion may be there, stupor or drowsiness. One may found nystagmus and diplopia as a ophthalmologic signs. Respiratory depression can occur, hypertension and hypothermia. So this is also a myth that rum causes hyperthermia. Rum creates a hyperthermic condition, but it is not. It causes hypothermia. The person feels like as if he is not feeling the cold, but the cold is actually there. Temperature is there. For example, 7, 8, 9 or 10 temperature. The temperature doesn't change. It is the perception of the person because of the
intoxication changes. He does not feel the cold because of the CNS depression. Brain is not functioning properly. Brain is not able to detect the temperature of environment. That is the fact. Now come to the dependence. What is dependence? A definite diagnosis of dependence should usually be made only if three or more of the following have been present together at some time during the previous year. For example, a person has these features 6 months back, now he is abstinent, then also the diagnosis stands. The diagnosis of dependence is stands if out of 6, 3 features are present during any point of time in the last year. So first criteria is a strong desire or sense of compulsion to take the substance. A strong desire means a strong craving. Craving should be there. Difficulties in controlling substance taking behavior in terms of its onset, termination and level of use. So there is difficulty in controlling the onset to start the abusing substance in the evening or in the morning or any point of time. He cannot control the onset. The person cannot also control the termination. I have to take this much of amount, but after that much of amount, the person continues to take the substance. So this is discontrolled. And levels of use, how much level he has to use. A physiological withdrawal state already discussed, when substance use has ceased or been reduced. Evidence of tolerance such that increased doses of the psychoactive substance are required to achieve the same amount of effect of that with the lower doses of the substance. So these are the 4: strong desire, difficulties in controlling, physiological withdrawal state, and evidence of tolerance. Further, progressive neglect of alternative pleasures. Before the person was dependent on the substance, now he uh, used to have interest and alternative pleasures like playing game, watching TV, going with friends, doing certain activities which he now not doing because of this substance abuse pattern. So there is a neglect of alternative pleasures. In this neglect, increased amount of time necessary to obtain or take the substance or to recover from its effects is there. So time is spent on to take the substance and or to recover from the effects of the substance. And there may be physical harm, such as harm to the liver through excessive drinking and persisting with substance use despite clear evidence of overtly harmful consequences. The person knows that the substance abuse is causing harm to him physically, mentally, financially, socially, or on the personal level, but still he has to take the substance to relieve the withdrawal state. The person cut down the substance, he will have the withdrawal state, which is very uncomfortable to the person, and to curb that withdrawal state, the person started taking again the substance, despite knowing the harmful effects of alcohol. A person may come in withdrawal state. A person abusing the alcohol and may come for treatment in withdrawal state. So withdrawal state usually starts after 6 to 8 hours of last use, and it can be divided into mild, moderate to severe and complicated withdrawal of alcohol. In mild withdrawal, the person is not dependent on heavy amount. Person can have mild withdrawal like tremors in hands, tongue and eyelids. A person can have anxiety, agitation, restlessness and insomnia, nausea, vomiting,
sweating, palpitation, mild hypertension and tachycardia. These are the autonomic instability. These are the autonomic symptoms. A person can have diarrhea, fever and malaise. In moderate to severe, on addition to these mild withdrawal symptoms, one can have seizures, severe tremors, increased heart rate, fever, nausea, vomiting. One can have hallucinations also. Hallucinations means perception without any stimuli. You know about hallucinations? In last lecture you must have read. And in agitation may be increased from previous level. The complicated withdrawals are delirium tremens, Wernicke's encephalopathy and Korsakoff syndrome. What are these? We will learn about the complicated withdrawal. In delirium tremens, what happens is the person becomes delirious. Delirium is a condition in which there is a fluctuation of consciousness. The consciousness of the person is fluctuating over the period of hours in a day. For certain period of time, the person remains all right, seems to be remain all right, and then in disoriented phase, the consciousness is fluctuated. The person will experience marked tremors. Hallucinations can occur in this stage, which can be vivid, terrifying, and particularly in the vision area and tactile modalities. Do you know about the hallucinations? Profound autonomic instability may be found in withdrawal state, which may be hyperthermia, severe hypertension, arrhythmias, sweating, and all the symptoms of autonomic system. High mortality risks are there with alcohol withdrawal when it is untreated. So this should be treated in ICU setup, the complicated withdrawals. The term Wernicke's Korsakoff syndrome has two syndrome. One is Wernicke's encephalopathy and another is Korsakoff syndrome. When there is severe lack of thiamine, vitamin B1, then one can develop Wernicke's encephalopathy, which is a sudden and severe brain disorder characterized by global confusion, oculopathies and ataxia. You can remember this by GOA, Goa, global confusion, oculopathies and ataxia. Oculopathies can be nystagmus, lateral orbital palsy, gaze palsy. Korsakoff syndrome is a long-term chronic memory disorder. When Wernicke's encephalopathy is added upon by the memory impairment, then it is called as Korsakoff syndrome. This syndrome means permanent damage to the brain has occurred. There are lots of damage in the neuronal cells, because of which the person is now not remembering the past or recent memories. The features are inability to form new memories. Anterograde amnesia and retrograde amnesia is the feature of this Korsakoff syndrome. Now, how to evaluate a person who is dependent on alcohol or using alcohol? First, one have to take a comprehensive history. A thorough history helps assess alcohol consumption pattern, consequences, and the dependence stage. Alcohol use history in terms of onset, the duration, the frequency of substance use, the quantity which he is using, if there is binge pattern of drinking, the stage of tolerance and withdrawal symptoms should be asked. Other substances like cannabis or any kind of other dependence or other use like cannabis, opioid, benzodiazepines are comorbidly used by the person or not. Comorbid other psychiatric illnesses are also important like depression, schizophrenia, anxiety disorder. A person with anxiety disorder may be abusing the substance as a medication to relieve his anxiety. So comorbid psychiatric illnesses are also be ruled out. Legal and personal history is also important. If the person is undergoing any trial or not, any kind of case he is facing.
The consequences of alcohol use should be ruled out, like medical problems, liver disease, neuropathies, psychological problem, depression, the kind of aggression, social issues like legal and occupational issues should be evaluated. The person should be evaluated as a whole. It is not only the person and the environment around him. Family history is also important. Genetic predisposition, codependence in the family. If the person in the family is also dependent on the substance, so it is better to treat them simultaneously. है ना? Previous treatment attempts, prior detoxification, rehabilitation, medication adherence, whether the person has been treated in the past, what was the outcome, what was the reason for relapse, and all factors should be noted to treat the person in the current scenario. Physical examination is important. We all know about the general examination. In case of alcohol, vitals should be monitored. A person can have malnutrition because of the poor absorption because of chronic alcohol dependent pattern. Dehydration may be there, signs of intoxication or withdrawal should be noted. In neurological examination, numbness, tingling because of vitamin B1 deficiency. If the person is having confusion, ataxia, nystagmus, memory impairment, to look for the Wernicke's encephalopathy and Korsakoff syndrome. Cardiovascular system, hypertension, arrhythmias, and cardiomyopathy is also be looked upon because a prolonged use of alcohol can lead to cardiomyopathies. So one should not focus on the dependent pattern. One should also focus on the physical part of the person because the person can have comorbid physical and other illnesses. In mental state examination means what kind of mental status the person is having. Appearance and behavior should be checked out whether whether he is having disheveled condition, the person is in intoxicated state, whether tremulousness is there, irritability is there or not. Psychomotor activity like agitation and slowing should be noted. Speech should be noted. May be found slurred in case of intoxication or pressured in case of withdrawal. Mood and affect. Patient can have euphoric mood in intoxicated phase and dysphoria and irritability in withdrawal state. Thought process, whether is organized or disorganized, the person is having delusion or not, the person is having perceptual abnormalities like auditory hallucinations, visual or tactile hallucinations, cognitive impairments like memory deficits, poor concentration, insight and judgment, often impaired regarding alcohol related harm. So it should be checked to fulfill the diagnostic criteria of alcohol dependence. Motivation should also be checked. Whether the person is motivated to leave the substance or not. The person has voluntarily approached to the clinician or whether it is involuntary approach, what kind of motivation the person is having, whether he wants to leave the substance, quit the substance or not, what kind of help he needed in the treatment should be noted. So there are certain scales for alcohol use assessment. One is CAGE questionnaire. CAGE questionnaire is the CAGE stands for C for cut down, A for annoyed, G for guilty, E for eye opener. So quick screening can be done by this CAGE questionnaire whether the person wants to cut down the substance, whether he is annoyed because of this use pattern, the person feels guilty or not, the person uses the substance as an eye opener or not. As soon as the person wakens up in the morning, how much time he used to take the substance. Audit is for alcohol use disorder particularly, and it is known as alcohol use disorder identification test. CIWAAR is Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol Revised. This is also a skill. The another skill is SADQ, Severity of Alcohol Dependent Questionnaire. On scale on these scale, one can assess the severity of alcohol use disorder clinically.
Investigations which are required in alcohol use disorder are blood alcohol concentration may be required in case of intoxicated state, liver function test for liver impairment like gamma glutamyl transferase, AST and ALT ratio, which should be more than 2:1 to suggest alcohol liver disease. Complete blood count can show macrocytosis, which leads to increased MCV. Anemia may be found because of the deficiencies of minerals and vitamins. Thrombocytopenia may be the finding. Electrolyte and metabolic panel like hypokalemia, hypomagnesemia, and hypoglycemia can also be checked. Thiamine levels to determine the Wernicke's encephalopathy. Urine drug screening can be done to assess polysubstance use. Urine drug test can be done if the person is abusing multiple substances at a time. EEG for certain patients, MRI and NCCT brain may be required to determine the permanent damage to the brain cortex. USG abdomen, obviously for hepatic involvement, ECG and endoscopy. Wherever is indicated and required, these tests can be done in a alcohol dependent person. The differential diagnosis alcohol use disorder patient can have is hypoglycemias, can cause confusion, slurred speech, which is similar to intoxication, hyperthyroidism, hepatic encephalopathy, delirium due to other causes. Delirium is a condition which is not particular for the alcohol withdrawal, complicated alcohol withdrawal. Delirium is a condition can occur in other pathology also, like infections, like electrolyte imbalance and others. Seizure disorder can be differential diagnosis because in a withdrawal state the person can have seizure activity as a withdrawal seizure. Traumatic brain injury, bipolar disorder, generalized anxiety disorder and other substance use disorder can also be the differential diagnosis. Now management we will discuss in a very short, because you are not supposed to uh, treat what are the modalities is prescribed in this management part. So management can be in 4 phases. One is acute management, then is the withdrawal treatment and relapse prevention and psychosocial interventions. So acute management for the person who has arrived at hospital and he needs the detoxification uh, because of that substance. One can have withdrawal treatment. If the person has came in the withdrawal state already, so one can have to treat the withdrawal symptoms. And when the person is detoxified, then the strategy of relapse prevention should be taken into account by means of medications and psychosocial interventions both. So in acute intoxication, supportive care is required. IV fluids may be given for dehydration. Thiamine replacement can be given to replace the vitamin B1 deficiencies, and glucose administration. But glucose administration for energy is not be instituted before the vitamin B1 is given, because glucose metabolism require vitamin B1. If B1 is not there, then this glucose metabolism leads to toxic substance in the brain cells, which can further leads to brain damage. In withdrawal management, the drugs which are used, I am not giving the comprehensive treatment plan for withdrawal state. One should know about which kind of drugs and other treatment are required. Benzodiazepines are given to replace the alcohol. Alcohol and benzodiazepines are act on the same receptor, which is GABA receptor, and these drugs are in calculated dose given in the withdrawal state and gradually taper down uh, within the 7 to 10 days, so that one can not have the withdrawal symptoms. Thiamine, parenteral and oral should be given. IV fluids for dehydration. If the person is agitated
Otherwise, or by virtue of delirium, can be given antipsychotics to curb the agitation. Beta blockers, propranolol and clonidine can be given for autonomic instability. Because of autonomic hyperactivity is there, so these drugs can help to curb them. Carbamazepine, valproate can be given to given for stopping the seizure. Treatment of co-occurring psychiatric or medical illnesses, if they are these are there. In relapse prevention, when the person is detoxified after in 7 to 10 days or 15 days, the person can be put on relapse preventing drug, which are known as anti-craving drug. And the one is naltrexone, the another is acamprosate, third one is baclofen. There is one drug also mentioned here is disulfiram. Disulfiram is aversive drug. It is not anti-craving drug. This drug blocks the metabolism of alcohol. This drug is given for the patient who are highly motivated and there are chances of relapse in the future. So, with the consent of the patient and one of the family member, this drug is prescribed, and the person is taught that if you take the substance alcohol while you are on this drug, you can have certain embarrassing symptoms like vomiting, diarrhea, flushing of face, and all these things. So, because of this aversion, the person is not used to consume the substance, because now he knows that if he will use that substance and I am on this drugs, then I will have certain very discomfortable symptoms rather than the calming effect of the alcohol or relaxing effect of the alcohol. In psychosocial intervention, MET, known as motivational enhancement therapy, if the person is not motivated, can be employed. Cognitive behavior therapy, 12-step program, which is known as Alcoholic Anonymous. In short, it is known as AA. Peer group support, family therapy, if there is a impaired family dynamics, there are conflicts between the families or directly or indirectly with the patient, the family therapy can be done to relieve that stress. Lifestyle and rehabilitation can also be employed, like nutritional support, regular exercise, sleep hygiene. If the impairment of sleep is there, some kind of person used to take the substance because they do not have good sleep. So this is also a case of self-medication that is similar with the anxiety. Vocational rehabilitation, reintegration into the society. Because of the substance use and dependence, he is disintegrated from the society. The person can be reintegrated into society by the rehabilitation process. Public awareness, policy interventions, community supports are necessary to reduce alcohol related harm and promote healthier lifestyle, which is the mainstay of any kind of disease, disorder or illness. The awareness program are being run for various illnesses and for the alcohol too. The conclusion is the alcohol use disorder is a major public health issue, and it can cause significant stress in social, psychological and medical aspect. Alcohol affects multiple organ system leading to cognitive impairment, liver disease, cardiovascular complications and neuropathies. Early identification through comprehensive evaluation can be done and is crucial for effective management. Management includes acute care, withdrawal treatment, relapse prevention using medications like benzodiazepine, disulfiram, naltrexone, acamprosate, and psychosocial interventions are also important, like cognitive behavior therapy, motivation enhancement therapy, family therapies, 12-step programs known as Alcoholic Anonymous for long-term recovery and relapse prevention. So thank you. Thanks to all. So good morning everyone. Today we're going to discuss about the topic mental deficiencies. So hi, I'm Dr. Akash Chaudhary. I'm third year resident of Psychiatry Department of Bharati Medical College. So first, what's in the name? So previously, the patients who used to suffer from intellectual disability were previously called as idiots, morons, feeble-minded, mentally retarded,
and now the current term that we usually use is intellectual disability. This was given by American Association on Intellectual Development and Disabilities. Is the basic guidelines that we usually follow for somebody to define us as an intellectually deficient patient. Definition: deficient in IQ and adaptive functioning. IQ of 70 or below, measured by standard scales such as Wechsler's, Stanford-Binet, and Kaufman. Impairments in adaptive functioning, which comprise of effective coping and common life demands. They'll be requiring assistance from the family members in day-to-day functioning. It depends on the severity, how somebody is mentally disabled, that how much support that they need from the family members. Ability to meet standards and independence. Are they able to do things independently, such as doing household chores, or will they be able to activate in the occupational activities or not? Again, it can be measured by standard scales such as Vinland Adaptive Behavior Scale. So, intellectual disability, the prevalence in the population is 1 to 3% of population. It has been found to be slightly more in males as compared to females. It is more prevalent in lower socioeconomic status and in minority groups. Patients who don't get the adequate care when they are born, as people who might be getting home delivered due to some problems in their economic statuses, they are not able to reach the hospital care. The propensity or the probability that they might be suffering from any acquired infections or appropriate postnatal care is quite high. So that is one of the causes that the patient might be intellectually disabled. Especially for mild intellectual disability, no differences for more severe levels. Now comes the degree of severity. So we term them as mind mental retardation when the IQ is around 50 to 55 to approximately 70. So these are the different IQ scales, and then we define the patient as mild, moderate, severe, or profound. The government also gives various benefits to the patient depending upon how severe the mental retardation is. So mild mental retardation when the IQ on the scale comes out to be 50 to 55 or around 70. Moderate mental retardation when IQ is 35 to 40 or 50 to 55. Severe mental retardation when IQ is in the range of 20 to 25 to 35 to 40. And profound mental retardation when IQ is less than 20 to 25. The proposed classification based upon the intensity of supports needed as opposed to IQ. So traditionally we depend on the IQ a lot, but there is another adaptive scale through which we can differentiate if the patient needs the severity, which can be intermittent support, limited support, extensive support, or pervasive support, is the amount of support that the patient's required. First, mild mental retardation, previously referred to as educable. They were called as educable because they could be taught several life skills through vocational training or through special schools in which they'll be able to take care of their basic needs. It comprises of the larger segments of those suffering from mental retardation, about 85%. So if 100 people are suffering from intellectual disability, 85% of the population lies into mild MR. Typically develops social communication skills during preschool years, minimal impairment in sensory motor areas, often indistinguishable from typicals until later age. So initially their development will be quite normal to other children. They'll be able to attend schools, but the first symptoms that the family usually start to figure out is that they have not been performing academically so appropriately according to their age. So that's the first time that they reach out to us. By late teens, acquire skills up approximately to 6th grade level. So basically, if the patient is intellectually disabled and has been diagnosed, then there's a limited amount of adaptability or the IQ that the patient might be having. So it all depends how much the deficit is, and the maximum that they can acquire is up to 6th grade of education. Now comes moderate mental retardation, previously referred to as trainable. So first was educable, now it's trainable. That they won't be too much into studies, or will they be able to study up to any grades is quite questionable. About 10% of those with MR most acquire communication skills during early childhood years, generally benefit from social vocational training, and with moderate supervision can attend to personal care.
Difficulties recognizing social conventions which interface with the peer relations in adolescence. They will have difficulty where to say, what not to say. They'll have difficulty in having social interactions with people in social circles. Unlike to progress beyond the second grade academically, often adapt well to life in the community in supervised setting, performing unskilled or semi-skilled work. So they basically need a continuous supervision and a special areas where they'll be able to do some community setting social skills or vocational training. Now comes severe mental retardation. 3 to 4% of those with MR acquire little or no communicative speech in childhood, may learn to talk by school age, and be trained in elementary self-care skills, can master sight reading, survival words, able to perform simple tasks as adults in closely supervised settings, most adapt well to life in the community, living in group homes or with families. So basic survival words such as food, water, if they want to go washroom, they'll talk to you in monosyllables, whatever need that they require. But later on, other things they are not able to communicate well, as the tendency to have those comprehension skills is quite low. Then comes profound mental retardation. It is 1 to 2% of those with MR. Most have an identifiable neurological condition that accounts for their MR. So a basic underlying organicity is found in these types of patients. Considerable impairments in sensory motor functioning. Optimal development may occur in a highly structured environment with constant aid. So again, the attention, the amount of training required, and the specialized environment required is quite high as compared to other severities of mental retardation. So these are a basic schematic diagram showing the different features of mild, moderate, and severe profound intellectual disability. So IQ range first, then percentages of cases, ability of self-care. In mild, they are independent. In moderate, they need some help. And in severe and profound cases, their self-care is quite limited. Language development in mild is quite reasonable. They'll be able to communicate their daily needs, even able to crack jokes or watch movies and have a conversation. As moderate, there is limited, and in severe, there is basic or none. Reading and writing, reasonable again. Moderate is basic, and severe, minimal or none. Ability to work is semi-skilled. They'll be, for example, they'll be able to do work as a waiter in a restaurant, but they won't be able to handle more complex skills. I'm talking about the mild ones. The moderates are unskilled and need supervised training. Same with the severe cases. Social skills are normal in mild cases. Physical problems are rare. Etiology discovered sometimes, academic skill level 6th grade or higher. So mild MR patients would be there quite a lot in the community, and we won't realize that they're suffering from mental retardation. There was this case who was of bipolar affective disorder in my first year, who had MR, but he was able to communicate properly, was able to do household chores, was able to do different things. But when we did his IQ score, it came out to be mild intellectual disability. And then it is very important for us as well to, so that patient doesn't get misdiagnosed, that we are thinking that there is some behavioral problem and we are giving them some medications. And the prognosis also depends on the development of the mind and their trainability. So what the IQ the patient has. Suppose we are patients, family members come to us, they are saying that he doesn't listen to us, gets angry very easily, we are not able to take him out to the social settings, but he's able to take care of himself daily, he's able to go outside daily, he's able to, milk the cows, he's able to go to the gym as well, but still they might be having some underlying pathology of intellectual deficits. So it's very challenging for us as well, and it should always be kept in mind while you as doctors will be going out in the community to see if the family members arrive to you and they say that he's been able to go to school and there was no problem till 5th or 6th grade, then completely ruling out MR is not advised. So it should always be kept in mind that the child might be suffering from mild or moderate intellectual disability. Psychiatric disorders associated with intellectual deficit, prevalence higher than general population, delusions, hallucinations, and obsessions may not be easily recognized in people who have limited language development and cannot describe them. More emphasis is given to the behavior. Lower the IQ, greater the difficulty in diagnosing psychiatric disorders. So patient is having intellectual disability and they are superimposed having some psychotic symptoms, but the language difficulty is so prominent that we are not able to elicit those symptoms.
So it is very difficult for us to diagnose a patient simultaneously who is suffering from intellectual disability with any other psychiatric illness. Most commonly associated disorders with intellectual disability could be ADHD, schizophrenia, mood disorders, pervasive developmental disorders, stereotypic movement disorders, mental disorders. Schizophrenia. So the prevalence in the patient who have already been diagnosed of intellectual disability is 3%. If the IQ is less than 45, it is difficult to diagnose schizophrenia. In these cases, the diagnosis of psychosis NOS should be considered. Rather than we fully blown diagnose them as F20 such as paranoid, we go for psychosis NOS. It is a subcategory of schizophrenia in which the symptomatology and the behavior is quite similar to schizophrenia, but the patient does not have persistent hallucinations, delusions. So we keep these patients in psychosis NOS category. Sub-individuals display presumptive evidence of response to hallucinations. Example, striking or shouting at empty spaces, throwing imaginary peers from furniture, or adopt catatonic postures that can appear to be psychotic in origin. Like we are not able to elicit any auditory or visual hallucinations, but the behavior is quite hallucinatory, that they might be talking to the walls, throwing things at something. So this is one way of seeing the symptomatology of the patient. Some of the symptoms of underlying brain damage, such as stereotyped movements and a social withdrawal, may wrongly suggest schizophrenia. So, patient might be having some organicity. Patient might be having difficulty during the childhood brain development. There might be some deficit, and the patient comes with the stereotypical movements in which there is a regular shaking of hands, or patient has stopped talking to the family altogether. So, the misdiagnosis of schizophrenia might also happen. It is always necessary to compare behavior before and after the onset of susceptible psychiatric disorder. So patient is intellectually disabled. We know the patient is intellectually disabled, and now the family comes to us and tells us that he's been behaving abnormally. He's not talking to us, is getting angry on trivial issues. So first it's necessary for us to ask the normal mood, and when he was perfectly all right, apart from being diagnosed with intellectual deficit, was everything behaviorally he was normal or not, and since when the family has started observing these behavioral symptoms. Mood disorders, depression diagnosis has to be made mainly on appearance of sadness, changes in appetite and sleep, and behavioral changes of retardation or agitation. Mania has to be diagnosed mainly from overactivity and behavioral signs of excitement, irritability, or nervousness. So these are basically the things that we keep in mind if the patient is suffering from mood disorders. If he is having depression, there might not be a cause or underlying psychosocial stressor before developing depression. So we have to see, basically depends on the mental status examination of the patient. Anxiety disorder frequent at the time of stress. Post-traumatic stress disorder have been reported in people with ID who have suffered physical or sexual abuse. Patients of intellectual disability sometimes are taken advantage of in the society, both male or female, as they know that whatever complaints they go and tell to their parents or family members, it is very hard to establish that they have been sexually abused or wrongly done, both physically or violently. So post-traumatic stress disorder have been reported in patients with intellectual disability. So careful history taking is really important. Common symptoms of anxiety in the population with intellectual disability include aggression, agitation, compulsive or repetitive behaviors, self-injury, and insomnia. Panic may be expressed as agitation, screaming, crying, or clinging. So, for example, a patient comes to you, like patient comes to us who's diagnosed with intellectual disability, and then they complain of that he's having aggression, he's getting agitated on trivial things. So it is very important for us to keep in mind that straight away not go to jump the diagnosis as patient might be manic or be psychotic. There could be underlying anxiety which they are not able to express. So this is their way of communication. Eating disorders. Pica is perhaps the most common eating disorder among persons with intellectual disability. Overeating and obsessive features of Prader-Willi syndrome. So in Prader-Willi syndrome, it is quite common that the patient is hyperphagia हो जाता है उन लोगों को. Prader-Willi syndrome is very important for your NEET examinations as well. They always ask this question in which what is the pathology and what is the cause. So there's this silencing of these genes. So both the male and female, whatever genes you acquire from the family members, normally one of those genes gets silent. So if both of those genes get silent, then Prader-Willi syndrome comes to us.
They also have difficulty in the development of their mind. So these are the eating disorders which might be presented to you. So if patient is being diagnosed with intellectual disability and there's hyperphagia, then chromosomal or genetic study is also necessary to rule out Prader-Willi syndrome. Dementia, adults with Down syndrome are more likely to develop dementia than general population if they have been diagnosed with Down syndrome, as they also fall in the category of intellectual disability. If their IQ is not appropriate, then the probability that they'll be suffering dementia as their age is quite high. ADHD, the rates of ADHD in individuals with intellectual disability are estimated to between 9 to 18%, which is quite high. Diagnosis of ADHD is based on developmental considerations, namely hyperactivity, impulsivity, and inattention, significantly greater than that expected for a given developmental age. And thus, the threshold for diagnosis in persons with severe to profound intellectual disability should be elevated. So, what we usually see is patients usually come to us that the child is not sitting at one place. He keeps on roaming around, is quite restless, touches everything, does not sit at all. And this number of 9 to 11% could be underreported. Patients usually have this restlessness and anger irritability symptoms who are diagnosed with intellectual disability. So diagnosing them with ADHD is also necessary, as the treatment line is quite different to just giving them behavioral symptoms for behavioral changes, as ADHD might require methylphenidate or atomoxetine, super supplemented with low dose antipsychotics. Oppositional defiant or conduct disorder, about 30% of young people with mild to borderline intellectual disability, more in males, not applicable in non-verbal children with the more severe level of ID. Oppositional defiant disorder or conduct disorder is usually diagnosed in patients such as symptoms as not giving, they don't respond appropriately to the authorities. The school will keep on complaining again and again that they are behind mischiefs every day. They skip schools. They don't follow the rules. So it is the propensity of diagnosing patient with oppositional defiant disorder or conduct disorder is quite high in patients suffering from ID. Tic disorders can be difficult to differentiate from stereotypic movements and self-stimulating behavior, particularly when the patient is non-verbal and cannot explain that the tic is a response to an irresistible urge, which can however be delayed. Tics such as facial grimace or vocalization are usually less complex body movements and do not appear to be intentional, as in the case of stereotypic movements. So how does the patient of tic disorder represent? Like the child is sitting inside the class and abruptly he starts abusing. And then he again comes back to normal. He keeps on saying that the intention of me of abusing or making sound is not intentional, but they continuously make those sounds. So that's how basically a case of tic disorders present to you. So what are stereotypic movement disorders? Persistent, driven, non-functional motor behavior which interferes with the daily activities or causes injury. Requiring treatments occurs in 2 to 3% of young people with more severe levels of intellectual disability. Pervasive development disorders, about 75 to 80% of children with autism also have intellectual disability. Autism is associated with high levels of emotional and behavioral problems and the burden of care. The diagnosis of Asperger's disorder is excluded by the presence of mental retardation and delayed and deviant language development. They can be differentiated from those who have autism because they show an ability and interest to communicate, use gestures and imitations, show an interest in reciprocal and imitative play, interact responsively with emotion in a manner appropriate to their developmental level. So the patient who are suffering from autism disorder have difficulty in social interactions with everybody. So if we are basically diagnosing patient with autism, the patient don't maintain eye contact. They are not interested in even communication at all. But the patient who have intellectual disability are interested in communication. They are also looking forward for a regular cooperative play. So comorbid autism should be diagnosed if the patient is suffering from intellectual disability. So what are the predisposing factors?
No clear etiology can be found in 75% of those with mild MR, 32% of those with severe impairment. Specific etiologies are more often found in those with severe and profound MR. No familial pattern, although certain illnesses resulting in MR may be heritable. Hereditary 5% of the cases. Autosomal recessive inhibitor errors of metabolism, example Tay-Sachs or phenylketonuria. Single gene abnormalities with Mendelian inheritance and variable expression, example tuberous sclerosis. Chromosomal aberrations, example Fragile X. Early alterations in embryonic development in 30% of the cases, like chromosomal changes in Down syndrome. Prenatal damage due to toxins, example maternal alcohol consumption or infections. Environmental influences, 15 to 20% cases, deprivation of nurturance, social, linguistic, and other stimulations. Mental disorders, autisms, and other pregnancy and perinatal problems in 10% of cases, fetal malnutrition, prematurity, hypoxia, viral and other infections. General medical conditions acquired in infancy and childhood, infections, trauma, or poisoning during their postnatal age. At least 500 causes not known of what causes intellectual disability. Over 150 MR syndromes have been related to X chromosome abnormalities. Most common causes of mental retardation are Down syndrome. Most common Fragile X syndromes account for 40% of all X-linked syndromes. Fetal alcohol syndrome, most common attributable cause, which may predispose a patient of MR. If the mother is alcoholic, then the propensity of the child is quite high to develop MR. Together, these three account for 30% of all the identifiable cases in MR. Causes of intellectual disability, prenatal causes are 4 to 28%, natal 2 to 10%, postnatal 3 to 12%, and unknown causes are more than 50%. So these are basically what I just talked about: chromosomal disorders, single gene disorders, adverse material environmental influences, such as, so this is quite important, adverse material or environmental influences, iodine deficiency, folic acid deficiency, using substances such as alcohol, exposure to other chemicals, pollutants, heavy metals, harmful medications, infections, example torch and HIV infections, also lead to mental retardations in patients. Postnatal brain infections such as Japanese encephalitis, bacterial meningitis, cretinism, gross understimulation, severe or prolonged malnutrition. These are basically the syndromes associated with intellectual disability: Down, Fragile X, phenylketonuria, Williamson, Prader-Willi, DiGeorge syndrome, Hunter syndrome, Hurler syndrome, Leishmania syndrome, galactosemia. In my personal opinion, all these diseases are quite important. All of them. They'll be asked you in any competitive exam that will go into. What is the cause? What are the symptomatology? And what is the deficiency of an enzyme or a gene? So it is like if 15 diseases are written, expect at least 10 or 12 to come in your examination. All of them are very important. Not just in relation to MR, the other presentation, how these patients present to you. All the genetic causes is quite important. The diagnosis comprises of intellectual functioning and adaptive behavior in a mentally retarded, as assessed using a combination of stress and schedules. The important are measurement of the overall level of general intellectual functioning, assessment of adaptive behavior, and developmental assessment. The IQ test for diagnosing of intellectual disability comprises of Wechsler's preschool and primary scale of intelligence revised, Wechsler Intelligence Test for Children 3, Wechsler Adult Intelligence Scale Review, Stanford Binet Intelligence Scale 4th edition. In India, the tests are taken up basically in verbal tests such as Binet Kamar test, Binet Kulsestra test, Mallin's Intelligence Test for Indian children, non-verbal and performance test, which includes developmental screening tests, Raven's Progressive matrices, Sanguine Form Board test, Gazelle's drawing test, Post block design test. Common measures of adaptive behavior:
Basically, we measure the adaptive behaviors of the child if the child is not able to cooperate through the verbal scales to assess not just the IQ, but general adaptive behavior to assess the level of dysfunction. It comprises of Vineyard Adaptive Behavioral Scale, age range from birth to 18 years. Domains tested in this scale are communication, daily living skills, and socialization. Coping skills, AAMR Adaptive Behavioral Scale, Lambert and Nihira. Age range from 3 years to 18 years old. Domain tested independent functioning, physical development, economic activity, school, motor skills, which comprise of fine and gross. Scale of independent behavior revised and Binet-Simmons scale Hindi adaptation for age groups of 2.5 to 18 years. Treatment modalities. In order to develop an appropriate treatment plan, an assessment of age-appropriate adaptive behavior should be made using developmental screening tests. The objective of these tests are to determine whether development milestones have been missed. The primary goal of treatment is to develop the person's potential to the fullest. Special education and training may begin as early as infancy. Attention is given to social skills and to help the person function as normally as possible. It is important for a specialist to evaluate the person for coexisting affective disorders that may require treatment. Behavioral approaches are important in understanding and working with the mentally retarded individuals. So in this slide, we are basically seeing that the early we diagnose the patient who's suffering from a mental disability, it's easier for us to train the patient in the same way as these kinds of schools, which are there for empowering the mentally disabled children, help them to cope up with the difficulties that they are currently facing and how to communicate with the social environment. Medications. Treatment for mental retardation depends on the type of illness. In mild, you may only need limited intervention and medication to manage these symptoms. For more advanced cases, considerable treatment and therapy is required. Medications are used to improve symptoms, but they cannot cure the underlying cause. So once you've been diagnosed with intellectual disability, in whatever the category it may be, it is almost impossible to reverse the symptoms as the damage has already been done during the brain development. So the only domain that we can treat through medication is the behavioral problems. Some commonly prescribed medications include antidepressants, anti-anxiety medications, mood stabilizers, antipsychotic medication, and anti-epileptic drugs to treat seizures. One common thing that we should keep in mind is that the dose required is way less as compared to giving to a normal adult. Not just because the patients are adolescents, but the susceptibility of developing side effect in patients whose brain have not developed properly is quite high. Antipsychotics, the typical antipsychotics, have long been prescribed for disorders other than psychosis in patients with MR, including aggression, hyperactivity, antisocial behavior, stereotypies, and spatial. The atypical antipsychotics are now being increasingly used because of the belief that they carry a decreased side effect profile as compared to the first generation antipsychotics, as they have increased propensity to cause extrapyramidal side effects. Good afternoon to all. So this is your lecture on somatoform disorder and dissociative conversion disorder. The aims and objectives are to define somatoform and dissociative disorder, the historical approaches, review information regarding prevalence, onset and course, discuss current etiological findings and clinical features of all, and outlining the treatment approaches. So first we will go through the terms, somatoform, what is dissociative and what is conversion. Somatoform disorders involves the presentation of medically unexplained symptoms, which means the symptoms are there but cannot be explained by virtue of physical examination and lab investigations. Dissociative disorder involves the loss of normal integration of the identity of self, the memory of the person, perception, and the level of consciousness or disturbance of consciousness. So dissociation is a mechanism whereby one part of mental functioning
is split from the rest, which is memory, consciousness, perception, and identity of the person. As per the ICD-10, the dissociation is it shares the common theme of dissociation and conversion, which is a partial or incomplete loss of normal integration between memories of the past, awareness of the identity of self, immediate sensations, which are bodily sensations, and control of the bodily movements. The historical approaches of somatoform disorder. In the ancient term, hysteria referred to non-fatal malady of women that included different types of bodily symptoms. So it used to occur in females mainly. So it is referred to hysteria, which is came from the the word hyster. Hyster means uterus. So it is correlated with the dysfunctions of women. And the most classic cases of hysteria is NAO, which was written by Joseph Breuer and Sigmund Freud. Regarding NAO, she was a young Viennese woman who reported multiple somatic symptoms, which were suggested to be associated with psychological trauma of her father's illness and death. So there is a stressor and trauma which resulted into the somatic symptoms. The term conversion signifies the transformation of psychological material into somatic symptoms. The psychological happening or trauma can lead to somatic symptoms. This can be understood by a simple example. When a school going child around the age of in the adolescence period, they used to complain regarding the abdominal pain and like headache in morning when the school time is approaches, to avoid the stressor of academia in the school. So that stressor of academics is converted into the somatic symptom, which is abdominal pain. So this is a simple example. The treatment of NAO was the first described case of psychoanalysis, which was postulated by Sigmund Freud and also known as talking cure or talk therapy. Freud theorized that hysteria was the result of consciously unacceptable sexual fantasies from childhood. Sigmund Freud also has given theory of libido, which is known as libidinal theory, and which is related to the psychosexual development of the child, and the happenings were correlated with the development of child is correlated with the uh, development of sexual characteristic over the period of time. So this theory in detail you can learn in the another lecture video in our channel in detail. So this is the overview of somatoform disorder. It appears to be physical or medical but are due to psychological factors. The symptoms may mimic a physical problem or a medical problem, but underlying there is a psychological problem. By means of lab investigations and physical examination, nothing significant will be found. Psychological disorders masquerading as physical problem. The meaning is same. People with these disorders do not consciously want or purposely produce their symptoms. No intentional or not. These are not intentional or under voluntary control. This doesn't mean that the person is creating those symptoms voluntarily. This is happening because of the underlying psychological cause or psychological trauma. This is not in the voluntary control of that person. तो कभी भी इस डिसऑर्डर के पेशेंट्स अगर मिलते हैं तो उनको कभी ये ना कहें कि इनको कुछ नहीं हुआ है, ये ठीक है, या ये नौटंकी कर रहे हैं या मक्कारी कर रहे हैं या बहाना बना रहे हैं. For medicine, for physiotherapy, and for other branches like anesthesia, there is no impairment seen because of these presentation, but
For psychiatrists, these are the disorder and have to be referred and treated. The conflict and the trauma should be addressed and relieved. People with these disorder believe their problems are genuinely medical. They believe that they have medical illness because that psychodynamics, they cannot understand why these somatic symptoms are appearing or happening. These symptoms are not due to effects of any kind of substance or alcohol, not due to another mental disorder. Symptoms causes significant distress or impairment in functioning. These disorders are also denoted as functional disorder or medically unexplained symptoms. Now, how the patient presents? They can present as having symptoms of musculoskeletal system like low back pain, generalized malaise or fatigue like chronic fatigue or fibromyalgia, GI symptoms like abdominal pain, bloating, or having diarrhea or other symptoms, gynecological symptoms, heavy or painful periods, neurological symptoms such as pseudo seizures known as dissociative, convulsion, regional pain presentation like atypical chest pain or headaches. The somatoform disorders are classified in ICD-10 as follows. The chapter is F45 for somatoform disorder. Subclassification as somatization disorder, hypochondriacal disorder, somatoform autonomic dysfunction, and further subclassified as per the system involved like cardiovascular system, GI system, respiratory system, genitourinary system, and other organ. Another classification is persistent somatoform pain disorder. In epidemiology, these are the medically unexplained physical symptoms which are common in somatoform disorder, and formal clinical somatoform disorder are rare in the general community, but it is more prevalent among those who are into the medical setups, those who are the high utilizer of health services. Anxiety and depression are common in people with unexplained physical symptoms and those with the somatoform disorder. So comorbid anxiety, depression can be seen. Somatoform disorder are more common among women. In etiology, as we know that all of the disorder has some kind of biopsychosocial factors. So for somatoform disorder, the biological factors which are seen are underactivity of hypopituitary adrenal axis, which is known as HP axis, and can be the explanation of fatigue. Neurobiological models focus on how sensory and motor information is processed. So to understand simply, we got a stimuli like touch, pain, vibration. So there is a threshold for the brain or neuronal mechanism which has some kind of threshold to perceive that sensation. To perceive that sensation, if the threshold is reduced, then a smaller amount of stimuli can also create that sensation or perception of sensations. So there is neural gates mechanism, theory of neural gates. The neural gates in the spinal cord can be opened or closed, determining the amount of pain the individual experiences. The more the activity in the pain fibers, more gates are opened. More activity in peripheral fibers regarding stimuli around the body, more gates are closed. So message from brain can be open or the close gates. This is theory or hypothesis which is not proven true. Another biological factor is to experience somatic symptoms as intense, noxious or disturbing, which has three elements: the hypervigilance,
selecting out some sensations, intensification by cognition and affect, making them more alarming. So what these theories want to say that the normal sensations of the body, like uh, intestinal movements, are perceived as exaggerated movements of intestine and perceived as a painful condition, bloating, or other symptoms of abdomen. Regarding the trauma and personality factors, patients with somatoform disorders are more likely to have experienced adverse event in childhood. One theory proposed that memory of the early trauma is contained in the emotions, reflex actions, and bodily sensations. So these childhood trauma or childhood mishappenings are turned into the bodily sensation in adulthood. Negative events in childhood may also give rise to personality characteristics that predispose the person to somatoform disorder. Childhood trauma leads to a certain kind of personality, and that personality is vulnerable to acquire the somatoform disorder. People with somatoform disorder have higher rates of alexithymia, means difficulty experiencing or expressing emotions. Failing to identify and express emotional distress may lead to increased physiological arousal. Another theory is cognitive and behavioral factors. So you have learnt about the cognitive and behavioral theory in your psychology class of learning theories. So what it says that cycle of somatosensory amplification leads to tendency to experience somatic sensation as intense and distressing. So you can see in the figure there is lots of interchangeable expressions of anxiety, depression, stress, and that leads to alexithymia, and there is somatosensory amplification which leads to somatic symptoms. Now come to the individual disorder. So somatoform disorder has many condition. One is somatization disorder. The main feature of somatization disorder is repeated presentation of physical symptoms. Physical symptoms are presented repeatedly together with persistent request for medical investigation. After reassurance, they not get relieved and they want repeated investigations which claims to be normal, and in spite of repeated negative findings and reassurance, the symptoms has no physical basis. Onset and continuation of symptoms bear a close relationship with unpleasant life event or with difficulties or conflict. There may be unpleasant life event in the past or in the childhood. Maybe the person is having difficulties or conflicts in the current situation, and the patient usually resists attempt to discuss these conflicts and life events. They do not relate those life events with the current symptoms. Often a degree of attention-seeking behavior is present, also known as histrionic behavior, in which the person used to try to get the more attention of others towards him or her. Persistent refusal to accept the advice or reassurance of several doctors that there is no physical explanation for the symptoms. Despite of that, these persons are in trouble or having problem that should be resolved. Second is hypochondriacal disorder. There is persistent belief in presence of at least one serious physical illness. In somatization disorder, there were signs and symptoms, but there is a name of a disease, disorder, or syndrome with which the person present. In this condition, after repeated investigation and examination, have identified no adequate physical explanation, which is the common feature of these stress-related
disorders or somatoform disorders. Persistent refusal to accept the advice and reassurance of several different doctors that there is no physical illness or abnormality underlying the symptoms, but underlying psychological factors are there. Then is the somatoform autonomic dysfunction, which may presented with various features of systems like cardiovascular system. So cardiovascular system, also called as cardiac neurosis, GI symptoms called as gastric neurosis or nervous diarrhea. If respiratory system is involved, is called as psychogenic hyperventilation and psychogenic hiccups, which are common presentations. The symptoms are usually of two types, and neither of which indicates a physical disorder of an organ or system concern. The first type characterized by complaints based upon objective signs of autonomic arousal. Autonomic nervous system you must know, and the symptoms of autonomic hyperactivity you must be knowing. So they present with autonomic arousal. The second type is more idiosyncratic, subjective and non-specific symptoms such as sensation of fleeting aches and pains, burning sensations, heaviness in chest, head or bodily parts, tightness and sensation of being bloated or distended. These are referred by the patient to specific organ and system. So specific system is involved in this somatoform autonomic system. The person will confine to either to the cardiovascular system or to the GI system like upper GI or lower GI or to the respiratory system. Persistent somatoform pain disorder. The predominant complaint is of persistent, severe and distressing pain which cannot be explained fully by a physiological process or a physical disorder. Pain occurs in association with emotional conflict or psychosocial problems that are sufficient to allow the conclusion that they are main causative influence for the pain. The result is usually marked increase in support and attention, either personal or medical. So attention seeking behavior is also a central point for these disorders, which are secondary to their primary problems. Pain presumed to be of psychogenic origin occurring during the course of depressive disorder or schizophrenia should not be included here. Somatic symptoms may also be present in case of depression and other psychiatric problems. That should not be included here, and neurological conditions also like tension type headache and migraine. The differential diagnosis for somatoform disorders are those affecting multiple organs like systemic lupus erythematosus, sarcoidosis, lymphomas, uh, pain disorder due to physical problems, depressive disorder, schizophrenia, delusional disorder, factitious disorder and malingering. Factitious disorder means feigning the illness for some psychological gain, and malingering is for other gains. The treatment requires a strong doctor-patient relationship, and it is the key to getting help with somatoform disorder, and it is advisable that a single health care provider with experience managing somatoform disorder can help cut down on unnecessary tests and treatments. So there is a doctor-patient good relationship is required, and it is advisable that one doctor, one psychiatrist or psychologist should treat these person. Multiple therapists cannot help these problems. The focus of treatment is on improving daily functioning, not on the managing symptoms. Symptoms are there for the patient, the symptoms are there, but these are not because of directly physiological problems. Stress reduction is often an important part to get better. Counseling for family and friends may also helpful when there is a
conflicts between the family members and with the others, that should be resolved. CBT may help relieve symptoms associated with somatoform disorder, and CBT involves uh, correcting the distorted thoughts, unrealistic beliefs, behaviors that feed the anxiety. You must be recollecting the lecture of cognitive behavior therapy in psychology. What is the cycle behind the cognitive behavior therapy and cognitive behavior theories? Now coming to the dissociative disorder or conversion disorder, these are subclassified as dissociative amnesia, fugue, stupor, transient possession disorder, motor disorder, convulsions, anesthesia, and sensory loss. So now learn about the dissociation first. Dissociation is a disconnection between a person's sensory experience, thought, sense of self, or personal history. Dissociation is also known as a defense mechanism in which conflicting impulses are kept apart or threatening ideas and feelings are separated from rest of the psyche. So patient get dissociated from one of the aspect of himself. Someone with dissociation might feel a sense of unreality and lose their connection to time, place, and identity. Several factors can play a role in the development of dissociation, and the potential causes are trauma, drug use, and other medical conditions can also produce dissociation. But we will talk about the dissociative disorder, which has purely psychological underpinnings. So there are two terms, dissociation and conversion. So what is dissociation and what is conversion? So conversion is conventionally applied to somatic symptoms, whereas symptoms is psychological rather than physical is regarded as dissociation. There are two kind of presentation in this disorder. One seems to be uh, having involvement of bodily functioning like motor symptoms, like sensory symptoms, and others are like and amnesia and stupor. So what is visible by eyes are conversion. Patient fell down, patient is in stuporous condition, patient is having pseudo seizures. These are visible. So these are considered as conversion. And the thing which cannot visualize like headache, amnesias, and anesthesias, these are dissociation. Epidemiology is not well established. Prevalence of dissociative amnesia is controversial, but recent estimation of 1.8% in a community sample in a study found dissociative identity disorder 1% in community, but much higher in clinical samples are seen. Etiology, the dissociative disorders believed to be stress related. So some kind of stress is always behind these presentation. In psychological mechanisms, one can have distorted perceptual factors, how the person perceives for himself, herself, or surroundings, the belief system of the person, the mood swing of the person, and the personality factor, the ego defense mechanism of the person, and the coping style, how efficient the person is able to cope with the stress. So we now coming to the individual disorder. In dissociative amnesia, what happens is uh, it's a type of dissociative disorder characterized by inability to recall important personal information. मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, but there is no neurological basis of that. It is usually caused by trauma or stress, and people may lose memories relating to distressing or upsetting events. And these amnesias are more centered towards the
difficult situations or conflicts the person is having in their life. They try to suppress their memory. Dissociative fugue is a rare psychiatric phenomenon characterized by reversible amnesia for one's identity in conjunction with unexpected wandering or travel. So these people totally get detached from their identity and themselves presents as a total different identity which have separate emotions, separate personality traits, and separate uh, a total of separate identity. And these people may found wandering or traveling in different situations. If you want to understand dissociative fugue, there is a movie called as Cybil, Cybil. This was a true story about a female who had this dissociative fugue or multiple identity disorder. There is a movie also in which a person, a characteristic, suddenly turns into a different kind of personality. It's a South movie. That is not the true presentation, but you can relate with that movie. How a personality can change into another. एक टाइम पर वो बिल्कुल एकदम सीधा साधा सा होता है, then he becomes different kind of aggressive personality suddenly. Stupor, you all know, stuporous condition is a condition where consciousness is lost. But in dissociative stupor, it's a rare form of stupor characterized by severe reduction or complete absence of motor, behavioral, and affective response to the environment. There is absence of these responses, but actually the person is not unconscious. कभी कभी या आपने कहीं देखा होगा या सुना होगा आपके आस पड़ोस में कुछ औरतें बेहोश हो जाती हैं. इसके ऊपर वही है, स्ट्रेस आया, बेहोश हो गए, हाथ पैर छूट गए, है ना. लेकिन एक्चुअल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इज नॉट देयर. Transient possession disorder characterized by a state of temporary marked alteration in state of consciousness without replacement by an with a replacement by an alternate identity. Possession is defined as an episode of alteration in state of consciousness with the replacement of customary sense of personal identity by a new identity. In the words, it seems to be complicated, but in simpler form you can understand. जब किसी के अंदर माता आ जाती है, that is transient possession disorder. The someone is possessed by a new identity. So this is also kind of dissociative disorder, and behind this phenomena there is a certain kind of stress is there. And again, when such thing happens repeatedly, then the person started getting attention of the other persons. So to get to attention seeking behavior को sustain करने के लिए they used to repeat these kind of behaviors. Similarly, motor disorder, the motor dysfunctions are there, like loss of ability to perform bodily movements. Motor symptoms are there, but there is no biological basis of these motor symptoms, like achynesias, aphonia, apraxia, ataxia. The person present with these type of problem, but actually you will find technically there is no biological basis of these ataxia, apraxia, aphonia, and the symptoms are fleeting and patchy in presentation. Dissociative convulsion is also known as psychogenic non-epileptic seizure or pseudo seizures. The person present with mimicking motor symptoms of a seizure activity, and but not other associated symptoms which are actually due to uncontrolled firing of neurons
like clenching of teeth, tongue biting, incontinence, injury due to fall. These phenomena are not present in pseudo seizures. Similarly, anesthesia and sensory loss, the person may present with some sort of loss of sensation and kind of anesthesia, but it is not following the typical presentation in concurrence with the dermatome of that neuronal supply. Person will say that I am having loss of sensation in this area, but you will find that it is not matching with the dermatome. You know about the dermatome? What are the dermatomes? You must be knowing as a physiotherapist, no? Now, treatment. In dissociative disorder, the treatment can be cognitive behavior therapy, hypnotherapy. If there are conflicts, then family therapy can be done. If there is conflict between family members, physical therapies can also help. In case of the person is having overlaying depression and or anxiety, medications can also help. If person is having insomnia, the medications can help. Biofeedback is an alternative medicine approach that teaches people to change the way of their body functions. It's a kind of a mind-body therapy that may improve the physical and mental health in case of dissociative or conversion disorders. Now, in the summary, we have learned about the somatoform disorder and uh, conversion or dissociative disorder. In somatoform disorder, by and large, there is persistent physical complaints without any identifiable medical cause. Pain, fatigue, or other bodily symptoms that interfere with daily life. Excessive thought, feelings, or behavior related to the symptoms, such as frequent health related anxiety, disproportionate worry about the severity of symptoms, and spending excessive time or energy addressing health concerns. So somatoform disorder is more related with the sign and symptoms, and while conversion disorder is more related to the presentation of some kind of deficiency in uh, physical functioning. So there is sudden physical symptoms that suggest a neurological issue or a medical issue but cannot be explained, like paralysis, blindness, speech problem, pseudo seizures. Symptoms often appear after a stressful or traumatic event and are not consciously created by the individual. This is an important point. These symptoms are not consciously created by the individual. So don't send back these patients to the home. Send the patient to a psychologist or a psychiatrist. Thank you. So we will learn about the clinical aspects of anxiety disorder. So, starting with the content, what we will learn the Freudian concept of anxiety, fear versus anxiety, or normal versus pathological anxiety, sign and symptoms of anxiety. What are these signs? Terminology in anxiety disorders, epidemiology, etiology, neuroanatomy of anxiety, neurotransmitters involved in originating anxiety disorder, classification of anxiety disorders, and about sign and symptoms of specific disorders and differential diagnosis. So, starting with the Freudian concept of anxiety, Freud in his era gave the concept of libidinal theory. His understanding of psychopathology was based on libidinal theory, which he described it as the increase in sexual tension, which leads to increase in libido, and that tension is relieved by having intercourse as normal outlet. It is also known as instinct or drive theory. So libido he defined as that force by which the sexual instinct is represented in the mind. But libido was not equal to sexuality as per him.
Sexuality has a uh, pleasure content, so he defined all the pleasurable uh, instinct as a libido. So, general notion of pleasure and sexuality with underpinning of physiological content represents the mental tension. So we can understand this in next slide. Now, there is physiological increase in sexual tension or any kind of tension which gives pleasure. And there is abstinence or coitus interruptus by virtue of which the person does not relieve the tension, which leads to libidinal blockage and finally leads to anxiety neurosis, neurasthenia, or hypochondriasis. So the term anxiety neurosis first described by Sigmund Freud. So the question is whether the anxiety is normal. It is normal. It is normal in the situation of threat, situation of dangerousness, and if there is any kind of performance pressure which leads to anxiety, and that anxiety leads to flight or fight reaction. If the danger is fatal or so severe that one can fly, or the person is having coping mechanism and understand that he can fight, then he would fight. So normal anxiety is known as fear. Fear is normal and it is a response to a threat that is known to you. You know about the threat. It is external. It is not into your mind. It is in the external environment. It is definite. It is defined that it's a danger and it is non-conflictual. No conflict is there. Then it is fear. Like having fear of exams, fear of a speeding vehicle, fear of a barking dog, or similar kind. So this is normal anxiety. It's an alerting signal. It warns of impending danger, enables a person to take measure to deal with the threat. Either fight, flight, or freeze. The third one is freeze. One can freeze also. So it helps in enhancing performance, helps one to cope with the changing environment. This is the curve which shows if the anxiety or level of stress is medium, then the performance is optimal. As I have explained, the person who has lower or minimal level of anxiety, he won't perform that much. Or either if he is having severe anxiety, also the performance is decreased. Now the question is when the fear becomes pathological anxiety. When anxiety is a response to a threat that is unknown, the threat which is not known to you, it is internal into your mind, it is vague and it has conflict, then this is pathological anxiety. When it becomes excessive, it becomes disabling and stumbling block in day-to-day functioning. It is severe and persistent. One can have a severe anxiety for a moment of time, and this does not mean the person is having anxiety disorder. If it is severe and it remains persistent, then only it is disorder, and it has impact on personal and or social functioning. Now, sign and symptoms of anxiety can be divided into three parts: cognitive, biological, and behavioral.
The cognitive symptoms can also be said like central symptoms, and it pertains to thinking of the person. For example, dread and apprehension about the future, if one is having in his mind, or they will think like, I will do something wrong, I will commit mistake, I cannot do this work, who will help in this work, and others will recognize that I am frightened. A feeling of impending heart attack may be there, and anticipatory anxiety. Anticipatory anxiety is anxiety of having attack of anxiety. This is anticipatory anxiety. The bodily responses are can be considered as peripheral symptoms are diarrhea, hyperhidrosis, hyperventilation, palpitations, restlessness, tingling, coldness, tremors, upset stomach, and urinary urgency, frequency, or hesitancy. What will be the behavioral symptom? One has a cognition of anxiety, then he developed bodily symptoms. Now, how he will behave in by virtue of this anxiety? The person may have agoraphobia. He may relieve anxiety by avoiding the stimuli, or relieve anxiety by performing rituals which are known as compulsions. He may uh, acquire moping behavior, that is the need or desire to be alone with your own thoughts and try to deal with your anxiety without the help of others. Unhealthy coping tools may be there. This behavior like substance abuse, uh, nervousness, you can see like shaking your leg up and down, touching your face, winking or blinking. These are the physical behavior. The behavior can be thought behavior also, like negative self-talk, that is, I am going to embrace myself, feeling as though you are going crazy, convincing yourself something is wrong with you. These are the thought behaviors. Now the terminology, uh, you have heard the word anxiety, fear, phobia, and panic attack. What are these term means? You know about the anxiety now, the signs and symptoms of anxiety. What are anxiety disorder? So anxiety disorder are episodic or continuous anxiety, not because of the organic mental disorders or physical disease. The panic attack are having severe anxiety with a feeling of impending doom or losing control or going mad. What is phobia? Phobia is anxiety and which is associated with avoidant behavior. The fear, you know, the response to known, external, definite, and non-conflictual stimuli. So keep in mind these terms. Further, we will discuss about the disorders. Now, few words about the epidemiology. This is one of the most common groups of psychiatric disorder, and the prevalence is almost equal to depressive disorders. The globally it is present in 3.8% people, and in India it is 3.3%. National comorbidity survey, which is one of the largest survey, reports that one of four person met the diagnostic criteria for at least one anxiety disorder. The 12-month prevalence is 17.7%. Women are more affected than males, and it decreases with higher socioeconomic status. Okay? Now the etiology. The etiology in psychiatric disorders, for almost all psychiatric disorders, are best defined by this model: bio, psycho, and social. There is no one entity is causative factor of psychiatric disorder, and so for the anxiety disorders. These are the biological factors, psychological factors, and social context or
social situations. So we will go through the etiology from all the 3 point of view. Now first discussing the psychological point of view. Psychological variables that predict vulnerability to anxiety are perceived control, second is cognitive appraisals, cognitive beliefs, and cognitive distortions. What are perceived control? Okay. The childhood experiences can heavily influence the someone's perceived sense of control. How they are treated, how they are reared, what kind of environment was there in the family, how was the communication style in the family. All these things impact on a child for developing anxiety. For example, overly protective parenting style can communicate the world is a dangerous place. A child who is overly protected uh, for a long period of time, like up to 12th class, and then he will go to a college, and he have to do all the things on his own. And at that time, the person or the child is not able to cope up with the demand of society. So this can be harm of a overly protective family. Okay. Similarly, underprotective or low care style family also result into unstructured, chaotic world filled with the stress. Similarly, loss of parents, separation from primary caregivers can lead to anxiety disorders. A third type of experience is ongoing trauma, such as childhood abuse, like physical, emotional, or sexual, may also lead to psychiatric. Now, cognitive appraisal. This means the way we evaluate and assess a particular situation. This can be primary or secondary. In primary, this refers to an individual's subjective evaluation of situation, and in secondary appraisal, the ability to cope with that situation. Whether the person is understand the situation and he also understands that he will be able to cope with that situation. This is cognitive appraisal. Now belief. Belief can also contribute to psychiatric disorders like anxiety disorders. So belief uh, is something one accepts as true or real, also untrue or unreal. Some can agree with the one uh, thought of a school, some other may not. Some think that this is yes, as some may say this is not as such. So this is belief system. So the system of belief having some unhealthy beliefs, such as these beliefs can be, the person may think like, it is true that there is something wrong with me. It is true that it's my fault for making others upset. It is true that children should be seen and not heard. A child can think like that when parents are doing uh, such a behavior. It is true that it is wrong to express my opinion. It is true that I have to be very concerned about what other thinks of me. It is true that I am never going to be a good enough or a good person. So after belief, the cognitive distortions like catastrophizing, the example is there. If I fail this test, I won't be good at my career. This may be cognitive distortion. I know we are all going to get fired soon and everything is going to go downhill. And in dichotomous thinking, any reason that begins with the word always, never, all or nothing, the person remains in the white area, either white area or in the black area. He does not believe in the gray scale. You must have learned about the all and none phenomena in physiology. Either it is all or it is none for him. Selective abstraction like
For example, someone feel like I invited everyone in the office to my birthday party and Swati didn't show. I am sure she hates me. So these are the cognitive distortions. Reason may be others also, but he thinks like that. My boss is arguing with someone in the office. It is probably due to something I did wrong. So now contribution of behavioral sciences. So you all know about the classical conditioning. You must have read in your physiology books, classical conditioning, the theory given by Ivan Pavlov. So the theory of Ivan Pavlov was theorized by Watson and Morgan that that it is account for much emotional behavior in the humans. The theory is not a mechanical theory; it has emotional connotations also. No, the behavioral or learning theories of anxiety postulate that anxiety is a conditioned response to a specific environmental situation. For example, if one has severe anxiety in a lift, you know, so he will, and it occurs somewhat repeatedly, then he make out that the lift, the closed one thing is the causative for my anxiety. So the person may avoid that situation, may not go into the lift uh, for elevating. So there is an example in a model of classic conditioning. A girl has panic attack while traveling, and for example, may become anxious as soon as she has to travel for somewhere. You know, if she would have been uh, travel to somewhere alone, she will feeling anxious without exposing to the situation. Okay. So this is classical conditioning. And what happens in operant conditioning? Operant conditioning is a behavioral principle that refers to learning that occurs because we experience either reinforcement or punishment. For example, we have done something, you know, and we got a positive reward for that doing. So we will reinforce to do that work again and again. If we got the punishment, then we will avoid or not try to do the thing in the future. This is operant conditioning. The difference in classical and operant conditioning basically is, in classical conditioning, it is a passive phenomena, and in operant conditioning, it's an active. You are doing something and you are getting reward or punishment. So this is an act. So last one is the existential theory, which applies for generalized anxiety disorder. Uh, in this, there is no specific identifiable stimulus exists for a chronically anxious feeling. The central concept of existential theory is that person experience feeling of living in a purposeless universe. So these were the psychological and behavioral contribution about the anxiety. Now, what are the biological? We will go through the neuroanatomy, neurotransmitters, autonomic nervous system, brain imaging studies, and genetic studies. Starting with the neuroanatomy, look at this picture. There is a central figure called as amygdala, and others are anterior cingulate gyrus, orbitofrontal cortex, hypothalamus, preaqueductal gray area of brainstem, locus ceruleus, parabrachial nucleus, and hippocampus. We will learn one by one about this neuroanatomy. In this neuroanatomy, the central figure is amygdala, which communicates with all these areas. Uh, Now look at the first. Amygdala communicates with orbitofrontal cortex and anterior cingulate gyrus, produces fear affect. It produces the emotional part of the anxiety. When amygdala communicates with preaqueductal gray area of brainstem, it creates motor response like fight, flight, or freeze reaction or avoidant behavior. When it communicates with hypothalamus,
There is endocrinal response to HPA axis, which leads to increased cortisol level. You all must know about the HPA axis in the physiology. You know, now how it is related to the psychiatry also. This is the HPA axis. Amygdala uh, give positive feedback to hypothalamus, then to pituitary, then to adrenal gland, and then it releases cortisol, which gives the negative biofeedback to the system of HPA. When amygdala communicates with parabrachial nucleus, it leads to increased respiratory rate. You must have seen that in anxiety, respiratory rate is increased. This is because of this communication. Locus coeruleus, the communication with amygdala cause autonomic hyperactivity. Now we will learn what is symptoms of autonomic. These are the symptoms: dilated pupils, inhibited salivation, increased heartbeat, relaxed airways, inhibit activity of stomach, stimulate release of glucose, and inhibits gallbladder, inhibits activity of intestine, secrete epinephrine and norepinephrine from the adrenal glands. It relaxes bladder. Why? Because of this, frequency, urgency, or hesitancy is noted, and it promotes ejaculation, vaginal contraction. So these are the signs and symptoms of autonomic hyperactivity. So this is the anxious facies. So you can see the wide palpebral fissure, frowning on the forehead, open mouth. You know. So you can relate this lady is anxious, and this image is generated by AI. You know, the Binge has incorporated Dela E software. So I have generated this anxious faces from that software, you know, artificial intelligence. When amygdala uh, communicates with hippocampus, it triggers anxiety because of internal memory, and this communication relates with the post-traumatic stress disorder. What happens in post-traumatic stress disorder is when the person relives a traumatic event in the past, he think of or he reliving the trauma, so he gets the anxiety. So this is the internal memory which triggers anxiety. So in brief, uh, anterior cingulate cortex, orbitofrontal cortex leads to fear affect or emotion. Preaqueductal gray area of brainstem leads to motor response. Hypothalamus leads to endocrinal response on HP axis or increased cortisol level. Parabrachial nucleus leads to increased respiratory rate. Locus coeruleus leads to autonomic hyperactivity, and hippocampus leads to anxiety triggered by internal memory. Now coming to the neurotransmitters which are involved in this uh, neuroanatomical structures. So when it is amygdala centered circuit, these neurotransmitters are involved. The first one is serotonin, then GABA aminobutyric acid, glutamate, cortisol, corticotropin releasing factor, and HPXS, norepinephrine, voltage gated ion channels. These neurotransmitters are involved, and which leads to fear, panic, and phobia. There is another loop which is known as worry loop. It is cortico-striatothalamocortical loop. It also involves the all similar neurotransmitters uh, other than CRF, which replaces by the dopamine, DA. These neurotransmitters are involved in genesis. So I will explain only the serotonin transmission. You can look at this picture.
On the upper part you have presynapse, and in the lower part you have postsynapse, and the area between these presynapse and postsynapse is synapse. So you can see the bubble-like structures. These are vesicles which are having serotonin and released into the synapse. And these orange tubules are SERT transporter, which takes back these vesicles into the presynapse if it remains unused. And this triangular structure is autoreceptor, which regulate the release of uh, serotonin vesicles into the synapse. And in postsynapse, these are the trapezium-like structure are postsynaptic receptors, activation of which leads to uh, activation of a cascade system, which activates second messenger and generation of protein kinases and the expression of genes. So this is the transmission of serotonin in synapse. So now few words about the brain imaging studies. Computed tomography and MRI occasionally show some increase in the size of cerebral ventricles. These are the findings. These are not the uh, cannot be said as causative factor for anxiety disorder, but on MRI and imaging, these features have been noted and seen. The functional MRI, PET, SPECT, and EEG of patients with anxiety disorder have variously reported abnormality in frontal cortex, the occipital and temporal areas, and in a study of panic disorder, the parahippocampal gyrus. And the caudate nucleus is implicated in the pathophysiology of OCD on these functional imaging. So this is few points about the genetic study. Almost half of all patients with panic disorder have at least one affected relative. A higher frequency of illness in first degree relatives of the affected patients than the controls. Data from twin registries also support the hypothesis that anxiety disorder are at least partially genetically determined, and low anxiety disorder is likely to result from a simple Mendelian abnormality. Now coming to the classification, look at this slide. This gives the ICD-10 classification of anxiety disorder, and the highlighted one we will discuss further in the slides. Okay. So the first one is agoraphobia, with or without panic disorder. Okay. The other is social phobia, specific or isolated phobia, panic disorder, generalized anxiety disorder. So these are the symptoms of anxiety or worry. You can see this slide is somewhat faded. Okay. So first one is one can have fatigue, one can have hyperarousal, one can have panic attack, one can have avoidance, one can have compulsions, muscular tension, irritability, sleep problems, and impairment in concentration. So these are the overall symptoms, but all the disorders does not have all these symptoms. The disorder have a theme, and on the basis of that theme, the person is having symptoms out of these. So starting with agoraphobia, with or without panic disorder. Agoraphobia is fear of being in those places from where easy escape is not possible. The place is open, the place is not closed. The person uh, have anxiety in these places, uh, thinking that easy escape is not possible from this place. It may be associated with panic attack. You already know the repeated acute intense attack of anxiety accompanied by feeling of impending doom. The feeling of impending doom must be there. Impending doom, going mad or losing control must be there to say
it's a panic attack, otherwise it's a anxiety. So this is the diagnostic guideline of ICD-10. Uh, there must be the psychological or autonomic symptoms uh, primarily manifesting the anxiety and not secondary to other symptoms such as delusions or obsessional thought. The anxiety must be restricted to at least two of the following situations like crowd, public places, traveling away from home and traveling alone, and accompanied with avoidance of the phobic situation may have the prominent feature. So now look at the yellow part. In what happens in panic disorder, there is a central theme of anticipatory anxiety, and there are panic attacks and avoidant behavior in form of agoraphobia. So these are the symptomatology of panic disorder with or without agoraphobia. Now coming to the social phobia. In social phobia, there is marked fear of being the focus of attention. Uh, when one is giving the speech or giving the lecture, the person is in the focus of attention, so he may have anxiety at that point of time. It is social phobia. The second point is marked avoidance of being the focus of attention or situation in which there is fear of behaving in an embarrassing or humiliating way. The biological symptoms are blushing, fear of vomiting, urgency, fear of micturition or defecation. Rest are these. So now look at the again at the yellow part. There is the central theme is performance anxiety or worry about exposure, and there are panic attacks and avoidant behavior to that social situation. The agoraphobia is fear of being in places from where easy escape is not possible, and the avoidant behavior in social phobia is to the situation which are causing social situations which are causing specific phobia. As the name defines, it is the phobia of specific situation or object, like particular animal, height, thunder, darkness, closed spaces, sight of blood, or etc. So in specific phobia, the central theme is specific anxiety and avoidance to that specific situation. Now generalized anxiety disorder, the essential feature of anxiety which is generalized and persistent. It is not specified, it is generalized to all of the things or most of the things happening in the life or in and around in the near future or in the near past. This is not specific, so it is called as free floating anxiety. Anxiety is free floating. This is the diagnostic criteria. In generalized anxiety, you will have almost all of the symptoms, other than panic attacks, avoidance, and compulsions. The person may be hyperarousal, may feel fatigue with impaired concentration, disturbance of sleep is there, irritability is there, and muscular tension. So this is about the anxiety disorder. So we have learnt about the panic disorder with or without agoraphobia, social phobia, specific phobia, and generalized anxiety disorder, and panic disorder as a part of agoraphobia with panic disorder. So what are the differential diagnoses for anxiety disorder? Other psychiatric disorder may have anxiety also, like depression, substance abuse, and psychotic illnesses like schizophrenia can also have anxiety. So you have to rule out whether the person is having a primary psychiatric disorder or not. 90% of time, depression present with anxiety. Other than
psychiatric disorder, there is a exhaustive list of physical disorders which may lead to anxiety, like uh, almost all of the systems are involved, like cardiovascular system, like anemia, hypertension, angina, in pulmonary disease, asthma, embolus, hyperventilation. Neurological disorders can also have anxiety. Endocrinological disorders like Addison's disease, Cushing's syndrome, diabetes, hyperthyroidism can have anxiety. Drug intoxications can also have symptoms of anxiety like amphetamine, amyl nitrate, anticholinergics, drug like cocaine, uh, hallucinogens, marijuana, nicotine, theophylline. These all can create anxiety. Drug withdrawal, like withdrawal of alcohol, withdrawal of antihypertensive, opiates, and sedative hypnotics can also lead to anxiety disorder. Other conditions like vitamin B12 deficiency, anaphylaxis, and others like electrolyte disturbance, heavy metal poisoning can also have anxiety. This is not the last list. The list is more exhaustive. So when you are dealing with the patient with anxiety, so you should be cautious about these physical disorders also. The person may have pheochromocytoma, severe hypertension, or cardiac illnesses, which may lead to anxiety and confused with the anxiety disorder. So this is the last and thank you slide. Thanks for patient listening. So we will recap what we have learned is the Freudian concept of anxiety, fear versus anxiety or normal versus pathological anxiety, sign and symptoms of anxiety in terms of cognitive, uh, biological and behavioral symptoms, terminology like panic, anxiety disorder, panic attack, fear and phobia, epidemiology, etiology, classification of anxiety disorders, uh, and clinicals of specific disorders and differential diagnosis. So these things we have learned today. And what is next in the lecture is the management of anxiety disorders. Okay. So today's topic is anxiety disorder management part. So we had learned about normal fear versus pathological anxiety, cognitive, biological, and behavioral signs and symptoms of anxiety disorders, and etiology on the basis of biopsychosocial model, and classification according to ICD-10. Example are agoraphobia with or without panic disorders, social phobia, specific phobia, and generalized anxiety disorder. And we learned about the differential diagnosis. So management basically has three parts. The first is lab investigation. The second is pharmacologic treatment and non-pharmacologic treatment. In lab workup, a targeted workup is required, and if possible, tests should be selected to rule out or rule in the specific other diagnosis, which may be the differential diagnosis for anxiety symptoms. And here is a we had discussed about the long list of medical disorder which can mimic as anxiety disorder. In all the new patients, routine tests to be considered, including complete blood count, electrolytes, fasting glucose, HbA1c, kidney function test, liver function test, thyroid function test, and urinalysis. Occasionally, additional studies may be indicated to rule out pheochromocytoma via urinary catecholamines, seizure disorder by EEG, cardiac arrhythmia by ECG or Holter monitoring, and pulmonary disease uh, can be ruled out by pulse oximetry, arterial blood gases, and X-ray. Brain imaging may be useful in ruling out demyelinating disorders.
tumor, stroke, or hydrocephalus. In pharmacological treatment, the available drugs of classes of drugs are tricyclic antidepressants known as TCAs, selective serotonin reuptake inhibitor known as SSRI, selective norepinephrine reuptake inhibitor SNRI, benzodiazepines, beta blocker, buspirone, and low dose of antipsychotics like flupentazole. The commoner TCAs are which we use nowadays are amitriptyline and clomipramine. In SSRI, the widely available drugs are escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, and sertraline. Can be used in SNRIs. Duloxetine, atomoxetine, desvenlafaxine, and venlafaxines are available. In benzodiazepine, the most common drug used for anxiety is clonazepam and oxazepam. Lorazepam can also be used, but it is reserved for sedating effect for sleep disturbance. Diazepam somewhat not used nowadays, and chlordiazepic oxide is reserved for alcohol withdrawal syndromes. Beta blockers like propranolol, metoprolol, atenolol can cut down the peripheral symptoms of anxiety like increased heart rate, sweating, tremulousness can be controlled by these. Now look at the mechanism. Uh, the tricyclic antidepressants block the transporter site for norepinephrine and serotonin both, while SSRI selectively blocks the serotonin reuptake at site 1, which you can see in the green circle. And MAO inhibitors enzyme inhibit the enzyme in the presynapse in mitochondrion. In the red circle, you can see the autoreceptors are there, which signals the presynapse that there is more availability of serotonin while patient on treatment, and it can send the feedback to reduce the production and release. So few novel antidepressants like vortioxetine take care of these uh, biofeedback of autoreceptors. The novel antidepressants acts both on the site 1 and site 2. Benzodiazepines are actually interacting with GABA receptors to open the channel, and there is depolarization of the neuron, and GABA is known for its inhibitory effect, so calming down effect is there, and benzodiazepine are known to cause immediate relieving effect on anxiety, while the TCS and SSRI and other drugs take more time to act upon to the fullest. The doses of these drugs are, and for TCS, amitriptyline is 50 to 150 milligram, clomipramine is from 100 to 200, SSRI is escitalopram, starting dose is 10 and can go up to 20 or 30. Fluoxetine is 20 to 80, fluvoxamine 50 to 300, paroxetine is 10 to 20, and likewise. In SNRI, the commoner drug is duloxetine, which can be given up to 40 to 60 milligram, and desvenlafaxine from 50 to 100. So the commoner benzodiazepine which are being used is clonazepam, and can be given in the two divided doses from zero point 0.5 to 2 milligrams per day. Beta blocker, you all know the dose of propranolol is 40 to 400. Buspirone is 20 to 30, and flupentazole is 1 milligram in divided doses two times a day. Now, while we are prescribing these drugs, we should also know about the side effects of these drugs. So the side effects should be known to you and can be taken care of. The cardiac side effects for TCAs
can be tachycardia, QTC prolongation, flat T wave, and depressed ST. Autonomic effects are orthostatic hypotension. Neurologic side effects are tremors, myoclonic twitches, paresthesias, peroneal palsy, ataxia. Allergic side effects can be agranulocytosis, leukocytosis, leukopenia, and eosinophilia. Hepatic are self-limiting rise in enzymes and fulminant acute hepatitis. Other may be sedation, weight gain, sexual problems like delayed ejaculation, and SIADH. The side effects of SSRIs are SSRIs has less severe or less prominent side effects than TCS because it is selectively inhibits the reuptake of serotonin, and in exception, paroxetine can have anticholinergic side effects more than that of other drugs like dry mouth, constipation, blurred vision, urinary retention, and delirium. So, if the person comes with the problem of urinary retention, you can think of anticholinergic side effects of SSRI or TCS. Autonomic effects are same, orthostatic hypotension. Neurologic other side effects will be anxiety. It may increase anxiety in the initial phase of treatment. Insomnia, sedation, vivid dreams can occur. Bruxism, restless leg syndrome, nocturnal myoclonus, sweating, and yawning without feeling sleepy, emotional blunting, EPSCs, and lower seizure threshold are neurological side effects. Hematologics are functional impairment of platelet aggregation, endocrinal or hypoprolactinemia. The person can have serotonin syndrome, which is a fatal syndrome due to TC or SSRI, and this condition should be treated in ICUs. The symptoms are agitation, insomnia, confusion, rapid heart rate, high BP, dilated pupil, twitching, rigidity, and can have irregular heartbeats, seizure, and unconsciousness. Other side effects are weight gain, sexual problem, and SIADH are similar to PCS. Now, the side effects of benzodiazepine is mild cognitive deficits. The person can have lower decision-making capacity, so these drugs should be avoided in persons such as who are uh, working upon heavy machinery or are drivers or driving vehicles. So driving and working upon heavy machinery should be avoided, or the drugs should be avoided while drinking. Anterograde amnesia can occur, so the drugs should be avoided who are uh, in the job of students who have to learn the things. The person can have anterograde amnesia and have difficulty for in concentrations. Others are aggression, hepatotoxicity, respiratory depression. Withdrawal seizure can occur in case of benzodiazepine dependence, ataxia, hallucinosis, and it can stimulate the appetite. So while you are going to treat the patient with anxiety disorder, some general principles to be considered. Uh, for example, for drug selection, efficacy and adverse effect should be kept in mind. Patient variables like age, sex, and if the person is having comorbid other physical illness or psychiatric illness should be kept in mind. And in some medical disorder, uh, these disorder may be responsible for the anxiety symptoms itself. So taking care of these comorbidities. The duration of treatment, the person asks how long do I need to take the medication. The answer uh, is depend on multiple variables like nature of disorder, what kind of disorder the person is having, the duration of symptoms, if the genetic loading is there, and the extent to which the patient tolerates the
side effect of drug and benefits from the medication. So risk benefit ratio should be uh, the considered point in defining duration of treatment. So treatment is usually defined and is conceptually broken down into initial therapeutic trial, the continuation phase, and the maintenance phase. The other point to be considered or have in your mind is the treatment does not provide absolute protection against relapse, and these treatment are not curative of the illness most of the time. And continuation therapy is required for relapse prevention. And in addition to early onset, history of multiple past episodes, severity, and length of current episode would make longer treatment duration or even indefinite treatment may be appropriate in some conditions. This is the course of anxiety disorder. Uh, just look upon the graph. There is low anxiety and it progresses to disorder like panic disorder or others. And in acute phase of treatment, you have given the drug and there is a response. And after response, there is a period of remission. And after the period of remission, the patient is in the recovery phase. And if the patient is having uh, the symptoms of disorder again, the patient can be classified as recurrence of uh, that disorder. Now coming to the non-psychopharmacological treatment, uh, other than drugs, what we can use is cognitive behavior therapy, systematic desensitization, implosion, applied relaxation, respiratory exercises, and virtual reality therapy. Because in the etiology, there are three components, biopsychosocial. Uh, the bio part can be taken care of by the drugs, and the cognitive part and behavioral part of the disorder can be managed by non-psychopharmacological method. So we will discuss about the behavior therapy, cognitive behavior therapy. There are two components, cognition and behavior. So in this vicious cycle, thought creates a feeling, and the feeling creates a behavior, and behavior reinforces the thought. So we will look upon how this is happening and how this works in the disorder. So CBT techniques are the techniques to identify negative thoughts. Negative thoughts means distorted thought or the thought uh, which is not in the context of the situation. And it is important to learn how thoughts, feeling, and situation can contribute to maladaptive behaviors. So, in this cognitive behavior therapy, you have to generate a list of possible solutions, evaluating the strength and weakness of each possible solution, choosing a solution to implement, like practicing new skills to combat the disorder. And it is important to start practicing new skills that can then be put into use in real world situation. So first of all, you have to set the goal. A therapist can help in goal setting skill by teaching how to identify your goal and distinguish between short and long term goal and set smart goals which are specific, measurable, attainable, relevant, and time based, and then implement the solution. And this therapy can target either cognition, behavior, or both. So this is the vicious cycle for panic attacks. What happens in panic attacks on the basis of CBT model? There is a panic attack occurs, and that attack is misinterpreted as heart attack or MI. Then the person acquires a behavior of hypervigilance or anticipatory anxiety of having another attack. And this behavior increases the anxiety and fear and
again a panic attack occurs, and the cycle goes on. So here misinterpretation as heart attack is the cognitive part, and hypervigilance and hypervigilance is the behavior, and anticipatory anxiety of having another attack is also part of cognition. So one have to correct this cognition and behavior in the person. And for agoraphobia, there is a repeated situational panic attacks, and it is misinterpreted as it occurs in open situation. This is the cognitive part. The attack occurs in open situation or crowded places from where easy escape is not possible. The person started avoiding such situations. The avoidance is the behavior, which further increase the anxiety, and the situation is repeated. In social phobia, the cognitive part is it is misinterpreted as if the person is being judged and being considered stupid, or the person himself thinks that I will definitely make a mistake while presented to a social situation. So this is the cognitive part, and the behavioral part is avoiding social situations. In specific phobia, the specific situation is misinterpreted as a dangerous situation, and avoiding these specific situations occurs as a behavioral part in specific phobias. There are few key benefits of CBT which has to be pointed out, that it allows you to engage in healthier thinking pattern by becoming aware of the negative uh, connotation and often unrealistic thought that dampen the feeling and the mood in a negative way. It is an effective short-term treatment option, and found effective for a wide variety of maladaptive behaviors. It is often more affordable. It is effective online as well as face-to-face. And specifically, this is useful who do not require psychotropic medication. Some patients do not demand that I don't want medication. So the therapies can be used in such situations. The next one is systematic desensitization. It's a therapy. Actually a type of behavioral therapy used to treat anxiety disorders. There are three parts of this systematic desensitization. The first is to learn the way to relax your muscles. The next part is to make a list of fear and rank them based on how intense your fear are, and to start exposing yourself to that feared situation in a gradual manner. So the first part is learning the relaxation technique. These relaxation techniques can be deep muscle relaxation, and the relaxation techniques are generally are of three types. First is autogenic relaxation, and second is progressive muscle relaxation and visualization. In autogenic relaxation, you repeat the words, phrase, or suggestion in your mind that creates a feeling of relaxation. And in EMR, one have to learn slowly, tense and relax each muscle group, and one normally starts from toes and goes upwards in systematic manner. And the third one is visualization. After learning the technique of relaxation, one have to create an anxiety hierarchy, and the the list is created on the scale of 1 to 10, and at the first level, level 10 fear, which cause the highest amount of anxiety that can be imagined, and in the last, the list level 1 fear, which causes the least amount of anxiety, and in between, rank the other feared situation or objects. So hierarchy is made. Now in the third step, working up through the fear scale through exposure. Now one have to expose to those fear one by one, and acclimatize to the non-anxious state.
And till the non-anxious state is attained for one fear, do not go for the another feared situation. This can be done in vitro or in vivo. In vitro, the patient imagines being exposed to the object of fear in the mind. In vivo, the patient is actually exposed to the fear. For example, the person is having fear of traveling in lift. Person can be taken to the lift along with you, and while the reassuring to the patient, the person can be exposed the to the situation of lifts. The third type is known as virtual reality exposure therapy. In this technique, a VR box is used, so the person is actually exposed to the real life situation in a computer generated environment. So for systematic desensitization for arachnophobia is discussed here. Arachnophobia is fear of spiders. At the start, the therapist might simply discuss. You can discuss about the spiders, then gradually introduce the pictures of the spiders, and further next step could be watching a spider on video, and then further handling the spider in actual situation. This will reduce the anxiety being exposed to the feared object. And you should keep in mind that the person should not be overwhelmed by the exposure. If the exposure is going in a wrong way, the person will feel more anxious and drop out from the therapy. This thing should be kept in mind. Implosion is based on opposite rationale of the systematic desensitization. That is, it is more effective to begin at the top of hierarchy rather than the bottom, and that rapid extension might take place. And these therapies are implied, but systematic desensitization are more comfortable and fruitful for the patient rather than the implosion therapy, in which the person is immediately exposed to the feared situation and left in that situation till the anxiety relieves. The respiratory exercises can be helpful in relieving anxiety. And usually the people with anxiety, they tend to take rapid and shallow breathe that we had discussed in the previous lecture. The communication between amygdala and parabrachial nucleus causes the shallow and rapid breathing. And this type of breathing is called thoracic or chest breathing, and causes an this thoracic breathing causes an upset in oxygen and carbon dioxide levels in body, and resulting in increased heart rate, dizziness, muscular tension, or other physical sensations. And in the shallow breathing, blood is not being properly oxygenated, and it also may signal a stress response that contributes to anxiety and panic attack physiologically. So there are various type of respiratory exercise. Is simple breathing, and in which one have to inhale slowly and exhale slowly, and keep a concentration on the air going into the lungs, which is basically a yogic exercise. Other exercises are deep breathing exercise, alternate nostril breathing, box breathing, 4-7-8 breathing, lines breathing, mindful breathing, pursed lip breathing, and resonance breathing. So, in short, the box breathing is not someone is breathing in a box or in a bag, but the box breathing is named because of this picture came out uh, while it was imagined that the person inhales and hold for a few seconds and exhale after holding the few seconds, and then the person also hold the breath and then inhale again. So this makes it a box like picture. That's why it is called as box breathing.
Again, in 4-8-7 breathing, it is also based on the holding of the process. Uh, breathing in your nose for 4 seconds and hold for 5 seconds and breathe out from mouth for 8 seconds. This is the name is 4-7-8 is given on the basis of the time period which is given in this process. Loins breathing is a form of pranayama, a breathing exercise from the yogic tradition, and you can have an idea by this picture how it is performed. Uh, it involves forceful exhalation through the mouth with the tongue extended and stretched down towards the chin. So this is loins breathing. Pursed lip breathing, in which one have to sit with your back straight or lie down, relax your shoulder as much as possible. Inhale through your nose for 2 seconds, feeling the air move into your abdomen. Try to fill your abdomen with air instead of just your lungs. Purse your lips like you are blowing on hot food and then breathe out slowly. So there is nothing special. The lips are pursed and the breathing is the inhalation and exhalation process is done accordingly. And this is resonance breathing. In resonance frequency breathing is a way of breathing. It is slow, relaxed, diaphragmatic breathing at around 3-7 breaths per minute. That has a regulating effect on the autonomic nervous system and other key body systems such as circulatory system. So resonance means it is a frequency of 3 to 7 breaths per minute. So called as resonance. So this is the picture of virtual reality therapy. In this picture, one is wearing the VR box and experiencing spider as if in the real and in the vicinity of the patient, and trying to relieve the anxiety by gradual exposure. So now conclusion is that there are lab investigations are required in management of the person. Classification of drugs, we know that SSRI, TCAs, benzodiazepine, beta blockers are there. We have learnt about the mechanism of actions and doses and side effects of the drugs and about the general principles of psychopharmacology. And apart from medicine, non-pharmacologic management is also available, like cognitive behavior therapy, systematic desensitization, implosion, applied relaxation, respiratory exercise, and virtual reality therapy. Thanks for patient listening. Good morning, everyone. I am Dr. Divyajit Singh, Senior Resident from Psychiatry Department, and I am going to take your lecture today on OCD and phobic disorders. So let's start with the first slide, introduction slide. What we have in this presentation: introduction to obsessive compulsive disorder, epidemiology, etiology. We have a treatment refractory, introduction to phobia, epidemiology of phobia, etiology of phobia, then its neurobiology, and ICD-10 classification and treatment. So let's start with, first of all, what is OCD? What is the full form of OCD? Obsessive compulsive disorder. I think you might everyone knows about this a little much about the OCD. So OCD comprises of obsession and compulsion. Obsessions are the thoughts which are recurrent, repetitive, intrusive. That's thought that will be a thought, images or impulse. That images, thought or whatever we say that are irrational. That's जिनका कोई रीजन नहीं होता है ना, बिना बात के वो थॉट्स या जो भी इमेजेस दिमाग में जो भी चीजें आ रही हैं बिना किसी रीजन के आती हैं, है ना, that are unpleasurable, है ना, that are distressing to the patient and are unstoppable, है ना. These are the feature of obsessional thoughts कि वो बार बार आती हैं, है ना, रिपीटेटिव होती हैं, अनस्टॉपेबल होती हैं, अनप्लेजरेबल होती हैं, है ना, अनअवॉइडेबल होती हैं, इरेशनल होती हैं विद नो रीजन, इंट्रूसिव होती हैं, है ना. मतलब आप कितनी भी कोशिश कर लो वो आपको थॉट्स आएंगी, दैट आर इंट्रूसिव, है ना, दैट आर डिस्टर्बिंग थॉट्स.
and it is a neurotic disorder, and it's come in anxiety spectrum disorder. Now we come to the epidemiology of OCD. It is a lifetime prevalence of 2 to 3% in population. Men and women are equally affected. Onset is generally seen in during the adolescent and early adulthood time. Onset is earlier for males than in females. Tends to be chronic without treatment with prior waxing and waning symptoms. है ना? अगर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो उसका वैक्सिंग वेनिंग पैटर्न रहता है, मतलब थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, फिर दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, फिर हल्का फुल्का इम्प्रूवमेंट हुआ तो उसी टाइप का इसका कोर्स रहेगा अगर विदाउट टेकिंग ट्रीटमेंट. Now come to what is obsessions. Obsessions may be thought contamination. जो obsessional thoughts होती हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, repetitive, unstoppable thoughts कह लो, images कह लो, कोई plans कह लो, that will be a thought of contamination, है ना? Like dirt contamination, है ना? Pathological doubt, need for symmetry, hoarding, sexual content, aggressive content, superstitious fear. थॉट कंटेमिनेशन हो गया जैसे कि किसी को बहुत ज्यादा थॉट्स आ रही है कि गंदगी के ख्याल आ रहे हैं ना, चीजें जैसे होता है हाथ नहीं धोए, हाथ में गंदगी लग रही है ना, कपड़े में गंदगी लगी हुई है, शरीर पे गंदगी लगी हुई है ना, मतलब वो पजेस है, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है विद कंटेमिनेशन ऑफ डर्ट, है ना, डर्ट एंड कंटेमिनेशन. पैथोलॉजिकल डाउट्स जो होते हैं वो होते हैं आपके जैसे सपोज करो आप कभी अपना रूम लॉक करके गए, है ना, या कमरा लॉक करा आपने और आपको लगा लॉक आपने कर दिया, बट आपको जाने के बाद लगा कि शायद डाउट है कि मैंने पता नहीं लॉक लगा है कि नहीं लगा, है ना, ऐसा होता है कभी कोई चीज में, है ना, कंफर्मेशन ना होना, है ना, उसमें लगता है कि डाउट है, तो दैट्स हैविंग अ डाउट, है ना, दैट इज कॉल्ड पैथोलॉजिकल डाउट. नीड फॉर सिमेट्री, है ना, सिमेट्री के ऑब्सेशंस होते हैं कि, है ना, जैसे आपने पेन रख रखे हैं या अपनी टेबल पे कुछ भी है ना, तो पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद द सिमेट्री ऑफ द थिंग्स, है ना, कि मुझे इसी वे में लगाना है, इसी ऑर्डर में लगाऊंगा, या पेन को स्ट्रेट ही रखना है, अगर मैंने पेन थोड़ा सा भी टेढ़ा हो गया तो मे बी समथिंग मिस हैपनिंग विद मी, मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, है ना, तो ये थॉट्स परेशान करते हैं. होर्डिंग के थॉट्स होते हैं, है ना, होर्डिंग के थॉट्स क्या होते हैं इसमें पेशेंट इज प्री ऑक्यूपाइड विद एक्सेसिव होर्डिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल, है ना, खाली प्लास्टिक की बॉटल्स, पॉलिथीन बैग, या जो भी अनयूज्ड चीजें हैं उन्हें वो अपने उसमें पजेस में रखना शुरू कर देता है ना, अपने पास रखना शुरू कर देगा, है ना, और उसे उस चीज को डिस्पोज करने में दिक्कत आएगी, है ना. ही और शी माइट बी थिंक दैट अगर मैं इसे डिस्पोज कर दूंगा तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, तो वो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, कूड़ा कबाड़ा होता है, वो इकट्ठा रखना शुरू कर देता है, जेब में पन्नी रखनी शुरू कर दी, है ना, बॉटल्स रखनी शुरू कर दी, या जो भी अनयूज मटेरियल है, जो भी वेस्ट है, जो कि डिस्पोज कर सकते हैं. ऑब्सेशन में भी ऑफ सेक्सुअल कंटेंट हो सकता है रिगार्डिंग एनीवन और रिगार्डिंग गॉड, है ना, दिमाग में ऐसे विचार आ रहे हैं, सेक्सुअल कंटेंट. एग्रेसिव कंटेंट हो सकते हैं, सुपरस्टिशियस फियर्स हो सकते हैं कुछ, है ना. दीज आर ऑल ऑब्सेशनल थॉट्स, है ना, दैट जो भी रिकरेंट होते हैं, है ना, अनस्टॉपेबल होते हैं, और तुम्हारा क्या कहते हैं, अनप्लेजरेबल होंगे, है ना, ये सारे ऑब्सेशन मे बी ऑफ दिस टाइप. Now this is a called linking of obsession and compulsion. This explaining a OCD cycle, है ना. OCD cycle comprises of obsessions like obsession thought, है ना, repetitive, recurrent, intrusive, which we talk earlier, है ना. It would be thought, plan, image, है ना, or any sexual content or dirt, contamination, doubt, है ना. Then this thought consists of anxiety. When this thought comes recurrent again and again, this causes patient in distress, and जब distress होगा तो anxiety होगी, है ना. अब इस anxiety को कम करने के लिए patient क्या करेगा, compulsive act करेगा, है ना. जैसे मान लो उसे लग रहा है मेरे हाथों पे कुछ गंदगी डर्ट लग रही है ना, उसे लग रहा है ऐसा कि मैं बार बार हाथों पे डर्ट लग रही है, वो परेशान हो रहा है इसी थॉट से, बार बार रिकरेंट, अनस्टॉपेबल, अनप्लेजरेबल उसे थॉट्स आते हैं, तो वो क्या करेगा इस एंजाइटी को कम करने के लिए, वो कंपल्सिव एक्ट करेगा, हाथ धोएगा, है ना, बार बार जाके वो हाथ धोएगा, उससे उसकी एंजाइटी थोड़ी बहुत देर के लिए रिलीव होगी, है ना. तभी तो बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव, है ना. तो ऑब्सेशन हुआ, ऑब्सेशन से एंजाइटी हुई, then will do the compulsive act, जिससे उसकी एंजाइटी थोड़ी बहुत कम हुई, है ना.
मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरीके से कम हुई, थोड़ी बहुत रिलीफ हुई एंजाइटी, है ना। उसके बाद रिलीफ हुई, देन अगेन कम्स टू ऑब्सेशन, है ना। साइकिल क्या होती है, जहां से शुरू होती है वहीं पे जाके फिर से स्टार्ट हो जाती है ना। दिस इज कॉल्ड ओसीडी साइकिल। देन जनरल रिक्वायरमेंट फॉर टू से दैट द पर्सन हैव अ ओसीडी, है ना। तो क्या होना चाहिए, जो ऑब्सेशंस और कंपल्शंस एक्ट है वो एक्सेसिव और अनरीजनेबल होनी चाहिए, है ना। मतलब ये तो किसी नॉर्मल लोगों में भी हो सकती है, इतनी थोड़ी बहुत चीजें तो होती हैं कि, है ना, कुछ चीजें बार बार दिमाग में आ रही है, बट व्हेन वी से दैट पर्सन हैज अ ओसीडी, है ना, तो दैट ऑब्सेशन व्हाट वी जस्ट डिस्कस हियर एंड कंपल्शंस आर एक्सेसिव एंड अनरीजनेबल, बहुत ज्यादा होने चाहिए, अनरीजनेबल होने चाहिए। अब कितने ज्यादा होने चाहिए कि उसका पूरा दिन का टाइम इसी में ही निकल जाए, है ना, मोर देन 2 to 3 आवर्स अगर उसके इसी में ही जा रहे हैं, ऑब्सेशनल में और कंपल्सिव एक्ट करने में, है ना, तो वी कैन से दैट पर्सन हैविंग सफरिंग फ्रॉम ओसीडी। Obsession and compulsion must cause a marked distress and significantly interfere with patient normal activities like his or our occupational activities or educational activities, academic activities, whatever he or she may be having, है ना। तो तभी तो बोला है ना डिस्ट्रेसिंग है, ये थॉट्स क्या है, डिस्ट्रेस करते हैं, एंजाइटी प्रोड्यूसिंग थॉट्स, है ना, बार बार रिपीट हो रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, एक ही एक थॉट्स आ रहे हैं, तो दे कीप इंटरफेयरिंग योर normal routine, occupational functioning and social activity or relationship with others. Now these are the diagnostic criteria, है ना। Diagnostic criteria is obsessional symptoms and compulsive act or both must present on most of the day for at least 2 successive weeks, है ना। All these points have to be fulfilled for 2 successive weeks, है ना, and be a source of distress or interference with activities. Like they must be recognized as individual on thought and impulse. जो उसकी सोच है और जो भी उसे impulse आ रही है वो उसकी खुद की होनी चाहिए. There must be at least one thought or act that is still resist unsuccessfully, even though others may be present with sufferer no longer resist. The thought of carrying out act must not in itself be pleasurable, है ना। ये तो आपको पता है डेफिनेशन से, है ना, that thoughts are very distressing, not at all pleasurable thoughts. जो भी थॉट्स आएंगे वो कोई भी ऐसी नहीं होंगी जो उसे अच्छी लग रही होंगी। अभी जैसे आप लोग बैठे हो, अभी आपके दिमाग में कुछ विचार आ रहे होंगे, परेशान तो नहीं कर रहे होंगे, इतने ज्यादा डिस्ट्रेसिंग तो नहीं होंगे ना, है ना, बट these obsessional thoughts are very distressing. The thoughts, image or impulse must be unpleasantly repetitive. What we said in earlier slide, they are repetitive, unstoppable. So all these criteria must be fulfilled for the diagnosis of OCD disorder. And the time duration is 2 weeks. This is a OCD etiology. OCD is believed to be a combination of genetic, temperament and life stressor, है ना, genetic, whatever in genetic, maybe it is hereditary, है ना, or temperament, your behavior, or it may be because of the stressor. Biologically, if we see that serotonin hypothesis, है ना, that is brain imaging, genetically and neuroimmunology. Serotonin hypothesis is just like a chemical, है ना, chemical alteration in the brain. When serotonin level is decreases, then it produces all these obsessional and compulsive act. Psychological में psychodynamic theory, personality theory and behavior theories are supported this etiology. And social में accommodation and adaptive mechanism. The failure of all these mechanisms lead to the OCD disorders. Neuroanatomical model of OCD, है ना. Now we talk to the neuroanatomical basis of OCD. The common area included in brain which is responsible for disorder, that are orbitofrontal cortex, head of caudate nucleus, anterior cingulate and thalamus. That part in the blue, that dark blue part, na, that is a frontal cortex. That is whole area which is involving in OCD disorders. And head of caudate nucleus, anterior cingulate and thalamus. I don't know if you seen in this diagram clearly, but just remember the name. Now come to the treatment part.
In treatment, we start with the pharmacotherapy, then cognitive behavior therapy, psychosurgery, and deep brain stimulation. There are various modes of treatment which we going through the stepwise manner. Now, like start with the pharmacotherapy. Start with the SSRI, selective serotonin reuptake inhibitor, which is the first line drug for treatment of OCD. And higher dose is needed than the normal, usually the patient need in depression. So in OCD, the higher dose is needed, like 80 milligram of fluoxetine. Generally, we start with 20 milligram of fluoxetine in depression or anxiety spectrum patient. But here we start with higher dose and need 12 to 10 to 12 weeks before switching. We can also add a clomipramine, first FDA approved and most serotonin specific TCA. As we know earlier in earlier slide that the etiological hypothesis of serotonin alteration. So all these drugs fulfill the serotonin loss in the brain. We can augment with lithium, atypical antipsychotic, and risperidone. Other medication which we give like monoamine oxidase inhibitor, like phenelazine, phenylcyclamine, and MAO are used to treat the OCD only when SSRI medications are failed. When the first line medications fail, then we give only when we give the monoamine oxidase inhibitor. These are the other augmentin agent which we can give with first line drugs like risperidone, aripiprazole, ondansetron, buspirone, memantine, lithium, ketamine. Now we come to the, after pharmacotherapy, we come to the psychotherapy part, which you guys know by the counseling part, psychotherapy. So there is a name like cognitive behavior therapy. This is an umbrella term. Under this, various psychotherapies or behavior therapies are come under, like RCT supported, longer lasting. These are all cognitive behavior therapies are RCT supported, means randomized controlled trial has been done on these psychotherapies. These are longer lasting than pills, and cognitive challenge, faulty reasoning. How ये किस तरीके से काम करती है कि like जो faulty reasoning brain में बन रही है, जो हम कर रहे हैं उसे reason को, it correct that reason, है ना? जो faulty thoughts हैं, जो reasoning बन रही है दिमाग में, है ना, उसे हम इसे correct करते हैं. Behavioral, we correct the behavioral aspect like exposure and response prevention, है ना? That's why we say that the cognitive behavior therapy. इसमें हम आपके cognition को improve करते हैं. जो भी थिंकिंग है, थिंकिंग में जो डिस्टॉर्शंस आ रहे हैं ना, थिंकिंग और बिहेवियर की तो प्रॉब्लम है ये, है ना, जो थॉट्स आ रहे हैं वो क्या है, थिंकिंग, है ना, दैट विल टेक केयर बाय द कॉग्निटिव पार्ट, है ना, एंड बिहेवियर जो कंपल्सिव एक्टिव वो बिहेवियर को इम्प्रूव करते हैं, है ना, बाय एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन. पेशेंट को एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन में क्या करते हैं, पेशेंट को बिठाते हैं और उसे डर्ट के लिए, जैसे कंटेमिनेशन के लिए उसे दिक्कत होती है ना, तो उसके हाथों पे थोड़ा सा जैसे सॉइल वगैरह कुछ लगा देंगे, मिट्टी वगैरह लगा के, और उसे वहीं बैठाएंगे, है ना, और उसे बताएंगे कि नहीं अगर ये लगा भी हुआ है तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा आपको. जो उसे बेचैनी सी होती है, एकदम से थॉट लगती है ना, जब गंदगी लगी हुई हाथ में तो तुरंत भागता है, एकदम हाथ धोता है, तो उसे पेशेंट को हम ये चीज सिखाते हैं, उसे इम्प्रूव करते हैं ना उसके बिहेवियर को, कि नहीं ये हाथ अगर आपके गंदे भी हैं तो उससे कुछ नहीं होगा, आप थोड़ी देर बैठो, है ना, कीप काम एंड पेशेंस, है ना. ना एक्सपोजर, दिस इज एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, जो मैंने अभी आपको बताया ना, पेशेंट को इसमें बिठाते हैं तो ये वही है. The most widely practiced behavior therapy for OCD is called exposure and response prevention. इसमें हम पेशेंट को एक्सपोज करते हैं, फिर उसका रिस्पॉन्स देखते हैं क्या है ना, फिर उसे इम्प्रूव करते हैं. There are two main component, exposure treatment, response prevention treatment. पहले पेशेंट को एक्सपोज किया, जो भी डर्ट वगैरह उसके हाथ में लगाई, फिर जो उसका रिस्पॉन्स आता है, नॉर्मली क्या रिस्पॉन्स आएगा, उसे बेचैनी घबराहट होगी, है ना, उसे प्रिवेंट कराएंगे, है ना, रिस्पॉन्स प्रिवेंशन ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट स्टार्ट विद एक्सपोजर टू द सिचुएशन दैट कॉज द लीस्ट एंजाइटी, है ना. इसमें भी स्टेप वाइज अप्रोच करते हैं ना, एकदम से ये नहीं कि हाथ पे उसके कुछ गंदी चीज लगा दी, बहुत है तुम ले आए बाहर से आके गोबर ही लगा दिया उसके हाथ पे, है ना, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना. बहुत कोई ऐसी चीज लगाओ, सॉइल लगाओ उसके हाथ में, है ना, मतलब धीरे धीरे आप उसकी स्टेप वाइज एंजाइटी क्लियर करोगे. As the patient overcome there, they move on to the situation that cause more anxiety.
है ना। फिर धीरे धीरे उसका लेवल आप बढ़ाओगे, जैसे आपने कोई सॉइल लगाई, फिर कुछ और लगा दो, इंक लगा दो, कुछ इस तरीके से, है ना। स्टेप वाइज अप्रोच वी हैव टू मॉनिटर। नाउ ट्रीटमेंट रिफ्रैक्टरी होता है जब ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट हो जाए, तो फिर क्या करेंगे? जब आपकी फार्माकोथेरेपी दवाइयां भी काम नहीं कर रही है ना, कोई थेरेपी काम ही नहीं कर रही है, तब क्या करेंगे? फार्माकोथेरेपी फेल, है ना, साइकोथेरेपी भी फेल हो चुकी है ना, अब पेशेंट रेजिस्टेंट हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे? वी गो फॉर साइको सर्जरी, है ना। इसमें सर्जरीज होती है, माइनर साइको सर्जरीज होती है फॉर पेशेंट हु हैव फेल्ड मेडिकेशन एंड थेरेपी। रेस्पॉन्स रेट जो होता है अप्रोक्सीमेटली इसका 50% होता है। फॉर 4 सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, लाइक सिंगुलोटमी, सब एक्यूट ट्रैक्टोटॉमी, लिम्बिक लिकोटमी, कैप्सुलोटमी। These are the name of surgeries which perform on a brain, है ना, and interrupt signal for OFC to the basal ganglia. These are the circuit for OCD, है ना, तो उसे interrupt करना होता है by gamma knife or anterior limb of internal capsule. These are the part where the surgeries has been performed. This is the OCD, and now come to the phobia. The word phobia is derived from, फोबिया के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा तो पता ही होगा ना, फोबिया टर्म सुना होगा, ऐसा तो नहीं है पहली बार सुन रहे होंगे, है ना। फोबिया, वर्ड फोबिया इज derived from the Greek word phobos meaning extreme fear and flight, ना। फोबिया में क्या होता है? डर ही तो लगता है ना। फोबिया मीन्स क्या? फियर, है ना। फिर उसमें क्या होता है? फ्लाइट, फियर एंड फ्लाइट रिएक्शन। Now, epidemiology. Phobia are the most common of all anxiety disorders, come under the anxiety spectrum disorder. So, this is the most common anxiety disorder, phobia. Social phobia is the most common of all phobia. Lifetime prevalence rate of agoraphobia have been reported from a number of studies. Now, we come to our coming slide. We study in that agoraphobia and social phobia. क्या चीज है agoraphobia, social phobia क्या है? भी आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो सोशल फोबिया इन मेल्स एंड फीमेल्स में ज्यादा होता है ना। फोबिया ओवरऑल जनरली देखा जाए तो फोबियास फीमेल्स में ही ज्यादा होता है ना, एज कंपेयर टू मेल्स। स्पेसिफिक फोबिया अकर्स इन 2.4 to 9.2% ऑफ चिल्ड्रन, है ना, एंड एडोलेसेंट विद यूजुअल ऑनसेट बिटवीन 5 to 13 ईयर ऑफ एज। वुमेन रिसीव डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफिक फोबिया मोर ऑफ्टन देन मैन। कुछ स्पेसिफिक फोबियाज होते हैं, जैसे हाइट से डर लगना, क्लोज जगह से डर लगना, है ना, वो वुमेन्स में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेंस। एंड फोबियाज आर मेनी टाइप्स ऑफ फोबियाज होते हैं। ऑनसेट इज ऑफन सडन एंड कोर्स इज यूजुअली क्रोनिक, है ना। ऑनसेट जो होता है इसका बहुत एकदम अचानक से सडन होता है, और लंबा कोर्स होता है इसका क्रोनिक। ईटियोलॉजी, जेनेटिक एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं। जेनेटिक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइक हेरिडिटरी, अगर आपकी फैमिली में किसी को हो तो मोस्ट चांसेस है कि वो आप में भी हो। एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं ना, साइको सोशल फैक्टर्स होते हैं, स्ट्रेस, है ना, फैमिली एनवायरनमेंट कैसा है ना, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। नाउ इंटरेक्शन बिटवीन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल डायथीसिस एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स, दीज आर द, इससे पड़ेगा मैंने तो इससे पढ़ी थी, इससे अब इसे दोबारा से करना है। Now, neurobiology, है ना, the phobias are generally caused by an event recorded by amygdala and hippocampus as labeled or as deadly or dangerous. The neurobiology means the part of area responsible for this phobias, है ना, that is amygdala and hippocampus, है ना। Thus, whenever a specific situation is approached again, the body reacts as if the event were happening repeatedly afterward. Now, classification of phobias as per International Classification of Disease by WHO ICD-10 is, it's come under the F40, agoraphobia without panic disorder, with panic disorder, social phobia, specific isolated phobia, other phobia, anxiety disorder, phobic anxiety disorder, unspecified. These are the classification. Agoraphobia, it is characterized by the irrational fear. Irrational means with no reason. Irrational fear of being placed in away from a familiar setting or home, or in crowded places or in situations that a patient cannot leave easily.
जैसे कोई मार्केट गया, घर से बाहर गया, जब आप अपनी फैमिली की सेटिंग से बाहर जाओगे कहीं और जैसे क्राउडेड प्लेस में जा रहे हो, है ना, मान लो बस में हो या किसी मार्केट में गए, तो वहां पे ये फोबियाज होता है ना। आपको एकदम से लगेगा, अचानक से हेल्पलेस सा फील करोगे कि मैं कहाँ आ गया हूँ, है ना। इस तरीके का इरेशनल फियर होता है ना, विद नो रीजन, जिसका कोई मतलब नहीं है ना। नॉर्मली तो आप लोग बाहर जाते हो, ऐसे कोई घबराहट तो नहीं होती है ना, बट इसमें क्या होता है, फोबियाज होता है इन पब्लिक प्लेसेस, घर से बाहर की सेटिंग में, जब आप घर के माहौल में ना होगे, कहीं बाहर जाओगे, लाइक इन बसेस, पब्लिक प्लेस, मार्केट, क्राउडेड प्लेस, जहां से एस्केप इज यूजुअली नॉट पॉसिबल, जहां से लगे अब मेरा यहाँ से मैं कैसे बचूंगा, है ना, ये वाली जो थॉट आई। Now, social phobias is an irrational fear of performing activities in presence of other people interacted with others. Social phobias हो गया like speaking in public places, है ना, ऐसा हो गया, parties हो गया, gathering में आप जा रहे हो, है ना, वहाँ लोगों को देख के आपको phobia होता है। अच्छा, कई लोगों को होता है ना, they might avoiding these parties, gathering. The patient is afraid of his own action being viewed by other, critically resulting in embarrassment and humiliation, है ना। सपोज आप किसी पार्टी में गए हो, आप किसी मैरिज में जा रहे हो ना, तो वहां पे ऐसा लगता है कि जब आप कुछ खा रहे हो, पी रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है मुझे देख रहे होंगे सब, है ना, कुछ एम्बेरसमेंट सा लगता है ना, एक थोड़ा सा, है ना। बट ये नॉर्मल है, बट जो फोबियाज वाले होते हैं उन्हें बहुत दिक्कत होती है ऐसी सेटिंग में, है ना। पार्टीज फंक्शन में बहुत घबराए हुए से रहेंगे, डरे हुए से रहेंगे कि सब मेरे को ही जज कर रहे होंगे, सब मेरे को ही देख रहे होंगे, तो बड़ी एम्बेरसमेंट सी सिचुएशन हो जाती है उनकी। स्पेसिफिक फोबिया, इट इज एन इरेशनल फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट एंड स्टिमुलस। किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या कोई ऐसा रिस्पॉन्स है जिससे आपको बहुत डर लग रहा हो, तो स्पेसिफिक फोबियाज बोल सकते हैं, है ना। सिंपल फोबियाज आर कॉमन इन चाइल्डहुड, by early teenage most of these fear are lost, but a few persist till adult life, है ना। चाइल्ड में होते हैं बट आगे तक persist कर जाते हैं कई बार ये फोबियाज, if they are not treated. Sometimes they may reappear after a symptom-free period. Exposure to the phobic object often result in panic attack, है ना। बार बार फोबिक ऑब्जेक्ट से अगर चीज आएगी बार बार, तो उससे पैनिक अटैक भी डेवलप हो सकता है ना। पैनिक अटैक जैसे घबराहट, पाल्पिटेशन हो जाना बहुत ज्यादा, है ना, स्वेटिंग, ये सब। Now, treatment of phobias, है ना, again start with the psychotherapy, pharmacotherapy, same what we have discussed in the OCD, है ना। psychotherapy में cognitive behavior therapy, we work on a cognition and behavior of patient, है ना। pharmacotherapy and supportive therapy. There is one more thing, insight oriented psychotherapy. It is superior to psychoanalytical psychotherapy, what we have discussed in previous slide, like psychotherapy. This is a part of that, but pretty much different, like insight oriented psychotherapy. Here we work on the patient को insight develop कराते हैं, है ना, जो उसे एक misconception सा उसे लग रहा है, तो उसे insight पे focus कराते हैं, है ना। insight oriented psychotherapy enables the patient to understand the origin of the phobia, है ना, ये phobia कहाँ से develop हो रहा है ना। phenomena of secondary gain and the role of resistance, है ना, and enable the patient to seek healthy way of dealing with anxiety provoking stimulus. ओवरऑल इसमें पेशेंट को हम सिखाते हैं कि फोबिया कैसे डेवलप हो रहा है ना, उसे सारी चीज समझाएंगे, क्यों डेवलप हो रहा है, क्यों ऐसी थॉट्स आ रही है ना, और उसे रिलीफ कैसे करा जाए, है ना, इस एंजाइटी को कैसे डील करें जो फोबिया से होती है। नाउ कम टू बिहेवियर थेरेपी, डिसेंसिटाइजेशन, है ना, डिसेंसिटाइजेशन कराते हैं उसे धीरे धीरे। फोबिया में क्या कराते हैं, अगर किसी को जैसे डॉग से डर लगता है ना, तो हम डिसेंसिटाइज कराएंगे उसे धीरे धीरे, है ना। डिसेंसिटाइज कैसे कराएंगे, पहले उसकी फोटो दिखाएंगे उसे, है ना। अब किसी को अगर कुत्ते से डर लगता है तो सीधे थोड़ी खड़ा कर दोगे उसे ले आके वहां पे, है ना। तो डिसेंसिटाइजेशन कैसे करेंगे, धीरे धीरे, पहले उसे उसका नाम लेंगे, फिर उसकी फोटो उसे दिखाएंगे, है ना। जब फोटो दिखा के उसकी एंजाइटी रिलीव होने लगेगी, तो फिर उसे दूर से दिखाएंगे, फिर उसे पास जाके भी दिखाएंगे, फिर उसे टच भी करवाएंगे। तो ऐसे सिस्टमिक डिसेंसिटाइज करते हैं धीरे धीरे, है ना। फ्लडिंग में क्या करते हैं, फ्लडिंग में एकदम से, फ्लडिंग इस थोड़ा मुश्किल होता है करना, बट फ्लडिंग में क्या होता है, उसे एकदम से ले आके सामने खड़ा कर दिया, है ना। 4-5 डॉग्स हैं, उसे ले आके ले गए डायरेक्ट, बट ऐसा करते नहीं है ना, पैनिक अटैक उसमें ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। सोशल स्किल ट्रेनिंग्स देते हैं ना, सोशली, दैट्स। कुछ पूछना है तो पूछ लो।
ठीक है. So today we'll be studying toxic and organic psychosis. My name is Dr. Neil Kasbe. I am a psychiatry resident in Subhardi Medical College, Meerut. ठीक है. So we'll be covering a lot of topics. Psychosis देखेंगे, psychosis क्या होता है, फिर organic psychosis क्या है, फिर organic psychosis के causes देखेंगे, toxic psychosis के causes देखेंगे, diagnose कैसे करते हैं, manage कैसे करते हैं, summary है. Basically दो चीजें देखनी है, एक है toxic psychosis और एक organic psychosis, and then उसके अंदर कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, manage कैसे करेंगे, वो सब देखेंगे. ठीक है. Psychosis क्या है, डेफिनेशन कोई पढ़ेगा? मेंटल दो टाइप के हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइकोसिस. सो अ मेंटल स्टेट वेर इन देयर इज अ लॉस ऑफ टच विथ रियलिटी, कि हमको रियल क्या है, अनरियल क्या है, इसमें डिफरेंस समझना बंद हो जाता है. ठीक है. साइकेट्री में पोस्टिंग हुई है, हो गई है. ठीक. तो उसमें तुमने काफी पेशेंट्स को देखा होगा, पेशेंट बोलता है कि मेरे को आवाजें सुनाई दे रही है. आवाजें तो सबको सुनाई दे रही है ना, मेरी आवाज तुमको दे रही है, तुम कुछ बोलोगे तुम्हारी मेरी दे रही, तुम्हारी आवाज मुझे सुनाई दे रही है. तो साइकोसिस में आवाजें अलग से कैसे सुनाई देती है, उसको एक्चुअल आवाज क्या है और उसके मन का वहम क्या है, उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकती. लॉस ऑफ टच विथ रियलिटी, दैट द पेशेंट इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज अनरियल. तो यहाँ पे बैठ के अगर मेरे को कोई गांव के ताऊ चाचा की आवाज आ रही है, या फिर यहाँ पे कोई है नहीं उसकी आवाज आ रही है, या फिर यहाँ पे पूरी शांति है, गाड़ियों की आवाज आ रही है, घंटियां बज रही है, मंदिर का पंडित बोल रहा है, व्हाटएवर, दीज आर ऑल साउंड्स व्हिच आर अनरियल, है तो नहीं, बट द पेशेंट विल थिंक दैट उसको एक्चुअल में ये आवाजें सुनाई दे रही है. नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज रियल एंड अनरियल. सेम थिंग विथ हैलुसिनेशंस, विजुअल, कि तुमको ऐसी कोई चीजें दिखाई दे रही है जो है ही नहीं. मैं यहाँ पे बोलूँ कि अगर यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी खड़ा है तो सही में थोड़ी खड़ा है, बट मैं बोलूंगा मेरे को दिख रहा है, सो दैट बिकम्स अ विजुअल हैलुसिनेशन, कि वो है नहीं बट फिर भी मुझे दिखाई दे रहा है ना. लगे रहो मुन्ना भाई में कौन सा विजुअल हैलुसिनेशन था, उसको मूवी तो देखी होगी, गांधी दिखते थे उनको, है ना, गांधी जी दिखते थे उनको. वो कहीं भी जा रहा है, कुछ भी करने वाला होता है, so he used to have a visual hallucination of Gandhi ji, and that Gandhi ji through auditory hallucination would talk to Sanjay Dutt, advice देता था, जो भी देता था. So he used to, he was able to see it, no, so he was having visual hallucination. तो उसमें रियल क्या है, अनरियल क्या है, संजय दत्त was not able to distinguish. तो साइकोसिस में तुम रियल अनरियल में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो. ऐसे ही तुमको किसी पे शक हो सकता है ना. डेल्यूजन्स जो होते हैं जिसमें एक फर्म फिक्स्ड बिलीफ होता है विच इज आउट ऑफ कीपिंग विद कल्चरल एंड सोशो इकोनॉमिकल फाउंडेशन. कुछ लोगों के गांव में मानते हैं कि टीबी ये माता का प्रकोप है. अगर कोई वो एनवायरमेंट में रहा है और वो आके मेरे को बोल रहा है कि मुझे टीबी है क्योंकि मुझे माता का प्रकोप हुआ है, तो आई विल नॉट से कि वो डेल्यूजन है, बिकॉज उसके गांव में सब लोग मानते हैं, वो कल्चरली उसको सिखाया गया है. बट अगर तुम में से आके कोई ऐसे बोलेगा कि मेरी शादी टाइगर श्रॉफ से होने वाली है और हमारे 2 बच्चे हैं, तो मैं बोलूंगा यार ये पॉसिबल नहीं है. या फिर कोई आके बोलेगा कि मेरी शादी कटरीना कैफ से हो चुकी है, ठीक है, और अभी ये कटरीना की दूसरी शादी है और हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं बोलूंगा ये पॉसिबल नहीं है. दीज आर डेल्यूजन्स. सो यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट इज रियल, व्हाट इज अनरियल. तुम उसमें बिलीव करते हो फुल्ली. मैं पूरा पूछूंगा कि क्या बात कर रहा है, कटरीना कैसे, कटरीना तो अभी बॉम्बे में होगी. तो हाँ बॉम्बे में है, शाम में दिल्ली पहुंच जाएगी, कल सुबह तक मीरठ पहुंच जाएगी. लाइक यू विल गिव मी एग्जांपल्स, यू विल, मतलब मैं तुमको क्वेश्चंस पूछूंगा बट यू विल बी वेरी फिक्स्ड ऑन इट कि ऐसा ही है. वैसे ही अगर विजुअल हैलुसिनेशन है, मैं बोलूंगा नहीं दिख रही है, नहीं दिख रहे गांधी यहाँ पे खड़े, सब लोगों को आके दिखाऊंगा, देख ये भी बोल रहा है, इसको भी नहीं दिख रहा है, इसको भी नहीं दिख रहा है. सो द पर्सन विल बी लाइक तुम गलत हो, मैं सही हूँ. सो पूरा फर्म बिलीफ होना चाहिए एंड नॉट एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज अनरियल. सो साइकोसिस में बेसिकली द पेशेंट लूजेस अ टच विथ रियलिटी. ये तो बहुत इजीली एक लाइन बोल दी यहाँ पे कि अ मेंटल स्टेट वेयर इन देयर इज अ लॉस ऑफ टच विथ रियलिटी.
बट इसको समझने के पीछे ये पूरा है कि क्या सच है और क्या नहीं है, उसमें डिफरेंशिएट करने की कैपेसिटी चली जाती है साइकोसिस में। पेशेंट काफी बारी रियलाइज भी नहीं कर पाता कि उसको कोई इलनेस है, वो भी इनसाइट नहीं होती है। कौन से टाइप के होते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी। कोई भी चीज का ना हमेशा एक प्राइमरी होता है और हमेशा एक सेकेंडरी होता है। कोई भी चीज प्राइमरी होता है जो डायरेक्टली करेगा, सेकेंडरी होता है जो इनडायरेक्टली कॉज करेगा। कुछ भी ले लो दुनिया में, उसका कोई एक डायरेक्ट कॉज होगा और कोई इनडायरेक्ट कॉज होगा, है ना। महंगाई क्यों बढ़ रही है सब्जियों की? क्यों? डायरेक्ट कॉज क्या हो गया? पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, है ना। इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ये हो गया, ये हो गया प्राइमरी कॉज। सेकेंडरी कॉज क्या हो गया? महंगाई क्यों बढ़ रही है, सब्जियों के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों? तो यूक्रेन रशिया की लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई की वजह से पेट्रोल की सप्लाई कम हो गई, वो पेट्रोल की सप्लाई की वजह से ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट बढ़ गए और उसकी वजह से सब्जियों के दाम बढ़ गए। तो सेकेंडरी इनडायरेक्टली आता है, डायरेक्टली नहीं आता। प्राइमरी मतलब डायरेक्ट, सब्जियों के दाम क्यों बढ़ गए? भाई हड़ताल चल रही है मार्केट में, डायरेक्ट कॉज हो गया। इनडायरेक्ट कॉज हो गया, ये लड़ाई वड़ाई चल रही है ये सब। तो हर चीज का एक प्राइमरी होगा और एक सेकेंडरी होगा। ये चीज तुम किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो, ये लॉजिक। प्राइमरी जो होता है डायरेक्टली आता है, सेकेंडरी जो आता है इनडायरेक्टली आता है। इसके बाद में किसी ने भी कोई भी टाइप्स पूछे, तुम प्राइमरी सेकेंडरी बोल दो और फिर सोचो कि डायरेक्टली क्या है, इनडायरेक्टली क्या है। प्राइमरी जो होगा डायरेक्टली, इनडायरेक्टली होगा सेकेंडरी। वैसे ही अगर साइकोसिस है तो कुछ प्राइमरी होगा कि जो डायरेक्टली कॉज कर रहा है, कुछ सेकेंडरी होगा जो इनडायरेक्टली कॉज कर रहा है। इतना ही लॉजिक है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड क्या है? व्हाट इज ऑर्गेनिक साइकोसिस। तो ऑर्गेनिक साइकोसिस क्या हो गया? साइकोसिस विच इज सेकेंडरी टू अ मेडिकल और न्यूरोलॉजिकल इलनेस, है ना। डायरेक्टली नहीं कॉज कर रहा है बट बिकॉज ऑफ अ मेडिकल इलनेस। अभी हिपैटिक एंसेफेलोपैथी करके एक टर्म होता है, कुछ नहीं होता, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, दिमाग में जाता है, दिमाग में जाने की वजह से दिमाग सूजने लग जाता है। एंसेफेलोपैथी इज इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, ऑल ऑफ दैट ऑफ द ब्रेन। हिपैटिक मतलब हिपैटिक कॉजेस की वजह से हो रहा है, तो लिवर की वजह से दिमाग में सूजन आ रही है। तो हिपैटिक एंसेफेलोपैथी में विजुअल या ऑडिटरी हेलुसिनेशन अगर आए पेशेंट को, तो वो सेकेंडरी कॉज बन गया, क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं कॉज कर रहा है ना। हिपैटिक एंसेफेलोपैथी मतलब लिवर में दिक्कत की वजह से कुछ सर्टन केमिकल्स बढ़ रहे बॉडी में, वो केमिकल दिमाग में जा रहे, दिमाग में सूजन करा रहे, और वो सूजन की वजह से हेलुसिनेशन, डेल्यूजन जो भी है, साइकोसिस हो रहा है। तो ये घूम फिर के हो गया ना, डायरेक्ट नहीं हुआ। तो क्या हुआ? जो भी घूम फिर के आ रहा है वो सेकेंडरी है। तो जो ऑर्गेनिक साइकोसिस होता है वो ऑर्गेनिक कॉज की वजह से सेकेंडरी साइकोसिस है, कि ऑर्गेनिक कॉज की वजह से कुछ होगा और वो कुछ होने की वजह से साइकोसिस होगा। मैकेनिज्म क्या है? डायरेक्ट डिसरप्शन ऑफ ब्रेन फंक्शन। वही है कि कोई ना कोई ऑर्गेनिक कॉज की वजह से, जैसे हिपैटिक एंसेफेलोपैथी बोल दिया, कोई ट्यूमर हो गया, है ना, ब्रेन ट्यूमर हो गया, कोई ब्लास्टोमा, मेनिंजियोमा, कुछ भी हो गया, दिमाग में कोई ट्यूमर हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, इन वजह से कोई दिक्कत, साइकोसिस आ गई, तो वो ऑर्गेनिक हो गया। सेकेंडरी है ना, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से तुमको कोई इंजरी हुई, उसकी वजह से साइकोसिस हुआ, तो वो सेकेंडरी। कॉमन फीचर क्या है? सडन, ये एकदम से साइकोसिस डेवलप होगा। जो प्राइमरी साइकोसिस होगा, जो स्किज़ोफ्रेनिया वाला होगा, उसको जैसे डेल्यूजन पकड़ लो, किसी को ये शक है कि मेरी सास मुझे मार डालेगी, राइट। मैं बहुत फैमिली ओरिएंटेड इंसान हूँ, इसलिए मैं फैमिली के एग्जांपल्स लेता हूँ। मेरी सास मुझे मार डालेगी, अभी ये डेवलप होने को धीरे धीरे डेवलप होगा। पहले उसको शक होगा कि यार ये सास ही खराब है, फिर उसको थोड़ा और शक होगा, ये सास हमेशा मेरे कमरे के बाहर चाकू लेके क्यों घूमती रहती है। फिर उसको और शक होगा, यार ये सास जो तरीके से सब्जियां काटती है, चिकन काटती है, मटन काटती है, ये तो कुछ तो गलत है। ये इसके दिमाग में है ना, पक्का ये सब्जी काटते हो कि मेरा चेहरा इमेजिन कर रही है। फिर उसको बाद में यकीन हो जाएगा, नहीं सास मेरी जो है ना, वो मेरी जान के पीछे पड़ी है। तो ये पूरा प्रोसेस होने को टाइम लगेगा। सो जो भी प्राइमरी साइकोसिस होता है वो धीरे धीरे, बिकॉज वो बिलीफ है ना, एक तुम्हारे मन का बिलीफ है, या एक कोई चीज तुमको दिखाई दे रही है, तो वो धीरे धीरे डेवलप होगा।
जो ऑर्गेनिक होगा वो एकदम सडन होगा, एकदम सडनली तुम्हारा यूरिक एसिड बढ़ गया, दिमाग में सूजन आ गई, एकदम सडनली कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई एकदम ट्यूमर आ गया, वो कोई आर्टरी पे ये कर दिया, इंपीड कर दिया, प्रेस कर दिया, कोई एक सर्टेन एरिया का ब्लड फ्लो रुक गया, कुछ भी हो सकता है, बट वो एकदम सडन होगा, फ्लक्चुएटिंग होगा, और मेमोरी एंड अटेंशन डेफिसिट होगा कि उसकी याददाश्त भी जाने लग जाएगी, उसका कहीं पे ध्यान नहीं लग पाएगा, चीजें नहीं याद रहेगी। खुद पे मत अप्लाई करो, मेरे को पता है काफी लोग बोलेंगे कि हाँ मेरे को भी याद नहीं रहती चीजें, या फिर मेरा भी कहीं ध्यान नहीं लगता, इसका मतलब नहीं है कोई कि तुमको ऑर्गेनिक साइकोसिस है। ठीक है, अभी कॉजेस क्या हो सकते हैं? न्यूरोलॉजिकल, ब्रेन में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ब्रेन में क्या हो सकता है? स्ट्रोक, ट्यूमर, टीबी, एपिलेप्सी। टीबी आए है, वो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, टीबी गलती से बोल दिया। सो स्ट्रोक हो गया, सडनली हेमोरेजिक हो सकता है, इस्चीमिक हो सकता है, कोई आर्टरी फट गई, कहीं पे दबाव रुक गया, जैसे मैं बोला कुछ ब्लड सप्लाई दब गया तो वहां पे ब्लड नहीं पहुंचा, या एकदम से कोई आर्टरी फूट गई, मिडल मेनिंजियल आर्टरी हो गई, कोई कम्युनिकेटिंग आर्टरी हो गई, कुछ भी हो गया, एकदम फूट गया, एकदम ब्लड फ्लो वहां पे हो गया, उसकी वजह से स्ट्रोक आ गया। ट्यूमर हो गया, कोई ट्यूमर डेवलप हो गया। ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी, जैसे मैंने बोला कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, उसमें हो गया। एपिलेप्सी, दौरे आ गए, उसमें हो गया। इन्फेक्शंस में क्या? एंसेफेलाइटिस हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, एचआईवी हो गया, है ना। मेनिंजाइटिस, मेनिंजियल लेयर की स्वेलिंग हो गई। मेटाबॉलिक में क्या है? लिवर किडनी फेलियर। अच्छा सर जी, आपकी अगली क्लास होगी, बैठ बैठ। लिवर किडनी फेलियर हो गया, जैसे मैं बोला हिपैटिक एनसेफेलोपैथी हो गई, वो हो गया। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है बताओ, है ना, ब्लड शुगर एकदम गिर गया, तो किसी को, यार लॉक कर दे, किसी को हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो तुम क्या करोगे? कोई भी ग्लूकोज या शुगर प्रोडक्ट देना है, लोग यूजुअली सोचते हैं कुछ भी मीठा दे दो, है ना, उससे बढ़ जाता है, बट अ लॉट ऑफ फूड दैट यू गिव वो धीरे धीरे बढ़ाता है। तो ऐसे कुछ दो, जैसे शुगर हो गया, चाशनी हो गई, रसगुल्ला हो गया, एकदम से दे दो। हाँ क्या? अच्छा तू, अच्छा मेरा दिमाग चला रसगुल्ला, रसमलाई, एक एक आ रहा था दिमाग में। तो ऐसे कुछ दे दो इमीडिएट मैनेजमेंट के लिए, है ना। तुम्हारे पास आएगा कोई पेशेंट होगा जो रेगुलरली उसका ब्लड शुगर गिरता होगा, डिजी हो जाएगा उसको, यू नो, डिजीनेस होने लग जाएगा, बैलेंस कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, उसको फिर जो भी है उसको बिठा के इमीडिएटली कुछ भी शुगर का, ग्लूकोज होगा तो बेस्ट है, ग्लूकॉन डी हो गया, ग्लूकोज पाउडर हो गया, जो भी है वो दिया तो और फास्टर होता है, वो खिला देने का। मतलब ऑफ टॉपिक है, बट काफी बारी ऐसे यूजुअल में रिलेटिव विलेटिव शादी वादी में हो जाता है। डिमेंशिया हो गया, डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं ब्रेन में, उसमें हो सकता है। तो ऑर्गेनिक साइकोसिस देख लिया, होता क्या है? सडन हो गया, है ना, अक्यूट ऑनसेट होता है उसमें। कॉजेज देख लिया हमने कि न्यूरोलॉजिकल हो सकता है, मेटाबॉलिक हो सकता है, और क्या क्या था, इन्फेक्शियस हो सकता है, डीजनरेटिव हो सकता है, पढ़ के तो मैं भी बोल सकता हूँ। टॉक्सिक साइकोसिस, ठीक है, ऑर्गेनिक देख लिया हमने, ऑर्गेनिक कॉज की वजह से। टॉक्सिक साइकोसिस, टॉक्सिक साइकोसिस क्या होगा? क्या होगा टॉक्सिक साइकोसिस? दिमाग में क्या आता है टॉक्सिक साइकोसिस बोलने पे? पढ़ लो। कोई भी सब्सटेंस हो सकता है या टॉक्सिन्स हो सकते हैं। टॉक्सिन्स आर केमिकल्स व्हिच हार्म योर बॉडी। धतूरा वगैरह सुना रहेगा, गाँव में खेत में धतूरा पॉइजनिंग हो गई, कपड़ों में हो गया, वो सब होता है ना, काफी कॉमनली होता है। कौन सा प्लांट होता है धतूरा वाला? ये धतूरा ही उसका नाम है। कोई लोकल नेम भी है क्या? मतलब यहाँ पे पूछ रहा हूँ मैं, कुछ है क्या? धतूरा ही बोलते हैं। क्यों होता है? अभी केमिकल है जो तुम्हारे ब्रेन के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो अगेन बैक टू मुन्ना भाई, क्या होता है उसमें? बोलता है ना, लॉट ऑफ केमिकल लोचा दैट हैपेंस।
right? So in the same way, a lot of disruptions of your neurotransmitter का जो balance होता है, that gets disrupted. So if you have a sudden surge in dopamine, है ना, डोपामीन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो तुमको साइकोटिक सिम्टम्स आते हैं, राइट? इसलिए साइकोस मतलब जो साइकोटिक पेशेंट्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट क्या है? एंटीसाइकोटिक्स। एंटीसाइकोटिक्स होते क्या है? बेसिकली डोपामीन कम करते हैं, क्योंकि साइकोसिस में डोपामीन बढ़ जाता है तो हमको डोपामीन कम करना है। वैसे ही ऐसे कोई टॉक्सिन्स या सब्सटेंसेस हो गए जो एकदम डोपामीन शूट कर दे या सेरोटोनिन गिरा दे या कुछ सिमिलर कंडीशन करवा दे जिससे डोपामीन बढ़ जाए, तो वो साइकोसिस कॉज करेगा, है ना? तो कोई भी टॉक्सिन या कोई भी सब्सटेंस जो डोपामीन बढ़ाएगा वो साइकोसिस कॉज करेगा। टॉक्सिक एंड ऑर्गेनिक साइकोसिस पे क्वेश्चन आ सकता है 5 या 10 मार्क का। कुछ नहीं करना है, साइकोसिस एक्सप्लेन करना है, ऑर्गेनिक साइकोसिस क्या होता है वो एक्सप्लेन करना है, कॉजेज लिखने हैं, टॉक्सिक साइकोसिस क्या होता है एक्सप्लेन करना है, कॉजेज लिखने हैं, दोनों का डायग्नोसिस हम देखेंगे, डिफरेंशिएटिंग फीचर थोड़े देख लेंगे और मैनेजमेंट। इतना लिख दोगे 10 के 10 मिल जाएंगे, ठीक है? और मैं उसी पैटर्न में पढ़ा रहा हूँ कि बस हेडिंग देख के तुमको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है? अभी टॉक्सिक साइकोसिस जो है वो अक्यूट भी हो सकता है एंड क्रॉनिक भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि कोई एक सर्टन सब्सटेंस या टॉक्सिन है जिससे तुमको रेगुलर एक्सपोजर हो रहा है, तो वो धीरे धीरे करके बढ़ा रहा है, एकदम सडनली नहीं है। लेड पेंट बोलते हैं, है ना? पहले के पेंट्स में लेड होता था, अभी तो इतना नहीं होता, मतलब मुझे नहीं पता इनमें है कि नहीं, बट यूजुअली अभी सब पेंट से लेड हट गया है, उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी। तो वैसे कोई ना कोई एक सब्सटेंस हो सकता है तुम्हारे आसपास में, एसी पुराने एसी से सीएफसीज वगैरह जो भी निकलती थी उससे प्रॉब्लम होता था लोगों को, है ना? कोई लोगों के पास पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, पोल्ट्री फार्म्स में सर्टेन टॉक्सिन्स डेवलप होते रहते हैं जो रेगुलर एक्सपोजर से तुमको कोई इलनेसेस कॉज करते हैं। सो डिफरेंट थिंग्स, दीज आर स्लो किलर्स और स्लोली डेवलपिंग थिंग्स। तो इनका एक्सपोजर तुमको धीरे धीरे होते रहता है, और हो सकता है एकदम सडनली कोई तुमने इंजेस्ट कर लिया टॉक्सिन, उससे हो सकता है कोई पॉइजनस सब्सटेंस हो गया, रैट पॉइजन हो गया, हार्पिक हो गया, और क्या यूज करते हैं? हाँ तू बता कौन से यूज करते हैं? फिनाइल यूज करते हैं, एसिड पीने सुसाइड के लिए, क्लीन के लिए। वाह, मैं हार्पिक वार्पिक उसके लिए नहीं बोल रहा था, मैं बोल रहा इंजेस्ट करते हैं ना टॉक्सिन्स, उस वे से रैट पॉइजन। हाँ हाँ पी लेते हैं, मैं वही बोला। तो ये सब टॉक्सिन्स ही है जो एकदम सडनली पी लेते हैं, उसकी वजह से भी साइकोसिस डेवलप होता है। ये आते हैं, इनको चीज़ें दिखाई देने लग जाती है, इनको लोगों के नाम वाम याद नहीं रहने लग जाते हैं, डिसोरिएंटेशन हो जाता है, डेलेरियम हो जाता है ना? डेलेरियम इज बेसिकली मतलब वो पहचान नहीं पा रहा है कहाँ पे है, क्या है, कौन क्या है, कुछ नहीं समझ रहा उसको। तो ये सब चीज़ें हो जाती है जब ये पॉइजनिंग के केसेस आते हैं। इंटेंशनल हो सकता है, अनइंटेंशनल भी हो सकता है। मतलब आई हैव हर्ड केसेस वेर इन पीपल हैव ड्रैंक फिनेल थिंकिंग इट इज लस्सी, क्योंकि किचन में फिनेल की बॉटल रखी थी और मतलब सामने लाके रख दी थी किसी ने, तो भी लेके आके रख दी, उसको लगा कि छाछ या लस्सी या कुछ है, होली पी ली, फिर रियलाइज किया अरे ये तो टेस्ट तो अलग है कुछ। सो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग बहुत कॉमन है। हाँ, छाछ भी सूंघ सूंघ के पियो। कॉजेज क्या हो गए? ड्रग्स ऑफ अब्यूज, एलएसडी, एम्फेटामीन, कोकेन, कैनबिस। इसमें ना एलएसडी में तुमको कलर्स दिखाई देने लग जाते हैं, तुमको विजुअल्स आने लग जाते हैं। एमडीएमए मेथाम्फेटामीन करते हो, सर्टन थिंग्स बिकम लाइवली। कैनबिस हो गया, कैनबिस में भी लॉट ऑफ साइकोटिक सिम्टम्स स्टार्ट डेवलपिंग। कैनबिस में जो रेसिडिवल होता है, कैनबिस इंड्यूस साइकोसिस भी एक बहुत कॉमन कंडीशन है, स्पेशली इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि कैनबिस में काफ़ी चीज़ें मिक्स्ड भी होती है। सो उसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा शक होने लग जाता है लोगों पे, एंड उसका कॉग्निशन गिर जाता है। तो दिस इज अ वेरी रियल थिंग, ये कैनबिस के साथ बहुत कॉमनली होती है, समझ रहा है? ठीक है, लाइक आई हैड अ पेशेंट जो कैनबिस यूजर था, उसने ज़्यादा नहीं 4-5 बार ही किया था, then he developed psychosis because of cannabis consumption, and then he used to say कि
मैं सब छिपकलियों को खत्म कर दूंगा। मैं बोला यार छिपकलियों से क्या दुश्मनी, तेरे को पहले बोला नहीं, दूसरा नहीं बोला। फिर बोला है कि शिव जी ने मेरे को इस धरती पे भेजा है क्योंकि इस धरती पे मुझे असुरों का नाश करना है, और ये जो छिपकलियां है ये असुरों ने भेजी हुई है, और ये छिपकलियां असुरों ने भेजी हुई शिव जी को मारने के लिए आई है। तो इसलिए मैं सब ये छिपकलियां खत्म कर दूंगा ताकि शिव जी सेफ रहे, और मैं सब असुरों का वध कर दूंगा। और उसको मैंने पूछा ये सब चीजें कहाँ से आई, तेरे में ये ताकत कैसे आई? मतलब वो बोलता ना आई एम द चोजन वन। सो आई आस्क्ड हिम कि हाउ डिड यू गेट चोजन, तुम ही क्यों? तो वो बोलता था जो कोरोना वायरस भी आया है उसके लिए मैं चाइना में गया था, ठीक है, फिर मैंने उसको अपने अंदर लिया है, और उसने पूरा वर्ल्ड टूर किया है, ये अलग 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 कंट्री में गया वो, और जहाँ भी जाता था वहाँ पे वो अपना मुंह खोल के वो वायरस का एक अंश बाहर छोड़ता था, और वो वायरस बस उन्हें ही अटैक करेगा जो शिवजी के भक्त नहीं है या फिर जो बहुत ज्यादा पाप कर चुके हैं। दैट वाज हिज बिलीफ, राइट? सो कैनबिस इंड्यूस्ड साइकोसिस, और ये एक बार ही सेट कर जाता है ना, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। तो काफी लोग बोलते हैं कि यू नो कैनबिस इज अ वेरी सेफ ड्रग, कि कैनबिस का लीगलाइजेशन होना चाहिए। उसका लीगलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है? इज बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि कैनबिस जो सेफ अमाउंट है वो सेफ अमाउंट में कंज्यूम नहीं होती है। एवरीबडी स्टार्ट्स टेकिंग इट इन लार्जर अमाउंट्स, एंड जब लार्जर अमाउंट्स में लेते हो तो तुमको साइकोटिक सिम्टम्स डेवलप होते हैं। इन द सेम वे कोकेन के साथ भी डेवलप होता है। कोकेन के साथ पैरानोया होता है, तुमको लगता है मेरे को कोई मार डालेगा, यू नो, यू बिकम जिटरी, यू बिकम रेस्टलेस, यहाँ पे खड़े हो नहीं पुलिस पकड़ने आ रही है, कबड़ में बंद कर लेता है खुद को, चाकू लेके सबके पीछे भागता है, तू मेरा खून कर देगा, तू मेरा खून कर देगा, अग्रेसिव हो जाता है बहुत ज्यादा। So these are all psychotic complaints which are developing. Why? Because of consumption of substances. So these are substance and toxins की वजह से होता है ना। So substance हो गया, स्टेरॉइड्स हो गए, एंटीकोलिनर्जिक्स हो गए, एल डोपा लेवोडोपा होता है, इनका सेफ लिमिट से ज्यादा कंजम्पशन हो गया या अननेसेसरी कंजम्पशन हो गया। गांव के डॉक्टर होते हैं हर चीज में लगाओ स्टेरॉइड, सुना तो होगा, डेक्सा लगा रहे लगाए जा रहे, जो आया मारो स्टेरॉइड, इंजेक्शन मारो, है ना। वो जैसे दुकान पे 2-4 रुपए बच जाते तो वो मिल जाती है ना एल्पेनलीबे, उतने आसानी से वो एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन लिख देते प्रिस्क्रिप्शन में, अच्छा आए हो क्या दिक्कत है, अच्छा दिमाग सर में दर्द है ये लो स्टेरॉइड, हर चीज के लिए स्टेरॉइड्स लिखते हैं। सो ओवर यूज ऑफ दीज मेडिकेशंस कैन आल्सो कॉज साइकोटिक सिम्टम्स। विड्रॉल स्टेट हो गए अल्कोहल में, अल्कोहल में बहुत क्लासिकली जब शराब छूटती है तो देयर इज अ बिहेवियर वेरिन यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग अ थ्रेड, कि तुमको एक धागा दिखता है। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन अल्कोहलिक्स, जब हमारे वार्ड में भी तुम देखोगे अगर पोस्टेड रहोगे तो कोई अल्कोहल से विड्रॉल चल रहा होगा तो ही स्टार्ट्स ग्रैबिंग थ्रेड्स, वो हवे में ऐसे ऐसे थ्रेड पकड़ने लगता है, वो ऐसे तुम्हारे पास जाएगा और तुम्हारे कपड़े से एक धागा निकालेगा, होता नहीं है, बस यहाँ से आके ऐसे धागा निकालेगा, और फिर धागा निकाल के वो लपेटने लग जाता है या फिर कहीं बांधने लग जाता है। सो दे स्टार्ट विजुअलाइजिंग अ थ्रेड, बहुत क्लासिकल बिहेवियर है ये। तो ये जब अल्कोहल विड्रॉल होता है उसमें आता है ना। टॉक्सिन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, जैसे मैं बोल रहा हूँ कुछ कुछ टॉक्सिन स्लोली काम करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है एनवायरमेंटल ये पोल्यूशन की वजह से हो सकता है कि तुमको रेगुलर सेफ लिमिट से ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड का एक्सपोजर हो रहा है, धीरे 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 इलनेस डेवलप हो रही है। लेड, जैसे मैं बोला पेंट वगैरह में होता है, मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी अभी बैन हो रहा है पता है ना, बीपी एपरेटस देखे आजकल, देखे नहीं देखे? देखे ना, अभी मर्क्यूरी वाले बीपी एपरेटस दिखते नहीं ना, सब डिजिटल या फिर वैसे दिखते हैं, बिकॉज उससे अच्छा वो प्रेशर वाले होते हैं, वेरी फ्रैंकली जो प्रेशर वाले होते हैं ना, जिसमें मर्क्यूरी नहीं होता बट एक प्रेशर गेज होता है, दोज आर मोर एक्यूरेट। बट वाई डिजिटल भी हो रहे हैं? बिकॉज मर्क्यूरी पॉइजनिंग इज अ वेरी बिग थिंग, भले ही उसमें सेफ है, और जब मर्क्यूरी पॉइजनिंग होता है इट इज अ डिफिकल्ट टू मैनेज कंडीशन, इसलिए मर्क्यूरी भी पूरा हटा दे रहे हैं, कहीं से भी जहाँ भी मर्क्यूरी यूज होता है वहां से लोग मर्क्यूरी का यूज बंद कर रहे हैं, इसलिए वो डिजिटल या प्रेशर वाले जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं। क्लिनिकल फीचर्स अभी ऑर्गेनिक और टॉक्सिक, बेसिकली समरी है, ठीक है, जो जो हमने अभी तक देखा
दोनों के पॉइंट्स एक्सप्लेन करते वक्त ही काफी डिफरेंसेस भी कवर हो गए। ऑनसेट कैसे होता है ऑर्गेनिक का? सडन होता है ना, अचानक से हो जाएगा। जो टॉक्सिक है वो सडन भी हो सकता है बट धीरे धीरे भी हो सकता है, धीरे धीरे एक्सपोजर हो रहा है, तो वही है आफ्टर एक्सपोजर। कॉन्शियसनेस क्या होती है? जिसमें तुमको अंडरस्टैंडिंग है आसपास क्या है क्या नहीं है, कहाँ हो क्या है, वो ऑफ्टन इम्पेयर्ड होती है ऑर्गेनिक में। टॉक्सिक में ऑफ्टन टाइम्स क्लियर हो सकती है। जैसे मैंने कुछ कंडीशन बोला पॉइजनिंग वगैरह, उसमें कॉन्शियसनेस भी चली जाती है, तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम यू कैन टेल कि तुम कहाँ हो क्या हो, बट समटाइम्स इट इज गॉन ऑल्सो। हेलुसिनेशन ऑर्गेनिक में विजुअल कॉमन है और टॉक्सिक में विजुअल प्लस टैक्टाइल। टैक्टाइल मतलब तुमको फील हो रहा है। कोकेन वाला जो पेशेंट होता है ना, कोकेन इंटॉक्सिकेशन वाला, कंटिन्यूसली वो ये कर रहा रहता है, मतलब अपनी बॉडी पे ऐसे खुजा रहा रहता है, या फिर कंटिन्यूसली वो पिक कर रहा होता है, क्योंकि उसको लगता है उसके शरीर के अंदर से कॉकरोच है, राइट। ही फील्स कि उसके स्किन के अंदर कॉकरोचेस रेंग रहे हैं, तो वो कंटिन्यूसली निकालने की कोशिश करता है। तुमको जो कोकेन वाला मिलेगा वो ऐसे 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 करते हुए मिलेगा तुमको। काफी देखा भी होगा काफी तुमने पेश कहीं पे, मतलब बाहर कभी घूम रहे हो ऐसे एरिया में जहाँ पे कोकेन लिया जा रहा है बहुत ज्यादा, विच इज अनलाइकली, बट अगर तुम कोई ड्रग एडिक्ट देखोगे तो वो बहुत ऐसे ऐसे से कर रहा होता है, खुजा रहा होता है, या मूवीज में देखो कहीं पे, दिस इज देयर बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स ही बिलीव्स कि इसके अंदर कॉकरोचेस है, कीड़े हैं, कुछ तो है। कोकेन बग इज द ऑफिशियल टर्म, कि कोई भी बग, कॉकरोच या कोई भी अदर बग है जो वो उसके बॉडी में है, तो वो खुजा रहा होता है, निकालने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो क्या है? तो टैक्टाइल हेलुसिनेशन है। टैक्टाइल इज व्हाट यू फील, जैसे विजुअल इज व्हाट यू सी, ऑडिटरी इज व्हाट यू हियर, टैक्टाइल इज व्हाट यू फील। तो टैक्टाइल हेलुसिनेशन उसको हो रहे होते हैं कोकेन में। ओरिएंटेशन ऑफ्टन डिसोरिएंटेड, एब्सेंट और इम्पेयर्ड। और ट्रीटमेंट क्या है? जो कॉज है उसको ट्रीट करो। जैसे ऑर्गेनिक हो गया तो कोई ट्यूमर है तो ट्यूमर को निकालो, है ना। कोई टॉक्सिक मतलब लिवर एंजाइम बढ़ गया है तो वो लिवर एंजाइम को कम ठीक करो। कोई इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस डिसबैलेंस हुआ है तो उसको ठीक करो। तो जो भी कॉज है ऑर्गेनिक में उसको ठीक करो। टॉक्सिक में क्या है कि कोई ना कोई सब्सटेंस या टॉक्सिन है, तो जो सब्सटेंस एंड टॉक्सिन है उसको निकालो। हो सकता है बॉडी में मिल गया हो, तुमने कुछ पी लिया है, XYZ पर्सन ने कुछ पी लिया है, तो जैसे एक्टिवेटेड चारकोल से फ्लश करते हैं, गैस्ट्रिक लवाज परफॉर्म करते हैं, ट्यूब डाल के पूरा पेट का जो भी अंदर का कंटेंट है पूरा बाहर निकाल लेते हैं, ताकि जो बचा कुचा पॉइजन है जो पूरी तरह ऑब्जॉर्ब नहीं हुआ है एटलीस्ट वो निकाल ले। तो जो भी टॉक्सिन या सब्सटेंस है उसको निकाल लो। शरीर में घुल गया है तो शरीर से निकाल लो। काफी बारी कपड़ों पे रह जाता है, कपड़े भी अब्जॉर्ब करते हैं ना। कोई गैस है तो मेरे कपड़े उसको अब्जॉर्ब करेंगे, तो पेशेंट के कपड़े निकाल दो। उसने कुछ इंजेस्ट कर दिया है तो उसको उल्टी कराओ या गैस्ट्रिक लवाज करा दो। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो जो भी टॉक्सिन है उसको सिस्टम से बाहर निकालो, और ऑर्गेनिक में जो भी कॉज है जिसकी वजह से हो रहा है वो ठीक करो। डायग्नोसिस में क्या करेंगे? उसको पूछेंगे कि कोई मेडिकल इलनेस है क्या। ऑर्गेनिक में तो कोई मेडिकल इलनेस होगी ना, वो बोलेगा हाँ मेरे को डायलिसिस चल रही है, मेरी किडनी खराब है, या फिर मेरा लिवर खराब है, मेरे को काफी टाइम से कुछ हो रहा है, या फिर मेरे दिमाग में MRI पे एक ट्यूमर आया था, पता चला वो ट्यूमर थोड़ा मूव होके कोई आर्टरी या किसको इम्पीड कर रहा है, प्रेस कर रहा है। सो यू हैव टू आस्क कोई मेडिकल इलनेस है क्या तुमको। जो ऑलरेडी हो तो तुम बता सकते हो अच्छा इसकी वजह से हो रहा होगा साइकोसिस, है ना। या फिर उसको पूछो कोई सब्सटेंस लेते हो क्या, या उसके दोस्तों को घर वालों को पूछो कि ये नशा करता है क्या, या फिर पूछो इसने कुछ इंजेस्ट कर लिया है क्या। ज्यादातर घर वाले ही लेके आते हैं कि इसने ये पॉइजन पी लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, या फिर घर वाले ही या दोस्त बता देते हैं कि हाँ ये नशा करता है, ये इंजेक्शन करता है, गोली लेता है, व्हाटएवर, लाइन करता है, फॉइल पेपर करता है, जो भी है, दे विल देमसेल्फ टेल यू। हिस्ट्री पे तुमको मिल जाएगा कि कॉज क्या हो सकता है। उसके बाद में क्या करना है? न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन और मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, और ब्लड रिपोर्ट्स करवानी है। CBC हो गया, LFT, KFT हो गए। ड्रग स्क्रीन करोगे, यूरिन फॉर ड्रग एनालिसिस होता है, जिसमें जो मेजर मेजर ड्रग्स होते हैं उसका एनालिसिस है, तुमको पता चलेगा इसने कोई नशा वगैरह किया है क्या। और EEG अगर एपिलेप्सी मतलब सस्पेक्ट कर रहे हो तो, नॉट नेसेसरी। अगर कोई सीजर की हिस्ट्री नहीं है, कोई एपिलेप्सी की हिस्ट्री नहीं है कि इसको सीजर या एपिलेप्सी प्रिटी मच वन एंड द सेम,
बट बेसिकली कोई दौरों की शिकायत नहीं है तो ईईजी की भी जरूरत नहीं है ना। मैनेजमेंट क्या करोगे, ऑर्गेनिक में क्या करोगे, बोला था अभी मैंने 2 स्लाइड पहले, जो भी कॉज है, ऑर्गेनिक कॉज है, उसको ठीक करोगे, है ना, ठीक करोगे। तो ट्रीट अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, सपोर्टिव केयर, ऑक्सीजन गिर रहा है, ब्लड कम हो गया है, व्हाटएवर सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो चाहिए, डिहाइड्रेशन हो गया है, कुछ भी हो गया, वो जो ऊपर ऊपर से लगेगा ट्रीटमेंट वो दो, सपोर्टिव ट्रीटमेंट दो। एयरवे बंद हो रहा है किसी का तो एयरवे खोल दो, वैसे कर दो, ब्लड लॉस हो गया, व्हाटएवर जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है वो करो। एंड एंटीसाइकोटिक्स यूज करो। अगर तुमको लग रहा है कि ये डिसोरिएंटेड है वगैरह है तो सर्टेन लो डोज एंटीसाइकोटिक्स तुम यूज कर सकते हो ताकि उसका साइकोसिस कम करो। जब तक कॉज ठीक हो, वो सब हो, तब तक थोड़ा एंटीसाइकोटिक से साइकोसिस उसका कम कर दो। टॉक्सिक के लिए क्या करोगे, जो सब्सटेंस है या जो टॉक्सिन है उसको हटाओगे, राइट। सो स्टॉप एंड रिमूव ऑफेंडिंग एजेंट, डिटॉक्सिफिकेशन स्लैश सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। डिटॉक्सिफिकेशन वही बोल रहा हूँ मैं, जो गैस्ट्रिक लवाज हो गया, चारकोल ट्रीटमेंट, ये वो डिटॉक्सिफिकेशन करो। मैनेज विड्रॉल सिम्टम्स, कोई चीज से विड्रॉल हो रहा है, जैसे अल्कोहल का मैं अभी बताया, उससे विड्रॉल हो रहा है तो उसमें साइकोसिस होता है, तो वो विड्रॉल मैनेज करो, है ना। अल्कोहल में सब्स्टिट्यूशन के लिए हम बेंजोडाइजेपिन देते हैं कि ये सब सिम्टम ना आए, तो जो विड्रॉल हो रहा है वो मैनेज करो, या फिर आईसीयू में ले जाओ फॉर सपोर्टिव मैनेजमेंट। इफ बहुत सीवियर हो गया, वार्ड में मैनेज नहीं हो रहा, तो उसको आईसीयू में शिफ्ट कर दो। समरी में हमने क्या सीखा, बोथ आर सेकेंडरी फॉर्म ऑफ साइकोसिस विद आइडेंटिफाइबल कॉजेस, organic due to structural slash systemic disease, toxic is due to drugs, substance or poisons, and सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, साथ में बोलो सब लोग, अर्ली आइडेंटिफिकेशन। जितना जल्दी तुम्हारे पास पेशेंट पहुंचेगा, जितना जल्दी तुम साइकोसिस को पकड़ लोगे, उतना जल्दी तुम ट्रीट कर पाओगे। कुछ कंडीशंस होती है जो मेडिकल इमरजेंसीज बोलते हैं हम, है ना, MI हो गया, स्ट्रोक हो गया, साइकोसिस हो गया, दीज आर मेडिकल इमरजेंसीज। व्हाई आर दीज मेडिकल इमरजेंसीज, क्योंकि इसमें मिनट मिनट का हिसाब है। 10 मिनट लेट से यू कैन हैव अ परमानेंट डैमेज और डेथ, और 10 मिनट पहले आने से यू कैन ट्रीट अ पेशेंट। सो दीज आर इमरजेंसी कंडीशंस, कि इसमें तुमको बहुत फास्ट एक्ट करना होता है। सो अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट is one of the most important things. Thank you. Good morning to all. The topic of today's lecture is antisocial personality disorder. What is personality disorder? Before that, we have to understand what is personality. So, by definition, personality is any person's collection of interrelated behavioral, cognitive, and emotional patterns that comprise a person's unique adjustment to life. So this is collection of behavioral, cognitive, and emotional patterns which constitutes the personality of a person. These interrelated patterns are relatively stable but can change over a long period of time. Now, what is personality disorder? When the personality of a person converts into disorder, it's a class of mental disorder which is defined as an enduring pattern of inner experience and behavior. Enduring means long-lasting pattern of inner experience and behavior that deviates markedly from expectations of individuals' culture. The behavior is deviated from the expected behavior of that for that culture and is pervasive and inflexible, which remains for longer period of time, and the personality traits which are deviation in case of personality disorder are inflexible. This disorder has often onset in early childhood or adolescence
and is stable over time and leads to distress or impairment in life of the person. So there are three types of clusters of personality disorders: cluster A, B, and C, which is classified as per the common traits of these clusters. For example, for odd and eccentric traits, there is paranoid personality disorder, schizoid, and schizotypal. In cluster B, there is antisocial personality disorder, borderline, histrionic, and narcissistic. The common theme is dramatic, emotional, or erratic behavior. In cluster C, there is avoidant personality disorder, dependent, and obsessive compulsive personality disorder, which has common trait as anxiety and fearfulness. So we will discuss about antisocial personality disorder only, because this is the syllabus of your curriculum. So what is antisocial personality disorder? Is characterized by pattern of antisocial behavior that begin before age of 15 usually. These behaviors violate the rights of others, and the individuals with this disorder display no evidence of guilt feeling at having done so. Whatever they have done, they don't have guilt feeling regarding this behavior. Substance abuse is not uncommon. It is common in antisocial personality disorder. I will call as ASPD instead of full antisocial personality disorder. Often the person with ASPD labeled as sociopath or psychopath in the lay literature. Lay literature means literature of common man. Regarding the etiology, there are various theories, the biological theories and psychological theories, in which one is temperament. In the childhood period, the person with ASPD displayed temper tantrums from infancy and would become furious when awaiting a bottle or a diaper change. They develop a bullying attitude towards other children in class or school. Parents report that they are undaunted by punishment. They do not bother about punishment because of their behavior, and generally quite unmanageable. They are daring, foolhardy, and unaffected by pain. Theories of family dynamics. The family dynamics says that there are frequent chaotic home environment during the childhood. Parental deprivation during the first 5 years of life appears to be critical predisposing factor for ASPD. Separation due to parental delinquency is also a psychological cause, and inconsistent impulsive parents, and not the loss of consistent parent is environmentally most damaging to the development of antisocial personality disorder. The study shows that they have been severely physically abused in their childhood. The abuse contributes to development of ASPD in several ways. Like it provides a model for behavior. They see their parents, the behavior of their parents, and they acquire those behavior as a model. Secondly, these violence may result in injury to child's CNS, the brain, which thereby impairing a child's ability to function appropriately. And third one is engenders rage in the victimized child, which is then displays onto others in the environment. So the violence or the abuse which has happened to the child, they displays onto others their inner aggression. In theories of family dynamics, the following circumstances may influential in predisposing the disorder. For example, absence of parental discipline, extreme poverty, removal from home, growing up without parental figure of both genders,
erratic and inconsistent method of discipline, being rescued each time they are in trouble, and maternal deprivation. So what are the symptomatology and how the person with ASPD may present in the clinics? They may have various symptoms like extremely low self-esteem, inability to sustain satisfactory job performance, frequent job changes may be the presentation because of their antisocial behavior, inability to function as responsible parent, failure to follow social and legal norms, and repeated performance of antisocial acts that are ground for arrest. Whether arrest may occur or not, the behavior is sufficient to grounds for arrest. Inability to develop satisfactory, enduring, intimate relationship with sexual partner, aggressive behavior, repetitive physical fights, spouse or child abuse may also present. Extreme impulsivity. Impulsivity means acting without thinking of the consequence of behavior. Repeated lying for personal benefit. Reckless driving, driving while intoxicated. Inability to learn from punishment. For their behavior, they have lack of guilt or remorse. Difficulty with interpersonal relationships, social extroversions, repeated failure to honor financial obligations. This is the diagnostic criteria for antisocial personality disorder, which is known as dissocial personality disorder in ICD-10. The criteria A is callous unconcern for feeling of others, gross and persistent attitude of irresponsibility and disregard for social norms, rules, and obligations, incapacity to maintain enduring relationships, though having no difficulty in establishing them. They are very fast in making the relationship, but they cannot sustain that relationship. Very low tolerance to frustration and low threshold for discharge of aggression, including violence. Incapacity to experience guilt or to profit from experience, particularly punishment. Marked proneness to blame others or to offer plausible rationalization for the behavior that has brought the patient into conflict with society. They have a blaming tendencies. So certain behavior of ASPD is very difficult to deal with. So the specific behavior of ASPD, which can be dealt with the skill and experience, will be discussed. The first one is risk for other, which is directed violence, the tendency to become violent. So one can convey an accepting attitude towards the patient. So therapist should accept the patient, so remain neutral and doesn't have any kind of rage towards that. So by accepting, feeling of rejection are undoubtedly familiar to him or her. So rejection they have got always in their life because of their behavior. So acceptance is required for therapeutic purpose. Work on development of trust. Try to gain the trust. Be honest. Keep all the promises and convey the message to the patient that it is not him or her, but the behavior that is unacceptable. The person as such is acceptable, but their behavior is not. Maintain low level of stimuli in the patient's environment, like low lighting, few people, simple decor, low noise level, because stimulating environment can increase agitation and promote aggressive behavior. Remove all the dangerous objects from the patient's environment so that he or she cannot purposefully or inadvertently use them to inflict harm to self or others. Help the patient identify the true object of his or her hostility. So this is self-realization.
Encourage patient to gradually verbalize hostile feeling. Verbalization of feeling in a non-threatening environment may help patient come to terms with unresolved issue. The person may have some kind of unresolved conflict, internal conflict, which may be resolved by verbalization. Explore the alternative ways of handling frustration, like large motor skills that channel hostile energy into socially acceptable behavior. Staff should maintain and convey a calm attitude towards the patient, because anxiety is a contagious and can be transferred from staff to the patient. A calm attitude provides the patient with a feeling of safety and security. But have a sufficient staff available in case of the patient become hostile. Administer tranquilizing medication as ordered, and if it does not work, then mechanical restraint can be used. The second one is defensive coping. Defensive coping means the coping style of that person becomes the defense of the person becomes which is not aligned with the rule, regulation, and obligations of the socio-cultural environment of the person. So one can explain consequence of violation of the limits. Consequence must involve something of value of the patient, value to the patient. All staff must be consistent in enforcing these limits. Consequence should be administered in a matter-of-fact manner immediately following the infractions. As soon as the deviant behavior is shown, so such strategies can be applied to normalize the person. In defensive coping, do not attempt to convince patient to do the right things. Do not use the words you should or you should not. Instead, use you will be expected to do this or that. The ideal would be for the patient to eventually internalize the societal norms, and this should be in step-by-step manner. Like for example, either or approach can be applied. Either you do this or don't this, or this will occur because of this behavior. Explanation must be concise, concrete, and clear with little or no capacity for misinterpretation. Explanation must be clear cut. Provide positive feedback or reward for acceptable behavior. If the patient shows the acceptable behavior, one can give reward or feedback to such a required behavior. In an attempt to assist the patient to delay gratification, begin to increase the length of time requirement for acceptable behavior. For example, 2 hours of acceptable behavior may be exchanged for a phone call, 4 hours of behavior for a 2 hours of television, 1 day of acceptable behavior for recreational therapy, 5 days of behavior for a weekend pass. So this is sort of a setup which is kind of indoor setup. This is not for OPD setups. Now help the patient gain insight into his or her own behavior, and often these individuals rationalize to such an extent that they deny that their behavior is inappropriate. They find themselves always true. So try to put insight into their unwanted behavior. Talk about the past behaviors with the patient. Discuss which behavior are acceptable by societal norms or which are not. Help the patient identify ways in which he or she has exploited others, and encourage the patient to explore how he would feel if the circumstances were reversed. Put the patient into the reverse situation and uh, try to look for the reaction. An attempt may be made to enlighten the patient to the sensitivity of others by promoting self-awareness. And in the whole session or situation, this should be kept in mind that the
person is acceptable and their behavior is not. The outcome criteria for defensive coping should be patient follows rules and regulation of the milieu environment. Patient is able to verbalize which of his or her behavior are not acceptable. Patient shows regard for the rights of others by delaying gratification of own desire when appropriate. Now come to the chronic low self-esteem. This is long-lasting negative self-evaluation, feelings about self or self-capabilities. So while dealing with chronic low self-esteem, one should ensure that goals which are made are realistic, that can be achieved. Success increases the self-esteem. Convey unconditional positive regard for the patient. Promote understanding of your acceptance of him as a worthwhile human being. Acceptance by others increase feeling of self-worth because they get the rejection almost all of the time. Set limits on manipulative behavior. Identify the consequence for violation for those limits. So set the consequence for that unwanted behavior also. Minimize negative feedback to the patient. Enforce the limits and impose the consequence for violation in matter of fact manner at the time of the behavior is acted upon. Encourage independence in performance of personal responsibilities as well as decision making related to the patient's self-care. Help the patient increase level of self-awareness through critical examination of feeling, attitudes, and behavior, and discuss ways to effect change in these areas. The outcome should be patient verbalize positive aspect about self. Patient demonstrates the ability to make independent decisions. Patient expresses some optimism and hope for future. Patient sets realistic goal for self and demonstrates willingness for reaching them. They have impaired social interaction also. Social behavior should also be targeted in therapy. Develop therapeutic rapport with the patient. Establish trust by always being honest. Keep all promises. Convey acceptance of the person. Separate from unacceptable behavior, that it is not you but your behavior that is unacceptable. Offer to remain with the patient during initial interaction. Provide constructive criticism and positive reinforcement for efforts. Confront patient as soon as possible when interaction with others are manipulative or exploitative. Consistency in enforcing the consequence is essential if positive outcomes are to be achieved. Inconsistency creates confusion and encourages testing of limits. Act as a role model for patient through appropriate interaction with him and her and with others. Provide group situation for the patient. So outcome criteria will be patient willingly and appropriately participates in the group activities. Patient has satisfactorily established and maintained one interpersonal relationship with therapist or the caregiver without evidence of manipulation or exploitation. Patient demonstrates ability to interact appropriately with others, showing respect for self and others. Patient is able to verbalize reason for inability to form close interpersonal relationships in current and in the past. Now regarding the deficient knowledge, for example, self-care activities to achieve and maintain optimal wellness, the overall wellness of the patient. Assess the patient's level of knowledge regarding positive self-care practices. Adequate database is necessary for development of effective teaching plan. Assess the patient's level of anxiety and readiness to learn. Determine the method of learning most appropriate for the patient. Be sure to consider level of education and development. Develop a teaching plan including measurable objects for the learner. Provide information regarding healthful strategies for activities of daily living as well as about harmful effects of substance abuse on the body. Include suggestion for community resources to assist patient when adaptability is impaired. Patient needs this information to promote effective health maintenance. Include significant others in learning activity if possible. Input from individuals who are directly involved in the potential change increase the likelihood of
positive outcome. Implement the teaching plan at a time that facilitates and in place that is conducive to optimal learning. Learning is enhanced by an environment with few distractions. Begin with simple concepts and progress to more complex. Retention is increased if introductory material is easy to understand. Provide activities for the patient and significant others in which to actively participate during the learning exercise. Active participation increases the retention. So outcome for this will be patient is able to verbalize information regarding the positive self-care practices. Patient is able to verbalize available community resources for obtaining knowledge and help with deficits related to the healthcare. So regarding the antisocial personality disorder, it requires multifaceted approach that encompasses empathy, patience, and a deep understanding of individuals' experience. Building a strong therapeutic alliance is crucial as it fosters trust and collaboration between the therapist and the patient. It is crucial to approach individual with its ASPD with a balance of empathy and firmness, recognizing the potential for change while maintaining clear boundaries. By promoting awareness, evidence practice, and understanding, we can contribute to reducing the stigma associated with these disorders and support individuals on their journey towards recovery. Thank you. So good morning everyone. Today we're going to discuss about the biological therapies in the psychiatry. As you guys are in pursuing your BNYS lecture currently, so we'll be just be covering the superficial layers of the treatment that we can offer to the patients. So it comprises of different modalities that the patient can get or a different menu of options that the patient can get if they want to get treated from a psychiatric point of view. So what all options do we have? We're going to have a bit of discussion about it. So today's topic is going to comprise of a brief introduction, psychopharmacology, which means the medications that we usually give to the patients, neuromodulations, how we can alter the brain functioning altogether other than the medications, emerging therapies, what the research is currently going on to alleviate the symptoms and the problems that the psychiatric patient goes through. And in the end, we're going to conclude all of the slides in brief. So first, a brief introduction. Biological therapies in psychiatry encompasses a range of interventions targeting the neurobiological underpinnings of mental disorders. These treatments grounded in the understanding of brain chemistry, neural circuits, and physiological processes. The aim is to alleviate symptoms of psychiatric conditions when psychological or social intervention alone are not sufficient. Once you have started talking to the patients, you get to know that somebody is suffering from a psychiatric illness. Usually, generally, the family members counsel the patient first initially. They tell them how they can tackle with the problems that they are currently facing. If for a prolonged period of time, the brief intervention or the counseling which is done by the society and the family members is not enough, then always you have an option to look forward through the medications. And these medications usually work like magic. Psychopharmacology. Psychopharmacology remains the cornerstone of biological psychiatry, leveraging medications to modulate neurotransmitter system. No matter how come newer therapies that are currently upcoming, including electroconvulsive therapy, transmagnetic cranial therapy, or any vagus nerve stimulation, etc. But still, medications are the first line of defense. These are the cornerstone of psychiatric intervention that the patient can go through, as due to the increased amount of stigma that the society has regarding the other types of interventions, and they are way lot safer as compared to other types of interventions. So people are more comfortable in taking medications rather than going through an invasive procedure. So first, antidepressants. Everybody are quite aware about antidepressants. Currently, we have multiple amount of choices that a patient can get medications from. So first, what the basic course of our treatment goes through is that patient comes to us. We generally assess the patient. We first get to know what the patient is currently suffering from. Does he or she require medication at the first place or not? If psychological counseling is enough, then we don't need to put patients on any of the medications or any of the psychotropics. It's better that we teach them better coping mechanisms,
the daily life situations or any stress that they are currently going through. If these things don't help or the condition is quite severe, it has been prolonged, then we advise the patients to give antidepressants or antipsychotics or mood stabilizers, etc. So first comes SSRIs. These are selective serotonin reuptake inhibitors. So let me give you a brief how these medications actually work. Let me give you a small example. So you can imagine that there are two pipes. All right. दो पाइप हैं, इधर से पानी आ रहा है, इधर से पानी आ रहा है, बीच में कनेक्शन के लिए एक वाल्व है, इसको हम बेसिकली साइनैप्स कहते हैं या फिर जो भी मोटर एंड प्लेट है जहां पे न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्ट करते हैं. So basically what happens is that suppose this is one nerve ending and at the end there are packages of small neurotransmitters which contain serotonin in it, and at the end there is this receiving dendrite of a specific neuron which will accept those packages. So generally what happens, serotonin flows from one cell body to the axon, then to the motor end plate, and at the receiving end there are receptors will receive those neuromodulators or neurotransmitters. So serotonin is coming from here, going between the cleft, and finally is getting accepted from the subsequent neuron. Then this is, I am telling you what happens normally, how basically the cell functions. So at the junction there is this collection of packages. So the first work of the junction is first that the neurotransmitter gets collected over this motor end plate. So serotonin is coming, it will get transfused through the membrane, and then the receptors will act accordingly. Then the remaining of the, like if 10 packages are coming and there are 10 receivers, so equal distribution of neurotransmitter is done. But by chance generally what happens is 40 to 50 packages come and there are only 10 receivers. So 10 came, 40 came, 10 received those packages, remaining 30 are left. So remaining 30, what is the work of those neurotransmitters are that the leftover packages, either they'll get destroyed or they will give a signal to the axon that is delivering those packages. It will tell we don't require any more of the serotonin because there is enough already. So automatically through negative feedback mechanism, the serotonin stops from initially it began coming from. मोटा मोटा ये है कि 40 पैकेजेस आए, पकड़ने वाले 10 हैं, तो बाकी जो 30 हैं वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे बीच में. वो 30 क्या करते हैं, या तो जनरली उन 30 को आधे तो वो फर्दर मेटाबोलाइज हो जाते हैं अपने छोटे छोटे फॉर्म्स में, और जो बाकी का बचा हुआ है वो सिग्नल देता है पीछे सेल को कि यहाँ पे इनफ सेरोटोनिन है, हमें और सेरोटोनिन नहीं चाहिए. ये नॉर्मली काम करता है. एसएसआरआईज क्या करते हैं, ये नेगेटिव फीडबैक को बंद कर देते हैं. वो वापस फीडबैक जब जा रहा है कि नहीं हमें और नहीं चाहिए, वो उसको ब्लॉक कर देगा, तो सारे टाइम सेरोटोनिन निकलता रहता है. एंड this mechanism of action helps patient to have that good feeling. ठीक है, तो that's how basically SSRIs work, and this is more or less the same mechanism that how generally antidepressants work. All right, so selective serotonin reuptake inhibitors, SSRIs example sertraline, serotonin non-epinephrine reuptake inhibitors. So there are two classes, one is SSRI and one is SNRI. One is selective serotonin reuptake inhibitor, the second one is selective serotonin and non-epinephrine reuptake inhibitors. Nobody is superior one to the other. Generally what we find is they both respond equally, but if a certain class of drug is not working, we have other options as well, क्योंकि all shirts doesn't fit everybody for the same size. So we have these kinds of options. SSRIs, few examples are fluoxetine, paroxetine, escitalopram, sertraline, and SNRIs venlafaxine, desvenlafaxine, etc. Then there are tricyclic antidepressants. Example amitriptyline, nortriptyline, desipramine, imipramine. These were the first to be discovered, tricyclic antidepressants. So the problem with tricyclic antidepressant was it came along with a large number of side effects as well. They were not very severe, but still they were quite let me say that the patient might refrain from taking those medications due to those side effects. So a newer class of drug was developed which are called as SSRIs. Now
Psychopharmacology faces issues like delayed onset. Example, SSRI requires 4 to 6 weeks. Partial response 30 to 40% in MMD patients remains and side effects. Personalized medicine using pharmaconomics to predict response is promising but not yet standard. The problem with our medications is that they don't act like any antipyretic. It's not like a fever. Like if somebody is depressed, you give them one medication and from next day they become Superman. That's not generally happens. Our medications take some time to act. Like a certain blood level should be reached. After that, the medication will start acting on your low mood symptoms, anxiety, or for this, it goes with every drug. Even for the antipsychotics, antidepressant, mood stabilizers, it takes some time before it starts acting the way it's supposed to act. So that's how we counsel the patients. That initially, our basic promise is that, okay, you come to us regularly, and the medication will take some time. So you have to take them regularly without skipping a dose. Because if you skip the dose, then the blood levels and the exact plasma concentration of the drug fluctuates a lot. So it takes around 10 to 15 days for the medication to act. That is one of the biggest drawbacks as well, because patients do not remain compliant to the medication. Compliance means that they are taking medications regularly as directed by their physicians. So this is one challenge that we usually face. Patients stop taking medications. They don't remember to take the medications. But these medications, as compared to the Western countries, as compared in India, the response is way better. Does anybody have a clue why is it? That people in the Western countries don't respond that well as compared to the Indian population. Is there any idea? Can you guys predict? मेरा question ये है कि इन दवाइयों से फॉरेन कंट्रीज के अंदर रिस्पॉन्स इतना अच्छा है, काफी अच्छा है, दे आर टेकिंग मेडिकेशन रेगुलरली, पर इंडियन पॉपुलेशन के अंदर काफी अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं. कोई कारण बता सकता है क्यों? जनरली, चलो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. Due to the improved social support, the mother, the father, the brother or the sister will make sure that the medication goes to the patient. People in foreign countries, being staying in the nuclear family or staying independent, end up not taking medications regularly. So patients respond way better as compared to the Western countries. So next comes neuromodulation. Neuromodulation technique directly alters brain activity through electrical, magnetic or other stimuli, offering alternative for treatment resistant cases. We call treatment resistant cases both for psychotic patients and neurotic patients. In brief, I'll tell you what a psychotic patient looks like. He or she might be having delusions which are false and fixed firm beliefs, even if we present them evidence to the contrary. वो लोग कोई चीजें मान के बैठते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे को कोई मारना चाहता है, लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, जो कि सच नहीं है. आप उनको प्रूफ भी दो, उसके बाद भी they don't agree to it. These are called delusions. Then, so basically this is how we describe a psychotic patient. There are more 4 to 5 points that we say that patient is psychotic or not. Second is hallucinations. They perceive a certain stimuli or without stimuli that they are able to perceive, like auditory hallucination, visual hallucinations. Third is disorganized behavior, as in they won't comply to the social norms. They will always be acting disinhibitory in front of anybody. They will lack the personal judgment as well as social judgment. Example, taking off clothes in everywhere or anywhere without thinking how the social context is currently, or abusing people, or not taking care of themselves, not bathing, not eating properly. So these all come under the huge umbrella of disorganized behavior. So that's how basically we define the patient who's psychotic. And neurotic patients, the other side of spectrum, contains of depression, anxiety, etc. So neuromodulation technique directly alters brain activity through electrical, magnetic or other stimuli. If the medications are not working, there is a certain degree after which the medication won't work. So after that, we call these kinds of patients as treatment resistant. This goes with both psychotic or neurotic patients. Patient might be on different antidepressants and still there's no result to be found. Patient might be in different antipsychotics and still there are no results that were achieved. After that, we turn up to neuromodulation. There's a certain plan or certain guidelines after which we declare that the patient is treatment resistant. Generally happens with both the depressive patients and psychotic patients as well. So if the medications are not working, this is what we look forward for. Neuromodulation. First comes electroconvulsive therapy.
ECT induces controlled seizure under anesthesia, primarily for severe depression, catatonia, or psychosis. It achieves remission in 50 to 70% of treatment-resistant major depressive disorder cases, outperforming pharmacotherapy in acute settings. Mechanism involves enhanced neuroplasticity and monoamine release. Risks include transient memory impairment. Through modern unilateral ECT minimizes this. So let me give you a brief what is written in each word. First, ECT induces controlled seizures. So let me give you a short story how ECT was discovered. पहले क्या हुआ, जो लोग साइकोटिक होते थे ना, साइकोटिक मतलब जो अपने आप का ख्याल नहीं रख पा रहे थे, ठीक नहीं रह रहे थे, कहीं भी गालियां दे देते हैं, कहीं भी कपड़े उतार देते हैं, लोगों को मार पिटाई कर रहे हैं, तो एक साइंटिस्ट ने देखा कि उसको दौरा पड़ा. ठीक है, दौरा पड़ने के बाद उसके सारे साइकोटिक सिम्टम ठीक हो गए, सारे साइकोटिक, वो एकदम नॉर्मल इंसान जैसा बिहेव करने लग गया. उसको सीजर पड़ा, ये बाय चांस फाइंडिंग थी, उसको सीजर पड़ा, उसके सारे साइकोटिक सिम्टम्स ठीक हो गए. उसके बाद ये इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी आई कि हम बेसिकली ब्रेन का न्यूरो मॉड्यूलेशन कर सकते हैं कि पेशेंट को दौरे की दिक्कत है नहीं, पर हम कंट्रोल्ड वे में उसको दौरा देते हैं इलेक्ट्रिक करंट्स के थ्रू, जिसकी वजह से उसके साइकोटिक या डिप्रेसिव सिम्टम्स ठीक हो जाए. तो पहले थी रैडिकल इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, उसके अंदर वो जो तुम फिल्मों में देखते हो, हाथ पैर बांध दिए, मुंह के अंदर वो डाल दी, पट्टी डाल दी और करंट दे रहे हैं. दैट्स नॉट हाउ जनरली इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी हैपन. अब वो इलीगल भी है इंडिया के अंदर, इट्स इलीगल, यू कांट प्रैक्टिस रैडिकल ECT. तो मॉडिफाइड ECT आई है. हमेशा ये टर्म याद रखना, रैडिकल. दिस गोज विद एवरी प्रोसीजर. सर्जरी करनी है, जो भी चीजें डिस्कवर होती है वो हमेशा रैडिकल वे के अंदर ही होती हैं. जैसे इनिशियली ब्रेस्ट कैंसर, तो ब्रेस्ट कैंसर की जब सर्जरी आई तो रैडिकल मैस्टेक्टमी करते थे कि कैंसर बहुत छोटे पार्ट पे है, पर वो पूरी पूरी ब्रेस्ट को बाहर निकाल देते थे. उसके बाद आती है मॉडिफाइड. मॉडिफाइड में वो स्पेसिफिकली जहां पे भी कैंसर एक्ट कर रहा है या उससे रिलेटेड जो भी लिम्फ नोड्स हैं वो वहां से हटाते हैं. ऐसे ही सेम वे ECT इनिशियली वाज रैडिकल एंड नाउ इट इज मॉडिफाइड. How we generally do it, that the patient comes to us, we admit the patient a day prior, then patient goes through a pre-anesthetic checkup, how normally anybody goes through who is undergoing through any surgery. उसके अंदर patient का एक panel जाता है in which ECG is done, serum electrolytes are checked, his basic blood pressure is checked, basic what do you say, hemoglobin levels, clotting factors, everything, a basic investigation, and when everything is normal, the next day the patient is kept nil per oral. अगले दिन उसको हम खाने को कुछ नहीं देते. Then patient को रखते हैं हम, lie down करते हैं, and then we induce anesthesia in the patient. ठीक है, propofol के through कुछ भी, and it's very short acting. The anesthesia that will be given to the patient is quite short acting. So the time window that we usually have to give the electric current is quite short. क्योंकि procedure lasts for hardly 4 to 5 seconds. After that, patient is anesthesia. So basically there is a collaboration of the people between anesthesia and psychiatry. Patient goes into anesthesia after right amount of medication is given. Anesthesia is given, muscle relaxant is given, so that patient doesn't throw away his legs. कोई injury ना हो जाए कि हम उसको seizure दे रहे हैं, he might end up having a seizure and might harm his legs or hands. ठीक है, followed with when patient is under anesthesia, then current is given bitemporally. There are many ways in which the current can be given. The seizure lasts for 1 to 2 seconds. We basically isolate one limb. So what is the purpose of isolation? That's so that we can observe if the seizure is coming or not. So when we give the muscle relaxant or when we give anesthesia to the patient falls flat. Even if we'll give them seizure, it's very hard to observe. So first what we do is we basically occlude the limb. After occlusion, the drug won't go inside the limb. And then when patient is lying unconscious and when we give the electrical current, we'll be able to see the rapid hand movement because the muscle relaxant has not gone into the certain limb. And we observe that limb for 15 to 20 seconds. Okay, seizure is coming, and the seizure goes away. Soon after that, the patient comes out of anesthesia and then we basically inquire what is he currently feeling. The basic side effect that generally we observe is transient memory loss. He won't remember what actually happened. थोड़ा cognition decline हो जाता है, उसे थोड़ा याद नहीं रहता कि क्या हुआ है. उसके अलावा there is no pain given to the patient. Patient does not even know what has
actually happen to the patient. So it's quite a safe procedure. Basically, if patient is going through electroconvulsive therapy, they'll have at least 4 to 5 sessions of ECT so that we get to know the response. ECT is like, can also be used as the first line treatment, even if the patient is not on any drugs. It depends how violent the patient is. Like if patient might be suicidal, patient has already committed suicide and the patient and the family is quite worried, ECT can be given straight away, rather than waiting that patient might be given medication and he'll be going home and he can attempt another suicide. We can give them ECT directly without giving them a course of antidepressants, and generally it works like magic. The thoughts start changing immediately. So 60 to 70% of the patients respond to ECT, and always there are 1/3 of the patient who do not respond. That happens for every disease that the patient currently suffers from. Then there is transcranial magnetic stimulation, repetitive transcranial magnetic stimulation using magnetic pulses to stimulate cortical regions, example dorsolateral, prefrontal cortex in depression. So there's this new machine that has come up. We are also planning, Subharti, to bring this technology, transcranial magnetic stimulation. What happens is the patient sits inside a chair and there's this machine which has a magnetic coil. We have to basically adjust the machine according to the patient, and then transcranial magnetic, that is electrical. Electroconvulsive therapy involves electric currents. This involves magnetic currents. So even anesthesia is not required for this. Only the patient goes and sits over there, and there is a rapid transcranial magnetic stimulation that is provided to the patient. Roughly 4 to 5 sessions are required again to see the results. Currently, it has been approved for obsessive compulsive disorders and depression. Me personally have not seen it working currently, but the results are quite promising. So this is another technique that we can give to a patient who is not responding to pharmacotherapy. So this is basically a representation how ECT looks like. I know it is not very amusing or very appealing for somebody to go through ECT, but that's how basically it happens. The electrodes are not similar to these. The electrodes that we generally place look like microphones, like how you set a headphone over there. It's basically of the same shape and size, but rather than putting it over your ear, we put it bitemporally and give the electric current. Then this is transcranial magnetic stimulation. That's how the machine basically works. We put the coils around the head of the patient, and then we give them repeated stimulation for 5 to 10 minutes, and then we wait for the response to come. Then there's this thing called vagus nerve stimulation. BNYS approved for treatment-resistant depression involves implant devices stimulating the vagus nerve, modulating limbic activity. Response rates reach to 30 to 40% after 1 year, but high cost and surgical risk limit the use. What we basically do is we implant like a pacemaker inside the left vagus nerve. तुम्हें जनरली पता है वेगस नर्व क्या करती है? रिलैक्सेशन करती है. तो किसी की अगर हार्ट बीट बहुत ज्यादा हो रही है और अगर आप वेगस नर्व स्टिमुलेट करते हो तो पल्स काफी कम हो जाती है. खुद से करना मत, जस्ट रिमेंबर दिस. तो व्हाट दे केम अप वाज कि वेगस नर्व के अंदर विल इम्प्लांट अ डिवाइस, एंड दैट डिवाइस विल पल्सेटाइल नेचर में विल स्टिमुलेट द ब्रेन, and it will direct the brain to excrete more neurotransmitters. इसका इतना सक्सेस इसलिए नहीं क्योंकि it's an invasive procedure और risk involved is very high. So unless and until we don't have any other option, we don't usually go through this procedure. Then there is deep brain stimulation. DBS targets subcortical structures, example subcallosal cingulate, by implanted electrodes for severe obsessive compulsive disorder and depression. Though effective 40 to 60% respond in OCD, its invasiveness restricts its experimental settings. So there's this junior of mine, उसका नाम रिया है. उनके डैड ने सर्जरी करी थी. He is no more in this world, but he was one of the first surgeons who performed this surgery. Deep brain stimulation. OCD is one of the worst kinds of diseases that anybody can get. Patient is aware कि मेरे को हाथ नहीं धोने हैं बार-बार, मेरे को बार-बार कुंडियां चेक नहीं करनी है, मेरे को नंबर बार-बार नहीं रिपीट करने हैं, कोई चीज मेरे को बार-बार नहीं कर रही है, बट ही कांट स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग दैट. उसकी वजह से उसकी पूरी जो बाकी की लाइफ होती है वो बहुत हैम्पर होती है. जैसे कि अगर मैं इसे बोलूं कि भाई तेरे को क्लास के अंदर सुबह टाइम से आना है, जब तक ये 10 बार हाथ नहीं धो लेके क्लास के अंदर एंटर नहीं कर सकता.
इसको पता है कि जरूरत नहीं है, बट ही कांट स्टॉप दोस थॉट्स। अगर कोई डिप्रेशन का पेशेंट फ्लोक्सेटिन 20 mg और 40 mg से ठीक हो जाता है, उसके लिए हमें 120 mg फ्लोक्सेटिन देनी पड़ती है। जो बंदा 20 पे ठीक हो रहा है उसके लिए हमें 120 140 तक लेकर जाना पड़ता है। तो ओसीडी के अंदर हमारे पास वी डोंट हैव मेनी मच ऑप्शंस, लाइक वी कैन गिव एसएसआरआईज, then we can give tricyclic antidepressant or their combination, or we can give them an adjunct therapy with an antipsychotic. तो people came up with this technique. दो तरीके कैसे होते हैं, या तो उस ब्रेन के पार्ट को निकाल दो जहां से ज्यादा सोच बढ़ रही है, उससे ही बहुत ज्यादा रिस्क है इन्वॉल्व है, पर ओसीडी चली जाएगी, पर बेसिकली इंसान भी चला जाता है। Another technique that they came up with was brain stimulation technique. उसके अंदर क्या करा, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोड्स बनाए and they implanted it inside the brain. And then electric currents दिए उसको, patient won't feel anything, but the response was quite dramatic. Previously, when on medication, patient was responding as 10 to 20%. After this, patient said that I am not having those thoughts anymore. But again, the risk is quite high. Infection risk is quite high, and people are not that much skilled to do the certain kind of procedure. Basically, neurosurgeons are involved for a patient to undergo this procedure. Challenges: neuromodulation requires specialized infrastructure and access is limited in low resource settings. Long-term efficacy and optimal patient selection remains under investigation. Now there are emerging therapies. Innovations in biological psychiatry are expanding treatment horizons. First is psychedelics. Psilocybin and MDMA administered in controlled setting show promise for depression, PTSD and addiction. Phase 3 trials report remission rates of 70% for psilocybin in major depressive disorder, likely via enhanced neuroplasticity and 5-HT2A receptor agonism. Regulatory barriers and stigma delay adoption. So, psychedelics. Have anybody heard about LSD? LSD के बारे में सुना है किसी ने? MDMA, एक्सटेसी के बारे में सुना है किसी ने? सिलोसाइबिन के बारे में सुना है किसी ने? ऐसे कैसे हो सकते? तो basically these are different kinds of drugs which are illegal in all over the world, but these medications have shown a quite promise in relieving patients from depression. तो control setting के अंदर हम देते हैं. So let me explain you word by word. Psilocybin and MDMA administered in controlled setting, in which they will be in direct monitoring from the doctor, and they'll give the medication and ask them about their symptoms. Shows promise for depression, PTSD and addiction. तो post traumatic stress disorder, जो लोग wars में जाते हैं, बहुत ज़्यादा मौतें वगैरह देखते हैं, उनको बहुत ज़्यादा flashbacks पुराने आते हैं, तो वो generally PTSD के अंदर comprise होता है. Addiction, people are addicted to different substances, alcohol, smack, cocaine, उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा देखा गया है इसका रिजल्ट. Phase 3 trials होती हैं. तुम्हें पता है Phase 3 trial क्या होती है? Phase 1 trial, Phase 2 trial. अगर कोई भी दवाई बन रही है तो उसका कैसे होता है, कुछ आइडिया है क्या होता है प्रोसेस? जब भी मैंने कोई दवाई बनाई, जैसे मेरे को कोई दवाई बनानी है, पहले फेज 1 होगा. उसके अंदर फेज 1 के अंदर क्या होगा, पहले मैं जाके भाई जाऊंगा रिसर्चर्स के पास, ड्रग कंट्रोल बॉडी ऑफ इंडिया से बात करूंगा कि भाई मेरे पास एक ड्रग है और मैं इसको मार्केट को देना चाहता हूं. तो उसके बाद वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अलग अलग तरह के टेस्ट करते हैं. फेज 1 जो ट्रायल होता है उसके अंदर हम देखते हैं कि ड्रग कितना एक्ट कर रही है बीमारी के ऊपर. ठीक है, वो सर्टेन टाइम तक चलता है, 1 या 2 साल तक. फेज 2 जो होता है उसके अंदर मैं देखता हूं सेफ्टी, कि पेशेंट को सेफ्टी कितनी है ड्रग से, उसके साइड इफेक्ट्स और वो सब मॉनिटर होते हैं. पॉपुलेशन का सैंपल साइज थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है. फेज 3 ट्रायल्स का मतलब यह है कि अब मैं बांटना शुरू कर सकता हूं, और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हम देखेंगे 5 या 10 साल में. ज्यादातर जो ड्रग्स होती हैं वो फेज 3 ट्रायल में आके फेल हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे इमर्जिंग साइड इफेक्ट्स और अलग अलग पॉपुलेशंस के ऊपर देखा जाता है उनको, और देखते हैं कि ओवरऑल साइड इफेक्ट्स पेशेंट को क्या क्या दिखे. और फेज 4 ट्रायल्स होते हैं कि अब आपको फुल अलाउड है देने के लिए, और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स देखेंगे, और पॉपुलेशन का साइज बढ़ता जाता है जिनके ऊपर आप ये ड्रग्स दे सकते हो. तो फेज 3 ट्रायल्स रिपोर्ट रेमिशन रेट्स ऑफ 70%. रेमिशन वर्ड का मतलब ये है कि कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है. मतलब अगर किसी बंदे को ऑन द स्केल ऑफ 100 डिप्रेशन है तो 70% तक नीचे आ जाता है. लाइकली वाया इनहैंस न्यूरोप्लास्टिसिटी. न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब होता है यार
कि बेसिकली लाइफ में तुम कुछ भी कर सकते हो। पहले लोग ये सोचते थे कि ब्रेन का एक लिमिटेड अमाउंट है और जिसके अंदर जितना दिमाग है वो उतना ही कर सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी बेसिकली मीन्स दैट यू कैन बेसिकली चेंज ओवरऑल। जैसे कि तुम लोग अगर योगा वगैरह शुरू करते हो तो न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रेन के अंदर देखी गई, न्यूरो सर्किट्स बनते हैं, बेटर ब्रेन न्यूट्रिशन मिलता है, कई चीजें इसके अंदर आती हैं। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी वर्ड का मतलब ये है कि ब्रेन प्लास्टिक जैसा है, वो हमेशा मॉड्यूलेट हो सकता है, चेंज हो सकता है और हमेशा ही आप हमेशा उसको चेंज कर सकते हो। रेगुलेटरी बैरियर्स एंड स्टिग्मा, डिले अडॉप्शन, लोग इसलिए इस चीज को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्टिग्मा सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा है कि आप नशे की चीजें क्यों दे रहे हो किसी को ठीक करने के लिए। Ketamine and glutamate modulators, beyond esketamine, intravenous ketamine achieves rapid antidepressant effect within hours in 50 to 70% of the patients. Research into other glutamate targets is ongoing. Ketamine बहुत promising drug है, इसका potential of abuse भी बहुत high है क्योंकि पेशेंट को बहुत विविड इमेजरीज दिखती हैं, उसे चीजों में चीजें दिखाई देने लगती हैं एंड पेशेंट कीप ऑन कमिंग बैक टू द डॉक्टर फॉर द सर्टेन हाई दैट दे आर गेटिंग थ्रू कीटामीन थेरेपी। कीटामीन थेरेपी बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर होती है, इसके अंदर भी आईवी ड्रग के थ्रू कीटामीन दिया जाता है एंड देन डिप्रेशन के बारे में पूछा जाता है। पेशेंट 3 से 4 घंटे में ही बोलता है मेरे को डिप्रेशन जैसी कोई चीज है ही नहीं, बट स्टिल इट्स इन अ वेरी नेसेंट स्टेज। उसके लिए एकदम आपको प्रॉपर सुपरविजन चाहिए, एनेस्थीसिया का, कई चीजें चाहिए। कीटामीन इज आल्सो अ टाइप ऑफ एनेस्थीसिया, तो इसका साइड इफेक्ट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जैसा भी हो सकता है। न्यूरोफीडबैक एंड क्लोज्ड लूप सिस्टम, रियल टाइम एफएमआरआई न्यूरोफीडबैक ट्रेन्स पेशेंट टू रेगुलेट ब्रेन एक्टिविटी, showing early efficacy in depression and anxiety. Closed loop deep brain stimulation, adjusting stimulating based on neuronal signal is being tested for OCD. एक MRI होता है, एक fMRI होता है। तो people used to say कि डिप्रेशन जैसी कोई बीमारी नहीं होती, कुछ नहीं होता डिप्रेशन जैसा, साइकोसिस जैसी कोई चीज नहीं होती। तो fMRI क्या करता है, आपका ब्रेन कहाँ पे कितना ऑक्सीजन और शुगर चला रहा है, खा रहा है, उसको दिखाता है रिपोर्ट के अंदर। कि जैसे कि मान लो कि ये मेरा हाथ है, ठीक है, और मेरा जो अंगूठा है वो डिप्रेशन कंट्रोल करता है। अगर किसी नॉर्मल इंसान का होगा तो ग्लो अप पूरे हाथ के अंदर नॉर्मली होगा, पर किसी को डिप्रेशन है तो उसका थंब वाले पार्ट के अंदर ग्लो अप नहीं आएगा एफएमआरआई के अंदर, क्योंकि वहां पे ब्रेन शुगर और ऑक्सीजन ढंग से यूटिलाइज नहीं कर रहा और आप एंटी डिप्रेशन देना शुरू करते हो और ये काम करना शुरू कर देता है। तो इमेजिंग के थ्रू भी इट हैज बीन ऑलरेडी प्रूवन कि ये सिर्फ ख्याली बीमारी नहीं है कि somebody is not able to counter the current trauma that they are going through in their life and they are not don't have that resilience to fight back, ये प्रॉपर बीमारी है। तो रियल टाइम एफएमआरआई न्यूरो फीडबैक ट्रेन्स पेशेंट टू रेगुलेट ब्रेन एक्टिविटी। उसको सारे टाइम हम हमेशा दिखाते रहेंगे कि देखो आपका ब्रेन अभी काम नहीं कर रहा है, अगर आप डीप ऑक्सीजन लोगे, ब्रीदिंग करोगे टाइम टू टाइम पे, वो एकदम ग्लो करने लगता है। तो ही नोज कि ठीक है मैं रियल टाइम देख पा रहा हूँ, ये खाली कहने वाली बात नहीं है, मैं देख सकता हूं कि सामने इंसान रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसके बाद सारे टाइम फीडबैक आ रहा है। मतलब जैसे कि आई लव व्हेन यू गाइस इंटरैक्ट, कि मैं जो तुम्हें बता रहा हूं तुम लोग भी सामने से फीडबैक दे रहे हो, तो मेरा हौसला थोड़ा ज्यादा बढ़ता है और पढ़ाने का। तो इट हैपेंस द सेम वे कि फीडबैक के मॉड्यूलेशन के थ्रू भी ये दिखाया गया है कि इट वर्क्स। देन देयर इज जीन थेरेपीज, though nascent gene editing techniques, example CRISPR targeting monoamines or stress related genes, are explored in preclinical method models for schizophrenia and depression. हमारे पास जब भी मरीज आता है ना कोई डिप्रेशन का, स्किज़ोफ्रेनिया का या कोई भी एंटीसाइकोटिक, हम हमेशा पेशेंट से पूछते हैं आपके साथ पहले कभी ये हुआ है और आपके फैमिली में किसी को ये दिक्कत रही है। 50 to 60% पेशेंट्स में फैमिली हिस्ट्री हमेशा होती है कि होता है। तो अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है कि कोई स्पेसिफिक जीन है क्या कि जीन के अंदर ही प्रॉब्लम आ रही है, अगर हम वो जीन को हटा दें शुरू में ही तो डिप्रेशन और साइकोसिस जैसी चीजें वो हो ना पाए। कई जीन्स आइडेंटिफाई भी हुए हैं इस चीज के अंदर, बट स्टिल रिसर्च इज क्वाइट नेसेंट और यू नो बेबी स्टेप्स इनिशियली कि कितना रिस्पॉन्ड हो रहा है या कितना नहीं हो रहा है इस चीज से। सेफ्टी एंड एथिकल कंसिडरेशन, बायोलॉजिकल थेरेपीज व्हाइल इफेक्टिव कैरी रिस्क्स, psychopharmacology in vulnerable population, example pregnancy, requires balancing maternal benefits against fetal risks. Lamotrigine is often preferred while valproate is avoided due to teratogenicity. अब इनकी सेफ्टी और एथिकल कंसिडरेशंस, हम दवाइयां जो पॉपुलेशन को दे रहे हैं, बच्चों को हम एंटी डिप्रेसेंट्स दे रहे हैं, प्रेगनेंसी के अंदर हम एंटी डिप्रेसेंट्स दे रहे हैं, मूड स्टेबलाइजर दे रहे हैं, एंटीसाइकोटिक्स दे रहे हैं, हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है कि अगर प्रेग्नेंट कोई फीमेल है हम उसको कौन सी एसएसआरआई लिख सकते हैं, कौन सी नहीं लिख सकते हैं, अगर वो दवाई खाएगी तो बच्चे पे कोई असर पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, उसके हिसाब से वी ऑल्सो चेंज देयर मेडिकेशंस।
जिसका सबसे कम साइड इफेक्ट होता है ड्यूरिंग दैट फेज, उसके अकॉर्डिंगली गिव द मेडिकेशंस, बट स्टिल 0.1% रिस्क तो हर चीज का रहता ही है कि हो सकता है टेराटोजेनेसिस। तो ये वो लीगल और एथिकल बाउंडेशंस हैं दैट वी हैव टू गो थ्रू। सेकंड इज साइकोफार्माकोलॉजी इन वल्नरेबल, अच्छा हाँ, न्यूरोमॉड्यूलेशन, कॉग्निटिव साइड इफेक्ट्स, अफेक्ट्स नेसेसिट्यूट इन्फॉर्म्ड कंसेंट। Emerging therapies like psychedelics raise questions about the equitable access and long-term psychological impact. न्यूरोमॉड्यूलेशन जैसे ECT और ट्रांसमैग्नेटिक जो भी ट्रांसक्रेनियल हम करते हैं, उसे थोड़ी कॉग्निशन में प्रॉब्लम आती है, पर वो भी बहुत थोड़े टाइम के लिए। जैसे कि पेशेंट की ECT हुई, फॉर द नेक्स्ट 6 to 7 आवर्स ऐसा हो सकता है थोड़ा कॉग्निशन ही ना कर पाए चीजें, बातें ढंग से ना करे, या फिर कैलकुलेशन ना कर पाए चीजों के बारे में, बस इसके अलावा कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स देखा नहीं गए हैं इसके। बट जो नई इमर्जिंग थेरेपीज हैं, प्रॉब्लम इमर्जिंग थेरेपीज के लिए ये है कि इमर्जिंग थेरेपीज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड मनी। तो खाली हायर सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन हु आर क्वाइट रिच हैव एक्सेस टू दीज मेडिकेशंस। कीटामिन थेरेपी सब कुछ होता है पर वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो एक ये प्रॉब्लम है जो लोगों को आती है। एथिकल प्रैक्टिस डिमांड शेयर्ड डिसीजन मेकिंग, प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट्स ऑटोनॉमी एंड एविडेंस बेस्ड केयर। खाली रिसर्च में हमें दिखाया है कि ये दवाई काम कर रही है, ये थेरेपी काम कर रही है, इनफ नहीं होता। बहुत ज्यादा रिसर्च चाहिए, बहुत ज्यादा हमें डेटा चाहिए, उसके बाद इट्स बेटर वी स्टार्ट अ पेशेंट ऑन अ सर्टेन मेडिकेशन। In conclusion, biological therapies in psychiatry, psychopharmacology, neuromodulation, and emerging modalities offer robust tools to manage mental disorders grounded in neuroscientific advances. Their efficacy is well documented, but challenges like side effects, access, and incomplete response rates persist. Future directions include integrating biomarkers, refining personalized approaches, and scaling novel treatments like psychedelics. By combining biological interventions with psychosocial care, psychiatry can optimize outcomes, addressing both symptoms and quality of life. Very good afternoon. I am Dr. Ritika Singh. I am a senior resident in the Department of Psychiatry. So as you can all see, today's lecture is treatment of psychoneuroses, and basically we will be dealing with psychotherapies and the behavior therapies. Okay. So we'll cover the heading under the following topics. We'll have a brief introduction and overview of treatment approach, and then we'll see what are the different psychotherapies, different behavioral therapy, and there are two therapies in between where I have written cognitive behavioral therapy and dialectical behavior therapy. So they are something जो use तो psychotherapy को करती है, लेकिन इसमें भी behavioral modification होता है. Okay, then conclusion and references. So when we talk about psychoneuroses or neuroses per se, so they are referred to as neurotic disorders, which are a group of psychological conditions characterized by chronic distress, emotional instability, and maladaptive behavior. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नेक्स्ट जो लिखी है, विदाउट अ लॉस ऑफ टच विद रियलिटी। अगर आप साइकोसिस की बात करेंगे या साइकोटिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात करते हैं तो उसमें टच ऑफ रियलिटी जो होता है वो खत्म हो जाता है। इसमें वो रियल सेंस रहता है, लेकिन आपका जो स्ट्रेस डीलिंग का तरीका है या फिर जो आपको, जिससे आप लोगों ने मुझे पहले बताया कि इमोशनली जो अनस्टेबिलिटी आ जाती है, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। Unlike psychotic disorders, psychoneuroses do not involve hallucinations or delusions. अगर आपने कभी schizophrenia पढ़ा होगा तो आपने कुछ characteristics देखे होंगे उसमें कि पेशेंट को delusions होते हैं, hallucinations होते हैं, disorganized behavior हो जाता है बहुत गंदा वाला, बहुत aggression आ जाता है। तो उसके कंपैरिजन साइकोसिस में ये सब, न्यूरोसिस में ये सब चीजें नहीं देखने को मिलती हैं। The affected individual typically maintains insight into their condition. उनको पता होता है कि प्रॉब्लम हो रही है। The only thing is कि वो स्ट्रगल करते हैं अपने सिम्टम्स को कंट्रोल करने में या अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने में। कोई बहुत डिस्ट्रेस में है, कोई बहुत एंजाइटी में है, उसे पता चल रहा है मैं एंग्शियस हूँ, लेकिन वो एंजाइटी की वजह से जो भी प्रॉब्लम आ रही है कि सपोज वो कहीं जा नहीं पा रहा है, तो वो बिहेवियर उसे कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। सो अगर हम क्लासिफाई करते हैं मेंटल इलनेस को, तो उसमें अगर आप देखेंगे न्यूरोसिस की बात करें तो उसमें ये सारी चीजें आ रही है। एंजाइटी आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, ओसीडी आ रहा है, फोबिया आ रहा है, हिस्टीरिया आ रहा है। ठीक है। सिमिलरली वाइडर एस्पेक्ट देखें तो टाइप्स ऑफ न्यूरोटिक इलनेस क्या क्या है? फोबिया, एंजाइटी, न्यूरेस्थीनिया, ओसीडी, सॉरी दिस सम ऑफ द स्लाइड्स हैव बीन आगे बढ़ गई हैं। सो ये सब चीजें होती हैं। ठीक है।
तो कुछ कॉमन सिम्टम्स अगर हम देखें इन साइकोटिक जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, तो परसिस्टेंस एंजाइटी और वरी आपको मिलेगा। किसी किसी में इरेशनल फियर या फोबियाज होंगे, सोशल फोबियाज की बात करें। ओसीडी की अगर बात करें तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव ट्रेट्स आपको मिलेंगे। लो मूड होगा, इरिटेबिलिटी ऑफ मूड हो सकता है बट नॉट टू द एक्सटेंट की जो आप मूड डिसऑर्डर्स में देखते हैं। फटीग एंड स्लीप डिस्टर्बेंसेस, सोमैटिक कंप्लेन जैसे कि हेडेक है, स्टमक इश्यूज हैं, बॉडी पेन है, डिफिकल्टी कंसंट्रेशन, रेस्टलेसनेस, फीलिंग ऑफ गिल्ट और वर्थलेसनेस। ठीक है, तो हाउ डज इट इम्पैक्ट योर डेली लाइफ? जो भी न्यूरोटिक सिम्टम्स होते हैं, अगर कोई इंसान लगातार परेशान है, किसी स्ट्रेस में है, तो उसका डे टू डे एकेडमिक, अगर आप लोग के स्टूडेंट्स है जैसे, तो आपकी एकेडमिक एक्टिविटीज हैम्पर होगी। जो जॉब में जा रहा है उसका काम हैम्पर होगा, आप अपने फैमिली वालों को टाइम नहीं दे पाएंगे, तो आपका प्रोफेशनल, एकेडमिक, पर्सनल, सोशल सभी तरीके की लाइफ अफेक्ट होगी अगर न्यूरोटिक इलनेस ज्यादा बढ़ जाती है तो। ठीक है, impaired work and academic performance, strained interpersonal relationships, avoidance of social or challenging situations, reduced self-confidence and self-esteem, increased dependence on other। अगर किसी को ज्यादा, जैसे अगर आपने देखा होगा कोई ज्यादा एंशियस रहता है या किसी को किसी जगह का फोबिया होता है, तो वो अपने साथ वालों को भी इन्वॉल्व कर लेता है कि नहीं तुम मेरे साथ चलो ही चलो, मैं नहीं जा सकता अकेले, मुझे ये चीज बहुत परेशान कर रही है, तुमको भी ये करना पड़ेगा। ठीक है, ओसीडी वाला पेशेंट होता है तो अपना तो हाथ धोएगा ही, कि दूसरे इंसान है तो उसको भी बोलेगा नहीं तुम यहाँ पे तुमने ये किया तो तुम मेरे पास अब हाथ धो के ही आओ। तो ये सारी चीजें क्या होती है कि दूसरों पर भी डिपेंडेंस बढ़ जाती है। रिस्क ऑफ डेवलपिंग सेकेंडरी इश्यूज, एंजाइटी की वजह से बहुत बार लोग सब्सटेंस यूज में चले जाते हैं, बहुत बार लोग सेकेंडरी डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो ये सारी चीजें भी आती हैं। क्रॉनिक इमोशनल डिस्ट्रेस आपका ओवरऑल फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा, हार्ट कंडीशन, बीपी, क्या बोलते हैं, डायबिटीज, ये सारी चीजें भी एंजाइटी के साथ कोरिलेटेड देखी गई है। अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो ओवरव्यू, एक मेन जो टॉपिक है हमारा ट्रीटमेंट अप्रोच का क्या होगा। सो इट रिक्वायर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच। एक, हर इंसान अलग है, ठीक है, अगर सपोज आपको न्यूरोटिक सिम्टम है तो शायद आपके लक्षण अलग हों और आपके लक्षण अलग, आपके पर्सनालिटी ट्रेट अलग हों चीजों को डील करने के लिए, उसके कंपैरिजन दूसरा इंसान जो है उसके अलग हो, तो उनको ध्यान में रख के ट्रीटमेंट किया जाता है कि किसको कौन सी थेरेपी यूज कर सकते हैं, किसके साथ कितना पेशेंटली डील करना है, तो ये सारी चीजें हम ट्रीटमेंट अप्रोच में देखेंगे। And individualized approach is symptoms and underlying causes may vary among individuals. गोल क्या है, जस्ट सिम्टम रिलीफ नहीं है, ठीक है, सिम्टम तो रिलीफ करना है, इसके साथ साथ क्या क्या है, आपकी जो ओवरऑल फंक्शनिंग है लाइफ की वो ठीक करनी है, आपको एकेडमिकली, ऑक्यूपेशनल वाइज, पर्सनल रिलेशनशिप सबको ठीक करना है। और अगर आगे के फ्यूचर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, तो उसको कैसे पॉजिटिव कोपिंग के वाया हैंडल करना है। So this is everything which we are going to learn. Okay. So what are the key points you should consider while treating psychoneurosis? Individualized assessment. Each patient can present with a unique combination of symptom, personality trait, and life circumstances. Then establishing therapeutic alliance, building trust, rapport with the patient. ठीक है, कहीं और किसी चीज में उसको आपके अलावा, मतलब उसको थेरेपी के अलावा या साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के अलावा किसी और चीज की जरूरत तो नहीं है। फॉर एग्जांपल हम लोग योगा नेचुरोपैथी में बहुत बार पेशेंट्स को रेफर करते हैं, तो क्या उसको रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस वहां से सीखनी है, फिजियोथेरेपी की जरूरत तो नहीं, तो ये सब चीजें आपको एक साथ लेके चलनी है। देन सिम्टम सिवियरिटी एंड फंक्शनल इम्पेयरमेंट देखना है, जितना सिवियर है उसका ट्रीटमेंट उतना आप विग्रेसली करेंगे और उसमें इतना टाइम भी लगेगा। नेक्स्ट की पेशेंट का इंसाइट कितना है, पेशेंट मोटिवेटेड कितना है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको मोटिवेशन अच्छा होता है कि दे आर विलिंग टू वर्क ऑन थेरेपी जो प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन कुछ पेशेंट होते हैं जिन पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, जिनको हो सकता है आपको दवाइयाँ देनी पड़े थेरेपी से पहले, तो ये सब चीज़ें भी ध्यान देनी है। देन चूजिंग द राइट थेरेपेटिक अप्रोच, कि कौन सी थेरेपी किस पेशेंट को सूट कर रही है। जैसे हम एंजाइटी के लिए सीबीटी यूज करते हैं और ओसीडी के लिए सीबीटी का ही आपका बिहेवियर, मतलब बिहेवियरल थेरेपी का एक मॉडिफिकेशन यूज करते हैं। ठीक है, वो क्या है ईआरपी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अनरिजॉल्व इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है तो उसके लिए हम साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी करते हैं। बिहेवियरल मैनेजमेंट है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है तो उसमें हम डीबीटी यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। देन आपको मॉनिटर करना है पेशेंट का प्रोग्रेस और वो ट्रीटमेंट को कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, और उसी हिसाब से आपको अपना ट्रीटमेंट भी
एडजस्ट करते रहना है। फिर आपको एड्रेस करना है कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं तो नहीं है, कोई पेशेंट बहुत स्ट्रेस में है, चलो आपने थेरेपी की, लेकिन साथ साथ में सब्सटेंस यूज भी है, अल्कोहल यूज भी है या फिर कोई और सब्सटेंस यूज है, तो उसको भी ट्रीट करना है, ठीक है। और फैमिली और सोशल सपोर्ट, क्योंकि उनको भी समझाना है कि कैसे पेशेंट को डील करना है, और ये भी देखना है कि कहीं सोशल या फैमिली कोई कंडीशन ऐसी तो नहीं जिसकी वजह से सिम्टम एग्जैजरेट कर रहे हैं, तो यू हैव टू एड्रेस होल थिंग अगर हम साइकोथेरेपीज की बात करते हैं तो। अब हम ट्रीटमेंट मोडालिटीज देखेंगे। जो तो मेन ट्रीटमेंट मोडालिटीज आज हम पढ़ेंगे वो है साइकोथेरेपी और बिहेवियर थेरेपीज, विल सी आफ्टर देम। उसके बाद आपका फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आता है, और एक होता है मल्टी मोडल अप्रोच, यानी कि कंबाइंड ट्रीटमेंट, जिसमें हम साइकोथेरेपी भी यूज कर सकते हैं, हम फार्माकोलॉजिकल थेरेपी भी साथ में यूज करते हैं, तो जिस कंबाइंड ट्रीटमेंट ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है, ठीक है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स साइकोथेरेपीज। Psychotherapy is a structured, goal-oriented psychological treatment that involves communication between a trained therapist and a patient to alleviate psychological distress and modify maladaptive behavior and thought pattern. ठीक है? It is also called as talk therapy and it is often confused with counseling. तो ये चीज बहुत कॉमनली देखने को मिलेगी, आप बोलेंगे पेशेंट को काउंसलिंग के लिए भेज दो, ठीक है। काउंसलिंग अलग चीज होती है, थेरेपी अलग चीज होती है, प्लीज इसको बहुत बार इंटरचेंजेबली लोग यूज करते हैं, बट अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, यू ऑल आर मेडिकोस, तो कि इनमें डिफरेंस होता है, ठीक है। जो साइकोथेरेपी है वो बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से होती है, इसमें पता होता है कि पहले क्या टाइम टेबल बना होता है कि ये चीज पे काम करना है, इस चीज पे ऐसे काम करना है, हमें इस प्रॉब्लम को इतने आवर्स देने हैं, इसमें ये होमवर्क दिया जाएगा, पेशेंट का ये रिस्पॉन्स देखा जाएगा, ठीक है। और इसमें एक ट्रेन थेरेपिस्ट होगा, ठीक है, वो काम करेगा पेशेंट का जो माल अडेप्टिव थॉट पैटर्न है, कोई कॉग्निटिव जो कोपिंग स्किल्स हैं, जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं, उस पर कैसे काम करना है, ठीक है। बस एक जस्ट आपका डिफरेंस देखिए, जो काउंसलिंग है इट इज अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस इन कंपैरिजन टू साइकोथेरेपी। ये जो होता है आपका काउंसलिंग जो है वो उसी वक्त पेशेंट की जो डे टू डे एक्टिविटीज है उसमें कितना हैम्पर हो रहा है उस पर ज्यादा काम करता है, वेयर एज जो आपका साइकोथेरेपी है वो अंडरलाइन डीप कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह पे देखेगा और ये लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। Counseling deals with patients who are fit enough to think rationally and find solution to their problem by themselves, whereas psychotherapy involves individuals who are dependent on psychotherapists to gain control over their personality, mind and emotional behavior. All right. So, goals क्या है साइकोथेरेपी के, चाहे बिहेवियर थेरेपी हो चाहे साइकोथेरेपी हो, उनके गोल्स क्या है जो हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे। एक तो कि इंसाइट डेवलप करना पेशेंट के अंदर अपने इमोशनल और बिहेवियरल पैटर्न को लेके, resolve internal conflicts, improve interpersonal relationship, improve self-esteem, modify maladaptive thought pattern, एक positive coping, healthy coping behavior inculcate करना, और जो भी इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से जो सिम्टम है एंजाइटी के, डिप्रेशन के, स्ट्रेस के, उनको रिजॉल्व करना, ठीक है। सो पहले हम देखते हैं साइको एनालिटिक साइकोथेरेपी, ठीक है। तो ये थेरेपी अगर हम बात करें तो ये बहुत पुरानी है, सिगमंड फ्रॉइड ने अपने इज दी वन जिन्होंने ये डेवलप किया था, हु इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ साइको एनालिसिस, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि पेशेंट को बात करके उसके जो प्रॉब्लम बिहेवियर है उसके ऊपर काम किया जाता है, बाय फाइंडिंग आउट कि किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कि थॉट पैटर्न कहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, कोई अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा तो नहीं है, कुछ ऐसी चीज जो मन में दबी हुई है बाहर नहीं आ पा रही है, किस वजह से पेशेंट अगर कोई भी बुरा बिहेव कर रहा है पेशेंट तो वो किस रीजन की वजह से कर रहा है, ठीक है। that helps people understand their deep hidden thoughts and feelings, especially those from childhood that might be causing problem in their current life, ठीक है। तो इसका कोर आइडिया क्या है कि अवर इमोशनल स्ट्रगल्स कम फ्रॉम अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, जब भी हम कोई चीज करना चाहे, हमारा एक डिजायर्ड गोल है, हम उसको उस तक पहुंच नहीं जाता है, या फिर हमको क्या बोलते हैं, जो दो अपोजिट चीज हमारे दिमाग में टकरा रही है, आपको एक ए जगह पे जाना है लेकिन वहां जाने के लिए आपको बहुत टाइम लग रहा है, आपके पैसे भी जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि मैं जाना ज्यादा जरूरी है कि पैसे बचाना ज्यादा जरूरी है, तो ये सब चीजें कॉन्फ्लिक्ट कॉज करती है, ठीक है। तो कोई ऑपोजिट चीजों की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है वो किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से नहीं है तो नहीं है, और वो बहुत डीप रूटेड अनकॉन्शियसली आपके अंदर होता है, जिस बहुत सारी चीजें आप इग्नोर कर देते हैं, चलो मुझे बचपन में मारा था मेरे घर वालों ने बहुत, अरे वो तो सबकी पिटाई होती है,
ये सोच के आपने शायद एक बात इग्नोर कर दी, लेकिन आगे जाके क्या पता वो चीज़ आपके बिहेवियर में झलक रहा है, आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जा रहे हैं, आप बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे साइको एनालिसिस काम करती है, ठीक है। गोल क्या है? टू ब्रिंग अनकॉन्शियस थॉट्स इनटू अवेयरनेस सो यू कैन अंडरस्टैंड योरसेल्फ बेटर। जो चीज़ आप इग्नोर कर रहे थे उस चीज़ को एक्नॉलेज करना है, ठीक है। लंबा सेशन चलता है, ठीक है, 4 से 5 सेशन हर हफ्ते होते हैं, 45 मिनट्स टू 1 आवर, कभी कभी 1.5 आवर भी लग जाता है, ठीक है। कुछ टेक्निक्स हैं, एक तो है फ्री एसोसिएशन। इसमें क्या होता है, पेशेंट बोलने को बोलते हैं, ठीक है, पेशेंट स्पीक फ्रीली टू अंडरकवर रिप्रेस्ड थॉट्स। फिर है ड्रीम एनालिसिस, पेशेंट को कोई सपने परेशान कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बहुत बार कहते हैं ड्रीम्स आर रॉयल रोड टू अनकॉन्शियस। आपके जो अनकॉन्शियस ब्रेन में चल रहा है वो ड्रीम में मैनिफेस्ट होता है। तो देयर इज अ बुक सिगमंड फ्रॉइड की, तो उसमें यही बताया गया है कि ड्रीम में आपको जो जो चीज दिख रहा है उसका क्या मतलब है। अगर ड्रीम में आपको कभी लग रहा है कि कोई आप पे अटैक कर रहा है, कोई शेर है, तो आपका बॉस हो सकता है, इस टाइप की चीजें, ठीक है ना। तीसरा है ट्रांसफरेंस इंटरप्रिटेशन। ट्रांसफरेंस का मतलब होता है जो आपका जो थेरेपिस्ट है, जो पेशेंट है, उसका थेरेपिस्ट की तरफ क्या इमोशनल बिहेवियर आ रहा है, ठीक है, ट्रांसफरेंस इसे बोलते हैं। हो सकता है एक पेशेंट को कोई मेल थेरेपिस्ट मिला हो, बट पेशेंट का हिस्ट्री रहा है कि इमोशनल या फिजिकल ट्रॉमा मेल्स की वजह से, तो वो ट्रांसफरेंस उस थेरेपिस्ट के ऊपर भी झलक सकता है कि थेरेपिस्ट तो मेल है, ये खराब ही होगा, ठीक है। वैसे ही उल्टा भी हो सकता है, मेल फीमेल के लिए भी ऐसा सोच सकता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो यही चीजें एक्सप्लोर करनी है, ठीक है। ट्रांसफर फ्रॉम पास्ट रिलेशनशिप इनटू द थेरेपिस्ट। और इसी का एक टर्म होता है काउंटर ट्रांसफरेंस, जो इमोशनल या बिहेवियरल फीलिंग्स थेरेपिस्ट की अपनी पेशेंट की तरफ आती है, ठीक है। चौथा है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत बार पेशेंट ना अनकॉन्शियसली अवॉइड करता है जो चीज पेनफुल होती है उसको याद करने के लिए, तो उस रेजिस्टेंस को डील करना है। तो पेशेंट माइट गेट इरिटेबल, माइट गेट एग्री, अगर आप कुछ ऐसी बात करो जो उसको बाहर ही नहीं निकालनी है, तो उसको विद टाइम कैसे एक्सप्लोर करना है, ये साइको एनालिटिक थेरेपी आपको बताती है। Person unconsciously avoids talking about certain thoughts, memories, or feeling during therapy, especially those are painful or threatening. ठीक है। सो जैसे आप देख सकते हैं, फ्लाई कर रहे हैं तो आपको कंट्रोल चाहिए, फॉल कर रहे हैं तो आप किसी परेशानी वाली सिचुएशन में हैं, ठीक है ना। ड्रामेटिक चेंज, अगर आपके लाइफ किसी के पेशेंट को डेथ दिख रही है तो उसका मतलब हो सकता है कोई सडन चेंज हो गया लाइफ को जो उसको एक्सेप्टेबल नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका साइको डायनेमिक साइकोथेरेपी। साइको एनालिटिक जैसी ही है, उससे थोड़ा ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। और उसमें पता होता है कि हमको इस वाले एक्सपीरियंस पे काम करना है, इस इमोशन को कंट्रोल करना है, और कंपैरेटिवली छोटा होता है, टाइम ड्यूरेशन भी कम होता है और सेशन भी कम होता है, ठीक है। More practical and structured, influence on past experience on present behavior, emotional insight and unresolved conflicts, patterns in relationship and behavior. Nature, it is usually short to medium term, weeks to months, sessions are once or twice a week. गोल क्या है कि आपका सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाना है, इमोशनल रूट्स मतलब जो रूट ऑफ प्रॉब्लम है उस तक जाना है, improve relationship and develop healthy coping mechanism, similar to that of आपका psychoanalytic. तीसरी आ गई आपकी सपोर्टिव साइकोथेरेपी, ठीक है। सपोर्टिव साइकोथेरेपी, जिसे नाम समझ रहे हो सपोर्टिव, तो ये उसी वक्त अगर कोई क्राइसिस कंडीशन है उस टाइम पे आपको क्या सपोर्ट देना है पेशेंट को या ग्रुप ऑफ पीपल को, उस पे डील करती है। ये पास्ट कॉन्फ्लिक्ट, अनरिजॉल्व ट्रॉमा पे उतना डील नहीं करेगी, ये करंट सिनेरियो को कैसे मैनेज करना है, वहां पे कैसे पॉजिटिव कोपिंग लगानी है, वहां पे अपने आप को कैसे रिलैक्स करना है, उस पे काम करती है, ठीक है। It is a practical, present-focused approach that helps individual cope with emotional distress, strengthen defense, and maintain psychological stability. Unlike other forms of therapy, it does not aim to explore unconscious conflicts, but instead focus on support, reassurance, and problem solving. ठीक है? डिस्ट्रेस एंजाइटी कम करेगा, कोपिंग स्किल बढ़ाएगा, सिखाएगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, ठीक है, enhance daily functioning and provide emotional support during crisis. इंडिकेशन क्या है, अगर कोई स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट है, बहुत सारे क्रॉनिक मेंटल इलनेस या क्रॉनिक फिजिकल इलनेस भी है, अगर किसी को लॉन्ग लॉन्ग केस ऑफ डायबिटीज अगर भी है, तो उसमें कैसे अपने एटीट्यूड्स टुवर्ड्स इलनेस चेंज को बना के रखना है, तो ये आपका काम करती है थेरेपी उसमें, ठीक है।
used to boost self-esteem and emotional strength, ठीक है, especially before moving to deeper types of therapy. Suitable for those who just want relief from symptom but do not have any insight and have limited motivation. A good option when time, money or resources don't allow for long-term management. ठीक है. टेक्निक्स क्या है इसमें, कुछ चीजें देख लीजिए. गाइडेंस, पहले तो गिविंग यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस ऑन इश्यूज लाइक वर्क, स्टडीज, हेल्थ एंड रिलेशनशिप. जिस भी टॉपिक को या जिस भी क्राइसिस सिचुएशन को आपको डील करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है. फिर पेशेंट को टेंशन रिड्यूस करने के मेथड, अपने आप को काम कैसे करना है, इसके ऊपर टेक्निक सिखानी है. एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, कभी कभी एनवायरमेंट किसी, जैसे सपोज कहीं डिजास्टर हो गया, पेशेंट को उस जगह से उठा के दूसरी जगह पे भेज दो, पेशेंट वैसे ही काम हो जाता है बहुत बार. यहाँ पे बिल्डिंग गिर जाएगी तो आपको अगर मैं दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दूंगी तो यू विल बी काम बाय योरसेल्फ, आप एक सेफ्टी की जगह पे पहुंच गए. तो चेंजिंग और इम्प्रूविंग द पर्सन सराउंडिंग इफ द सिचुएशन इज कॉजिंग इमोशनल प्रॉब्लम. कभी कभी फैमिली में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो पेशेंट बहुत बार फैमिली से थोड़ा दूर चला जाता है तो बेटर फील करता है. Externalization of interest, encouraging the person to return to hobbies or meaningful activities once they enjoy. Reassurance देना है कि उनको fear ना आए, उनके जो self confidence है वो boost हो. और prestige suggestion, therapists give advice with confidence and authority to guide patients' action. कहीं कहीं पे पेशेंट को परसुएट करना पड़ता है कि आप ये काम अच्छा है इसको करो, कहीं कहीं पे प्रेशर या अपनी अथॉरिटी दिखानी पड़ती है. पेशेंट के लिए को बुली नहीं करना है, पेशेंट के लिए रूड नहीं होना है, बट कहीं कहीं पे आपको जहाँ पे जरूरी है फर्मली एक्शन लेना पड़ता है. Confession and ventilation, allowing person to freely express emotion and feel relief by thinking it out loud. Okay. नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल थेरेपी. आईपीटी में क्या होता है, नाम है कि इंटरपर्सनल, कोई भी इंटरपर्सनल इश्यूज चल रहे हैं, चाहे वो अपने साथ हो या किसी और की क्लोज फैमिली मेंबर या रिलेशनशिप के इश्यूज हो, उस पर काम करना है. ठीक है. इट इज ऑल्सो शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर्ड थेरेपी which focuses on improving person's relationship and social functioning to reduce emotional distress. ठीक है. बहुत बार लोगों के साथ कैसा रिलेशन है उसकी वजह से भी इमोशनल डिस्ट्रेस आ जाता है. ठीक है. पेरेंट्स की नहीं बन रही है, मेरी पेरेंट्स नहीं बनती, मेरे दोस्तों से नहीं बनती, मैरिज में ट्रबल है तो इसकी वजह से भी स्ट्रेस आ जाता है. तो ये सब चीजें में आईपीटी काम करती है. इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट डिप्रेशन एंड अदर इमोशनल प्रॉब्लम्स आर क्लोजली लिंक्ड टू इंटरपर्सनल इश्यूज. ये इसका वही इंडिकेशन जैसे ग्रीफ है, कुछ लॉस हो गया, कोई डिप्रेशन है, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट है, सोशल विड्रॉल और आइसोलेशन है, ईटिंग डिसऑर्डर और एंजाइटी में भी काम करते हैं. इसके 3 सेशंस फेजेस होते हैं, इनिशियल फेज, मिडिल फेज और टर्मिनेशन फेज. ठीक है. पहले के 3-4 जो सेशन होते हैं उसमें आपको क्या बोलोगे, इनिशियल फेज में आप डायग्नोसिस बनाओगे, सिम्टम आइडेंटिफाई करोगे, फिर आपका कोई मेजर जो सिम्टम किस वजह से आ रहा है, कोई लाइफ इवेंट तो नहीं हुआ है, कोई मेजर चेंज इन लाइफ स्ट्रक्चर तो नहीं आया है, कोई रिलेशनशिप ट्रबल तो नहीं है, कोई फैमिलियल कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, किस वजह से कोई इंटरपर्सनल प्रॉब्लम क्या चल रही है. ठीक है. फिर आप 1 से 2 इंटरपर्सनल प्रॉब्लम एरिया सेलेक्ट करोगे, सच एज ग्रीफ है, रोल डिस्प्यूट्स है, रोल ट्रांजिशन है, कि कुछ इंटरपर्सनल डेफिसिट्स चल रही हैं, उसको चूज करोगे. फिर जो नेक्स्ट सेशन है इट इज द एक्टिव फेज, जहाँ पे आपने काम करना है, जहाँ पे आपने कोपिंग सीखनी है, पेशेंट को काउंसिल करना है. ठीक है. इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल, डेवलप न्यू कोपिंग स्ट्रेटजीज, यूज टेक्निक लाइक लो रोल प्ले, क्लैरिफिकेशन एंड इमोशनल एक्सप्रेशन, एंड विल बी ट्रैकिंग द सिम्टम इंप्रूवमेंट, कि पहले कैसा बिहेव करता था पेशेंट और अब कैसा बिहेव कर रहा है. देन टर्मिनेशन फेज, यहाँ पे आपको जब क्लोजर करना होता है थेरेपी का, लास्ट के जो आपके 2-4 सेशन है, यहाँ पे आपका पेशेंट का मूड कितना इंप्रूव हुआ है, उसका रिलेशनशिप विद सेल्फ और अदर्स कितना इंप्रूव हुआ है, और आपको पेशेंट को एनोनिमिटी देनी कि अब आप पेशेंट को अथॉरिटी बनाना है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, वो अपने इंटरपर्सनल जो प्रॉब्लम है वो कैसे खुद को कंट्रोल कर सकता है. डिस्कस हाउ टू हैंडल फ्यूचर प्रॉब्लम्स, एक्सप्लोर फीलिंग अबाउट एंडिंग थेरेपी एंड एनकरेज इंडिपेंडेंस. ठीक है. नाउ आपके आ गई इंसाइट ओरिएंटेड साइकोथेरेपी. इसमें क्या होता है, नाम से आप इंसाइट डेवलप की जाती है, चाहे वो खुद के बिहेवियर के लिए हो या खुद की बीमारी के लिए हो. ठीक है. It helps individual understand deep-rooted emotional conflict and unconscious patterns from past experience to improve current thoughts, feelings, and behavior. Increase self-awareness. Gently highlight contradictions of the client's thinking, promote emotional healing and personal growth. ठीक है. फिर एक सब पार्ट है फैमिली साइकोथेरेपी में. क्या होता है कि आपकी जो फैमिलियल प्रॉब्लम है उसके ऊपर थेरेपी करनी है, और मैरिटल साइकोथेरेपी, जिसको हम कपल थेरेपी बोलते हैं. ठीक है. इट हेल्प अंडरस्टैंड एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड स्ट्रेंथन देयर रिलेशनशिप. यहाँ तक समझ में आया.
तो ये हमने बेसिक साइकोथेरेपीज जो होती हैं हमने उसे कवर किया। अभी जो आगे की 2-3 थेरेपीज हैं उसको अच्छे से देख लेना, स्पेशली सीबीटी को अच्छे से देख लेना, वो सब जगह पूछते हैं, सब जगह आती भी है। ग्रुप साइकोथेरेपी, जो साइकोथेरेपी आप इंडिविजुअल्स पर कर रहे थे उसी को ग्रुप में कंसिडर किया है, ठीक है। ये आपका सोशल कम्युनिकेशन में हेल्प करेगी, ठीक है। तो जो अगर कम्युनिटी वाइज प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, ठीक है। और अगर बहुत सारे लोग कॉमन प्रॉब्लम, कॉमन कॉन्फ्लिक्ट शेयर कर सकते तो उसको कैसे डील करना है उस पर हेल्प करेगी। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। ये आपका है तो पार्ट ऑफ साइकोथेरेपी, जो कि आपके थॉट पैटर्न पे काम करते हैं, बट यहाँ पे हम बिहेवियरल टेक्निक्स यूज करते हैं टू मॉडिफाई द बिहेवियर, ठीक है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन हो गया कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, बेस्ड ऑन द आइडिया दैट डिस्टॉर्टेड थिंकिंग लीड्स टू इमोशनल डिस्ट्रेस। इफ यू रिमेंबर, जब हमने साइकोन्यूरोसिस वाला पार्ट पढ़ा था, इससे पहले वाला जो चैप्टर पढ़ा था, उसमें मैंने आपको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस बताए थे, ठीक है ना। तो उसमें कुछ चीजें होती है कि पेशेंट की कैसे नेगेटिव थिंकिंग डेवलप हो जाती है, और कि ये या तो ये सही है या तो ये गलत ही है, बीच का रास्ता ही नहीं दिखता है। तो इन सब चीजों पे काम करती है सीबीटी। इट एम्स टू चेंज बोथ थॉट्स एंड बिहेवियर टू इम्प्रूव इमोशनल वेलबींग। इंडिकेशन किस में है? डिप्रेशन में, एंजाइटी में, ओसीडी, स्ट्रेस, जितने भी आप न्यूरोटिक कंडीशन सोच सकते हो, ईटिंग डिसऑर्डर्स में। तो अगर हम बात करें, एरनटी बेक ने एक कॉग्निटिव ट्रायड दिया था जिसको हम ट्रिपल एच बोलते हैं, ठीक है। नेगेटिव व्यू ऑफ द वर्ल्ड, नेगेटिव व्यू ऑफ द सेल्फ, नेगेटिव व्यू ऑफ द फ्यूचर। हेल्पलेस, होपलेस और वर्थलेस लगता है, ठीक है, पेशेंट को। ये आपका एबीसी मॉडल यूज करता है कि हमारा कोई भी इवेंट हुआ, एक्टिवेटिंग इवेंट, और हम क्या चले जाते हैं सी पे, कॉन्सिक्वेंसेस। किसी ने बोला कि मेरे से उसने गलत तरीके से बात करी है तो मुझे गुस्सा, मैंने मार दिया, ठीक है। किसी को कि गुस्सा आया, मैंने मार दिया। हम बीच का जो बी वाला पार्ट है ना, जो हमारा बिहेवियर है, जो बिलीफ है, उसको हम खा जाते हैं कि वो क्यों आया, गुस्से की वजह से हमारे अंदर क्या बिलीफ आए, हमारे बिहेवियर में क्या चेंजेस आए, जिस वजह से हमने सी कॉन्सिक्वेंसेस किया, ठीक है। तो वो बी पे काम करना है, ठीक है। A represent antecedent event, B represent belief which impasses how you perceive and understand the given situation। तुमको लगा कि उसे तुम पे अटैक किया है, हो सकता है वो इंसान पहले से परेशान हो, उसको किसी ने डांटा हो, इस वजह से उसका बिहेवियर चेंज रहा हो, ठीक है। हो सकता है वो किसी और पे गुस्सा कर रहा हो, आप गलती से बीच में आ गए हो। तो ये सब चीजें हमको कंसिडर कराता है ये सीबीटी का जो पार्ट है, ठीक है। सिचुएशन आई, थॉट आया, आपका इमोशन आ गया और आपका बिहेवियर आ गया। बहुत बार आप बॉडीली सेंसेशन भी होता है कि बहुत बार आपको जब गुस्सा या चिड़चिड़ापन होता है तो आप देखते हो आपका हार्ट रेट बढ़ गया है, आपको ट्रेमलेस होने लगती है, आप पसीना ज्यादा होने लगते हो। तो कैसे अपने आप का बहुत बार बॉडीली सेंसेशन को काम करके भी आप अपने देखोगे कि एंजाइटी की फीलिंग कम हो रही है। आइडेंटिफाई द नेगेटिव थॉट्स, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, चैलेंज एंड रिप्लेस देम विद रियलिस्टिक थॉट्स, जैसे मैंने बताया अभी आपको जो बी वाला पार्ट है। बिहेवियरल मॉडिफिकेशन एंड एक्सपोजर एक्सरसाइजेस, एंड इसमें होमवर्क असाइनमेंट दिया जाता है। पेशेंट को कुछ कुछ काम करने को बोलेगा थेरेपिस्ट कि आप आज ये लिस्ट बना के आइए, आज आप एक जर्नलिंग करिए और मुझे बताइए कि आपने पर्टिकुलर थॉट के बारे में क्या क्या चीजें लिखी हैं। आपको अगर गुस्सा जिस वक्त आया था तो आप उससे पहले क्या होता है, उसके बाद आप क्या करते हो, कितनी देर तक गुस्सा रहता है। तो ये सब चीजें जर्नल करने को पेशेंट को बोल सकता है। या फिर ये होमवर्क दे सकता है, नेक्स्ट टाइम अब कभी भी गुस्सा आए तो आप उस वक्त बोलने से पहले आप 10 मिनट रुकेंगे, पानी पियेंगे, उसके बाद ही किसी से बात करेंगे। तो ये भी आपका एक होमवर्क टेक्निक हो सकती है, ठीक है। और पेशेंट कैसे फॉलो कर रहा है, ये बस आपका एक वो है, स्ट्रक्चर फॉर्म में दिया हुआ है कि थेरेपी कैसे कंडक्ट की जाती है, ठीक है। सीबीटी का ही एक और पार्ट आ गया, आरईबीटी, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। ये एल्बर्ट एलिस ने बोला था। इसने बोला था इट फोकसेस ऑन हेल्पिंग आइडेंटिफाइंग चैलेंज एंड इरेशनल बिलीफ व्हिच लीड टू इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम। है वही, ठीक है, जो पहले देखा था। इसमें आपका इमोशनल और बिहेवियर प्रॉब्लम को कैसे, जो प्रॉब्लम है उसको चैलेंज कैसे करना है और फिर अपने आप को कैसे कंडक्ट करना है, ठीक है। तो रैशनल बिलीफ को, जो इरेशनल बिलीफ है उसको कैसे रैशनल बिलीफ से रिप्लेस करना है, कैसे लॉजिकली थिंक करना है और इमोशनल डिस्ट्रेस कम करना है। उसमें आपका एबीसी मॉडल था, इसमें एबीसीडी ई मॉडल है, ठीक है। ए तो एक्टिवेटिंग इवेंट हो गया, बी बिलीफ हो गया, सी कॉन्सिक्वेंसेज हो गया। यहाँ पे डी वाला क्या है कि जो आपका इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेज है उसको चैलेंज करना है, जो बिलीफ को चैलेंज करके उन इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेज को कैसे कंट्रोल करना है और
इफेक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ चैलेंजिंग सेल्फ एंड डिफीटिंग बिलीफ। और ये ई जो है, अगर आपने कुछ जो नेगेटिव डिस्टॉर्शन था उसको चैलेंज किया, जो भी इमोशनल रिएक्टिविटी थी उसको चैलेंज करके आपको देखना कि इफेक्ट क्या आया आपको इस इफेक्ट। जैसे कि सपोज आपने अपने गुस्से का या फिर जो भी गलत कॉग्निटिव वो आ रहा था कि मेरे को गुस्सा उसके बिहेवियर की वजह से आ रहा है, फिर आपने सोचा नहीं मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है शायद क्योंकि मैंने आज खाना ही नहीं खाया है, शायद मैं घर से बहुत देर से चल के आ रहा हूँ, इतनी गर्मी हो रही है तो मुझे सामने वाले की नहीं गर्मी की वजह से गुस्सा आ रहा है। आपने उसको चैलेंज किया तो आपने देखा कि चलो मैं 10 मिनट पंखे के नीचे बैठ जाता हूँ, पानी पी लेता हूँ, तो आपने देखा आपका गुस्सा चला गया। ठीक है, तो ये इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस जब आपने अपने उस बिलीफ को चैलेंज किया कि गुस्सा किस वजह से आ रहा था। समझ रहे हैं ना, आपने एक लॉजिकल और एक रैशनल रीजन दिया अपने किसी भी बिहेवियर के लिए। नेक्स्ट इज डीबीटी, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी। ठीक है, ये मार्शल लिनेन ने डिस्कवर की थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए। आप लोगों की पर्सनालिटी डिसऑर्डर की अगर क्लास हुई होगी, आपने पर्सनालिटी डिसऑर्डर अगर पढ़ा होगा, तो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक होता है जिसमें आप इमोशनली पेशेंट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों से अटैच हो जाता है और वो चीज़ें अगर कम हो तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। ठीक है, अगर वो चीज़ें उससे दूर चली जाएं तो उनको उसके लिए कैसे हम ये डीबीटी का यूज़ करते हैं ये हम देखेंगे अभी। ठीक है, द टर्म डायलेक्टिकल मीनिंग मीन्स फाइंडिंग अ बैलेंस बिटवीन एक्सेप्टेंस एंड चेंज। ठीक है, यानी कि कोई भी चेंज हुआ अचानक से, कोई आपसे कोई चीज़ आपको बहुत अटैच थी वो अचानक से आपसे चले गई, तो कैसे एक्सेप्ट करना है उस चेंज को, कि अगर किसी चीज़ का दूर जाना है, किसी चीज़ का बदलाव आना, कोई चीज़ हम बहुत अच्छे से एक्सपेक्ट कर रहे थे ये होगा ही होगा, वो नहीं हुई, तो कैसे उस चेंज को एक्सेप्ट करना, ये आपको डीबीटी सिखाता है कि अपने आप को कैसे अनफेवरेबल कंडीशन में शांत रखना है। ठीक है, अपने बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करना है। बहुत बार बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी के पेशेंट्स अगर इमोशनली बहुत रिएक्टिव होते हैं तो वो सेल्फ हार्म कर लेते हैं। ठीक है, कभी खुद को काट लिया या सर पे मार लिया, तो ये बिहेवियर कैसे कंट्रोल करना है अपने आप को, ये डीबीटी सिखाता है। ठीक है, इट कंबाइन्स सीबीटी विद माइंडफुलनेस, एक्सेप्टेंस एंड इमोशनल रेगुलेशन स्ट्रेटजीज। तो मेन कंपोनेंट क्या है, या तो इंडिविजुअल पेशेंट को थेरेपी दे सकते हैं वन सेशन, ग्रुप थेरेपी की खूब सारे लोगों को बिठा के डीबीटी स्किल ट्रेनिंग करनी है। फोन में अगर पेशेंट को अचानक से क्राइसिस आ गया तो फोन में भी पेशेंट की ब्रीफ काउंसलिंग सेशन किया जा सकता है। एंड थेरेपिस्ट की पूरी कंसल्टेशन टीम होती है जो पेशेंट के हर एक अलग अलग पार्ट पे काम करेगी। ठीक है, और कोर एरिया क्या है, जैसे मैंने बोला माइंडफुलनेस, बीइंग प्रेजेंट एंड बीइंग अवेयर इन द मोमेंट। ठीक है, आपको दुख हो रहा है, कभी कभी पेशेंट को बहुत ग्रीफ होता है, बहुत रोना आता है, बहुत सैड होता है, तो उसको भी वो एंगर की तरह पेशेंट रिप्रेजेंट कर सकता है। तो माइंडफुलनेस सिखाता है अपने उस फीलिंग के लिए टोटली अवेयर रहना। ठीक है, मैं परेशान हूँ, क्यों परेशान हूँ, बिकॉज मुझे बहुत दुख है। ठीक है, तो एक्सेप्ट करना कि मैं पूरा मुझे दुख हो रहा है, कि मैं सैड हूँ, इस चीज को एक्सेप्ट करना भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। दूसरा है डिस्ट्रेस टॉलरेंस, मैनेजिंग क्राइसिस विदाउट मेकिंग सिचुएशन वर्स। ठीक है, बहुत पेशेंट्स का फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस कम होता है। ठीक है, किसी को आपने थोड़ा सा कुछ बोला वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, किसी को आप 3-4 बार समझाते तो पेशेंट अच्छे से समझ जाता है। तो उसके लिए जो डिस्ट्रेसफुल कंडीशन है, जैसे कि उसकी चेंज कर लोकेशन चेंज हो गई, तो उस लोकेशन जो चेंज हुई है उसको कैसे टॉलरेट करना है। ठीक है, गुस्सा करने से बेटर है बैठ जाओ। ठीक है, वो जो वहीं पे जो माइंडफुलनेस वाली थेरेपी है, जो रिलैक्सेशन वाली थेरेपी है, वो काम आएंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोलिंग इंटेंस इमोशन, जिसको इमोशनल रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा चौथा है इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस, बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेटिंग असर्टिवली। ठीक है, ये सब चीजें देख ली हमने कि इंडिविजुअल थेरेपी के आपका अप्रोक्सीमेटली 1 आवर होती है, स्किल ट्रेनिंग होती है वीकली 1.5 to 2.5 आवर, थेरेपिस्ट कंसल्टेशन टीम वीकली अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 आवर्स, और फोन कोचिंग। माइंडफुलनेस का मतलब है नॉन जजमेंटल अवेयरनेस ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट्स, इमोशनल रेगुलेशन, चेंजिंग अनवांटेड इमोशन। ठीक है, और यहाँ पे डिस्ट्रेस टॉलरेंस और इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस, इंप्रूविंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप एंड सेल्फ रिस्पेक्ट साथ में। ठीक है, सीबीटी और डीबीटी में आप देख सकते हो कि क्या बोलते हैं, डिफरेंसेस क्या है, वी कैन सी इट लेटर ऑन। आई जस्ट थोड़ा तेज चलेंगे। अभी यहाँ तक हमने साइकोथेरेपी, सीबीटी और डीबीटी पढ़ लिया। अब बची भी बिहेवियरल थेरेपी अपार्ट फ्रॉम सीबीटी एंड डीबीटी जो है वो हम देखेंगे। इसमें आप ये याद रखिए, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, जो हमारा बिहेवियर है वो एक लर्निंग प्रिंसिपल के वाया आया है। ठीक है, हमने कुछ कुछ चीजें सीख ली होती हैं, चाहे वो बचपन से अभी तक सीखी हो या फिर अपनी एंजाइटी कम करने के लिए सीखी हो,
तो जो लर्निंग जो उसकी वजह से जो हमारा बिहेवियर आ गया उसको कैसे अनलर्न करना है, ये बिहेवियर थेरेपी बताती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ओसीडी वाले पेशेंट में क्या होता है, एंजाइटी हुई, सपोज कंटामिनेशन को लेके एंजाइटी हुई, उसने फटाक से हाथ धोए, उसकी एंजाइटी कम हो गई, तो उसके दिमाग ने क्या सोच लिया, याद कर ले जब भी एंजाइटी है उसके साथ हाथ धोना है तो एंजाइटी कम हो जाएगी। पहले तो ये थोड़ा सा टाइम के लिए एंजाइटी कम कर रही थी, फिर ये आदत बन जाएगी, ठीक है, और बार बार फिर यही साइकिल होती रहेगी। तो हमको सबसे पहले वो हाथ धोने वाला जो बिहेवियर है वो तोड़ना होता है, ठीक है। They aims to help individual change unwanted or maladaptive behavior by using technique based on principles of learning theory such as classical conditioning and operant conditioning. If you all remember classical conditioning, पैवलो के एक डॉग का एक्सपेरिमेंट था, घंटी बजाते थे तो पेशेंट को क्या बोलते हैं, तो जो डॉग था उसको सलाइवा नहीं होता था, लेकिन फिर आपने क्या किया, घंटी और खाने को साथ में रखना शुरू किया पैवलो ने, तो फिर डॉग का सलाइवा निकलने लग गया। फिर बाद में क्या हुआ कि उसने खाना हटा दिया, सिर्फ घंटी से भी डॉग का सलाइवा निकलने लग गया, तो वो कंडीशन हो गया, ठीक है ना, कि अब घंटी की कंडीशनिंग हो गई है सलाइवा निकलने से। तो वैसे ही बहुत बारी चीजें होती है कि जो हमारी कंडीशन हो जाती है, जैसे कि हाथ धोना, जैसे मैंने बताया, ठीक है ना। Unlike traditional psychotherapy, behavioral therapy is action oriented and focus on present behavior rather than, इसमें भी वही है कि आपका जो current behavior है उसको कैसे resolve करना है rather than जो conflict है, ठीक है। तो इसका मेन इंडिकेशन आपका एंजाइटी पैनिक डिसऑर्डर, ओसीडी, फोबियाज, डिप्रेशन, सब्सटेंस यूज, ईटिंग डिसऑर्डर, बच्चों में एडीएचडी और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में भी काम आता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं आपका सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन, फ्लडिंग, ईआरपी, वर्चुअल रियलिटी एक्सपोजर, एवर्जन, टोकन इकोनॉमी, कंटिंजेंसी मैनेजमेंट, बिहेवियरल एक्टिवेशन, मॉडलिंग एंड सोशल स्किल ट्रेनिंग। हम ब्रीफ में सब देखेंगे एक एक करके, ठीक है। सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन में क्या होता है, पेशेंट को, जो फोबिया के पेशेंट है उनको ग्रेजुअली एक्सपोज किया जाता है जिन भी चीजों से उनको फोबिया होता है, ठीक है। 3-4 स्टेप्स होते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक सिखानी होती है पेशेंट को, जैसे डीप ब्रीदिंग हो गया या फिर जेपीएमआर हो गया कि मसल्स रिलैक्सेशन कैसे सीखना है, उसको सिखाया जाता है। जब भी एंजाइटी हो आप इन सब चीजों को टेक्निक करेंगे, यूज करेंगे अपने आप को काम डाउन करने के लिए, ठीक है। एक हायरार्की बनाएंगे, आपको किस चीज से सबसे ज्यादा एंजाइटी है वो टॉप नंबर पे आएगी, उससे कम किससे है, उससे कम किससे है। तो आपने सपोज 5 चीज का लिस्ट बना दिया, सबसे ज्यादा एंजाइटी पेशेंट को किस चीज से होती है, सपोज उसने बोला अगर मेरे ऊपर स्पाइडर चढ़ जाएगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा, ठीक है। उससे कम एंजाइटी किससे होती है, अगर स्पाइडर को दूर से देखा, ठीक है। तो ऐसे करके लिस्ट बनानी होती है। फिर ग्रेजुअली पेशेंट को एक्सपोज करते हैं फियर स्टिमुलाई से, एंड फिर आपका पेशेंट को रिलैक्सेशन सिखाते हैं साथ में, जिससे कि विद टाइम क्या हो, अगर वो स्टिमुलाई जर्नल या पब्लिक कंडीशन में पेशेंट के, रियल लाइफ कंडीशन में पेशेंट के पास आ रहा है तो पेशेंट रिएक्ट ना करे उतना पूरा, ठीक है। बस देखिए, थेरेपिस्ट टीचर्स पेशेंट रिलैक्सेशन, desensitization begin, the patient relaxes, vividly imagines fear surrounding sense, starting with those that are only mildly anxiety provoking, और धीरे धीरे आपका क्या होगा कि आप encourage करेगा उस fear को confront करने के लिए, ठीक है। फ्लडिंग आपका सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसमें आपको रिलैक्सेशन का टाइम नहीं मिलेगा, एकदम बम्बार्डमेंट कर दिया जाएगा आपके सामने, ठीक है ना। आपको इस चीज से डर लगता है, जाइए काम करिए, ठीक है। More intense form of exposure therapy where a person is exposed to their most feared object or situation for a prolonged period without any gradual build-up. तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि कुछ समय तक पेशेंट एंशियस रहेगा, धीरे धीरे एंजाइटी कम हो जाएगी, ठीक है। एक्सटिंक्शन ऑफ द कंडीशन फियर रिस्पॉन्स, ठीक है। जैसे कि हमने पैवलो और डॉग वाला अगर मैं बात करूँ तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि पहले तो स्टार्टिंग में बेल से ही डॉग का सलाइवा शुरू हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे जो कंडीशन था वो धीरे धीरे कम होता रहा, ठीक है। तो बाद में बेल बजाने पे डॉग का सलाइवा आना बंद हो गया, ठीक है। तो यही चीज इसको अप्लाई किया हुआ है। नो रिलैक्सेशन टेक्निक, एंजाइटी रिड्यूसेस नेचुरली ओवर टाइम थ्रू रिपीटेड एक्सपोजर, ठीक है। बार बार किसी चीज को एक्सपोज किया तो डर कम हो गया, ठीक है। फ्लडिंग एज यू कैन सी, प्रोग्रेसिव एक्सपोजर में आपको फोटो दिखाई जा रही है, फिर आपको इमेजिन करने को दिया जा रहा है, वीडियो दिखाई जा रही है, फ्लडिंग में एक बार झोंक दिया आपको, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत सारे पेशेंट्स जो बहुत ज्यादा एंशियस हो, जिनको कोई बहुत गंदी ट्रॉमा की हिस्ट्री हो, हार्ट कंडीशन हो, तो उनमें ये टेक्निक नहीं यूज करनी चाहिए। एवर्जन थेरेपी, एवर्जन नाम से मतलब समझ लो कि अनडिजायरेबल कोई भी चीज है उसको, आपको जो भी चीज आपको एंजाइटी प्रोवोक कर रही है
या जो भी चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है उसको किसी अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस के साथ एसोसिएट कर दिया, ठीक है। जैसे कि एक ड्रग आती है डाइसल्फिराम अल्कोहल में, ठीक है, वो देख आपने ऐड भी देखा होगा, घर वाले खाने में मिला के कोई दवाई दे देती थी मम्मी, तो पापा पीते थे तो उनको शराब पीने के बाद उल्टी आ जाती थी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें बहुत जगह देखा होगा। तो ये अवर्जन थेरेपी है। अल्कोहल का कॉम्बिनेशन आपने उस दवाई के साथ, जब भी अल्कोहल लेता है पेशेंट तो उसको बहुत गंदा रिएक्शन होता है, तो अल्कोहल से अवर्जन, एकदम उससे मन उठ जाता है, ठीक है। ऑल्दो ये दवाई बिना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी चाहिए, प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस, इसके बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ये क्या बोलता है, रिड्यूस और एलिमिनेट अनडिजायरेबल बिहेवियर लाइक एडिक्शन और सेल्फ हार्म बाय पेयरिंग देम विद अनप्लेजेंट स्टिमुलाई। Therapist uses unpleasant like nausea, shock or bitter taste when client engage or thinks about unwanted behavior. जैसे कि बहुत बार पेशेंट को नेल बिटिंग की हैबिट होती है, तो क्या करा होता है कि रबर बैंड टेक्निक, जब भी आप नाखून काटोगे एक रबर बैंड से अपने आप को मार लेना, ठीक है। जैसे ही नाखून चबाएगा तो पेशेंट को रबर बैंड खींच के अपने आप को मारना है, तो नाखून चबाना वो पेन के साथ उसने क्या बोलते हैं एसोसिएट कर दिया, तो अवर्जन हो जाएगा, समझ गए। It create a negative association with the behavior so that the individual is less likely to engage in it. जैसे कि एमेटिक थेरेपी है, कोई आपका डाइसल्फिराम जो मैंने ड्रग का नाम बताया था, उसको किस दारू के साथ लेंगे तो उल्टी आ जाती है, ठीक है। अवर्जन इमेजरी एंड विजुअलाइजेशन, ठीक है, इसमें आपको कोई अनडिस्टर्ब्ड इमेज दिखा दी, ठीक है, पेशेंट की, पेशेंट को कोई भी जो भी डिस्टर्बिंग इमेज या फिर वीडियो दिखा दी, कोई भी बिहेवियर कम करना है तो। फिर है फेराटिक अवर्जन थेरेपी, ये आप यूज नहीं करते हैं। इसमें क्या होता था कि इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था किसी भी बिहेवियर को कम करने के लिए, और अनप्लेजेंट टेस्ट एंड स्मेल, ठीक है, कोई भी गंदा ऑर्डर वाली चीज सुंघा दी अगर पेशेंट का बिहेवियर कम करना है तो। नेक्स्ट है आपका ईआरपी, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, ठीक है, समवट सिमिलर टू क्या बोलते हैं सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन ही ओसीडी में यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें भी यही किया जाता है, पेशेंट को एक्सपोज किया जाता है, उसके जो फियर स्टिमुलाई है वो आप एक हाइपोथेटिकल कंडीशन दोगे कि आप इमेजिन करो कि कोई चीज़ गलत आपके सामने रखी हुई है, गंदगी रखी हुई है, तो आप कैसे बिहेव करोगे। फिर पेशेंट का रिस्पॉन्स जो भी है, हैंड वॉशिंग है, उसको प्रिवेंट करोगे, ठीक है। धीरे धीरे एक्सपोजर बढ़ेगा और रिस्पॉन्स कम होता जाएगा, तो ये अभी आपका अनलर्न किया जा रहा है, ठीक है। It helps person realize that nothing bad happens when they don't perform the compulsion, which will reduce fear over time, ठीक है। प्रोसेस आपने क्या किया, आइडेंटिफाई ट्रिगर, हायरार्की, गाइडेड एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, ठीक है। वैसे ही वर्चुअल रियलिटी एक्सपोजर थेरेपी है, इसमें एक आपका वीआर मॉडल होता है, उसके वाया पेशेंट को इमेजेस दिखाई जाती है, लाइव एक्सपीरियंस जैसा होता है, और आपका रिस्पॉन्स प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है। Modern form of exposure therapy that uses virtual reality technology to simulate feared stimulus or situations. Client wear VR headset and immerse in a realistic situation with their feared situation. Allows safe control and repeated exposure. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए। तीसरा है कंटिंजेंसी मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंटिंजेंसी मैनेजमेंट में कोई भी बिहेवियर आपको मॉडिफाई करना है, तो या तो पेशेंट को पनिशमेंट दोगे अनडिजायर्ड बिहेवियर के लिए, या फिर उसको रिवॉर्ड दोगे डिजायर्ड बिहेवियर के लिए, ठीक है। ऑफन यूज इन एडिक्शन ट्रीटमेंट प्रोग्राम टू रीइंफोर्स एब्स्टिनेंस, ठीक है। टेक्निक्स क्या होती हैं, आपने बिहेवियर को आइडेंटिफाई किया, फिर आपने रीइंफोर्समेंट सेलेक्ट किया। अगर आपका सपोज अगर कुछ रिवॉर्ड देके पेशेंट का बिहेवियर इंप्रूव हो रहा है, तो आपने वो रिवॉर्ड का वो किया। जैसे रिवॉर्ड हो सकता है कि अगर आपने सब्सटेंस नहीं यूज किया, यू नहीं किया, तो आपको 1 घंटा टीवी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर वो पेशेंट अगर टीवी के लिए मोटिवेटेड है, तो पेशेंट अल्कोहल से उतने समय के लिए दूर रहेगा, ठीक है। एस्टेब्लिशिंग रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, ठीक है, डिसाइडिंग व्हेन एंड हाउ ऑफन टू गिव दैट, कब कितने घंटे बाद, कितने कितने हफ्ते में कितने दिन देना है, फिर और उसका मॉनिटर करना है फीडबैक की कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है। उसी का ही एक आगे पार्ट होता है टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी में क्या होता है कि आपको अगर कोई चीज चाहिए, सपोज आपको स्टूडेंट्स के लिए, खास करके छोटे बच्चों के लिए, अगर उनको बोला कि हमको 1 आवर वीडियो गेम खेलना है, तो 1 आवर वीडियो गेम खेलने के लिए आपको 5 स्टार कलेक्ट करने हैं। वो 5 स्टार कैसे कलेक्ट करेंगे, 1 स्टार आपने अपना रूम साफ किया, 2 स्टार अगर आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, 3 स्टार आपने सारी वेजिटेबल्स खा ली, 4 स्टार आप टाइम पे सो गए, 5th स्टार आपने कल का टेस्ट में अच्छा किया। आपको 5 स्टार मिल गए, तो आपको वो 1 to 1.5 आवर गेम का मिल जाएगा। जैसे हम पैसे इकट्ठा करते हैं ना, जैसे आपको कोई फोन खरीदना है, तो आपने 10,000, 20,000, 25,000
इकट्ठा करके फोन खरीदा, तो वही टोकन इकोनॉमी, जो वर्ड की इकोनॉमी है, उसको आप अपने बिहेवियर मॉडिफिकेशन में कैसे लगा रहे हैं, इसको बोलते हैं टोकन इकोनॉमी। ठीक है, जैसे टोकन इकोनॉमी, आई एम वर्किंग फॉर 5 स्टार, ये आपको गेम खेलना है, तो आपने धीरे धीरे आपने टोकन इकट्ठे किए और फाइनल टोकन से आपने अपना डिजायर्ड आउटकम ले लिया। फिर है बिहेवियरल एक्टिवेशन, स्पेशली डिप्रेशन की पेशेंट्स में पेशेंट को बार बार जो पॉजिटिव बिहेवियर है उसकी तरफ पुश किया जाता है। ठीक है, एंगेज इन एक्टिविटीज दैट पेशेंट यूज्ड टू एंजॉय, चाहे वो पेंटिंग है, सिंगिंग है, आउटगोइंग है, तो ये आपका क्या होता है कि बिहेवियर जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं वो अवॉइडेंस वाला बिहेवियर हो जाता है कि हमें कुछ करना ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो एक दिन में तो वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, तो उसके लिए लगना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं ना, पेशेंट को पुश करो कि चलो आज आप आधा घंटा ही सही कुछ पेंट करो, आधा घंटा ही सही वॉक करके आओ, तो धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ाएंगे। ठीक है, साइकिल ऑफ डिप्रेशन, इंक्रीज डिप्रेशन मूड, एक्सपीरियंस लेस प्लेजर, नॉट एंगेजिंग इन एक्टिविटीज, वही बिहेवियरल एक्टिवेशन में आपने एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया तो देखा जाता है कि डिप्रेशन धीरे धीरे कम होता है। फिर मॉडलिंग, देख सकते हैं कि जैसे भी आप पेशेंट जो बिहेवियर चाहिए उसको किसी डिजायर्ड पर्सन से मॉडल करके दिखाइए। जैसे आप ये देख सकते हैं कि बच्चे के फादर पेपर पढ़ रहे हैं, तो बच्चा भी एक रीडिंग की हैबिट कर रहा है। इसी के ऑपोजिट फोन यूज करते हुए भी एक पिक्चर लगा सकते हैं जिसमें दोनों पेरेंट्स फोन में है, तो बच्चा भी फोन यूज करेगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट मॉडलिंग इज। ठीक है, another person demonstrate a desired behavior which the client then practice, it useful for teaching social or coping skills. A person that is considered an excellent example of something. Modeling consists of attention, retention, reproduction and motivation. पहले देखेगा कि सामने वाला जो मॉडल इंसान है, मेरा मॉडल है, वो क्या काम कर रहा है, उसके बिहेवियर को रिटेन करेगा, फिर उसको रिप्रोड्यूस करेगा, फिर अपना भी वो चीज इनकलकेट करेगा और फिर मोटिवेटेड रहेगा उस बिहेवियर को वापस करने। ठीक है, अगेन नेक्स्ट वन इज सोशल स्किल ट्रेनिंग. It helps individual improve their interpersonal communication and relationship, include role playing, feedback and homework assignment. ठीक है, तो आपका वर्बल कम्युनिकेशन कैसे करना है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक ग्रुप में कैसे काम करना है, लोगों से कैसे बातचीत करनी है, अपने आप को ग्रुप में कंडक्ट कैसे करना है, लीडरशिप स्किल कैसे डेवलप करनी है, तो ये सब चीजें आपका सोशल स्किल ट्रेनिंग सिखाती है. इनफैक्ट अब बैठ के बस किसी को सुनना या अपनी बात रख पाना भी सोशल स्किल ट्रेनिंग में आ जाता है. ठीक है, so with this I'll end. These are the references and thank you so much. Good afternoon to all. So this is second lecture for management in psychiatry, and you had gone through the biological therapies in the last lecture with the drugs which we have in the psychiatry bucket, and today we are going to discuss about the psychoanalysis and psychotherapies, and it's a type of treatment which do not require any medications. So as for the other specialty also, there is non-pharmacological management like as in the physiotherapy, you do the things post-surgery, pre-surgery and after many disorders developed in the patients like neurological disorders. So psychiatry also have the part to deal with the condition with non-pharmacological management. So this lecture will cover psychosocial theories and will highlight the ideas and concept in the current practice, and will explain the various psychosocial treatments modalities. The lecture will comprise of basic concepts of psychoanalysis, the personality component of Freud, ego and superego, behavioral motivation by Freud concept, dream analysis, ego defense mechanism, stages of psychosexual development, transference and countertransference, and after which we will cover the psychoanalytic theory. What is psychoanalysis? So psychoanalysis, this is the picture of Sigmund Freud, who is known for originating the psychoanalytic theory and psychoanalysis. He was born in on 6 May 1856 in Austria. Now it is Czech Republic,
died in 1939 at the age of 83 in London, and his alma mater was University of Vienna. This is his wax statue in the Tussauds Wax Museum. So first we have to know that what are the basic concepts of psychoanalysis. What is the basis of psychoanalytical theories? So psychoanalysis is a school of thought, and this school of thought explains the origins of human behavior by examining unconscious drives, defense mechanisms, and transference and others. It was developed by Sigmund Freud, and it's a collection of theories that form the basis of psychodynamic approach to psychology. So what are these theories? We will come to know one by one. The basic concept is this theory supports the notion that all the human behavior is caused and can be explained by theories. The behavior of the person is not haphazard, it has some kind of uh, basis behind this. For example, Sigmund Freud believed that repressed sexual impulses and desire motivate much of the human behavior. And likewise, if the person, mostly in the females, who displayed unusual behavior such as disturbance of sight, speech, inability to eat, and paralysis, in the absence of any organic cause, considered as hysterical or neurotic behavior. So this is considered as a repressed sexual drive and unmet sexual feelings, which Sigmund Freud has to explain this, and he also uh, explored the area of childhood trauma and the failure to complete task of psychosexual development, which may result into adulthood deviated behavior. Starting with the personality components, id, ego, and superego. Starting with id reflects the basic or innate desire, which is uh, based on the pleasure-seeking behavior, aggression, and sexual impulses. So, impulsiveness and pleasure-seeking is the key concept of id, and this is regardless of the consequence of the impulses and has no regard for rules or social convention. So these are the primitive reflexes which is present in the person at very early stage, at very early age, when the person is infant, and this id is totally uh, is present in the newborn child. So before explaining the ego, one has to understand what is superego. Superego is based on morality concept. It reflects the moral and ethical concepts, values, and parental and social expectations. It is directly opposite of the id and acts as a guide for behavior. So it also shows the matureness of a person, how the person take the decision, and superego is also seen as a purveyor of rewards and punishment. It may lead into the reward, feeling of pride and satisfaction, or uh, may into the feeling of shame and guilt, depending on the which part of ego the superego is functioning. So superego is consisting of two systems. One is conscience and second one is ideal self. Conscience is the inner voice that tells us when we have done something wrong, and ideal self or ego ideal is an imaginary picture of how you ought to be and represents career aspirations or how to treat other people and how to behave as a member of society. So conscience and ideal self are the two components. Now coming to the id is a balancing force or mediating force between the id and superego. Ego represents the mature and adaptive behavior that allows a person to function successfully in the world. And Freud believed that anxiety which resulted from the ego attempts to the balance the impulsive instincts of the id and stringent rule of the superego.
So it helps us to find, deal with the reality and ensuring that our action taken into account, both our need and the realities of the situation are met. In simple form, you can see in the bottom of this slide. So id, what the id is, if someone says I want it now, is id, which is based on the pleasure principle, impulses, and it is required immediately and without knowing the consequences of that act. What the superego says, you can't have it, it's not right. It says, I want it now. Superego says, you can't have it, it's not right. What the ego does is balancing the id and superego. The ego says, we need to plan and wait in order to have it. I cannot have it immediately, and morally it is not right, but I will have it after planning it to get the required. Examples of id are, in the behavior, sexual desire is considered as id, which is regardless of the societal norms and consequences. Hunger also. Aggression, for instance, if you feel irritated, insulted or frustrated, then you might feel a sudden impulse to react aggressively. This is the id which is working. And acting without regard the reality or social norm is the characteristic of aggression. But the super ego, what is done by the super ego is it pull back your aggressive impulses and prevent you from the lashing out or causing harm. Greed is also example of id. Immediate gratification. For example, a person may skip school to attend a music concert, and this time the person is ignoring potential academic repercussions he will have in the future, and he is immediately satisfying his pleasure by attending the music event. So this is immediate gratification. Self-preservation. Another is self-preservation, means protecting the self. If the id might compel someone to flee from a dangerous situation, like in the fire or a burning building, without pausing to collect the belongings, the person will flee from the situation. But this has another aspect also. The persons who are firefighters, who run into fire to save the persons, tend to have a very well developed superego or focus on others' desire. Such as positive social regard over personal safety. So this is another aspect of self-preservation as an example of id. Sudden emotional outburst. This is also based on the pleasure-seeking principle or impulsive behavior. Jealousy and envy. Addictive behavior is also example of id, in which immediate gratification is uh, taken to the priority on other pleasurable things. Impulsive actions like quitting the job uh, because of a minor disagreement with the colleague or the boss, and it seeks like a immediate relief from the stressful situation, and at the same time ignoring the financial implications and future employment prospects of quitting the job. Reckless behavior, which is high risk behavior like illegal street racing driven by the adrenaline rush, and this is also uh, does not think about the consequences of reckless driving. Excessive consumption of food or anything is also example of id. Violent fantasies, and narcissism is the self-centeredness, and it seeks to fulfill its own desire without considering the uh, consequence upon the others' behavior. Moving to the behavioral motivation by Freud concept. Freud believed that the human behavior functions at three levels of awareness. One is conscious, one is preconscious, and unconscious.
The conscious refers to the perception, thought or emotions that are exists in the person's awareness. What the person knows at the immediate time is conscious level of awareness. Pre-conscious is the person can recall the event with some effort. It is not in the conscious mind. Person does not know or aware about the emotion, feelings or their thought, but it can be surfaced to the consciousness. For example, an adult remembering what he or she did, thought or felt as a child. So childhood memories surfaced into the consciousness is the subconscious part. The next is unconscious. Unconscious is the realm which includes most defense mechanism and some instinctual drive or motivation. This remains in the unconscious part and cannot be bring to the awareness. This is unconscious. One, the thought which cannot be brought to the conscious mind. So he thought that the behavior is motivated by our subconscious thought or feelings, and Freudian slip, which means slips of tongue. Sometimes the person say something without knowing what he said, and it spontaneously come into the awareness. This is called as Freudian slip. And for example, someone says, "You look portly today," to an overweight friend instead of "You look pretty today." So the thought is in the uh, subconscious mind, and it is brought to the conscious mind. And he says that slips are not accidents or coincidences. These are rather indication of subconscious feeling or thoughts that accidentally emerge in casual day-to-day conversation. So by this picture, you can understand what is id. Id is instincts, ego is reality, superego is morality. In another picture, you can see the unconscious mind, which is below the. This is the tip of this iceberg, which has a tip and a submerged portion. The submerged portion is unconscious mind, which is related to id, and the ego and superego are somewhat submerged, and it is above the level of water, which is conscious mind. And when the subconscious part of ego and superego comes into the conscious, which can be said as a subconscious. This is another picture which depicts id as a aggressive impulse, and the ego as a calm and cool emotion which balance the superego. Superego is a moral and mature thinking which tries not to say or to say, to do or to exhibit the behavior. He also gave the dream analysis theory, in which he thought that dream reflects the subconscious mind and have significant meaning, though sometimes the meaning is hidden or symbolic. It can be direct or indirect. So it is the primary technique used in the psychoanalysis and discussing about the content of the dream. And for example, a patient might report having recurrent frightening dreams about snakes chasing her, and Freud can interpret it as a might be that woman fears intimacy with the man. He would view the snake as a phallic symbol representing penis. So this is how the dream analysis is done, and can be converted into some theories. Ego defense mechanism. So these defense mechanisms are driven by ego part of the personality. So it is called as ego defense mechanism, and various mechanisms the person used to exhibit in day-to-day life to combat with the anxiety provoking situation or stressful situation. So it's a method of attempting to protect the self and cope with the uh, basic drives or emotionally painful thought, feeling or events. When there are painful thoughts, feeling or events, the ego defense mechanisms are taken into play and can uh, alter the behavior. The one is like denial or refusal. If the person is having, for example, is having cancer and
The person is refused to talk about his illness, and they are in, she is in the denial mode and not acknowledging the actual situation. The another is reaction formation. Uh, if a person dying of cancer exhibits continuously cheerful behavior, this may be called as reaction formation. He could be using the defense mechanism of this to protect the emotions. So one by one, we will see what kind of ego defense mechanisms are there and how they are relatable with examples. The one is compensation. Compensation is overachievement in one area to offset real or perceived deficiencies in another area. This can be relatable to the Napoleon complex, which is diminutive man becoming the emperor. So he compensated his short stature with becoming the emperor. The another example is nurse with low self-esteem working double shift so that the supervisor or boss will like her. And the deficiency is the supervisor is not liking her, so she is compensating with the double shifts. A person who feels bad about not being a good cook, he may overcompensate by having an extremely tidy and organized kitchen. So compensation serves as a defense against feeling of inferiority. The Napoleon complex, as explained, is known as small people syndrome, and the characteristic is overly aggressive and domineering social behavior is acquired, which carries the implication that such behavior is compensatory for subject's physical or social shortcomings. So this is also considered as derogatory social stereotype. The conversion is a defense mechanism by which the individual reduce acute anxiety by transforming psychological suffering into the physical symptoms. So psychological suffering like anxiety and the anxiety provoking situation may turn the symptoms into sensory or motor functions. And in this process, individual become unaware of the mental content that cause psychological distress. The person may exhibit the symptoms of blindness, deafness, paralysis, numbness, and this phenomena is sometimes called hysteria. And hysteria is now uh, called as conversion or dissociation. So on the basis of this ego defense mechanism, there are conversion disorders or dissociative disorders.